अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप प्रस्तुत करते हैं ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 दूसरे दिन के पहली मैच HFC अरेकला के खिलाफ टीम एलिगेंट मैंगलोर। पिछले दिन तो केरला परिसर के दिग्गजों के बीच आपने मुकाबला देखे हैं, ये नए पोसोट फाइनल पर विराजमान हो चुके हैं। तो ऐसे में आज ये तय हो जाएगा कि ये वो दूसरे फाइनलिस्ट कौन है। 8 टीमों के बीच मुकाबला होगा। कर्नाटक परिसर के मैंगलोर के दिग्गजों के बीच यहां पर मुकाबला देखने को मिलेंगे दर्शकों को। तो टॉस हारने के पश्चात शुरुआत पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार खड़े हैं अशरफ और राशिद बाबा। गेंदबाजी पर खड़े हैं शाहनवाज। दाहिने हाथ ओवर द विकेट से शाहनवाज तैयार। और इस बार पहली गेंद LBW के जोरदार अपील कर रहे थे अंपायर से, लेकिन अंपायर को बिल्कुल विश्वास नहीं नजर आया इस अपील पर। तो अब देखना है कि 6 ओवर की ये मैच है, तो 6 ओवर की ये मैच पर शुरुआत की बल्लेबाजी पर टीम एलिगेंट इस छोटे मैदान के फायदा उठाते हुए कितने रन बना पाएंगे, ये तो यहां पर सवाल के ऊपर खड़े हैं। क्योंकि पिछले दिन कभी कभी 70 बने थे, कभी 59 बने थे, कभी 50। तो यहां पर आज देखना होगा कितने बनते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर वाइड बॉल के इशारा अंपायर से हरीश पटेल। हम बधाई देते हैं हरीश पटेल जी आपको कि आप अपनी जिंदगी के 25वां साल अपनी रेफरी के जिम्मेदारी पर गुजार रहे हैं, सिल्वर जुबली मना रहे हैं अपनी इस वृत्ति पर, इस जिम्मेदारी पर, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन भी आपको बेहतर हो। तो स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर आप देख सकते हैं अजित पटेल। और इस बीच गेंद को खेले अशफाक। अशरफ उछालना चाहते थे, लेकिन बाहरी किनारा लगने के बाद गेंद सीधे गली क्षेत्र पर गए, जहां से फील्डर उठाने से पहले एक सिंगल रन के साथ रन संख्या बने 2 रन। 2 रन पावर प्ले जारी होगा यहां पर। 2 ओवर पावर प्ले के ऊपर होगा। तो देखना है कि टीम एलिगेंट इस पावर प्ले के फायदा किस तरह से उठा पाते हैं। राशिद बाबा और इस बार कॉट बिहाइंड के अपील आउट के करार। ऑफ स्टंप से बाहर निकलने वाली गेंद को छेड़ने की कोशिश पर अपने विकेट गंवा बैठे राशिद बाबा। कर्नाटक परिसर पर छक्कों के साथ भूम भूम मचाने वाले राशिद बाबा इस केरला के मिट्टी पर अपनी अंडरआर्म क्रिकेट के कदर को दिखाने पर सफल नहीं हो पाए। इस पहली मैच पर सभी दर्शकों की नजर थे राशिद बाबा के ऊपर। गेंदबाजों की गेंदों को छेड़छाड़ करने पर हमेशा माहिर बनते थे राशिद बाबा, लेकिन इस केरला के परिसर पर HFC अरेकला के गेंदबाज शाहनवाज अपनी शानदार गेंदबाजी से राशिद बाबा को वापस भेज चुके हैं टगआउट में। तो टीम एलिगेंट आरंभिक आघात ले रहे हैं, शुरुआत की झटके ले रहे हैं राशिद बाबा के आउट होने के साथ। पावर प्ले के भरपूर इस्तेमाल करने वाले राशिद बाबा सारे दर्शकों की उम्मीद पर पानी फेरते हुए अपने विकेट गंवाकर वापस जा रहे हैं। विकेट कीपर काफी सुंदरता के साथ अपने समालोचित प्रदर्शन के साथ उस गेंद को लपक लिए थे। हालांकि राशिद के विकेट हासिल होते ही गेंदबाज और विकेट कीपर के जो खुशियां थे, जिस तरह से वो जश्न मना रहे थे, ये साफ साफ नजर आ रहा था कि कितने मायने रखते हैं HFC अरेकला को राशिद बाबा के विकेट। निजाम विकेट कीपर के ऊपर और इस बार अच्छी थी गेंद, और इस बार भी तालमेल की कमी, और यहां पर भी टीम एलिगेंट दूसरे विकेट यहां पर नौशीर टीम एलिगेंट के भरोसेमंद खिलाड़ी खिलाते थे। लेकिन यहां पर देखिए अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप के प्रस्तुति पर चलने वाली ये ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास पर पहली बार इस तरह के इतने बेहतरीन प्रतियोगिता हो रहे हैं, जो 2 राज्यों के बीच अंडरआर्म क्रिकेट के यहां पर मुकाबला दिखा रहे हैं। और इससे निकलते हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप को। एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जितने भी इस ग्रुप के एडमिन हैं, और हमें भी काफी खुश महसूस हो रहे हैं कि हम भी एक सदस्य हैं इस ग्रुप के। एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्रिकेट के प्रेमियां, अंडरआर्म क्रिकेट के चाहने वाले इस ग्रुप पर खड़े हैं। तो हालांकि छोटे समय पर अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास पर पहली बार बनाने वाले इतने बृहद प्रतियोगिता यहां पर सजाए हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप ने। और आज देखिए ये सुंदर मैच शुरुआत होते ही
कितने रोमांचक क्षण देखने को मिल रहे हैं दर्शकों को। शाहनवाज लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट मिले एचएफसी को, और इस बार लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल के इशारा अंपायर से। अतिरिक्त खाता पर होंगे सिंगल रन, और इस सिंगल रन के साथ रन संख्या बने 3 रन। 4 गेंदों पर रन बने हैं 3 रन। स्ट्राइक पर खड़े हैं रियाज, टीम एलिगेंट के कप्तान, अंडरआर्म क्रिकेट के शान कहलाने वाले रियाज, और इस बेज गेंद को खेलते हुए ऑफ। ओ माय गुडनेस, अगर सीधे निशाना बन जाती यहां पर तो रियाज के विकेट भी खतरे पर गिर जाते। बाल बाल बचे यहां पर रियाज। टीम एलिगेंट शुरुआत की ओवर पर इस पावर प्ले के फायदा ने उठा पाए हैं। ये 6 ओवर के मैच है, यहां पर 6 ओवर पर कम से कम 45 से 50 रन बनाना अवश्य होगा इस मैच को जीतने के लिए। शाहनवाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, नो बॉल। नो बॉल की आवाज अंपायर हरीश पटेल से। तो यहां पर एक मौका मिलेंगे रियाज को, एक ऐसे गेंद जहां पर आउट होने के खतरे को बाहर रखते हुए, अपने विकेट गंवाने की उस चिंता को बाहर रखते हुए बल्लेबाजी करते हैं यहां पे। तो फ्री हिट के मौका यहां पर रियाज को। शाहनवाज शुरुआत की 4 गेंद पर केवल 2 रन खर्च किए थे शाहनवाज, लेकिन रियाज की आगमन होते ही थोड़ी सी मुस्कुराहट फैली है रन संख्या पर। अब तो रन बने 6 रन। आखिरी गेंद बाकी, पहली ओवर की आखिरी गेंद, फ्री हिट के ये गेंद देखना होगा कि किस तरह से फायदा उठा पाएंगे रियाज। और ये शानदार गेंद, यहां पर शानदार गेंद। ओवर की समाप्ति, शुरुआत की ओवर की समाप्ति के बाद एक वाइड, एक नो बॉल के होते हुए भी केवल 6 रन पर अपने ओवर को संभाले हैं एचएफसी अरेकला के गेंदबाज ने। 2 वाइड यहां पर इस्तेमाल हुए थे, तो बल्ले के जरिए केवल मात्र 3 रन निकल आए हैं इस ओवर में। शुरुआत की ओवर पर 6 रन बनने के बाद अब देखना होगा कि दूसरी ओवर किस तरह से होंगे। बाकी बचे 5 ओवर पर टीम एलिगेंट एचएफसी अरेकला के खिलाफ किस तरह से बल्लेबाजी दिखा पाएंगे, क्योंकि ये छोटे मैदान है। मंजेश्वर परिसर के पंचायत मिनी स्टेडियम पर इस मैच को देख रहे हैं, और इस मैच के आयोजक हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 के नाम पर। और इस प्रतियोगिता के कामयाबी के लिए निश्चित रूप से हम बड़ी इज्जत के साथ उनके नाम लेना चाहते हैं। हारिस वाईएफसी कन्नौर, जो इस प्रतियोगिता के पीछे अपने पूरे कोशिश, पूरे प्रोत्साहन देते हुए हमारी हौसला बढ़ाए हैं। केवल 2 दिन पहले ही वो विदेश से यहां पर आए हैं सिर्फ और सिर्फ इस प्रतियोगिता के लिए। इस प्रतियोगिता के कामयाबी के लिए हारिस वाईएफसी यहां पर आए हैं और हमारे साथ जुड़ते हुए इस क्रिकेट श्रृंखला के कामयाबी के लिए हर मिनट गुजार रहे हैं हमारे साथ। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हारिस वाईएफसी। और उसी तरफ फिरोज मंजेश्वरा भी इस प्रतियोगिता के पीछे, उनके हर दिशा पर, जिन कोने पर इस प्रतियोगिता को कामयाब बनाने की योजना बना सकते हैं, उन सारी योजना पर जुड़े हैं फिरोज मंजेश्वरा। हम उन्हें भी धन्यवाद अर्पित करते हैं तमाम दर्शकों की तरफ से, क्योंकि आप 2 महारथियों की वजह से, और उसके साथों साथ अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी एडमिन हैं, जो इस प्रतियोगिता के पीछे आपने मेहनत सजा रहे हैं, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपको, क्योंकि आपने दिखाए हैं अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास पर पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता। और ये क्लीन बाउट, ताइफ, क्या जबरदस्त गेंदबाजी आपके। एचएफसी अरेकला यूसीए के अंडर आने वाले जितने भी प्रतियोगिता हैं, वहां पर एचएफसी हमेशा अपने झंडे ऊपर करते हैं क्रिकेट खेलते हुए। और आज यहां पर देखिए टीम एलिगेंट को किस तरह से फंसा रहे हैं अपने गेंदबाजी में। 6 ओवर के निर्धारित मैच, 6 ओवर्स मैच, 36 गेंदों के मुकाबला होगा, और इस 36 गेंदों पर देखना होगा कि टीम एलिगेंट कितने रन बना पाते हैं। शुरुआत के 3 विकेट गंवाए हैं यहां पर, जहां पर पावर प्ले के फायदा उठाकर बल्ले से आवाज सुनने की जरूरत है यहां पर, लेकिन गेंदों की आवाज सुन रहे हैं विकेट से टकराने की। विकेट की गिरावट यहां पर नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम तारीफ करेंगे गेंदबाज के, क्योंकि ऐसे छोटे मैदानों पर जहां पर बल्लेबाजों के ऊपर ज्यादा निरीक्षण किए जाते हैं, उन मैदानों पर अगर गेंदबाज
बल्लेबाजों को विफल करते हुए अपनी गेंदबाजी बेहतरीन दिखाते हैं तो निश्चित रूप से तारीफ करेंगे उन गेंदबाजों की। ट्वाइफ ये अगली गेंद, और इस बार भी लेग बिफोर के अपील, लेग बिफोर के अपील, लेकिन अंपायर ने मना किए और उन्होंने कहा कि गेंदबाज सामने खड़े रुके थे अंपायर के। आप गेंदबाजी करने के बाद अगर अंपायर के सामने खड़े रुकेंगे तो किस तरह से देख पाएंगे वो स्ट्राइक पर क्या हो रहा है। इसलिए अंपायर आपको बार बार चेतावनी देते हैं कि गेंदबाजी के बाद आप क्रॉस लाइन पर गुजर जाइए, हमारे सामने मत रुकिए। ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभी आपके गेंद सही भी हो तो भी वाइड देने पर मजबूर होते हैं अंपायर। तौईफ तैयार, अपने ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, और इस बार गेंद को सीधे फाइन लेग की दिशा पर खेले, गेंद रफ्तार के साथ सीमा रेखा की तरफ, ये मिलेंगे शानदार चौका। इस इनिंग्स के पहला चौका निकल आ रहे हैं रियाज की बल्ले से। अब तो नवाजना होगा रियाज को टीम एलिगन के लिए। शुरुआत के 3 विकेट अशरफ, रशीद बाबा और नौशीर के रूप पर गिरने के बाद अब बचे हुए बल्लेबाजी की जिम्मेदारी इस तरह से निभाना होगा टीम एलिगन को। अब तो कप्तान की इस जिम्मेदारी की आवश्यकता है, यहां पर एक साझेदारी की जरूरत है, एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने की आवश्यकता है। टीम एलिगन को देखना होगा कि किस तरह से इस पार्टनरशिप को बिल्डअप कर पाएंगे ये दो खिलाड़ियां। इम्तियाज नंदावरा और रियाज की जोड़ी क्रीज पर, और इस बार भी गेंद को मोड़े स्क्वायर लेग की दिशा में, एक सिंगल रन प्राप्त होंगे और इस सिंगल रन के साथ रन संख्या बने हैं 12 रन, 12 ऑन द स्कोरबोर्ड। दूसरी ओवर के 2 गेंद अभी भी बाकी, 2 गेंद अभी भी बाकी। शुरुआत की ओवर शाहनवाज के हाथ पर देखने को मिले हैं। दूसरी ओवर त्वाइफ, अंडरम क्रिकेट पर दक्षिण कन्नड़ जिला के महारथियों में माने जाते हैं त्वाइफ को। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग की प्रदर्शन हो, सौहार्द ट्रॉफी पर भी और एलआर पदों पर चले आमलो मोगरू ट्रॉफी पर भी त्वाइफ अपनी कदर बहुत ही बेहतरीन दिखाए थे। और यहां पर देखिए ये ओवर थ्रो के नजारा, और यहां पर मिले एक बोनस वाले चौका। तो अंपायर से हम ये पूछना चाहते हैं कि पिछली गेंद पर कुल मिलाकर 5 मिले हैं, दूसरी रन संपूर्ण हो चुके थे जब गेंद सीमा रेखा पार कर रहे थे। तो इस बात की जानकारी हम लेना चाहते हैं अंपायर से। स्कोरर इंतजार कर रहे हैं आपकी इशारा। 5 रन, 5 रन के इशारा अंपायर से। एचएफसी अरेकड़ा, शुरुआत की ओवर पर जिस तरह से आप अपनी बल्लेबाजी गेंदबाजी दिखाए थे तो देखने वाले दर्शक कहीं ना कहीं आपके ऊपर आकर्षित हुए थे। टीम एलिगन को जिस तरह से आप अपनी गेंदबाजी पर दबाव में डाल रहे थे तो देखने वाले दर्शक तो आपकी तरफ उत्सुक हो रहे थे कि किस तरह से होंगे आने वाले गेंदबाजी आपके। लेकिन आपके फील्डिंग की ये जो कमजोरीपन, ये ओवर थ्रो आपको महंगी पड़ेंगे एचएफसी अरेकला। ऐसे रन इस मैदान में ही नहीं बल्कि किसी भी मैदान में बेजिम्मेदारी से निकलने वाले इस तरह के रन जो है ये हार की वजह बनते हैं, याद रखिएगा। रन संख्या कुल मिलाकर बने हैं 17 रन। शुरुआत की ओवर पर केवल 6 रन बने थे, 17 रन। आखिरी गेंद बाकी, लास्ट बॉल टू गो। दाहिने हाथ ओवर द विकेट से त्वाइफ तैयार, गेंद पर कोई कमजोरी नहीं थे और इस पे उल्टे हाथ खेलने की कोशिश, स्लिप की जगह पर गेंद बल्ले के नीचे वाले सिरा लगे। इम्तियाज नंदावरा के ओवर की समाप्ति। दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 18 रन, 18। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 18 रन, 18। शुरुआत की ओवर पर 6 रन निकल आए थे तो दूसरी ओवर पर मिले यहां पर 12 रन और एक चौका भी मिले थे ओवर थ्रो के जरिए। तो अब देखना है कि बचे हुए 4 ओवर पर आप कितने रन बना पाएंगे, किस तरह से बना पाएंगे, क्या बल्ले से होगा।
तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन बने हैं। ये 6 ओवर के मैच हैं। आज तो एक से बढ़कर एक धमाकेदार मैच आपको देखने को मिलेंगे। पहली मैच तो आप अब देख रहे हैं HFC अरेकला के खिलाफ टीम एलिगन। दूसरी मैच होगा गोरी यंग बॉयज के खिलाफ NM मैंगलोर। तीसरी मैच होगा यंग फ्रेंड्स गांधीनगर के खिलाफ ब्रदर्स मक्यार। और आज के चौथे मैच होगा यंग फ्रेंड्स उर्वा के खिलाफ KFC कोडिकल। तो एक से बढ़कर एक कर्नाटक के अंडरआर्म दिग्गजों के बीच यहां पर आपको मुकाबला देखने को मिलेंगे। बेद्रा मीडिया इस मैच के सीधा प्रसारण पर पिछले दिन मंगलवार होते हुए भी 1200 से भी ऊपर ऑनलाइन पर कल के मैच देख रहे थे दर्शक। सुंदर सजावट के साथ यह मैदान मंजेश्वर परिसर के पंचायत के ये मिनी स्टेडियम पर चल रहा है। यह मैच ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021। कई सारे महारथियां इस प्रतियोगिता के पीछे। हारिस YFC कन्नूर, फिरोज, हर्षद, हमजा, इम्तियाज जैसे महारथियां इस प्रतियोगिता के पीछे अपने दिन रात की मेहनत सजाए हैं। और वाकई हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि जितने मेहनत आप इस प्रतियोगिता के पीछे किए हैं बिल्कुल व्यर्थ नहीं होंगे दोस्त। याद रखेंगे लोग इस प्रतियोगिता को, याद जरूर रखेंगे, क्योंकि आपने बनाए हैं 2 राज्यों के बीच अंडरआर्म के सम्मेलन। 2 राज्यों के बीच अंडरआर्म क्रिकेट के दिग्गजों के बीच एक सम्मेलन किए हैं आपने। आपस पर दोनों मिट्टी के खुशबू को मिलाए हैं आपने। तो निश्चित रूप से हम सैल्यूट करते हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप के सभी एडमिन को, सभी सदस्यों को, ताकि आपने जिस तरह से योजना बनाकर ऐसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्रिकेट श्रृंखला यहां पर आप बनाए हैं, वाकई काबिले तारीफ। ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 पिछले दिन 8 टीम केरला परिसर के 8 टीम यहां पर मुकाबला लिए थे और उन 8 टीमों पर NE पोसोट फाइनल पर विराजमान हो चुके हैं। देखना है कि आज उनके सामने करने वाले कर्नाटक के दिग्गज कौन होंगे, फाइनलिस्ट कौन होंगे। यहां पर शाहनवाज शुरुआत की ओवर पर केवल 6 रन खर्च किए थे, 2 वाइड और 1 नो बॉल के साथ। 1 विकेट की सफलता भी मिले हैं पिछली ओवर पर शाहनवाज को। तो यहां पर देखना है कि इस ओवर पर, पिछले ओवर त्वाइफ की ओवर पर आखिरी 3 गेंदों पर थोड़ी से खर्चीले साबित होने के बाद अब किस तरह से संभाल पाएंगे इस ओवर को। 6 ओवर के ये मैच लगभग 45 से 50 रन की तरफ अपनी आंख लड़ाना होगा यहां पर टीम एलिगन को, क्योंकि इस मैदान की धनात्मक अंशों को मद्देनजर रखते हुए रनों की संख्या जितने आप ज्यादा दिखाएंगे उतने ही बेहतर होगा। शाहनवाज अपनी स्पेल के अगली ओवर को लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट से गेंद को घुमा दिए। यहां पर इम्तियाज, एक सिंगल रन मिलेंगे इम्तियाज को और इस सिंगल रन के साथ रन संख्या बने हैं 19 रन 19। रियाज अब स्ट्राइक पर, एक चौका लग चुके हैं रियाज के बल्ले से। टीम के कप्तान भी हैं, टीम के एक एडवाइजर भी हैं। टीम एलिगन को अपने विश्वास पर लेकर आगे लेके चलते हैं और इस बार उल्टे हाथ खेलने की कोशिश। यहां पर एक सिंगल रन प्राप्त हुए रियाज को और इस सिंगल रन के साथ रन संख्या बने 20 रन 20। 6 ओवर के निर्धारित मैच, प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, अनुभवी रेफरियों को शामिल किए हैं इस प्रतियोगिता में। हरीश पटेल, अजित पटेल, मोहन ययाडी जैसे महारथियों को रेफरी के रूप पर आप देख सकते हैं। पिछले दिन रोलन पिंटू जी अपने अंपायर की जिम्मेदारी निभाए थे। वीक्षक विवरण पर मैं स्टार नवाज आपके साथ, और हमारे साथ जुड़े हैं सतीश हनुमान मैंगलोर जो आंग्ल भाषा के वीक्षक विवरणकार हैं। तो सभी दिशा पर एक से बढ़कर एक बेहतरीन व्यवस्था के साथ संगठक इस प्रतियोगिता को बनाए हैं। और इस बार भी उल्टे हाथ के साथ गेंद को खेले, गेंद रफ्तार के साथ सीमा रेखा की तरफ, और यह रहा निश्चित रूप से गूगली चौका, अनिरीक्षित चौका। यहां पर फील्डर के सामने गेंद खड़े थे, लेकिन सीमा रेखा और बल्लेबाजी की जो जगह है स्ट्राइक, इनके बीच रहने वाली ये अंतरा जो है, ये निश्चित रूप से प्रामुख्यता लेते हैं इस मैदान में। जितने तेजी के साथ आप स्ट्रोक खेलते हैं उतने तेजी के साथ रन मिल जाएंगे आपको। पिछली चौका भी
रियाज की बल्ले से इसी तरह मिले थे शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, और इस बार भी मिले सीधे स्लिप की जगह में, थर्ड स्लिप की जगह में इम्तियाज के लिए मिले ये रिवर्स स्वीप के चौका। दो गेंद बाकी। शाहनवाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट से इम्तियाज को, और गेंद को सीधे स्क्वायर लेग की दिशा पर मोड़ते हुए एक सिंगल रन आसानी से प्राप्त होंगे, और धीरे धीरे से रन संख्या आप जुड़ते हुए 25 पर पहुंचे हैं। 25, तीसरी ओवर के आखिरी गेंद बाकी, लास्ट बॉल ऑफ थर्ड ओवर, और रियाज स्ट्राइक पर। और इस बार गेंद को मोड़े स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर सुरक्षित तैनात है, तो यहां पर केवल एक सिंगल रन मिलेंगे, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने 26 रन, 26 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। टीम एलिगेंट और एचएफसी अरेकला के बीच पहली मैच आप देख रहे हैं, और आज सुबह की ये पहली मैच है। बुधवार के दिन है आज, लेकिन इस बुधवार के दिन होने के बावजूद भी बेद्रा मीडिया के जरिए 1000 दर्शक अब शामिल है ऑनलाइन पर। आज सुबह की ये पहली मैच पर ही अगर 1000 दर्शक ऑनलाइन के साथ बेद्रा मीडिया के साथ जुड़े हैं, तो आप उम्मीद लगाइए आने वाले मैचों पर कितने लोग होंगे इस मैच के साथ जुड़ते हुए। हम दोबारा धन्यवाद अर्पित करते हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप को। पहली बार अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास पर पहली बार 2 राज्यों के बीच जो अंडरआर्म क्रिकेट की पहचान जिस तरह से आप दिलाए हैं, इस परिसर के केरला परिसर के लोगों को केरला के दिग्गजों के अनुभव दिखाने के साथों साथ कर्नाटक के अंडरआर्म दिग्गजों के भी यहां पर क्रिकेट दिखाए हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप ने। ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 के नाम पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद हम वीक्षक विवरण पर भी छोटे से बदलावन करते हैं। सतीश हनुमान जो आंग्ल भाषा के वीक्षक विवरणकार हैं, पिछले दिन भी उनकी आवाज आपने सुने, ग्लोरियस आवाज के साथ अंतरराष्ट्रीय शैली पर अपने उस सुमधुर ट्यून के साथ आपको मनोरंजन करने के लिए तैयार खड़े हैं सतीश हनुमान। आइए सतीश जी, आज के ये पहली मैच है, 3 ओवर के बाद अब तक तो रन संख्या 26 बने हैं टीम एलिगेंट और एचएफसी अरेकला। यहां पर दोनों टीम बराबर की टक्कर लेते हैं। अगर टीम एलिगेंट मैंगलोर के दिग्गजों में माने जाते हैं, तो दूसरी तरफ एचएफसी अरेकला उस उल्लाल परिसर पर जितने भी मैच, जितने भी क्रिकेट हमने देखे हैं, बेहतरीन प्रदर्शन दिखाए हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? यहां पर तीसरी अंपायर की मदद लिए हैं अंपायर हरीश पटेल, हालांकि स्टंप आउट की अपील कर रहे थे अंपायर से, तो ऐसे में वहां पर जो छोटी सी मौका पर हुई घटना को सीधे तीसरी अंपायर की जिम्मेदारी के लिए सौंपे हैं हरीश पटेल जी। तो इससे पहले हम माइक्रोफोन ओवर करते हैं सतीश हनुमान को। So no doubt it's a signal for the previous decision. So batsman safe here, and thank you very much, Janab Star Nawaz, and good morning to all cricket lovers. And once again, Satish Salyan, Hanuman cricketers, giving the all best wishes for the success of this cricket tournament. Underarm World WhatsApp group presenting this most prestigious Gladiator Trophy 2021. And coming to this first match of day number final, is going to be a very interesting match is going on. HFC Arekala takes on Team Elegant. After winning the toss, HFC Arekala elected to field first, and Team Elegant managed to score 26 at the rate of 8.66 runs per over. And Nizam from the aircraft on. Lovely shot! That was sailing over just over right of that deep backward square leg boundary for a maximum. Riaz is a kind of batsman who loves to play such kind of slog sweep shot. He is a master of playing that slog sweep shot. When he was in an immense form, he got a lot of runs in the particular cricketing strokes. Once he gets his rhythm, he is such a dangerous batsman. Look at the stroke. If you wanted to see it in the replay through Bedra Media, look at that. Nothing wrong with the line of the delivery. Almost ball is targeting in the middle and off stamp, and batsman stretching his front foot. So important whenever they're playing such kind of slog sweep shot, the footwork is need to be very exquisite, and just stretching his front foot towards the line of the delivery. And look at the swing of the bat. This is all about the swing of the bat, and he's got a contact with the middle of the bat and got a maximum because of that 6. I think this is the first sixer of the final day.
First sixer of the final day, and that was a sixer came from the bat of Riaz. 32 on the board. Riaz has spent a little time in the middle now. Looks to be he is one who taking a full responsibility to take his team totally into respective one again down the leg stem, but well within the reach of the batsman. Batsman might be little bit shuffled across the line of the delivery too much, and at the same time the line of the delivery and even that was ball coming all along the carpet, so that Riaz couldn't manage to play the ball. He missed it completely. Nizam. Right above the wicket bounce. This time again looks to be good comeback. Absolutely good comeback there from Nizam. And might be Riaz after getting that six. He is a little bit in aggressive frame of mind. That's why he is just looking for some big shot. But cricket is all about the sensible, the mind game. After getting the six, of course, he cannot hit each and every ball for the big one. And might be the bowler is a little bit intelligent in the occasion. Nizam not really settled the batsman for the big shot again. This time down the leg stump too much, so that batsman going for the extra run as well. Overthrow comes up, but Imtiaz is not ready to take that one. And wide call by umpire. 2 gifted runs here. With the help of that 2 extra runs, the scoreboard now moving 34 on the board. Once it was a very shackling start, I will tell you. They got a very bad start. They lost 2 wickets for 6 runs after completion of first over. Little correction, yes it is. For 2 runs they lost 2 wickets. Then they lost the 3rd wicket for 2 runs. 6 runs in fact. This time improvising. Imtiaz so good in it. Second time he got that reverse sweep and got a boundary here. Lovely improvisation there from Imtiaz, one of the senior most player for the side of Team Elegant. Just doing the trick here in this over. Runs are really coming very fast in this over. Unstoppable. Still one more deliveries left in this over, but look at the runs which is conceded there by Nizam. 1-6 and boundary already, and this definitely going to be, it was a 12 runs already came from that over. The big difference between the teams of South Kenda district and the teams of Kasaragod district is that the Kerala batsmen really playing in front of the wicket. They're very strong in front of wicket. Is again looking for a run out there. Overthrow comes up, but Riaz too much across towards the non-side Tigers, and but they're again running hard. All in sudden, HFC Arakala started to feel the pressure when they are watching the runs are coming very freely. The fielding is not up to the mark. Just lost the momentum. Wide call by umpire. That means 1 + 2, that 3 wides conceded here is a 41 valuable runs on the board here for Team Elegant. They are rightly back into this game. Again reverse sweep comes into play, but this time they got a protection in the deep third man region, so that batsmen have to settle for the single. The Imtiaz are so confident while playing that reverse sweep. A productive over, very expensive over ball there by Nizam. 16 runs coming from that over. It's a huge over. This is a big over. Ball there by Nizam. That's only because of the 6-1 which came from the bat of Riaz. Slog sweep shot comes into play. After that, Imtiaz played one reverse, brilliant reverse sweep to get the boundary. Altogether, the Team Elegant, what they wanted to get in this over, they already got 16 runs in that over. Big over. Just I am coming to that, the matter, the difference between the batsmen of South Kenda district and batsmen of Kasaragod district is that yesterday you were watching all that, we can see that, watch that a lot of runs is coming in front of the wicket, and but whenever the batsmen from South Kenda district, they're so good in the behind the wicket, square of the wicket. There were not that much of boundaries coming behind the wicket yesterday, but all in sudden we can see that sweep shot comes into play, reverse sweep comes into play, and a delicate touch and getting the boundary towards the third man. All we can see that the cricket, every angle, the ranges of strokes is much than yesterday's match. So Nizam, after bowled expensive over, Yusuf is the bowler being introduced by the captain of HFC Arakala. This time ball is in the chance here for the final. Go, dropped it. Straight forward catch. Can you believe this? No excuse at all for that kind of sloppy fielding there by the fielder. Might be he was just complaining about the rays of sun.
but it is a part of cricket. You need to deal with all these hurdles in the cricket field. There is no excuse at all. That's why you are choosing as in the playing 11. Here is the next one. Balls. Wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball after fingertips. By call by umpire. Ball went towards the short third man region. Diaz. That was not a good cricket here from Arekala. What we can see that sloppy fielding out there. That's all happening when it was the runs are coming very freely. When batsmen started to talk with the bats. All in sudden we can see the body language of HFC Arekala that everything is going wrong. But everything is going in favor of Team Elegant, and score jumped into 45 on the board for the loss of 3 wickets. What outstanding partnership is going on here between Imtiaz and Riaz. This is what is required. Need to handle the pressure, need to play as for the condition required, and these two experienced campaigner really handling the pressure and playing a responsible innings. Again across the line of the delivery, Riaz didn't got that much of connection what he wanted in that slog sweep shot, but still he managed to deliver that one down to deep backward square leg region for a easy single. With that single, scoreboard moves on to 46 on the board for the loss of 3 wicket here in over number 5 in progress. Yusuf for time in this over. Balls to Imtiaz. Sensible batting there from Imtiaz. What innings is playing here. Looks like Imtiaz, one of the very cool and calm customer for the side of Team Elegant. And know exactly the appearance of him till the last delivery of their innings is so important. So he's just giving a stand to his senior partner Riaz as well. And both are playing very well cricket, good cricket. Appeal for leg before wicket, but that's definitely that ball pitched outside the line of leg stump. Then ball is deviating, so that umpire Arish Padil know exactly what could be that the line of the delivery, and he says it's a leg by, not a leg before wicket. One more addition, and with the addition of that single, scoreboard moves on to 48 on the board, just 2 short of 50. No one can thought that Team Elegant can bounce back in that manner, but it's all about the cricket, the beauty of cricket. You can't say anything in cricket. Oh, how marginally that ball just missed the stumps, I will tell you. Just 10 inches that ball missed the leg stump, otherwise the danger here for Imtiaz. So good over, I will tell you, compared to the previous 2 overs. Yusuf bowled a very tidy line and length. So completion of over number 5. Team Elegant searching for the right track. Of course they back into that track of getting a good score on the board. They are 48 on the board for the loss of 3 wicket. What a fantastic cricket tournament. Underarm World WhatsApp group organizing this Gladiator Trophy 2021 in this most beautiful Panchayat mini stadium Manjeshwar, and you're watching the match number 1 of the day number final between HFC Arekala versus Team Elegant. Next match, Gori Young Boys takes on NM Mangalore. One more excitement match, one more high voltage match. We're going to start soon after this match, so that I would like to call upon 2 tips captain, the captain of Gori Young Boys as well as NM Mangalore. Kindly request you to report here immediately to sign the official chart as soon as possible. ದಯವಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್, ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ as well as NM Mangalore. Meanwhile, they are dealing with the last final over. Riaz is on strike. So far he is so good in his batting. He's batting on 14 with the help of 1 6 and 1 boundary. Wait and see what will go and contribute for the last over. This time down the leg stump, single-handed stroke there from Riaz. Might be the ball is a little bit down the leg stump. Try to hit that one down to fine leg division, missed it completely, so that the ball is just having a contact with the leg of Riaz. So that leg by call by umpire Ajit Padil and Harish Padil, the two master class umpires for this tournament, along with Mohan Ayadi today. Again looking for the same shot, chance of run out there. Riaz, I think so, will going to be a chance here, but umpire Harish Padil just wanted to take the help from third umpire here, and wait and see what could be the decision here. Will it Riaz be safe or not? Well, is it going to be a chance of run out? Wait and see, have to wait for the third umpire decision. Mohan Ayadi, of course, today is joining the umpiring panel in the absence of Roland Pinto. Of course, Roland Pinto yesterday did a good job here in this particular cricket ground. First time in his umpiring career is coming into this Kerala state.
and on the heart of cricket lovers with this umpiring job. Now here is Mohan Hiyade examining very closely that what could be the decision. Is it going to be out or not out? But before that, the decision will going to come. Once again, I would like to announce for the latecomers and those who are late tuned to mobile. This is one of the best cricket tournament, I will tell you, organized by Underarm World WhatsApp group in the name of a Gladiator's trophy. And I would like to once again welcome our senior commentator of Kasaragod and Manjeshwar, Mr. Abdul Rahman BSc Bekur. So it was really the great honor for us having Abdul Rahman BSc Bekur, one of the wonderful Hindi commentator, one of the senior most commentator in this South Kendra district. Of course, I got a lot of experience sharing mic with Abdul Rahman Bekur. Out is the call, so that means Riaz need to come back to the pavilion, and but before he's come back to the pavilion, I think he's did his job. After many times I really not watched Riaz in just that kind of form, and certainly he will going to take this positive frame of mind in coming matches as well. Lovely innings under pressure, not an easy job when he lost 2 wickets in 2 runs. He just walked towards the middle and just handled the pressure, being the senior most player of his team, and he's just played as per the condition required and takes his team totally into respective position. We are talking about Mr. Abdul Rahman BSc Bekur, senior most Hindi commentator of Kasaragod and Manjeshwar, and he is one of the member of Underarm World WhatsApp group as well, so that it was a great privilege for us having him in the commentary box, and surely he will going to entertain you in incoming matches. He will going to share the mic with us. First time I met him in Pachilampara Premier League in last 2 years back in Manamguji cricket ground, Uppala, and that's what afterwards our combination is continues with BPL as well, and of course in a Beach Boys Premier League. So now it was a third or fourth time we are sharing mic with our senior most respected Abdul Rahman BSc Bekur. Meanwhile, third delivery of the final over, right arm round the wicket. Abhilash is the master class batsman, left-hand batsman, straight away he's off the mark with a single. Not too many deliveries left here for Abhilash, and then Imtiaz, and 50 comes off here for Team Elegant. They caught a 50, the hard fought 50, I will tell you, not an easy 50, because they started very dangerously after they lost 2 wickets in a quick times. Then they bounced back very well, recovered very well, and they got now 50 runs, the good score on the board. Imtiaz, what a shot! I think just a stand and delivered by playing the reverse stroke out of the park for the maximum. This is what we are talking about, experience. Being the experience is not important, but converting that experience into performance is so important. Here is Imtiaz. When he came into middle, they lost 3 wickets for cheaply, and then Riaz and Imtiaz consolidated and built the innings. And look at that, after losing his partner Riaz, Imtiaz thought it is my job to play a role here, and what a great reverse strokes is comes into play here to get a 56 here. Again, single-handed stroke straight to the hands of fielder. Charles ball out in the no cycles, and I think batsman is safe. Ajit Kapikad now saying, I want to take again help from third umpire. Here again the work here for Mohan Hiyade. Will it going to be out or not out? Very interesting here. The next match I already called one. First call already given to 2 teams, Gori Young Boys as well as NM Mangalore. Not out is the call immediately coming from the umpire Mohan Hiyade. I think Ajit Kapikad does really, I think it's a good decision, because he doesn't want to take any kind of risk here, because wicket of Imtiaz might be the little bit, even the single run is going to be so important in this 6 hours of format of the game. I think the umpires did a good job here not to take any risk here. The last delivery remaining in the innings of Team Elegant.
Abhilash is on strike. Left-hand batsman always going to be very useful in the particular in this cricket ground. This time across the line, swinging his bat, didn't got that much of enough timing in the shot, so that batsman had to settle for the single. That's it. Team Elegant at last, they managed to score what they really wanted. 58 is the total score. 59 is the target here for HFC Arekala after getting such a good start from the bowling. HFC Arekala, they just lost the momentum, and that's only because of the partnership between Riaz and Imtiaz. But even it's a little bit sloppy fielding out there by HFC, and because of that, Team Elegant, they got the good runs on the board, 58. But I will tell you one thing here for Team Elegant. This is particular cricket ground where it was a 70 is chased yesterday, even 75 is chased, so that it's not to be enough runs, especially seeing the dimension of this cricket ground. If any batsman will go into talk with the bat, even HFC Arekala, they got some good batsmen in the side. They got a potential of hitting some big shots as well, and that's why it's so important for Team Elegant. That if you thought that it might be enough runs on the board, I don't think so, by seeing that the condition of this cricket ground. Meanwhile, great innings coming from Imtiaz. Just I want to take the scorecard of Team Elegant. Ashraf is got out for just 2 runs by playing 4 deliveries. Rashid Baba is out for Golden Duck. Nausir is run out for 0 as well. But afterwards, that partnership which changed the complexion of the match. Riaz, who scored a 15 runs out of 14 balls. Then Imtiaz, who scored a magnificent innings of 22 runs in just 14 deliveries. After a long time, I'm watching these two batsmen, the senior most batsmen of Team Elegant. They contributed from the bat, and because of that partnership, this kind of total they got. Now, 59 is a target for HFC Arekala, and wait and see the kind of reply from the batsmen of HF Arekala. I think before I hand over microphone to Star Nawaz, Nawaz 59 and 58 and 59. But I already once again mentioned about the difference between the teams of South Kendra district and teams of Kasaragod district is that yesterday you watched all that we can watch that the big innings in front of the wicket, but there is no much runs in behind the wicket. But in South Kendra district is a different game technique they are implementing. Lot of runs coming behind the wicket because they are implementing sweeping the ball, reverse sweeping the ball, and a delicate touch on the offside region to get the boundaries there, passing the third man. All that we can see that the big difference, isn't it, between these two. And that's why it's so important here for HFC Arekala that if they implement this same strategy here, they can win the match, because 59 I don't think that much of big total if they bat well. जी बिल्कुल सही कहा सतीश जी आपने कि इस मैदान में तो नजरअंदाज के साथ बड़ी लक्ष्य को देखना भी गलत होगा, क्योंकि ये छोटी मैदान है मंजेश्वर परिसर के मिनी स्टेडियम, पंचायत के ये मिनी स्टेडियम पर आप मैच देख रहे हैं। तो 6 ओवर की बल्लेबाजी के बाद 58 रन बनाकर 59 रन के लक्ष्य यहां पर दिए हैं। 59 इज द टारगेट फ्रॉम 36 बॉल्स। तो यहां पर जिस तरह से रियाज और इम्तियाज के बल्ले से वाकई क्या जबरदस्त साझेदारी दिखाए थे दोनों खिलाड़ियों ने। इम्तियाज और रियाज शुरुआत के 4 विकेट गिरने के बाद जिस तरह के दबाव थे एलिगेंट पर, उस दबाव को हटाने पर सफल बने हैं टीम के कप्तान रियाज और उनके साथ मिलते हुए इम्तियाज नंदावरा। तो देखना है कि HFC अरेकला गेंदबाजी पर थोड़ी सी कमजोरीपन दिखाने के बाद अब बल्लेबाजी पर क्या कर पाते हैं। यहां पर गेंदबाजी पर खड़े हैं शुरुआत की ओवर, पहली गेंद और सीधे हाथ पर खड़े थे, लेकिन इम्तियाज नंदावरा आरंभिक गेंद पर ही जीवदान दिए हैं। यहां पर बदरुद्दीन और जवाद की जोड़ी आरंभिक खिलाड़ियों के रूप पर स्ट्राइक पर खड़े हैं बदरुद्दीन, और इस बार भी गेंद को खेले सीधे कवर्स की दिशा में। 1 रन तो अवश्य मिलेंगे जब तक कि अभिलाष उस गेंद को उठाकर वापस करे। गुंडू नाम से मशहूर है, प्यार से गुंडू बुलाते हैं अभिलाष को। कई सालों से क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं
और अपने छोटी उम्र में ही बड़ी से प्रतिभा दिखाकर अंडरआर्म क्रिकेट के चाहने वालों के दिल पर जगह बनाए हैं अभिलाष ने। तो 1 रन बने 2 गेंदों पर। जवाद अब स्ट्राइक लेंगे। सलमान और इस बार गेंद को ऊंचे खेले हवा में, पावर प्ले के फायदा उठाने के प्रयास यहां पर, लेकिन दौड़ते हुए रियाज गेंद के पास आए, केवल मात्र 1 रन। रियाज बल्लेबाजी पर नवाजने के बाद अब तो टीम एलिगेंट को किसी भी हालत पर जीत दिलाने के प्रयास कर रहे हैं। आज तो टीम एलिगेंट एक नए उत्साह के साथ मैदान पर उतर आए हैं और दूसरी तरफ एचएफसी अरेकला बिल्कुल कमजोरीपन नहीं दिखाने की कोशिश यहां पर। एक से बढ़कर एक बेहतरीन खिलाड़ियां सादिक और जवाद, आरंभिक खिलाड़ी के रूप पर सादिक और जवाद क्रीज पर खड़े हैं और उसी तरह तौईफ, निजाम जैसे खिलाड़ियों के योगदान आप देख सकते हैं। निजाम, यंग फ्रेंड्स उर्वा, गोरी यंग बॉयज, एसडीसी जप्पू जैसे टीमों पर अपने योगदान निभाए हैं निजाम ने, और उसी तरह तौईफ जिन टीमों पर भी अपनी भूमिका निभाए हैं उस टीम के लिए जीत के खिलाड़ी बने हैं तौईफ। तो यहां पर देखना है कि 6 ओवर पर इस 59 रन के लक्ष्य को किस तरह से स्वीकार कर पाएंगे एचएससी अरेकला। गेंदबाज तैयार सलमान, और बार भी बाहर किनारे दिए गेंद को और यहां पर मिसफील्ड, गेंद दौड़ते हुए सीमा रेखे के करीबो करीब, जब तक के फील्डर तुरंत दौड़ते हुए उस गेंद के पास आकर एक सिंगल रन चुराए। 2 रन के मौका मिले। टीम एलिगेंट इनिंग्स के शुरुआत की गेंद पर ही अपनी फील्डिंग की कमजोरीपन दिखाने लगे हैं। यहां पर पहली गेंद पर इम्तियाज नंदावरा के हाथ से जीवदान मिले, अब राशिद बाबा के हाथ से मिस फील्डिंग। सलमान फिर तैयार और इस बार भी गेंद को खेले काफी विश्वास के साथ। ऐसे लग रहा है कि उनकी शारीरिक भाषा देखते हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हुए ऐसे लग रहा है कि ये 59 रन बिल्कुल कोई परेशान नहीं होंगे एचएफसी अरेकला को, क्योंकि वो केरला के मैदान के बारे में जानते हैं। पड़ोसन राज्य इस केरला पर आकर कर्नाटक के क्रिकेट के स्वाद को जिस तरह से एचएफसी अरेकला दिखाने के प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 5 रन। 5 रन बने हैं शुरुआत की ओवर पर, 59 रन के लक्ष्य। तो अभी भी यहां पर पीछे खड़े हैं 54 रन, 54 रन टू विन दिस मैच फ्रॉम 5 ओवर्स। 30 गेंदों पर 54 रन चुराना होगा। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से अब टीम एलिगेंट अपनी गेंदबाजी पर केवल 5 रन खर्च किए थे, उसी तरह पिछले इनिंग्स पर भी शुरुआत की ओवर शाहनवाज के हाथ पर देखे थे हमने, केवल 6 रन खर्च किए थे शाहनवाज ने। दूसरी ओवर पर कुछ कमजोरीपन जो एचएफसी अरेकला अपनी फील्डिंग पर दिखाए थे, जो ओवर थ्रो के जरिए 5 रन दिए थे, बाउंड्री दिए थे ओवर थ्रो के जरिए, वही महंगे पड़े दूसरी ओवर पर एचएफसी अरेकला के लिए। तो यहां पर क्या अपने कमजोरीपन से निकली हुई रन को वापस चुरा पाएंगे यहां पर एचएफसी अरेकला, या टीम एलिगेंट अपने टीम के नाम जिस तरह से मशहूर हो रहे हैं दक्षिण कन्नड़ जिला पर, क्या यहां पर केरला परिसर पर इस मिट्टी पर आकर अपने क्रिकेट की खुशबू को फैला पाएंगे। यहां पर 5 रन बने हैं, अभी भी 54 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। गेंदबाजी पर परिवर्तन, पहली गेंद और इस बार भी गेंद को खेले इम्तियाज के हाथ पर गेंद, और यहां पर देखना होगा तीसरी अंपायर के यहां पर मदद लिए है अंपायर ने। The next match played between NM Mangalore versus गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा। गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा के खिलाफ होगा NM जप्पू मैंगलोर। एक जबरदस्त मैच, नॉट आउट के करार अंपायर से। तीसरी अंपायर इस रन आउट को नॉट आउट के करार दिए हैं, तो ऐसे में सुरक्षित होंगे बल्लेबाज। रन संख्या बने केवल मात्र 6 रन। स्ट्राइक पर खड़े हैं जवाद, 9 स्ट्राइक पर खड़े हैं सादिक। सादिक तो शुरुआत से ही थोड़ी सी आक्रमण शैली से बल्लेबाजी करने की मन लगा रहे हैं, लेकिन उनकी मनोकामना के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं गेंद। जिस तरह से वो सोच रहे हैं बल्ले को लेकर, गेंद से जिस तरह से वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि पावर प्ले के शुरुआत की ओवर पर फायदा नहीं बने यहां पर एचएफसी अरेकला को। और इस बार भी उल्टे हाथ खेलने के प्रयास, एक सिंगल रन बने लेग बाई के जरिए श्रीकांत हाला की गेंदबाजी पर।
मैंगलोर परिसर के महारथियों में माने जाते हैं श्रीकांत को। छोटे उम्र में ही बड़े से दिग्गजों के साथ अपनी सेवा देने के मौका मिले हैं श्रीकांत को। और इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, वाकई जबरदस्ती गेंद। अगर इस तरह की लाइन और लेंथ आप दिखाने की प्रयास करेंगे या दिखाएंगे आप, तो निश्चित रूप से ये 59 रन आपके लिए मजबूत वाले, विश्वास वाले रन हो जाएंगे इस मैदान में। मंजेश्वर के पंचायत मिनी स्टेडियम छोटे तो लग रहे हैं मैदान, लेकिन अगर गेंदबाज यहां पर अपनी गेंदबाजी की लाइन और लेंथ अच्छे रखे तो निश्चित रूप से ये देखिए, इस बात के लिए हम कह रहे थे कि गेंदबाज अगर अपनी लाइन और लेंथ, अपनी गेंदबाजी की करारापन बेहतरीन दिखाते हैं तो कितने भी बड़े बल्लेबाज को वापस भेज सकते हैं इस मैदान में। ये पिच की क्वालिटी है, ये इतनी सुंदर पिच बनाए हैं यहां पर संगठकों ने। अंडर वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप मंजेश्वरा ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 के नाम पर हारिस वाईएफसी कन्नौर, फिरोज मंजेश्वरा जैसे महारथियों के सहयोग के साथ इस प्रतियोगिता को हम आगे लेके जा रहे हैं। इरशाद, हमजा, इम्तियाज, मुनीज, कौसर, अस्कर जैसे महारथियां इस श्रृंखला के पीछे, अमान जैसे महारथियां अपने मेहनत सजा रहे हैं इस क्रिकेट श्रृंखला को कामयाब बनाने के लिए। और वाकई क्या जबरदस्त प्रतियोगिता दिखाए हैं दर्शकों को। अंडरम वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप, बार बार हम इस ग्रुप के नाम इसलिए ले रहे हैं कि सामाजिक जालतान पर व्हाट्सएप के जरिए शुरुआत हुए ये ग्रुप, धीरे धीरे से आप इस ग्रुप की क्षमता को आप अनुमान लगाइए। अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप कर क्रिएट हुए इस सदस्यों के पास इतनी ताकत है, इतने बड़े प्रतियोगिता निभाने की अगर ताकत है, तो आने वाले दिनों पर कितने ऊंचे दर्जा के प्लानिंग हो गए इनके। तो निश्चित रूप से कल के दिन ये संदेश मिले हैं कि आज और कल के दिन आपने जो मैच यहां पर देखे, खड़ी धूप के नीचे इस गर्मी के एहसास पर क्रिकेट यहां पर खेलते हुए देख रहे हैं। लेकिन अगली बार जब यहां पर मैच होंगे ग्लैडिएटर ट्रॉफी, तो हम विश्वास से कहते हैं आपको निश्चित रूप से फ्लड लाइट के रोशनी होंगे इस मैदान में। फ्लड लाइट के प्रतियोगिता होंगे ग्लैडिएटर ट्रॉफी अगले साल। 59 रन के लक्ष्य को पीछे करते हुए एचएफसी अरेकला कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर टीम एलिगेंट के गेंदबाज शुरुआत की ओवर पर केवल 5 रन खर्च किए थे सलमान ने, और दूसरी ओवर देखिए कितने अच्छे निभा रहे हैं यहां पर श्रीकांत। और इस बार ऊंचे खेले हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, और ये रहा और एक विकेट। एचएफसी अरेकला तौइफ के विकेट गंवा रहे हैं यहां पर। यह बहुत ही मूल्य विकेट है टीम एलिगेंट के लिए। बहुत ही बड़ी मछली को अपनी चाल पर फंसाए हैं टीम एलिगेंट, क्योंकि तौइफ जैसे खिलाड़ियां अगर इस मैदान पर टिक जाते हैं तो उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। ऐसे मैदानों में तौइफ तो बहुत ही बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाते हैं, लेकिन इस बार दौर्भाग्यवशात वापस जा रहे हैं टगआउट पर। जिस तरह से राशिद बाबा इनिंग के शुरुआत की गेंद पर ही आउट होकर वापस गए थे, लेकिन टीम एलिगेंट तो राशिद बाबा के निर्गमन के बाद टीम के कप्तान रियाज और इम्तियाज नंदावरा के पराक्रम के साथ 58 रन बनाकर 59 रन के लक्ष्य दिए थे 6 ओवर में। अगला मैच होगा इस मैदान में, इस प्रतियोगिता के एक हाई वोल्टेज वाले मैच, एनएम जप्पू मैंगलोर के खिलाफ गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा। दोनों टीम अपने हस्ताक्षर के लिए स्टेज पर आ जाए। नौशद नए खिलाड़ी, स्ट्राइक पर खड़े हैं सादिक। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद श्रीकांत, और इस बार भी अच्छी गेंद लॉक करने के प्रयास बनाए रियाज के हाथ पर गेंद, लेकिन जब तक कि तेजी के साथ रियाज उस गेंद को उठाकर गेंदबाज के हाथ पर सौंप दे, 1 रन तो दौड़कर पूरा किए हैं सादिक और नौशद ने। ओवर की समाप्ति, दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने 9 रन। 9 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर, 59 इज द टारगेट। तो ऐसे में 4 ओवर पर 50 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 4 ओवर पर 50 रन, हर ओवर पर 12.50 के रन धारण यहां पर प्राप्त करना होगा जीतने के लिए टीम एलिगेंट के खिलाफ एचएफसी अरेकला को। नामुमकिन नजर से आप मत देखिएगा, क्योंकि पिछले दिन जिस तरह से यहां पर रनों की बरसात बने थे, एन पोसोट फाइनल पर विराजमान हुए हैं। हर मैच पर रनों की रफ्तार बढ़ाकर, छक्के चौके चुराकर
चम्मी और चम्मू के पराक्रम के साथ चुम्मेश्वरी प्रदर्शन दिखाकर फाइनल पर विराजमान हो चुके हैं एनई पोसोड। तो आज देखना होगा कि कर्नाटक के अंडरम दिग्गजों को यहां पर मुकाबला करते हुए मंजेश्वर परिसर के ये जो दर्शक देख रहे हैं और बेद्रा मीडिया के जरिए जो देश विदेशों के कर्नाटक और केरला के जितने भी क्रिकेट के प्रेमियां आज इस मैच को देख रहे हैं बेद्रा मीडिया के जरिए काफी खुश होंगे, क्योंकि आज बुधवार होने के बावजूद भी सुबह सुबह के पहली मैच पर भी 1000 से बढ़कर दर्शक ऑनलाइन पर देख रहे थे इस मैच को। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 9 रन। तीसरी ओवर की शुरुआत निसार के हाथ से। मल्लूर एक्सप्रेस खड़े रुके गेंदबाजी करते हैं। किरण पोलार कहलाते हैं टीम एलिगेंट के। निसार, याद होगा सौहार्दा ट्रॉफी 2021 जो अंडरआर्म क्रिकेट पर इतिहास बनाए थे देरलकट्टे पर। तो उस प्रतियोगिता में टीम एलिगेंट के किरदार निभाते हुए निसार जिस तरह से गेंदबाजी दिखाए थे, सभी की नजर निसार के ऊपर केंद्रीकृत बने थे। और इस बार पहली गेंद गुड लेंथ वाली गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ पर, कोई रन नहीं। सादिक स्ट्राइक पर ऊंचे ऊंचे शॉट दिखाने होंगे यहां पर। जिस तरह से आपकी गेंदबाजी पर रियाज और इम्तियाज नंदावरा छुड़ाए थे बड़े बड़े रन, उसी तरह के रन को आपको वापस खींचने होंगे उनकी गेंदबाजी में। और इस बार गेंद को खेले हवा में, गेंद यहां पर खतरा बन सकते हैं। रन आउट के यहां पर कोशिश बनाए, लेकिन 2 रन के इजाफा बने यहां पर ओवर थ्रो के जरिए और 1 रन बने। तो इस 2 रन के साथ रन संख्या बने हैं 11 रन, 11 ऑन द स्कोर बोर्ड। 59 रन के लक्ष्य, 59 इज द टारगेट। ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 केरला और कर्नाटक के अंडरआर्म दिग्गजों के समागम और इस इतने अच्छे बेहतरीन प्रतियोगिता के कारणकर्ता बन रहे हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप मंजेश्वरा। और इस बार लॉलीपॉप गेंद थे यहां पर निसार जी। जिस तरह से आप पिछले गेंद दिखाई गुड लेंथ के साथ, अगर बल्लेबाज सही तरीके से उस गेंद के साथ अपनी नजरें मिलाया होता तो निश्चित रूप से स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पार करते वो गेंद। भाग्यशाली रहे यहां पर निसार। 3 गेंदों पर बने 3 रन निसार के, लेकिन रन संख्या तो काफी ऊंचे अब बनाए हैं। 59 रन के लक्ष्य दिए हैं, 59। और इस बार भी अच्छी गेंद यहां पर विकेट कीपर के पीछे दौड़े गेंद, और जब तक कि राशिद बाबा दौड़ते हुए उस गेंद के पास आए, एक सिंगल रन 22 के रो पर। इस तरह कई सारे गेंदबाजी हमने देखे हैं। एलटी अरशद करते हैं इसी तरह से गेंदबाजी। और शुरुआत पर गोरी यंग बॉयज के बाबू करते थे इस तरह के गेंदबाजी। और इस बार ऊंचे खेले एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में, फील्डर मौजूद और सही जगह पर अंजाम नहीं दे पाए यहां पर चपसी अरे कला के बल्लेबाज नौशद सादिक ऊंचे खेलना चाहते थे, लेकिन उनकी उम्मीद के साथ जुड़ नहीं पाए ये स्ट्रोक। फील्डर के हाथ पर सुरक्षित पहुंचते ही एचएफसी अरेकला अपने और एक विकेट यहां पर गवा चुके हैं। रन संख्या केवल मात्र 13 रन, 13 ऑन द स्कोर बोर्ड। और हमारे साथ वीक्षक विवरण पर जुड़े हैं एक ऐसे वीक्षक विवरणकार जो केरला परिसर पर अपने उस गंभीर आवाज के साथ हजारों दर्शकों को अपनाए हैं, हजारों संख्या के अभिमानिया हैं। अब्दुल रहमान बेकूर जी इस परिसर के हर एक खिलाड़ियों की जानकारी रखते हैं और खिलाड़ियों को इस तरह से एनकरेज करते हैं कि उनकी आवाज सुनते ही यहां की खिलाड़ियां झूम उठते हैं मैदान में। तो हम स्वागत करते हैं अब्दुल रहमान बेकौर जी को। आप यहां पर आए, इस श्रृंखला के रौनक बढ़ाए रहमान जी। निसार फिर तैयार, और इस बार भी ऊंचे खेले हवा में, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद छक्का। देर आए दुरुस्त आए। थोड़ी सी पहले ही अगर 1-2 छक्का इस तरह से निकल आते तो ये 59 रन की लक्ष्य भी नामुमकिन बिल्कुल नहीं नजर आते यहां पर चपसी अरेकला को। तो शुरुआत की 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 19 रन, 19। अब 40 रन की जरूरत है बचे हुए 3 ओवर पर। 3 ओवर पर 40 रन की जरूरत है। दिखने में तो लंबे लग रहे हैं, लेकिन इस मैदान के लिए वो नामुमकिन नहीं है दोस्त।
हर ओवर पर 13.33 के रन धारण इस मैदान के लिए तो हम नामुमकिन नहीं कह सकते, क्योंकि ऑफसाइड और ऑन साइड की दिशा पर जो बाउंड्री लाइन आपको नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी अंतरा कम नजर आ रहे हैं मैदान में। अगर इस बात के फायदा उठाते हुए बल्लेबाजी करें तो ये रन बिल्कुल नामुमकिन नहीं होगा। अब्दुल रहमान जी, हम स्वागत करते हैं माइक्रोफोन पर आपको। जैसे कि आप मैच देखें, यहाँ के खिलाड़ियों के बारे में आप जानते हैं, लेकिन ये कर्नाटक के खिलाड़ियां अंडरम के मैंगलोर के जो दिग्गजों के बीच यहाँ पर मैच चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये 3 ओवर पर 40 रन के जो मांग है, यहाँ पर जो जरूरत है, ये पूरा करने के लिए बल्लेबाजों को किस तरह से बल्लेबाजी करना होगा और रोकने के लिए टीम एलिगन को किस तरह से गेंदबाजी करना होगा? आइए रहमान जी। धन्यवाद नवाज जी, अब तक आंखों की हाल चला इतने सुंदर तरीके के साथ धन्यवाद देना चाहता हूं। इस प्रतियोगिता जो इतिहास में घुसे हुए प्रतियोगिता है, अंडरआर्म वर्ल्ड ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के ओर से जो खेल के सजावट की है, दूसरी दिन है और दूसरे दिन में यहाँ पर अपील होते हुए बहुत खूबसूरत थ्रो दूसरे दिन है। कल के दिन केरला की 88 खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई हुए थे, नई पसूट ने फाइनल मैच पर प्रवेश किया गया था। आज के दिन में कर्नाटक के मशहूर टीमों के बीच में 88 खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई हो रही है, प्रमुख टीम के बीचों में। अब 3 ओवर में 19 रन हो चुके थे। चौथी ओवर के पहली गेंदे पे 2 गेंदे फेंक चुके हैं, स्कोर खाते पर 21, यानी कि और भी 38 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। गेंदबाज हैं शाकिर, स्ट्राइक पर निजाम, नौशाद और निजाम के एक इनिंग्स देखे थे मुडीपू प्रीमियर लीग मैच में, जो LT अरशाद यहाँ हो तो उसको याद होगा ठीक से, क्योंकि निजाम दिखने में बिल्कुल छोटे शरीर हैं, लेकिन उनके बल्ले बहुत बड़े बोलते हैं और बहुत बढ़िया प्रहार किए थे उन्होंने LT अरशाद के सामने। अगली गेंद और बहुत अच्छी गेंद ऑप्शन के बिल्कुल बाहर तपे खाते हुए गेंद को विकेट कीपर छोड़ते हुए। देखिए, बहुत बड़े एक गलती कहना होगा, बाई का इशारा किया, बाई के मतलब है कि गलती विकेट कीपर ने की है और इस विकेट कीपर की गलतियों से स्ट्राइक रोटेट होती है। कभी कभी स्ट्राइक रोटेट होते हुए जो बड़े बल्लेबाज स्ट्राइक पर आते हैं तो बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। नौशाद ऐसे खिलाड़ी है, बड़े शॉट खेलने में बहुत बड़ा माहिर है। अच्छी गेंद उठाकर खेला है, बहुत बढ़िया गैप। ये बोला है कि गलती छोटे हैं तो बड़े बल्ले बोलने लगते हैं, ये नौशाद के विश्लेषता है। बहुत बढ़िया शॉट खेले इन्होंने, गैप में चौका लगाकर। इस जरूरत थी बिल्कुल इस शॉट की, चौका। इस चौके के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 26 ऑन द बोर्ड, यानी कि 26 रन और भी 33 रन की जरूरत है। नवाज जी ने कह रहा था कि 3 ओवर में 40 रन की जरूरत है, लेकिन इस छोटे से मैदान में कुछ भी कह नहीं सकते। कभी बल्ले बोलने लगते हैं, कभी गेंदबाजों ने गेंदबाजी जो मैजिकल गेंदबाजी भी कर सकते हैं। अगली गेंद लेफ्ट के काफी बाहर, खराब गेंद। अंपायर ने दोनों हाथ हवा पर फैलाकर दिखाया कि वाइड और एक बाई, 2 रन यहां पर लॉटरी की खाते पर लिखवा देंगे और इस 2 रन के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 28 रन। अब 31 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। इस ओवर में 2 गेंद बचे हैं, यानी कि 14 गेंदें बचे हैं। इस इनिंग्स की पहली वाइड है और उस वाइड में जो 2 रन भी मिले, यानी कि बाई के रूप में इसके रन भी मिले। जाकिर अगली गेंद लेकर तैयार है निजाम के लिए, रेट ऑफ द विकेट। बहुत बढ़िया गेंद लेग स्टंप पर थी, ऑफसाइड पर खेलने की कोशिश की, उल्टा बल्ले में। अगर बल्ले के बीचों बीच में लगते हैं तो लंबे चले जाते थे, उतना जोर से घुमाए थे उन्होंने बल्ले। अब जाकिर अगली गेंद लेकर तैयार है और द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बार बार बीट होते हैं, बहुत खूबसूरत समाप्त किए, ऑप्सी बहुत अच्छे किए।
चौका लगाने के बाद 2 बार वापसी की है अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण इस 2 डॉट बॉल बहुत बढ़िया कहना होगा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 26 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 28, क्षमा कीजिए बुलेटिन में गलती हो गई, 28 ऑन द बोर्ड, यानी कि 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर अभी 31 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, यानी कि 12 गेंद में 12 टू गो 31 टू गेट। यहां पर बढ़िया काम नहीं है ऐसी रन बनाना, 40 रन भी बना सकते हैं, 50 रन भी बना सकते हैं क्योंकि बिल्कुल छोटे मैदान है और बंगलुरु स्टेडियम के जैसे बल्लेबाजों के लिए मक्का कहती हैं पैवली का स्टेडियम और ये मंजेश्वर मिनी स्टेडियम। और इस दोनों मैदान से अलग है मन्नंगुजी स्टेडियम। बल्लेबाजों के लिए बहुत कष्ट है, यानी कि मुश्किल काम है, जो खेलने वाले को खेल सकते हैं। बहुत बढ़िया मैदान है जो मन्नंगुजी स्टेडियम आने वाले जो 27, 28, 29, 30, 31 1 तारीख को बिग टूर्नामेंट यानी कि सिलेक्टेड मन्नंगुजी ने पेश किया जा रही है मन्नंगुजी प्रीमियर लीग। और उस टूर्नामेंट के लिए सबको स्वागत करना चाहता हूं। उससे पहले एक टूर्नामेंट है जो 2021-22 यानी कि कुंबला ग्राउंड में, कुंबला ग्राउंड भी जो बल्लेबाजों के लिए मक्का है, बहुत बढ़िया स्टेडियम है। ओ हो बढ़िया गेंद विकेट कीपर ने छोड़ते हुए नजर आ रही है। जी हां, पंजा उठाकर दिखा रहे हैं कि भाई के मतलब है कि विकेट कीपर ने गलती की है। इस गलती के परिणाम क्या होगा, निजाम स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं। बड़े बल्ले बोलते हैं इनके कभी कभी, अभी बल्ले बोलना बिल्कुल जरूरत भी है इस टाइम में। अब 11 गेंद बचे हैं, 11 गेंद बचे हैं, गेंदबाज हैं फराज, 11 गेंद बचे हैं, 30 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। बड़े बड़े छक्के लगाना होगा इस मैच को जीतने के लिए। अगली गेंद ओवर द विकेट निजाम के लिए। ओ बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद है इस समय, वाइड मिड विकेट पर गेंद गए हैं, वहां पर फील्डर थे, उन्होंने गेंद के ऊपर आए, उठाए तो रोकिए, तब तक 1 रन और इस 1 रन के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 30 यानी कि 30 रन। अब 29 रन की समस्या है, 10 गेंद बचे हैं। अगली गेंद लेकर तैयार है फराज नौशाद, अच्छी गेंद खेलने की प्रयास किया, बल्ले की अंतरोनी किनारा लगकर गली पर गेंद जाकर रुके हैं, तब तक 1 रन के लिए समय भी मिले। 31 रन, 28 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए 9 गेंद में 28, एक गेंद में भी 3 रन के ऊपर जो छुड़ाना चाहिए। अब अगली गेंद फराज ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है निजाम के लिए। और शॉर्ट पिच डिलीवरी लॉलीपॉप पे उठाकर खेला है, फील्डर गेंद के नीचे है और इसी के साथ शानदार तरीके के साथ जोली में भर लिए। निजाम के इनिंग समाप्त, 14 विकेट के पतन। फराज बहुत खूबसूरत सुंदर विकेट छटका लिए हैं अपनी टीम के लिए, निजाम आउट हुए। और इस मैच में कौन से भी टीम हो जीतने के लिए बिल्कुल जरूर कोशिश करेंगे क्योंकि डू और डाई है, नॉकआउट मैच है। अगली मैच यहां पर खेला जाएंगे गोरी यंग बॉयज वर्सेस यना मैंगलोर हाई वोल्टेज मैच। अगली मैच कर्नाटक की प्रमुख 2 टीम के बीच में, यानी कि पुरानी 2 क्लब के बीच में लड़ाई हो रही है। यना मैंगलोर, गोरी यंग बॉयज पांडेश्वर, दोनों टीम के कप्तान आ जाइए टॉस के लिए, दोनों टीम की कप्तान आ जाइए टॉस के लिए। आठ गेंदे बचे हैं, नए बल्लेबाज नौ स्ट्राइक पर जाकर खड़े हुए हैं। स्ट्राइक पर नौशाद है, नौशाद तब तक मैदान पर हो जब तक उम्मीद रख सकते हैं, ऐसे बड़े शॉट खेलने में माहिर है इस खिलाड़ी। अगली गेंद फराज भी कोई कम नहीं है, बहुत अच्छे गेंदबाजी अब तक किए हैं इन्होंने। अब अगली गेंद ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार। ओहो बढ़िया विकेट, उतनी अच्छी खास गेंद नहीं थी, बिल्कुल उछाल मिले थे इस गेंद को। अक्रोश के लिए कोशिश किए तो एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट होकर बॉलिंग को पास लौट रही है। नौशाद भी आउट, बड़े विकेट यहां पर प्राप्त किए। 7 गेंद बचे हैं, 28 रन की जरूरत और भी है।
नए खिलाड़ी धीरे धीरे कदम रखते हैं, निराश के साथ नौशाद वापस आते हैं, अंदर की तरफ एक नए खिलाड़ी जाते हैं, जैसी नंबर 03 शाहनवाज। शाहनवाज बढ़िया गेंदबाज है, जो मुडीपू प्रीमियर लीग में उन्होंने शानदार गेंदबाजी किया गए थे। ये निजाम और नौशाद शाहनवाज सब एक ही टीम के लिए खेला थे मेरे ख्याल में, बहुत अच्छे। 2 ओवर गेंदबाजी किया गए थे, खोटे में उन्होंने 1 विकेट हासिल किए थे, 14 रन खर्च किए थे। फराज की आखिरी गेंद बचे हैं, बायां हाथ के बल्लेबाज आकर स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं। शाहनवाज बायां हाथ के बल्लेबाज, बायां हाथों के लिए यहां पर आसानी के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं। इस मैदान में कभी भी बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए बहुत बढ़िया मदद भी मिल रही है। ओ बढ़िया गेंद, बहुत खूबसूरत ओवर की समाप्त की है। यहां पर शाहनवाज आखिरी गेंद को पराजित हुए हैं, तब फराज ने बहुत बड़े जीत इस ओवर में प्राप्त की है। बहुत बड़े मजेदार मैच से टूर्नामेंट जारी है। इस प्रतियोगिता में 8 टीम कर्नाटक की, 8 टीम केरला की, कल के दिन केरला की 8 टीम यहां पर खेले हैं। उस खेल में यन्नी पुसोट ने जीत प्राप्त की है, फाइनल मैच पर प्रवेश किया गया है। फराज की ओवर की विशेषता कहूं, 1 ओवर कोई मेडन नहीं, 3 रन और 2 विकेट। उसमें 3 रन नहीं कह सकते, क्योंकि उनके खाते पर 2 ही रन लिखवा देना चाहिए, क्योंकि एक लगबाई के रूप में रन मिले। और इसी छोटे क्रिकेट में ऐसे बड़े गेंदबाजी कर रहे हैं तो कितने भी तारीफ करो उतना कम होगा। बड़े गेंदबाजी के फराज, धन्यवाद देना चाहता हूं। अगली मैच के टॉस के लिए आ जाइए दोस्त। ये नाम मैंगलोर, गोरी यंग बॉयज पांडेश्वर, दोनों टीम के कप्तान आ जाइए। आज के दिन में विशेषया 1 भी सेकेंड वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन 8 मैच खेलना पड़ेंगे। कल के दिन 7 मैच खेले हैं, क्योंकि 15 मैच होती है 16 टीम के बीच में। नए गेंदबाज हैं मुस्तफा। ओ बढ़िया गेंद, मिड विकेट पर खेलकर 1 रन चुरा लिया गया है। इस्माइल ने स्ट्राइक पर शाहनवाज आ चुके हैं। अभी भी 27 रन और भी चाहिए, लंबे हैं जीत के लक्ष्य। 5 गेंदे बचे हैं, हर गेंद को उठाकर छक्के चौके लगाना ही होगा। लेकिन दोनों टीम कर्नाटक इलाके की है, कोई किसी से कम भी नहीं है, कुछ भी कह भी नहीं सकते, क्योंकि गेंदबाज भी एक से बढ़कर एक है, बल्लेबाज भी बड़े बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। शाहनवाज सब आए हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज गेंदबाज है। अब अगली गेंद मुस्तफा अरुंधवी के नंबर को क्रॉस करते हुए तैयार। ओ लॉलीपॉप गेंद थे, उठाकर खेला जरूर, फील्डर मौजूद और इसी के साथ आउट, शाहनवाज भी आउट। सीधे खेले हैं इन्होंने, स्ट्राइक ड्राइव किए हैं। अगर मिड विकेट स्क्वायर लेग में खेलते हैं तो यहां पर मौका थे। बहुत बड़े विकेट यहां पर प्राप्त किए हैं मुस्तफा ने। अब 4 गेंदे बचे हैं और भी 27 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 32 ऑन द बॉल। जी हां, नए खिलाड़ी इमरान एचएफसी अरेकेला के लिए। इमरान धीरे धीरे कदम रखते हैं, मैदान के बीचों बीच जा रहे हैं। मुस्तफा की 4 गेंद बचे हैं, स्ट्राइक पर इस्माइल है, इमरान स्ट्राइकर पर। अब अगली गेंद मुस्तफा राइट आर्म अराउंड द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार। रोडेन से गेंदबाजी की शुरुआत की, अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरती के साथ तालमेल के साथ इस गेंद के ऊपर आए, खेले 1 रन। अब स्ट्राइक पर इमरान आ गए। अब एचएफसी अरेकेला इस मैच में पूरी तरह बैकफुट पर आ चुके हैं। मुस्तफा की सिर्फ 3 गेंदे बचे हैं। अगली गेंद मुस्तफा, इमरान खेलना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच नहीं आए और इसी के साथ रनआउट के रूप में इस्माइल भी आउट। अब 2 गेंदे बचे हैं, बहुत सारे रन बनाना है यहां पर, 27 तक बनाना है। बहुत बढ़िया जीत यहां पर, जीत की कोशिश पर है टीम एलिगन। एचएफसी अरेकेला की जैसी नंबर 00
धीरे धीरे कदम रखते हैं, मैदान के बीचों बीच में जा रही हैं, यानी कि 9 सेकंड पर जाना ही होगा। 2 गेंद बचे। यूसुफ नए बल्लेबाज है, 0-0। दोस्तों अगली मैच हाई वोल्टेज मैच, सबको स्वागत करना चाहता हूं। अगली गेंद, ओ बढ़िया गेंद, और इसी के साथ और एक विकेट। आक्रोश खेलना चाहते थे, बाउल्ड आउट हुए, मैदान से बाहर इमरान जा रहे हैं। एक गेंद बचे हैं, तो उसके लिए अब तक नहीं आए। ये नाम मैंगलोर गोरी यंग बॉयज पांडेश्वर। दोस्तों टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मैच खलास होने में, एक मैच समाप्त होने में दूसरी मैच के लिए चढ़ना चाहिए जो मैदान के अंदर, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। जर्सी नंबर 77 नासिर नए बल्लेबाज। अगली मैच की टॉसिंग के लिए जा रही है मोहन याडी के, याडी है अंपायर, तीसरे अंपायर के रूप में। और इसी के साथ इस मैच खत्म हो चुके हैं। टीम एलिगन ने बहुत बड़े जीत, यानी कि 25 रन के जीत यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। बहुत बड़े जीत, धन्यवाद देना चाहता हूं HFC अरेकला और टीम एलिगन। अगली मैच की टॉसिंग हो रही है एनएम मंगलोर गोरी यंग बॉयज। इस मैच बहुत बड़े मैच, यानी कि हाई वोल्टेज मैच है, जो नवाजी की शैली में बोले हैं तो हाई वोल्टेज मैच है। बिल्कुल नवाजी कल के दिन में केरला के 88 खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई हुई। आज के दिन कर्नाटक की, कल के दिन 7 मैच, क्षमा कीजिए 7 मैच भी सतीश और नवाज जी ने मिलकर यहां पर कमेंट्री बोले थे। मैं भी यूट्यूब में देख रही थी, मैच को आनंद उठा रही थी। और कल के दिन और आज के दिन उस फर्क के बीच में नवाजी कर्नाटक की जो खिलाड़ियों की शैली अलग है, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो और क्षेत्र रक्षक हुई हो, सभी की जो शैली अलग है। कभी कभी जो विकेट कीपरों को भी शैली अलग होती है। यहाँ के नंबर 1 विकेट कीपर हमारे बगल में बैठे थे अब तक, इंती पुसुट, पहले कर्नाटक में थी, अभी अभी यहाँ पर सेटल हुए। कोई भी हो, आज के और कल के फर्क के बीच में क्या अनुमान लगा सकते हैं आप, बोलिए नवाजी। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने अब्दुल रहमान जी कि कल और आज के बीच फर्क ये नजर आ रहे हैं कि कल के दिन यहाँ पर जो केरला के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला यहाँ पर देख रहे थे हम, तो उनकी बल्लेबाजी की शैली, उनकी गेंदबाजी की शैली इस केरला की मिट्टी के साथ निश्चित रूप से मिले हुए थे। वो केरला के जितने भी दर्शक हैं उनको मनोरंजन कर रहे थे, केरला के हर एक खिलाड़ियां। और बात रहे यहाँ पर मैंगलोर के, बात अगर मैंगलोर के दिग्गजों के बीच आते हैं तो मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि मैंगलोर की किसी भी टीम आपस पर जब मुकाबला लड़ते हैं तो देखने वाले को न्याय देते हैं। मैदान पर चीता की तरह लड़ते हैं, ऐसे लगते हैं कि मैदान पर चीता और शेरों के बीच लड़ाई चल रहे हैं। और जितने भी दर्शक उनको यूट्यूब के जरिए देखते हैं और मैदान पर खड़े होकर देखते हैं तो निश्चित रूप से वो कभी भी नाराज नहीं हुए होंगे मैंगलोर वाले के मैच देखने के बाद। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए मैं इम्तियाज को हम बुलाना चाहेंगे। इम्तियाज नंदावरा प्लीज स्टेज पर आए और संगठकों से अपने मैन ऑफ द मैच पुरस्कार को स्वीकार करें। अब पंद्य श्रेष्ठ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆತಿಫ್ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಎಂ ತಂಡವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತಿಫ್ ರವರು। ಸಾದಿಕ್ ಎನ್ಎಂ, ಮನ್ಸೂರ್, ಸರ್ಫರಾಜ್, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಎನ್ಎಂ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಥಿಗಳು ಎನ್ಎಂ ತಂಡದ 17 ನಂಬರಿನ ಜರ್ಸಿಯನ್ನ ಆತಿಫ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಎನ್ಎಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆದರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತಿಫ್ ರವರನ್ನ। ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ।
ಅಂಡರಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಎಂಬ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಆ ತಂಡವನ್ನ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಂಗಳೂರಿನ ದಿಗ್ಗಜದ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎನ್ಎಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತಿಫ್ ರವರು. ಶುಭವಾಗಲಿ ಆತಿಫ್ ರವರಿಗೆ ಆ 17 ನಂಬರಿನ ಜರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಎಂ ತಂಡವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆತಿಫ್ ರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ನಂದಾವರ. ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಇದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ. ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ತಂಡವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ನಂದಾವರ. सतीश जी, नवाब जी ने कह रहा था कि जो यूट्यूब के जरिए भी यहाँ पर दर्शक बहुत बड़े हुए हैं, कल के दिन में बोल रहे थे इस मैच गोरी यंग बॉयज फाउंडेशन और एनएम मैंगलोर अभी एनएम मैंगलोर में शामिल हुए जो युवा खिलाड़ी, आपको याद होगा जो मन्नंगुजी स्टेडियम में मेरे जो करियर में कमेंट्री करियर में खेला बहुत साल, लेकिन उतनी दुख कभी भी नहीं हुए थे, क्योंकि अगर आतिफ को उस दिन चोट नहीं लगते, नवाज जी बहुत बड़े जोरदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस किए थे आतिफ ने। उन्होंने लीग मैच के 2 मैच उनके टीम के लिए बचे हुए थे, तब उनको बहुत बड़े चोट लगने के वजह उन्होंने मैदान से बाहर गए थे। उनके जगह में जो मलेमार के एक खिलाड़ी जीतेश आए थे, लेकिन क्वार्टर फाइनल में बाहर हुए उस टीम। बदरुद्दीन थे कप्तान, जो बदरुद्दीन गुडलक पसोड़ के। जी हाँ, ये कह रहे थे कि आज के दिन इस दोनों टीम के लिए अगर यूट्यूब नहीं होते तो यहाँ पर दर्शक को खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलते थे। अगर दूसरी एक बात मैंने आधे में रखे हैं, आतिफ उस दिन मैदान से बाहर गए, उस दिन उतने दुख आपको भी हुआ होगा, क्योंकि अगर हाई फ्लाइज दुबई ने उस टूर्नामेंट पर जो विनर्स हुए थे, अगर आतिफ को चोट नहीं लगते तो वहां पर रिजल्ट भी अलग हो सकते थे। उतने बड़े टूर्नामेंट में आतिफ जैसे खिलाड़ी को चोट लगे, आज के दिन बहुत खुश हुए। दूसरी टीम से एनएम के लिए इन्होंने चेंज हुए, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, दोनों टीम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ सतीश जी। Well, Abdul Rahman sir, and definitely still I remember that day when Atif is got injured after playing a fantastic inning, and even I still remember he won the Man of the Series award as well, the two-wheeler, for that his wonderful performance. But unfortunately he got injured because while he was running hard between the wicket, when he was tried to take the second run, I think that twisted right leg is twisted and he got injured, and no one thought that the Atif can bounce back immediately. That's only because of the willpower, the mindset, the positive mindset of the batsman, just like Ashwin of Young Friends when he got injured in the KPL season 3 while he was taking a very good catch and trying to take the catch, and the elbow is a little bit broken, so he bounced back very well after a short period. That's only because for only the good player who got a very good willpower, they can bounce back. And Atif, of course, it's once again back into the NM Cricketers Mangalore squad. I think it's going to be a good news here for the followers of NM Cricketers Mangalore, and we are expecting some great battle between these two good teams, Gori Young Boys versus NM Cricketers Mangalore. जी बिल्कुल, मैच की शुरुआत से पहले अब्दुल रहमान जी आपसे एक गुजारिश है, तो अभी अभी कर्नाटक से भी सामाजिक जालतान से हमें एक संदेश आया कि अब्दुल रहमान जी की जबान से मलयालम की जो क्रिकेट के जो वीक्षक विवरण है वो सुनना चाहते हैं दर्शक। सऊदी अरेबिया से भी सामाजिक जालतान पर अब संदेश आया कि हम मलयालम की एक आवाज को सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि अब्दुल रहमान जी आज तो हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, तो इस राष्ट्रभाषा हिंदी और इंग्लिश के साथ अगर आप मलयालम की आवाज यहाँ पर मिलाएंगे तो बहुत ही रौनक बन जाएंगे ये मैच। Absolutely, that was expectation from Abdul Rahman sir, because he is a very good Malayalam commentator as well. Wait and see, and that we are the commentators, we only for meant for entertain the cricket lovers, isn't it, Abdul Rahman sir? So we are trying our level best, and we are not really bothered about which tournament is going to be, but our job is to entertain and make the tournament successful one. And wait and see
and now it's going to be the big one, just like everybody saying that it was high voltage match. Certainly it's going to be high voltage match because two teams, Gori Young Boys, of course, after they organized such a wonderful, successful cricket tournament, UCG cricket ground, Gori Young Boys, and certainly in this season, particularly 2021, Gori Young Boys not up to the mark, but I think they got a potential of bouncing back at any time in any tournament. I think this tournament, Gori Young Boys certainly taking quite seriously, but against NM Cricketers Mangalore, they have to implement different strategy. They have to implement 100% in the game application. What you are talking about need to be 100%, then only they can win the match. After winning the toss, selected to field first, Gori Young Boys. Now NM Cricketers Mangalore, opening batsman. Here is the first ball. Oh, lovely delivery there from Naufal, almost jagging back into the batsman, and batsman almost negotiated very well. Asif Addur, and he plays it down to deep. Little bit, yes, Asif Addur plays it down to deep, long on region for a easy single. First run comes off here for. First one comes up here for NM Cricketers Mangalore. 5,000 viewers watching this live telecast of this most prestigious Gladiator Trophy 2021, and I think it's a proud moment for every members of Underarm World WhatsApp group, because they are the one responsible for this such a fantastic cricket tournament. And once again, adds up to all the members of Underarm World WhatsApp group, providing such a fantastic opportunity and creating a good stage. What a shot! Tawfiq is on, intention is very clear. What a great shot that one. Up and over the head of that mid fielder. There's no protection in the deep long off, and boundary comes up in the second delivery of their innings. This is what Tawfiq all about. One who really becomes most popular in one match. Just he taken one match which is played in Uruva cricket ground when he was hit 4 sixes in a row against KFC Krishnapura. Then I think everybody started to watch this man Tawfiq, the kind of ability, kind of potential what he has got to hitting the ball. And here is an Naufal again, right arm. Oh, what a shot! That was a rocketing towards the fans. Outstanding cricketing stroke, incredible. This is a boundary here for the batsman, because as for the rules and regulation of this cricket ground is concerned, hitting the wall directly, it's going to be a boundary, and going over the wall, it's going to be a 6. What a great shot there coming from the blade of Tawfiq. All in sudden, the experienced bowler Naufal, little bit under pressure here. This is what all about the cricket, especially when playing in this mini stadium of Manjeshwar. A lovely shot right in the gap towards a deep extra cover, growing his confidence after getting that boundary. Tawfiq, look at the way he hit that one. Lovely shot, lovely placement, and sweet sound coming from the bat. Absolute sheer timing in the occasion there from Tawfiq, as score jumped into 10 on the board already in the over number first in progress. Now Santosh, one of the most experienced campaigner, as a wicketkeeper, just walking towards bowler to tell him that kind of bowling to be bowled, especially in this particular kicking ground. Need to be very careful, because this is a batting paradise. I will tell you, this stadium is batting paradise, so that bowler has to really bowl very well. There is no excuse at all for any bad deliveries. Now full bounce this time again. This time chance of run out in the low cycles, and total misunderstanding, costing a big wicket here for NM Cricketers Mangalore. Asif Addur, little bit hesitation, yes and no, and the fielders of Gori Young Boys just grabbing the opportunity with the 2 hands to sending this danger man back into pavilion. Maybe just I am seeing the body language of Asif. He just claiming his partner that communication. I will tell you why you are not called loudly. This is so important in cricket, Abdul Rahman sir. The understanding between the wicket, running between the wicket. I think that loud calling, yes or no, is so important. Especially the non-striker has to tell his partner whether it was a run or no. That was a lacking in this run out, I will tell you. That's why Asif Addur is not really impressed with his partner, that why you are not called loudly. So suddenly it's going to be a little bit disaster here. Now is Atif walking towards the middle. After he's missing NM Cricketers Mangalore for a long time, he represented young friend Surwa
for 1 to 2 years. Then once again, NM Cricketers Mangalore welcoming him in this cricket tournament. That's why the Gladiator Trophy is becoming one of the most memorable cricket tournament, especially for Atif, because he's just coming to his home team NM Cricketers Mangalore. Wait and see how we're going to justify his appearance in this cricket tournament. Now fall balls to Taufik drives that one down to deep long off region for a easy single. With the addition of that single, scoreboard moves on to 11 on the board. Good score on the board. Good start here for NM Cricketers Mangalore. Even they lost the toss, asked by the opposition Gori Young Boys to bat first, but opening batsman, I think they grabs the opportunity of that power play, the fielding restriction. They got 11 runs on the board. Outstanding cricketing stroke just in the previous over. Abdul Rahman sir and Nawaz is just talking about the technique, the different technique of the different districts, South Kendra district and of course Kasaragod district. They both have got some different statics they go implementing. Especially I think the batsmen from this region, Kerala, Manjeshwara, they are believe with the power more than the technique, I will tell you, because I observed yesterday there are raining the sixes, but you are watching here is not that much of big sixes, but they are only implementing technique rather than going for the big shot. Of course they got some big striker of the ball, but not every time. But a batsman like Chemmi, Chammo, what outstanding cricket yesterday we watched. There was a fantastic batting display as the big hit is concerned, and today you are watching different kind of cricket here. Atif is a non-striker's end, and the bowler has been introduced is Dikshit. First ball, batsman quite neatly plays it down to deep long off region. Taufik, each and every delivery, he just looks like he is very composed, looks like he's a man in form, and that's why he's unstoppable in the last two tournaments for NM Cricketers Mangalore, and definitely it's going to be a big invention for NM Cricketers Mangalore as far as the batting is concerned, batting department is concerned. Scoreboard moves on to 12 on the board. Atif, what lovely delivery there from Dikshit. Almost nipped back into the batsman quite sharply. Atif just survived, I think so, because he's got a bat in the last moment. He's got a bat onto that last moment. Otherwise, that ball definitely will going to crash the midland off stump. Again, Dikshit from the far end, from the aircraft end, bowling right arm over the wicket to Atif. Atif, Asif, this is almost right to drag that one from outside the line of half time. Excellent piece of bowling there from Dikshit. This is what the bowler need to implement, that strategy, that bowling away from the bat of the batsman whenever they're trying for the slog sweep shot. Maybe the encouragement here for the batsman, seeing that shortest part of the ground in the square leg and cover region. This time again, lovely shot right in the gap towards a deep cover boundary for 4 runs. Lovely and glorious cover right there from Atif, just sending the ball between cover and backward point. Even I think Suhail Muhammad Billy just chasing the ball but not quite able to winning the race against that ball just passing, because that was the shortest part of the ground. Very difficult once the ball is passing that 25 yard circle, then it's going to be so easy to get the boundary. So Atif is a mark with that boundary. Scoreboard moves on to 16 for the loss of 1 wicket. Dikshit again. At the wicket, one more, but this time he didn't got that much of timing what he was looking for. That's why the fielder quickly running back and fields the ball, and before that batsman got ample time to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 17 on the board for the loss of 1 wicket. So far Dikshit, I think, is bowled a good over. Just a 6 runs came from that 5 deliveries, but job is not yet over because 1 delivery is remaining, and he need to bowl very well, and wait and see how well this man Taufik will going to play against this last delivery of Dikshit. Aircraft and right arm over the wicket, bows, went for the big shot. That was a very close to the stump, I will tell you. Taufik just dealing with some luck here, I will tell you. Might be the ball is kissing or not. I think by seeing the reaction of wicketkeeper behind the stump, maybe the ball kisses the stump, but bails are not off. That's all happened in the yesterday also. Abdul Rahman says some 1 or 2 occasion even the ball is kisses the stump, but bails are not off. But it's a part of cricket, isn't it? And 2 overs completed. After completion of over number 2, it's 17 for the loss of 1 wicket. 1 wicket. Instead of coming back to that run rate, they're going exactly 8.5 runs per over. And certainly it was a very good run rate to maintain, especially in the power play overs. But the game will going to change here onwards, because the fielding definitely going to be spreading out here, and I want to see the fielding set now for Atif in that after that power play. There was a wicket keeper, of course, Santosh Bantwal standing up to the stump, and there was a backward point
There is a deep cover, there is an extra cover, there is a mid-off, but his mid-off is going back to deep long off. And coming to the onside region, there is a short fine leg. Rajesh is there, one at a deep backward square leg. Izaz is there in the deep backward square leg, and in the deep mid wicket, Suhail is there, and Naufal who is standing at short mid wicket, and one at deep long on. That was the field set here for Atif of the bowling of Ansar from the far end. Alright, a mouth wicket ball Atif, a lovely shot, but production there, but he is just a spectator watching the ball going out of the reach of that fielder towards the deep cover boundary for 4 runs. Second boundary coming from the bat of Atif, and Atif once again just sending the message that how important player he's been. It doesn't matter in which team he is representing, but he is the one. He's quite a useful batsman, quite a useful all-rounder for any teams. Look at that cricketing strokes, absolutely fantastic. Not an easy job, I will tell you, because having a deep cover, but I think even that fielder couldn't manage to stop the boundary. Score jumped into 21 on the board for the loss of 1 wicket. Ansar again from the far end. Number 1 wicket to Atif. Atif once again tried to make a little bit room to play the shot inside out cricketing stroke. He was looking for maybe just getting encouragement after hitting that boundary, looking for one more big shot towards the extra cover region, but this time he's not able to time that one properly, missed it, and Ansar once again back to his bowling mark. Right above the wicket, lovely slog save right in the gap. Ball is went towards the deep backward square leg boundary for 4 runs. Second boundary coming from the blade in this over particular round. Third boundary which is came from the bat of Atif. Looks like he will going to play the beginnings here for his NM Cricketers Mangalore. Nothing wrong with a stroke. Might be that Gori Young Boys captain just wanted to see what could be the decision here. That was a boundary as for the rules and regulation of this cricket is concerned. Maybe the Gori Young Boys captain just complaining about the ball is not hit the wall, but as for the rules and regulation is concerned, even though just in front of that wall, little bit up and down, so even hitting that part also, that will go into a boundary. And that's why umpire have Arish Padilla and Mohan Yagadi having a conversation and saying that captain of Gori Young Boys just explaining about the rules of this particular cricket ground, and it's going to be a boundary. 25 comes off here for NM Cricketers Mangalore. Answer balls, improvisation. Atif just past that fine leg fielder. Long chase here for the fieldsman. Just a couple of yards behind, before that boundary line. The fielder able to stop that ball, but they're not going to stop. 3 runs from these 2 batsmen in between. Excellent run in between the wicket. Look at that improvisation. That's what Nawaz I'm talking about. Yesterday we were watching all the runs in front of wicket. Now today you can see some runs behind the wicket as well. That's only because of the batsmen from South Kendra district. They're very good in playing a fine sweep shot, very good in playing that reverse sweep as well. And again it's one more 3 more to total scoreboard, moves on to 28. Again lovely shot, but not quite able to get the timing behind the shot. Once he thought that when Tawfiq off the back foot when he was tried to hit over the head of that extra cover fielder, will go into be a one more good shot, but did really not timed it properly. One more addition to total scoreboard, moves on to 29 on the board for the loss of 1 wicket. Here is Ansar right arm over the wicket. Atif drives that one. Look at the strokes. Look at that ball. How quickly that ball went towards the deep cover region. Rajesh the fieldsman there in the deep, and batsman completed a single. One more over is completed after completion of over number 3. NM Cricketers Mangalore in a commanding position. They're going exactly 10 runs per over, and they got a 30 on the board for the loss of 1 wicket. So before the next over will go into commence, time to change in commentary box. We are having 2 excellent Hindi commentators and a different style, I will tell you. Nawaz is got in his own style, and our senior most commentator Abdul Rahman sir is also has his own fans in his own style. He is really on the heart of cricket lovers. So very proud to have these 2 very good Hindi commentators in the middle. I am the junior one. Here is really feeling very proud to have these 2 very good commentators in the middle. Now it's a time for Nawaz to take over the microphone here. Nawaz 30 runs in 3 overs, and they're going exactly 10 runs per over. I think they got a good start, but I think in this particular cricket ground, that was a batting paradise. I think any runs will not be underestimated, because even 60-65 will definitely going to be not that much of enough total to depend, because they're playing against the Gori Young Boys.
जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सतीश जी आपने, जैसे कि आप कहा कि 6 ओवर पर 60-65 भी यहाँ पर नामुमकिन नहीं है, और इस बात को कहते ही मैदान पर आपने देखे हवाई वाली छक्का आतिफ। एनएम मैंगलोर के ये जो पुनरागमन हुई यहाँ पर, दोबारा जब यहाँ पर जुड़े तो ये केरला की मिट्टी की खुशबू इस तरह से स्वागत कर रहे हैं आतिफ को, और उनकी बल्लेबाजी देखिए एनएम के लिए। शुरुआत पर डेडली कंकनाडी पर अपने किरदार निभाने के बाद एनएम मैंगलोर जो अग्रमान पर थे तब अंडरआर्म क्रिकेट पर, ऐसे मौके में आतिफ को मौका दिए थे एनएम मैंगलोर, और उसके बाद एंगफिन शुरुआ पर अपने किरदार निभा रहे थे। दोबारा आज इस अवसर पर ग्लैडिएटर ट्रॉफी पर एनएम के जर्सी अपने शरीर पर लगाते हुए वापस अपने सेवा को एनएम के साथ देने के फैसला लिया है यहाँ पर आतिफ ने, और ये यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि वो जर्सी जो है एनएम नाम के, वो जर्सी इनकी शरीर पर लगते ही वो पुराने जो क्रिकेट थे इनके हाथ में, वो पुराने जो क्रिकेट थे इनके शरीर पर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वापस आ गए हैं आतिफ के शरीर में। और इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल के इशारा अंपायर से 1+1 2 रन मिलेंगे यहां पर। शुरुआत के विकेट यहां पर पहली विकेट आसिफ अड्डूर के रूप पर गिरने के बाद जुड़े ये जोड़ी तौफीक और आतिफ। एक वो खिलाड़ी जो तौफीक उर्वा के मैदान पर केएफसी के खिलाफ तौईफ की गेंदबाजी पर लगाए हुए 4 छक्के जो है निश्चित रूप से वो आज भी याद करते हैं अंडरआर्म के दर्शक, और यहां पर एक अच्छी साझेदारी को नई अंजाम देते हुए आतिफ और तौफीक एनएम मैंगलोर की रनों की संख्या को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि देखने वाले दर्शक मैदान से बाहर, आप एक बार नजर घुमा के देखिए कितने दर्शक इस मैच को गवाह बन रहे हैं। यूट्यूब चैनल के जरिए, बेद्रा मीडिया के जरिए तो हजारों दर्शक हैं, और इसमें देखिए क्या शानदार चौका। 3000 दर्शक ऑनलाइन पर इस मैच को देख रहे हैं, याद करिएगा 3000 दर्शक। और आज कोई संडे नहीं है दोस्त, आज तो बुधवार के दिन है, वीकडेज है, काम के दिन है आज। अगर बुधवार के दिन में भी यंग फ्रेंड्स उर्वा और माफ कीजिएगा एनएम मैंगलोर और गोरी यंग बॉयज के बीच चल रहा है इस मैच को, ग्लैडिएटर ट्रॉफी के इस प्रतियोगिता में अगर 3000 लोग देख रहे हैं तो आप अनुमान लगाइए इस मैच के, इस प्रतियोगिता की खासियत क्या है। कितने पसंद किए हैं इस प्रतियोगिता को दर्शक ने। केरला परिसर पर इस मैच को आप देख रहे हैं, लेकिन कर्नाटक से हजारों लोग चर्चा कर रहे हैं आज सामाजिक जालतान पर इस प्रतियोगिता के बारे में। इतिहास पर पहली बार, पूरे क्रिकेट के, अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास पर पहली बार 2 राज्यों के खिलाड़ियों के मिलन यहां पर दिखाए हैं ग्लैडिएटर ट्रॉफी पर। अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप के प्रस्तुति पर चल रहा है यह मैच। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं कुल मिलाकर 45 रन, 45 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। अभी भी 2 ओवर की बल्लेबाजी बाकी बचे हैं एनएम जप्पू मैंगलोर के पास। एक से बढ़कर एक महारथियां, अंडरआर्म क्रिकेट के दिग्गजों के आप समागम देख रहे हैं इस मैदान में। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चलते हैं, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच चलते हैं, यहां पर आप देखिए ये अंडरआर्म के दिग्गज है दोस्त। दोनों टीमों के किसी भी खिलाड़ी के ऊपर आप छोटी नजर मत लगाइएगा, क्योंकि दोनों टीमों के 11 से 11 खिलाड़ियां भी एक से बढ़कर एक चतुर खिलाड़ियां हैं। सवाल फेंकते हैं विपक्षीय गेंदबाजों को, विपक्षीय बल्लेबाजों को। कल के दिन हमने यहां पर देखा था, सतीश जी बार बार कह रहे थे अपने वीक्षक विवरण पर, सीधे बल्ले से विकेट के सामने से रन चुरा रहे थे केरला के खिलाड़ियां, लेकिन ये कर्नाटक के खिलाड़ी देखिए मैदान के कोने कोने से रन चुरा रहे हैं। और इस बार यहां पर तौफीक लंबी स्ट्रोक खेलने की कोशिश, पैरों से टकराने के बाद हरीश पटेल ने कहा कि ये लेग बाय है। दूसरी तरफ मोहन यज्ञाडी खड़े हैं, दक्षिण कन्नड़ जिला के मशहूर रेफरियों में माने जाते हैं, अनुभवी रेफरियों में माने जाते हैं, कई सारे पुरस्कारों के दार बने हैं अपनी रेफरी के जिम्मेदारी के लिए। तो ये सब इनके श्रेय निकलते हैं ग्लैडिएटर ट्रॉफी बनाने वाले अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप को, क्योंकि इतने बेहतरीन प्रतियोगिता जो इतिहास पर याद रखने वाले प्रतियोगिता यहां पर बनाए हैं, दर्शकों के चाहत पर जुड़े हैं। यहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अगर इस तरह के प्रतियोगिता बना सकते हैं तो आप उम्मीद लगाइए आने वाले दिनों पर अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप की क्षमता क्या होंगे। अगले साल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये धूप में होंगे, फ्लडलाइट की रोशनी के नीचे मैच दिखाएंगे आपको अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप। और ये देखिए तौफीक की बल्ले से निकली हुई लंबी चक्का, किसी भी मैदान
ये शॉट अगर किसी भी मैदान के लिए नापते हैं आप तो निश्चित रूप से 6 रन मिलेंगे। लगभग 85 मीटर के दूरी पर लगाए हैं ये छक्का। 53 ऑन द स्कोरबोर्ड। अर्धशतक के आंकड़ा पूरा हो चुके हैं एनएम जप्पू मैंगलोर के। 5वीं ओवर के 3 गेंद अभी भी बाकी। रनों के बरसात फैलाते हुए एनएम जप्पू मैंगलोर केरला के इस मिट्टी व खुशबू पर गेंदबाजी पर खड़े हैं रशीद, और इस बार भी गेंद को सीधे फाइन लेग की दिशा पर दौड़ते हुए सुहेल बिल्ली गेंद के बाद, और इस बीच ये रनआउट के नजारा। दूसरी रन चुराना चाहते थे लेकिन दूसरी रन भागने की कोशिश को नकारे यहां पर गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा। हालांकि इस रनआउट के साथ तौफीक बेहतरीन पारी निभाकर वापस आ रहे हैं दूसरे विकेट के ऊपर। शुरुआत के विकेट आसिफ के ऊपर और दूसरे विकेट गिर रहे हैं तौफीक के ऊपर। रन संख्या कुल मिलाकर बने हैं 54 रन 54। तो इस ओवर के 2 गेंद और आखिरी ओवर के 6 गेंद, कुल मिलाकर 8 गेंद बचे हैं। और ध्यान दीजिएगा कैमरामैन के कैमरा तो सीधे सादिक के ऊपर। अंडरआर्म क्रिकेट के मिसाल, अंडरआर्म क्रिकेट के शान मान सम्मान कहलाने वाले खिलाड़ी, इस अंडरआर्म क्रिकेट की कदर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाने वाले खिलाड़ी एनएम सादिक एनएम बूम बूम सादिक कहलाते हैं। इस अंडरआर्म की तालीम लेने के बाद एमपीएल पर खेले और उसके बाद सीधे कतार की अंदर T10 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर सोहेल तनवीर और एबी डिविलियर्स के पास अपने रूम शेयर किए थे सादिक एनएम ने। तो यहां की दर्शक उत्सुक है, काफी उत्सुक के साथ देख रहे हैं कि सादिक एनएम क्या कर पाते हैं। यहां पर स्ट्राइक पर खड़े हैं आतिफ, और इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को खेले मिड विकेट क्षेत्र पर। डीप मिड विकेट पर गेंद को रोकने से पहले 2 रन मिले यहां पर आतिफ को, और इस 2 रन के साथ रन बने 56 रन 56। एनएम जप्पू मैंगलोर मंजेश्वर पंचायत के इस मिनी स्टेडियम पर चल रहा है ये मैच, ग्लैडिएटर ट्रॉफी। और इस बार उल्टे हाथ खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले के नीचे से गुजरे गेंद विकेट कीपर संतोष के हाथ पर, कोई खतरा नहीं। जी हां, तीसरी अंपायर की मदद ले रहे हैं स्टंप आउट के लिए। तो देखना है कि तीसरी अंपायर क्या निर्धार सुना पाएंगे यहां पर। नॉट आउट की करार अंपायर से सुरक्षित रहेंगे यहां पर खिलाड़ी आतिफ। तो अगला मैच होगा इस मैदान में यंग फ्रेंड्स गांधीनगर के खिलाफ ब्रदर्स मक्यार। 2 जबरदस्त टीम कर्नाटक के, यंग फ्रेंड्स गांधीनगर और ब्रदर्स मक्यार। यंग फ्रेंड्स गांधीनगर एसएस ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल की अहमियत पाए हैं। तो देखना है कि यहां पर किस तरह से ब्रदर्स मक्यार के साथ अपने मुकाबला दिखा पाएंगे। और उसी तरह ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಲ್ ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಹಿಡಿಬೇಡಿ. ಆ ಚೆಂಡು ನೆಲವನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ತನಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೂಲಕ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಶಸ್ವಿಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. सादिक एनएम लॉन्ग ऑफ की दिशा पर गेंद को खेले, पहले टिप्पे के बाद गेंद हाथ पर मिले खिलाड़ी के, एक सिंगल रन यहां पर, और इस सिंगल रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 57 रन 57। आखिरी ओवर की चालती, 6 ओवर के ये मैच 36 गेंदों के मुकाबला होगा दोनों टीमों के बीच। गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा और एनएम जप्पू मैंगलोर। आतिफ कई दिन बाद एनएम जप्पू के साथ वापस आकर अपनी शुरुआत की जिस तरह से क्षमता थे, जिस तरह से वो एनएम मैंगलोर पर शुरुआत पर अपनी बल्लेबाजी दिखाते थे, जिस तरह से वो गेंदबाजी दिखाते थे, और हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि अगर आतिफ के नाम आज हजारों दर्शक जानते हैं तो उसकी वजह है एनएम जप्पू मैंगलोर। एनएम जप्पू मौका देने के बाद इनकी अंदर छुपे क्रिकेट बाहर निकल कर आए थे, देश विदेशों पर लोग देखे थे, तो आज दोबारा जब जर्सी उनके शरीर पर लगे तो देखिए उनकी रूह किस तरह से तड़प रहे हैं इस क्रिकेट में। आखिरी ओवर की अगली गेंद, और इस बार भी गेंद को सीधे मोड़ने की प्रयास स्क्वायर लेग की दिशा में। सोहेल बिल्ली गेंद के पास, कारकला परिसर के ये खिलाड़ी
गोरी यंग बॉयज के शान कहलाते हैं। तो देखना होगा कि अब तो आप एनएम जप्पू मैंगलोर के बल्लेबाजी देखे हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अब भी आप देखना बाकी है गोरी यंग बॉयज की बल्लेबाजी की रफ्तार। तो ऐसे में नजरअंदाज मत कीजिए इस मैच को, किसी दोनों टीमों में किसी टीम को भी आप ऊंचे मत देखिए। और इस बार गेंद को उछाले हवा में, यह शानदार शानदार जबरदस्त कैच। सादिक एनएम छक्के के साथ अपनी बल्लेबाजी दिखाना चाहते थे। वाकई ये जाहिर है, क्योंकि सादिक की बल्ले से 1-2 रन बिल्कुल पसंद नहीं करते दर्शक, उनकी बल्ले से हमेशा छक्कों की उम्मीद करते हैं। जिस तरह से वो आम्लमोगरू ट्रॉफी पर अपने छक्के दिखाए थे, जिस तरह से सौहार्द ट्रॉफी पर दिखाए थे, और जिस तरह से एमपीएल पर दिखाए थे, और जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय T10 क्रिकेट कतार प्रीमियर लीग पर वो दिखाए थे, तो आज निराशादायक वापस आ रहे हैं। इस केरला परिसर में भी सादिक एनएम के हजारों दर्शक, हजारों अभिमानियां हैं। तो आज भले ही उनकी बल्ले से ऊंचे स्ट्रोक नहीं देखने को मिले हो, कैच आउट के रूप में वापस आए हैं, तो बाकी बचे खिलाड़ियां, जो आतिफ के बारे में हम कह रहे हैं, शुरुआत होते ही बल्लेबाजी की शुरुआत बेहतरीन तरीके से निभाए थे आतिफ, और शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक अपनी बल्लेबाजी बरकरार रखते हुए वाकई अपनी आगमन को इतने सुंदरता से दिखाए हैं आतिफ एनएम के साथ। पांचवी गेंद एजाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट से गोरी यंग बॉयज के भरोसेमंद गेंदबाज, और इस बार उल्टे हाथ के साथ थर्ड मैन की दिशा पर गेंद को खेले। यहां पर एक सिंगल रन प्राप्त होंगे, और इस सिंगल रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 59 रन 59। आखिरी गेंद बचे हैं, इनिंग्स के आखिरी गेंद। ये 6 ओवर की मैच है, और इससे पहली वाली मैच पर टीम एलिगेंट 58 रन बनाकर 59 रन के लक्ष्य दिए थे एचएफसी हरे कला को, लेकिन टीम एलिगेंट के खिलाफ वो रन नहीं बना पाए थे एचएफसी हरे कला। तो यहां पर देखना होगा कि आखिरी गेंद पर कितने रन निकल आते हैं। और इस बार खेलने के प्रयास, लेकिन विकेट कीपर के हाथ पर गेंद, डॉटेड डिलीवरी, और इसी के साथ 59 रन पर अपनी इनिंग समाप्त किए हैं एनएम जप्पू मैंगलोर। 60 रन के लक्ष्य, 60 is the target from 36 balls, 60 is the target from 36 balls। तो क्या होगा यहां पर बल्लेबाजी पर 60 रन के लक्ष्य देने के बाद एनएम जप्पू मैंगलोर किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, और यहां पर बल्लेबाजी गोरी यंग बॉयज की किस तरह से होंगे, ये तो सवाल है, देखने के बाद ही पता चलेंगे। क्योंकि इस मैदान में हम न एनएम जप्पू को ऊंचे दर्जा पर देख सकते हैं, न गोरी यंग बॉयज को, क्योंकि ये मैदान गेंदबाज और बल्लेबाज की क्षमता के ऊपर चलता है। तो ऐसे में इस 60 रन के लक्ष्य को किस तरह से स्वीकार करेंगे, ये तो इंतजार है दर्शकों को। और उससे पहले इस प्रतियोगिता के कामयाबी के पीछे जितने भी लोग खड़े हैं, हम उनके नाम लेना चाहते हैं। निश्चित रूप से छोटे समय पर अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास पर पहली बार बनाने वाले इस प्रतियोगिता को अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप प्रस्तुत किए हैं ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 के नाम पर। छोटी सी दिनों पर एक अहम उद्देश्य के साथ, एक सदुद्देश्य के साथ दोनों राज्यों के खिलाड़ियों को मिलाते हुए, आपस पर इस अंडरआर्म की मिट्टी की खुशबू को दोनों राज्यों के बीच मिलाते हुए अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप इतने बेहतरीन ऐतिहासिक क्रिकेट श्रृंखला यहां पर सजाए हैं। तमाम दर्शकों से, देश विदेशों पर देखने वाले दर्शकों से वाहवाही पाए हैं, प्रशंसा पाए हैं। तो इस श्रृंखला के पीछे अपने मेहनत सजाने वाले कई सारे महारथियां, वाईएफसी हारिस वाईएफसी चेयरमैन है वाईएफसी कन्नूर के, केवल 2 दिन पहले विदेश से यहां पर लौटकर इस प्रतियोगिता के लिए, ऐतिहासिक इस प्रतियोगिता के लिए विदेश से लौटकर हमारे साथ जुड़ते हुए इस श्रृंखला के कामयाबी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हारिस जी आपको। और उसी तरह फिरोज मंजेश्वरा 5 साल बाद इस मैदान पर कर्नाटक के खिलाड़ियां यहां पर खेल रहे हैं, और 5 साल पहले फेमस मंजेश्वरा यहां पर फ्लड लाइट के क्रिकेट श्रृंखला बनाए थे, और उसी वक्त इस फिरोज मंजेश्वरा अपने क्रिकेट को इस्तीफा दे दिए थे इस मैदान में।
तो आज उस इस्तीफा के बाद क्रिकेट के साथ जुड़ते हुए इस प्रतियोगिता में अपने योगदान इतने बड़ी मात्रा पर दे रहे हैं फिरोज मंजेश्वरा, और उसी तरह इरशाद, मुनीश, कौसर, अस्कर, इम्तियाज और खास करते हुए हमजा, अमन अरमांस भी है जुड़ते हुए। हमजा भी जब इस मैच के प्लानिंग बने, योजना बने, तो सबसे पहली बार हमें कॉल किए थे हमजा और कहने लगे कि नवाज जी, हम एक ऐतिहासिक क्रिकेट श्रृंखला बना रहे हैं केरला की मिट्टी में, तो आप यहां पर आ जाइएगा, बहुत ही सुंदर होगा, बढ़िया होगा ये मैच। लेकिन यहां पर आके देखने के बाद तो हमें ये एहसास हुआ निश्चित रूप से ये बहुत ही बढ़िया श्रृंखला यहां पर बनाए हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप ने ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 के नाम पर। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों पर आप इससे भी बेहतर, जितने आपके ताकत है, निश्चित रूप से हम निरीक्षण नहीं कर सकते आपकी सामर्थ्य को, तो आने वाले दिनों पर इससे भी बेहतर श्रृंखला के साथ आप चमके। वाकई फिरोज मंजेश्वरा और हारिस वाईएफसी के योगदान के साथ फिरोज मंजेश्वरा कई बार, कई सालों तक एनएम मैंगलोर पर अपने किरदार निभा रहे थे, कई सालों तक एंगफेन सुरवा में भी अपने किरदार निभाए हैं फिरोज मंजेश्वरा ने। लेकिन आज खेलने की बदले में वो विदेश पर हैं और खेलने की इस्तीफा देने के बाद खेलने वाले खिलाड़ियों को इस तरह से प्रोत्साहन करते हैं, क्रिकेट की श्रृंखला को प्रोत्साहन करते हैं फिरोज मंजेश्वरा। हम निश्चित रूप से धन्यवाद अर्पित करते हैं फिरोज मंजेश्वरा और हारिस वाईएफसी कन्नूर को। आपके प्रोत्साहन इसी तरह हमारे साथ बने रहे। और इस क्रिकेट श्रृंखला के प्रायोजकों के रूप पर आप देख सकते हैं चैंपियन स्पोर्ट्स, हेयरक्राफ्ट, चम्मू अरिमला, जस्सी गुडलक, रियाज कुंजत्तूर, चेम्मी होसंगड़ी, मुनीश मुन्नी, अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स दिनेश चक्रवर्ती, फयाज क्लाई ब्लू, रहीम बाबा, कुंजी न्यू स्टार कुंजत्तूर, चंद्रू केएफसी कुमला, फिरोज मंजेश्वरा, रकीब सऊदी अरेबिया, चम्मी सऊदी अरेबिया जैसे बहुत ही बड़ी महारथियां, एके मैंस अमन्स, अरमांस अमन्स अंडरआर्म क्रिकेट के एक बहुत ही बड़ी दीवाने हैं। तो इन तमाम महारथियों के योगदान के साथ इस प्रतियोगिता को हम देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगली आवाज अब्दुल रहमान जी के हो, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है दोस्त, तमाम दर्शकों के डिमांड के साथ मलयालम पर इस मैच को वीक्षक विवरण देंगे हमजा जी, अब्दुल रहमान जी। आइए, सारे के सारे कर्नाटक के तमाम क्रिकेट के प्रेमियां इंतजार कर रहे हैं आपकी जबान से उस मलयालम के वीक्षक विवरण सुनने के लिए। स्वागत है अब्दुल रहमान जी आपको। താങ്ക് യു നവാസ്. അതിമനോഹരമായ ശബ്ദത്തിലൂടെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെ ക്രിക്കറ്റിലൂടെ ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ടൂർണമെന്റിനെ സുന്ദരമാക്കുമ്പോൾ, അതേപോലെ സതീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ മനോഹരമായ ശബ്ദത്തിലൂടെ ഈ ടൂർണമെന്റിനെ സുന്ദരമാക്കുമ്പോൾ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എതിരാളികൾ നൽകിയ 60 റൺസ് എന്ന ഈ വിജയലക്ഷ്യം ഗോറി യങ് ബോയ്സ് ഏത് രീതിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. പ്രഗത്ഭരായ ബോളർമാർ, പ്രഗത്ഭരായ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ തുടരുകയാണ്. മുജീബ് പന്തെറിയുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രൈക്കിൽ സന്തു ബണ്ടുവാൾ, മികച്ച ഡ്രൈവ്, ഇവിടെ ചെറിയ തോതിലുള്ള മിസ്ഫീൽഡ് നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു റൺസ്, രണ്ടാമത്തെ റൺസിനോടുകയാണ്. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ റൺസും പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിലപ്പെട്ട 2 റൺസുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ നേരത്തെ നവാസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലത്തെ കളിയും ഇന്നത്തെ കളിയും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കർണാടക ടീമുകളുടെ മത്സരാർത്ഥികളും ഇന്നലത്തെ കേരളത്തിലെ മത്സരാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ നാം വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ്, ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇന്നത്തെ തികച്ചും ടെക്നിക്കൽ ക്രിക്കറ്റാണ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർണാടക കളിക്കാരാണെങ്കിൽ. ഇന്നലത്തേത് തികച്ചും അറ്റാക്കിംഗ് ക്രിക്കറ്റാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ മറ്റൊരു പന്തുമായി മികച്ച പന്ത് മിഡ് വിക്കറ്റിലൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ട് സന്തു തന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മറ്റൊരു റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യ ഓവർ പുരോഗമിക്കുന്നു. സ്കോർ 4-0, 5-0. നൗഫൽ ഗോറി സ്ട്രൈക്കിലാണ്.
അപകടകാരിയാണ്. നൗഫൽ ഗോറിയുടെ ബാറ്റിന്റെ ചൂട് കേരളത്തിലെ മണ്ണങ്കുഴി സ്റ്റേഡിയം കഴിഞ്ഞ വർഷമല്ല അതിനു മുമ്പത്തെ വർഷം കണ്ടതാണ് നാം. ഇവിടെ അടുത്ത പന്തുമായി മുജീബ്. ഓ മികച്ച പന്ത്, മികച്ച ഫീൽഡിംഗ് ആതിഫ് നടത്തുന്നു. നേരത്തെ ആതിഫ് റൺഔട്ടിലൂടെ സന്തു പുറത്താവുകയാണ്. ഇവിടെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആതിഫിന്റെ കരസ്പർശം കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു വിക്കറ്റ് കൂടിയാണ് സന്തുവിന്റെ വിക്കറ്റ്. അപകടകാരിയായ സന്തു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ടൂർണമെന്റ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അണ്ടർആം വേൾഡ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അഭിമാന പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ടൂർണമെന്റ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ, കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കർണാടകയുടെ ഒരു പൂളും കേരളത്തിന്റെ ഒരു പൂളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ 88 മത്സരാർത്ഥികൾ, ഇന്ന് കർണാടകയുടെ പ്രഗത്ഭരായ 88 മത്സരാർത്ഥികൾ, ഏവരും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട മത്സരാർത്ഥികൾ ഇവിടെ മത്സരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റാണ് ഇവിടെ വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഫിറോസ് മഞ്ചേശ്വരമാവട്ടെ, ആരിസ് YFC കണ്ണൂർ ആവട്ടെ, ഹംസ പഞ്ചമാവട്ടെ, ഇർഷാദ് കുഞ്ചത്തൂരാവട്ടെ, മുനീഷാവട്ടെ, കൗസറാവട്ടെ, അക്സറാവട്ടെ, ഇംതിയാസ് ആവട്ടെ, അമാൻ അർമാൻസ് റഹ്മാനിയ ആവട്ടെ. അമാൻ അർമാൻസ് റഹ്മാനിയ കുമ്പളയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ഭ്രാന്തൻ കൂടിയാണ്. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ക്രിക്കറ്റ് ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്തൻ പോലെ ക്രിക്കറ്റ് ഭ്രാന്തന്മാർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന നാടുകൂടിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം. ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രതിഭ ബാസിത്ത് കൊപ്പള ഇവിടെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച സഹകരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർണാടകവും കേരളവും കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒരു സല്യൂട്ട് തന്നെ അടിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ, ഇതിന്റെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക്. അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. യങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗാന്ധിനഗർ ബ്രദേഴ്സ് മക്കിയാർ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. രണ്ട് ടീമിന്റെയും മത്സരാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തങ്ങളുടെ സൈനപ്പ് പൊസിഷനിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആദ്യ ഓവർ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 60 റൺസിനെ പിന്തുടരുന്ന ഗോറി യങ് ബോയ്സ് 5 റൺസിന് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ സ്ട്രൈക്കിൽ അഷ്റഫ് സ്ട്രൈക്കിൽ, അൽതാഫ് സ്ട്രൈക്കിലാണ്. നോ സ്ട്രൈക്ക് എൻഡിൽ നൗഫൽ ഗോറിയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ടൂർണമെന്റ് ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് അവസാനിക്കുന്നില്ല. അടുത്തയാഴ്ച ചെയ്ത കുമ്പളയിൽ KPL, അത് കഴിഞ്ഞ മണ്ണങ്കുടിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സെലക്ടഡ് മണ്ണങ്കുടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 6 ദിവസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കേരളക്കരയിലെ പ്രഗത്ഭരായ 160ഓളം മത്സരാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന 2 ലക്ഷം ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്ക്, 1 ലക്ഷം രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന, ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് ഗോൾഡ് കോയിനും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് സിൽവർ കോയിനും നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടൂർണമെന്റ് ഇതാ വരവായി. ഈ മാസം അവസാനം 27-ന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട്, മാർച്ച് 27-ന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം 1-ാം തീയതി അവസാനിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിലേക്ക് വരെയും ഞങ്ങൾ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. റിയാസാണ് പന്തെറിയുവാൻ തന്റെ കരങ്ങളിൽ പന്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 5 റൺസ്, ഇനി 55 വേണം 30 പന്തിൽ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റ് വിജയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഗോറി യങ് ബോയ്സിന് 30-ൽ 55 വേണം. ഓ, കാറ്റിൽ ഉയർന്നു വന്ന പന്തിത അനായാസം കൈകളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ടിട അൽതാഫിന് തിരിച്ചയക്കുകയാണ്. അൽതാഫ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഗോറി യങ് ബോയ്സിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ ഓരോന്നായി ചിറകത്തി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും 29 പന്തിൽ നിന്ന് 55 റൺസ് വേണം. 29 പന്തിൽ നിന്ന് 55 റൺസ് വേണം ഇനിയും വിജയിക്കുവാൻ. ഇവിടെ പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ രാജേഷ്, ഗോറി യങ് ബോയ്സിന് വേണ്ടി 4-ാം നമ്പറിൽ രാജേഷ് നൗഫലിനൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എറിഞ്ഞ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയത്. റിവേഴ്സ് ഷോട്ടിന് മുതലവേ ടോപ്പ് ടച്ചായി ക്യാച്ച് ഔട്ടായി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അഷ്റഫ്. അൽതാഫ് നിരാശനായി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ രാജേഷ് നോ സ്ട്രൈക്ക് എൻഡിലേക്ക് നൗഫൽ ഗോറി
സ്ട്രൈക്കിൽ തുടരുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിലേക്ക്. മംഗളൂരിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയ ആതിഫ് ഇന്ന് അതിമനോഹരമായ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടനം നടത്തിയത്. ആദ്യം ബൗണ്ടറിയിലൂടെ അദ്ദേഹം തന്റെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേടിയത് 4 ബൗണ്ടറികളും ഒരു പട്ടുകൂറ്റൻ സിക്സറുമാണ്. ഇതായിരിക്കണം ക്രിക്കറ്റ്. അടുത്ത പന്തുമായി ഓവർ ദ വിക്കറ്റ് പന്തെറിയുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നു. നൗഫൽ ഗോറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പന്ത്. 55 വിജയലക്ഷ്യം. ഓ, സീപ്പിലൂടെ മനോഹരമായ ഷോട്ട് ഓൺ ബോൾ. ഒരു ബൗൺസിന് ശേഷം ഫീൽഡറുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ റൺസ് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. മനോഹരമായ ഫീൽഡിംഗ്. 6-ൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് സ്കോർ. രാജേഷിന് ആദ്യമായി അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു പന്തുമായി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ്. 2 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്കോർ ബോർഡിൽ 6, 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഗോറി യങ് ബോയ്സ്. അൽത്താഫിനെയും സന്തുവിനെയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഗോറി യങ് ബോയ്സ് തിരിച്ചു വരവ് നടത്തുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. അടുത്ത പന്തുമായി രാജേഷ്. ഡെലിവറി. മികച്ച ഇൻ സ്വിംഗർ. ഇവിടെ പ്രതിരോധം നടത്തി. മനോഹരമായ പന്തായിരുന്നു. മനോഹരമായ പന്ത്. ശ്രീലങ്കയുടെ മലിംഗ എറിയുന്നത് പോലെ യോർക്കർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എറിഞ്ഞത്. നന്നെ പണിപ്പെട്ടാണ് രാജേഷ് അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചത്. 6 റൺസ് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേരിട്ട 9 പന്തുകളിൽ നിന്ന്. ഇവിടെ അണ്ടറാം വേൾഡ് ചരിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴിയൊരുക്കുകയാണ്. അണ്ടറാം വേൾഡ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. അടുത്ത മത്സരത്തിന് സൈനപ്പിന് ഗാന്ധിനഗറിന്റെ ടീം അംഗങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്ത മത്സരം യങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗാന്ധിനഗർ ബ്രദേഴ്സ് മക്കിയാർ. 2 ടീമും സൈനപ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ അണ്ടറാം ലോകം തന്നെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ശില്പികളിൽ 2 പേർ ഇതാ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. YFC കണ്ണൂരിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ ഹാരിസ് YFC കണ്ണൂർ, അതേപോലെ ന്യൂ സ്റ്റാർ കുഞ്ചത്തൂരിനെ എന്നും ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇർഷാദ് കുഞ്ചത്തൂർ. 2 പേരെയും സ്നേഹാദരവോടുകൂടി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത പന്തുമായി മികച്ച പന്ത ലെഗ് സൈഡിൽ കളിക്കുന്നു. 1 റൺസ് നേടുന്നു. സ്കോർ ബോർഡിൽ 8. ഇനിയും 52 റൺസ് വേണം വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ. ഇർഷാദ് ന്യൂ സ്റ്റാർ, അതേപോലെ ആരിസ് YFC കണ്ണൂർ. എത്ര പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞാലും മതിവരില്ല എന്നറിയാം. ഇതേപോലത്തെ ടൂർണമെന്റ് വെറും 12 ദിവസങ്ങളുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ മാത്രം ഈ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി. ഈ ടൂർണമെന്റ് അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന് വഴിമാറുമ്പോൾ അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയ കേരള കർണാടക കോമ്പറ്റീഷൻ ഇന്നലെ കേരളക്കരയിലെ പ്രഗത്ഭ ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ടീം ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. എപ്പിസോഡ് ഇന്ന് ആരായിരിക്കും ഫൈനൽ മത്സരത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. ഇതിനൊക്കെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഇർഷാദ് ന്യൂ സ്റ്റാർ, അതേപോലെ ഹാരിസ് YFC കണ്ണൂർ, 2 പ്രഗത്ഭർ ഈ വേദിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 പ്രഗത്ഭരെയും വേദിയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. Once again, warm welcome for Harris of YFC Kannur, chairman of YFC Kannur. Warm welcome, sir, for this wonderful cricket tournament. You are the architect of this cricket tournament, so that on behalf of Underarm World WhatsApp group as well as on behalf of all cricket lovers, warm welcome to Mr. Harris as well as Irshad New Star. ದಯಮಾಡಿ 2
ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಾರ್ ಟೂ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. At the same time, I would like to invite Mr. Deepak of NM Cricketers Mangalore, one of the fantastic and outstanding left-hand batsmen of NM Cricketers Mangalore. Mr. Deepak, kindly request you to come here and take your seat on behalf of the organizers, Underarm World WhatsApp group, inviting you into the dais. So I request Mr. Deepak to come here. ದಯಮಾಡಿ NM Cricketers Mangalore ತಂಡದ ದೀಪಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So meanwhile, 9 on the board, 9 for the loss of 2 wickets, almost struggling, I think so, Gori Young Boys, because they lost 2 wickets. The big blow is a wicket of Santosh, is back into pebble in the form of run out, and at the same time Altaf who's caught in the over number the first, they got a big blow. That's why they really not recovered from that early breakthrough. But these two batsmen, and having these two experienced batsmen, left and right combination, certainly Gori Young Boys has got a still they got opportunity to bounce back this match. This time chipped that one straight to the hands of Vaidis Logan. That's the end of Rajesh innings. Not really giving any power in that stroke. He just time that one, I will tell you. If he able to put extra little bit power behind the stroke, he can deliver that one out of that over that deep long on fielder. But because of that, he isn't enough power behind that strokes. He pays the penalty for that. Rajesh back into pavilion. Gori Young Boys lost their very important wicket. The left-hand batsman, the busy customer, and man who can change the complexion of the match, Rajesh. Little bit disappointed with this short selection, and just pays the penalty for that. And Atif, what a match, what a welcome match here for NM Cricketers Mangalore. Is giving full effort in this match. Is scored a valuable 30 runs out of 19 balls. Then he just came into ball and then he picked up a wicket. That means he is the man with the golden arm. What a big wicket here for Atif. The wicket of Rajesh is always going to be a key wicket, the big wicket. And now it's a really testing time here for the batsmen of Gori Young Boys. How well they managed to bounce back here. Needed some partnership, and at the same, along with the partnership, they need to catch the run rate required. That's going to be very, very important here for Gori Young Boys. Now for once again trying his level best to play the slog sweep shot so that he can get some big score like boundaries and sixes, but still it's against the formidable bowling department of NM Cricketers Mangalore. Always going to be it's very difficult one here for Gori Young Boys, but not impossible in cricket. Now fall, of course, so far is trying his level best to get some big strokes, but so far he fails to get. Here is a little bit disturbance coming from behind the wicket. I think Samir is not impressed with the field set. He just wanted to change the field. That fielder in the square leg need to come a little bit finer for the left-hand batsman Deepak. Deepak facing Riaz outside the run of off time. Nothing much to do with the delivery. Just shouldering his arm and left the ball into the hands of wicketkeeper behind the stump. And here in our the main stage, along with Deepak, we are having Mr. Kishan as well, one of the former member of NM Cricketers Mangalore, as well as Barke friends. And here is a one more addition to total scoreboard moves on to 13 on the board. 13 for the loss of 3 wicket. He is the one, Kishan, in the beginning is the pillar of NM Cricketers Mangalore. They laid the foundation in the beginning, and here is the next one, Atif. Right arm over the wicket bowls. This time on-handed stroke towards the deep backward square leg region. Good piece of fielding there by the fielder Taufik in that occasion, putting his 100% to stop that one, but he managed to stop the boundary in that occasion, so that batsmen have to settle for the single. With that single, scoreboard moves on to 14 on the board. Target 60, 46 more runs required.
This time again, batsman across the line. A chance of run out in the non-striker's end, but not quick enough from the fielder, because throwing end is a little bit distance here towards the non-striker's end. And that's why it's so easy for Deepak to complete that risky single. With that risky single, scoreboard moves on to 15 on the board. That means another 45 more runs required for the victory. So far, Atif bowled a fantastic over. Even the batsmen are trying their level best to get some big shot, but Atif not really settling the batsman. Down the leg side, going to be a wide. This is again, this is a third wide of the innings of Gori Young Boys. And even Gori Young Boys also bowled a very good line and length. They considered only one wides and considered one by and one leg by. So far, their disciplined bowling performance. Here, NM Cricketers Mangalore, they considered three wides so far in this over number 3 in progress. Atif bowls slower one, change of pace. That was a clever thinking there by Atif. That's why he's so important player for NM Cricketers Mangalore, because the way he was mixing up the deliveries so important in this format of the games. Again, the 3 overs completed, chasing 60 to win this match. Still, Gori Young Boys struggling for the right track and searching for the right track, and they got only 17 on the board. Now, see, straight away coming to the equation. 3 overs remaining, 18 balls remaining, and they have to get another 43 runs to win this match. 18 ball 43, I think is going to be a big ask, but not that much of big ask, particularly in this cricket ground. I will tell you, those who are missed out yesterday's match, you have watched some fantastic contest where it was even 70 runs scored quite easily in this cricket ground. This is a batting paradise, but question raising here for Gori Young Boys is that they playing against NM Cricketers Mangalore, one of the favorite of winning this cricket tournament after winning prestigious cricket tournament like Gori Young Boys Gori Trophy 2021 and one trophy which is the Sauharda Trophy at Derlakatte. Then they won the prestigious cricket tournament at Amlamaguru. So that means that the positive frame of mind what NM Cricketers Mangalore has got, that is certainly it's the problem here for Gori Young Boys, how well they managed to come out from that negative frame of mind what Gori Young Boys has got. Again, a lovely delivery there from Riaz, but Naufal, I think he is a little bit having a problem with his right leg after he is trying for the slog sweep shot. Might be the handle of the bat was hitting his thigh, so that is just feeling pain in that occasion, but not damage done in that occasion. Outstanding NM Cricketers Mangalore, they come out from the nowhere, just coming back to the season 2021. They started their season not a good season for them. They lost so many big tournaments, but once they back into this winning track, they are really unstoppable. And that's why it's so important here for Gori Young Boys to need to bat really very well if they want to win this match. Again, down the leg stamp going to be a wide. One more addition to total the fourth wide of this inning. So with the addition of that single, scoreboard moves on to 18 on the board. 18 for the loss of 3 wickets. Gori Young Boys searching for the right track, but they are still struggling to get the run rate required. Riaz again trying for the helicopter shot, but not quite able to implement that one, because the line of the delivery, the pace what generated by Riaz, really problem for Naufal to get the timing behind that helicopter shot, so that he able to get a single on in that occasion. That single will not going to help Gori Young Boys. They needed some big shots like boundaries and sixes if they wanted to catch the run rate, but this batsman has got ability, especially the Deepak. I think Deepak, we are having one more senior Deepak, the one who are really dominated in underarm cricket for more than 20 to 25 years. One of the fantastic left-hand batsmen. Here is the Deepak of Gori Young Boys trying his level best. Chance of run out. If it is a direct hit, I think is all over for Naufal. The second time is Naufal survived from that run out. The backstep fielder Samir couldn't manage to hit the stumps. If it is a direct hit, I think it's going to be a chance here for run out. And Naufal, wait and see how well he's going to grab the opportunity of that life. Yeah, so far so good in this over. Very tidy line and then right now the wicket. Again looking for the helicopter shot. Beat the infield ball, running down to define like boundary. Samir behind the ball, but before he going to collect the ball by running back, the batsman got ample time to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 22 on the board.
That means still they are 38 more runs away from the victory. But deliveries remaining only 14. Riaz from the far end. Naufal this time again. That was well within the reach of the batsman. Naufal thought it might be a wide, but umpire says it was a right delivery just inside the line. Just inside the line, so that no damage done. And each and every dot ball. The match looks to be a little bit difficult here for Gori Young Boys. Needed badly some big hits. Bounce rise at one, lack of placement. Mansoor, the fieldsman, there in the short extra cover, off stopping that one, so that it gives time for the batsman to cross over. One more good over there from NM Cricketers Mangalore. Let be correction, surpassed the fielder there in the short mid off, fields the ball. Completion of over number 4. Searching for the right track, chasing 60 to win this match. Gori Young Boys struggling in the middle. 23 on the board for the loss of a 3 wicket. That means another 37 more runs required for the victory in remaining 2 overs. 37, that means 18.5 runs per over is the required run rate. Really it was a big ask, but not impossible. This is a decider over. Looks like Rilwan is the bowler, has been introduced from the far end with the jersey number 45. Rilwan is the one who is the one more experiment what NM Cricketers Mangalore has got in the bowling department. Is so good, the responsible for the success of NM Cricketers Mangalore in the recent 5 to 6 tournaments. He is the one who really produced a very important breakthrough whenever the NM Cricketers Mangalore required. Bowler's back drive, the on a follow through. Rilwan couldn't manage to catch the ball because Naufal hits that one very firmly. Back to bowler after having a fingertips ball, went towards the deep long on region for a walkable single. With that single, scoreboard moves on to 24 on the board. 24 for the loss of 3 wicket. Gori Young Boys need to do something special here. 11 balls remaining. There's so many runs required. 26 runs required for the victory. Again looking for the blind shot without seeing the line of the delivery, without covering that line of the delivery. Deepak looking for the slog. Big shot towards the deep mid wicket, but missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest. 10 balls remaining. 36 runs required. Once again the identical mirror display of previous delivery. The similar line and length, similar reaction coming from the batsman to go for the big shot. Missed it completely. Again there is no possibility of any run. Red one. Right across the line. Beautifully driven, but lack of placement. Ball went towards Riaz towards a wideish long on. With that single, scoreboard moves on to 30. 25 on the board. 25 for the loss of 3 wickets. That means another 35 more runs required for the victory, but deliveries remaining only 8. Appeal for leg before wicket, but pitched outside the line of leg stump. Certainly Rilwan maybe is asking for leg before wicket, but he know exactly that ball pitched outside the line of leg stump. But nice delivery, that was a good delivery, unplayable one. That's why Rilwan is so impressive in his bowling. That was too late. Is it too late here for Gori Young Boys? Has now started to talk with his bat. Took a lot of time to get one maximum here. He just came as an opener for the side, but in the over of over number 5th, he's just got a 6. Will it go into enough for Gori Young Boys? Because the score is jumped into 31. That means in the last over they required 29 runs in the final overs. Absolutely big ask. 5 sixes. If you review the pages of the history of cricket, where it was a 30 runs scored, of course you will get even the 34 to 35 runs scored in the last final over. But in a recent tournaments, it becomes very popular in social media. That was on 20 runs in the final over. The match between KFC Kodikal versus Young Friends Suruva, which is played at a Chocobetto SS Trophy.
Then 20 runs are scored. 19 runs are scored in the final over. But here is a more 29 runs required. But just look at the ground here. Seeing the ground, the dimension of this cricket ground. If the batsman able to hit 5 sixes, I don't think it's not much of easy one. But wait and see. Tanvir brought into attack, one of the senior most player for the side of NM Cricketers Mangalore. The left arm bowler starts with the delivery, which is a little bit outside the line of off stamp. Deepak looking for the big shot, massive stroke, and he got just a single for that. 5 balls, 28 runs required for the victory. The last opportunity of our Gauri young boys. Can Naufal will make the history here by hitting the 5 sixes in a row. That's what Gauri young boys required to qualify for the next round. But here is a Tanvir, the left arm bowler. Balls across the line, chance of catch, and is dropped that one by the mid-wicket fielder. And the batsman just settled for the single. I don't think it's going to be that much of costly. I request two teams captain, please report here for the toss. The captain of Young Friends Gandhinagar as well as brothers Makhiyar. Please report here in front of commentary box for the toss. Right of our commentary box, please. Dancing down the track. Just a formalities left in this game. It's going to be a run out is taken place in the non-strikers end as well. NM Cricketers Mangalore started their journey in this Gladiator Trophy 2021. The Gauri young boys might be a little bit disappointed with the performance once again. Maybe they are not passing with the good times. That was a part of cricket, isn't it? I request two teams captain, please choose your ball. The captain of both the teams, please come here and choose your ball. After the toss, you should choose the ball. And warm welcome to Mr. Mohammad Imran. I request Mohammad Imran to come here. So on behalf of organizers and on behalf of all cricket lovers, we welcome Mr. Imran, Mohammad Imran, towards the commentary box. Izaz is the new batsman in. It's too late for him to come here because almost the match is out of the hands. Just a 4 minutes left in this game. This time, what a shot! A lovely shot! At last, it was a little bit entertainment here from Izaz Junior. Maybe the Gauri young boys captain thinking about why not I am sending him early to open the innings. Such a wonderful cricketing stroke, I will tell you. Right from the middle of the bat. Towards the deep backward square leg for the huge 6. Here he is again. Again he went for the sweep shot. Gets the single. That's it. NM Cricketers Mangalore. They're entering into the quarter final of this most prestigious Gladiator Trophy 2021. Of this, they will definitely going to meet Team Elegant. Now Young Friends Gandhinagar versus brothers Makhiyar. After that match, the Young Friends takes on KFC Kodikal, one of the high voltage match after the match between Young Friends Gandhinagar versus brothers Makhiyar. ದಯವಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Before the Young Friends Gandhinagar versus brothers Makhiyar, the match will going to start here. Once again, welcome Star Nawaz for the further explanation of the match in our national language Hindi. Thank you very much. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಆ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಎನ್ಎಂ ತಂಡದ ವಿಜಯದ ರುವಾರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತಹ ಆತಿಫ್ ಎನ್ಎಂ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತಿಫ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ದೀಪಕ್ ರವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಎಂ ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಟಗಾರ, ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ, ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೀಪಕ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತಿಫ್ ರವರಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಳೆದ ಹಲವು ಸಮಯಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಎಂ ತಂಡವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು 17 ನಂಬರಿನ ಆ ಜರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಂಗೊಳಿಸಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೈದ ಆ ಪುನರಾಗಮನಗೈದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೇ ಎನ್ಎಂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತಿಫ್ ರವರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಆತಿಫ್ ರವರೇ. ಮತ್ತೆ ಎನ್ಎಂ ತಂಡವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆತಿಫ್ ರವರೇ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಡಿದಂತಹ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆ ಎನ್ಎಂ ತಂಡವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಲಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನಂದಿಸಿದಿಲ್ಲ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಗಮನ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಎನ್ಎಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ಎಂ ಇದರ ಆಟಗಾರ ಆತಿಫ್ ರವರು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಎನ್ಎಂ ಇದರ ದಂತಕತೆ ದೀಪಕ್ ರವರು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದೀಪಕ್ ರವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎನ್ಎಂ ರವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ 2 ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದಂತಹ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಎಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನ, ಚತುರ ಆಟಗಾರರನ್ನ ತನ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೇರಳದ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪರಿಸರದ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 2 ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಈ ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಪರಿಸರದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆ ಸ್ವಾದವನ್ನ, ಆ ರುಚಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಹಾರಿಸ್ ವೈಎಫ್ಸಿ ಕಣ್ಣೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿರೋಜ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಇರ್ಷಾದ್, ಕೌಸರ್, ಅಸ್ಕರ್, ಹಮ್ಜಾ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಮುನೀಫ್, ಅರ್ಮಾನ್ಸ್, ಅಮನ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ.
और एक बार बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों को ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 के लिए। आज के ये तीसरी मैच, कल के दिन तो केरला परिसर के बलाढ्य 8 टीमों के बीच मुकाबला हमने देखे हैं। एनई पोसोट फाइनल पर विराजमान होकर अपने विपक्षीय टीम के इंतजार पर बैठे हैं। तो आज ये तय हो जाएगा कि कर्नाटक के अंडरआर्म के दिग्गजों में कौन बनेंगे फाइनलिस्ट। आज की ये तीसरी मैच यंग फ्रेंड्स गांधीनगर के खिलाफ ब्रदर्स मक्यार। आरंभिक बल्लेबाजी यंग फ्रेंड्स गांधीनगर अपने आरंभिक 2 खिलाड़ियों को मैदान पर उतर चुके हैं, फैजन और मुस्तफा। फैजन और मुस्तफा की जोड़ी गेंदबाजी पर खड़े हैं। मुन्ना ब्रदर्स मक्यार के भरोसेमंद फेस गेंदबाज, और उसी तरह यंग फ्रेंड्स गांधीनगर अपनी विश्वास भरे खिलाड़ी को आरंभिक खिलाड़ियों के रूप पर मैदान पर भेजे हैं। तो देखना है कि 6 ओवर पर चलने वाले इस मुकाबले में शुरुआत पर गांधीनगर कितने रन बना पाएंगे और किस तरह से रोक पाएंगे यहां पर ब्रदर्स मक्यार। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से मुन्ना, और बाहर गेंद को ऑफ साइड की दिशा पर खेले रफीक। रफीक के हाथ पर थे गेंद। रफीक लेफ्टी, ये नाम आप जाने होंगे। रमनाथ रई अभिमानी बड़गा के प्रस्तुति पर चले हुए फ्लड लाइट की रोशनी के नीचे एनएम मैंगलोर के खिलाफ सुपर ओवर पर अपने शानदार 2 स्टंपिंग के साथ एनएम को हराए थे रफीक लेफ्टी ने। दिव्य स्टार शांति अंगड़ी के एक भरोसेमंद खिलाड़ी है रफीक लेफ्टी। तो आज ब्रदर्स मक्यार पर अपने योगदान निभा रहे हैं। मुन्ना फिर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट से काफी अच्छी शैली के साथ गेंदबाजी करते हैं मुन्ना, और इस बार घुमाने के प्रयास यहां पर लेग बिफोर के जोरदार अपील, लेकिन अंपायर को बिल्कुल विश्वास नहीं नजर आया। अजित पटेल और मोहन यज्ञाडी इस मैच के ऑन फील्ड अंपायरों के रूप पर मशहूर रेफरियां। और इस बीच गेंद को खेले, और फील्डर तो अंदाज पर गेंद को उठाना चाहते थे, लेकिन उनकी अंदाज गलत निकले यहां पर, और गेंद सीधे सीमा रेखा पार किए हैं 4 रन। यहां पर मिले मिस फील्ड के जरिए ये चौका। यंग फ्रेंड्स गांधीनगर, क्या एसएस ट्रॉफी पर जिस तरह से आप लगातार 2 मैचों को जीतने के बाद क्वार्टर फाइनल पर पहुंचे थे, क्या इस बार भी आप अपनी कदर दिखा पाएंगे यहां पर। दूसरी तरफ ब्रदर्स मक्यार पावर प्ले के फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं यंग फ्रेंड्स गांधीनगर। तो इस सिंगल रन के साथ रन संख्या बने कुल मिलाकर 6 रन, 6 ऑन द स्कोरबोर्ड। शुरुआत के ओवर के 2 गेंद अभी भी बाकी। मुन्ना पावर प्ले पर अपनी फील्डिंग की सजावट की तरफ बार बार नजर घुमा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पावर प्ले पर अगर छोटी सी भी चूक हो जाए तो वो महंगे बनेंगे यहां पर। और इस बार भी उछालने के प्रयास, एक सिंगल रन मिलेंगे यहां पर शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। 30 गजों के दायरे के अंदर ही गेंद को रोक दिए गए। मुस्तफा हालांकि इस सिंगल रन के साथ नॉन स्ट्राइक पर पहुंचे। फैजन और मुस्तफा की जोड़ी, हरे टोपी के साथ आप मुस्तफा को देख सकते हैं, बाएं हाथ के खिलाड़ी। तो फैजन नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं, एक चौके लग चुके हैं फैजन के बल्ले से। और इस बार उल्टे हाथ के साथ गेंद को खेले, दोनों फील्डरों के बीचों बीच खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद तो सीधे ब्रदर्स मक्यार के फील्डर के हाथ पर पहुंचे। और यहां पर एक सिंगल रन मिलते ही रन संख्या बने 8 रन। शुरुआत की ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बिना कोई नुकसान के यंग फ्रेंड्स गांधीनगर। ये 6 ओवर की मैच है, 36 गेंदों के मुकाबला होगा इस मैदान में। शुरुआत की मैच पर टीम एलिगेंट जीत हासिल किए हैं, क्वार्टर फाइनल पर प्रवेश किए हैं। और दूसरी मैच पर एनएम जप्पो मैंगलोर आतिफ की उस लाजवाब बल्लेबाजी के साथ गोरी यंग बॉयज को हराकर क्वार्टर फाइनल की अहमियत पर अब खड़े रुके हैं। तो देखना है कि आज होने वाले अगले मैचों पर आखिरकार कौन से वो टीम होंगे जो फाइनल पर विराजमान हो जाएंगे। एक तरफ तो एनई पोसोट फाइनल पर विराजमान होकर अपने विपक्षीय टीम के तलाश पर है, तो आज मैंगलोर परिसर के
कर्नाटक के अंडरम के दिग्गजों के बीच होने वाले इस मुकाबले में किसके हाथ होगा ऊपर, कौन साबित करेंगे अपने आप को चैंपियन के रूप पर। अंडरम वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप मंजेश्वरा, इतिहास पर पहली बार दो राज्यों पर केरला और कर्नाटक के अंडरम के खिलाड़ियों को मिलाते हुए इस परिसर के लोगों को ही नहीं बल्कि देश विदेशों पर अंडरम के चाहने वालों को एक ऐसे प्रतियोगिता दिखाए हैं। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं यूट्यूब के जरिए कितने दर्शक यहां पर ऑनलाइन पर खड़े हैं। और इस बार घुमाने की कोशिश यहां पर मुस्तफा, बाएं हाथ के खिलाड़ी कोशिश जरूर अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि इस मैदान के लिए इस तरह की कोशिश गलत नहीं कह सकते। ऑफ साइड हो या ऑन साइड, बाउंड्री लाइन तो नजदीक लग रहे हैं। अगर बल्ले से गेंद टकराए तो गेंद को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं फील्डरों के लिए। और यहां पर जो भी खिलाड़ी बल्लेबाजी पर गैप ढूंढते हैं, दोनों फील्डरों के बीचों बीच बल्लेबाजी करते हैं, तो उनके लिए फलितांश अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि गेंद को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं इस मैदान में। गेंदबाज तैयार, अफीफ बाएं हाथ ओवर द विकेट से, और इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल के इशारा अंपायर से अतिरिक्त खाता पर और एक रन जुड़ेंगे। अफीफ ब्रदर्स मक्यार के एक भरोसेमंद खिलाड़ी, लंबे शरीर होने के बावजूद भी झुकते हुए गेंदबाजी करते हैं, जमीन के साथ जुड़ते हुए दिखाते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लाइन यहां पर। अफीफ इस मैदान में तो अगर इस तरह की गेंदबाजी दिखाए जिस तरह से अफीफ आपने पिछली गेंद दिखाए थे, वो लाइन, वो लेंथ, वो तेजी, सारे दिशा पर अंडरम गेंदबाजी के लिए जिस तरह की खूबियों की जरूरत है, जितनी क्वालिटी की जरूरत है, साफ साफ नजर आए पिछली गेंद पर। उसी तरह के गेंद अगर हर गेंद पर आप दिखाते हैं तो निश्चित रूप से विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को रन बनाने में बहुत ही दिक्कत हो जाएंगे। रन संख्या कुल मिलाकर बने हैं 10 रन, 10 ऑन द स्कोरबोर्ड। अफीफ, और इस बार थोड़े से खुलकर दिए, ऊंचाई नजर आए थे गेंद पर, लेकिन बल्लेबाज फाइजन इस गेंद को बिल्कुल नहीं समझ पाए। अगर थोड़ी सी भी अपनी दिमाग लगाया होता फाइजन पिछली गेंद पर, क्योंकि गेंद जब बल्ले के सामने 6 से 7 इंच ऊंचाई पर मिलते हैं तो ऐसे गेंदों को सजा देने के लिए बहुत ही आसान बन जाते हैं बल्लेबाजों के लिए। और इस बार भी डॉटेड डिलीवरी, क्या शानदार गेंदबाजी यहां पर। अफीफ छा रहे हैं आप इस मैदान में। यंग फ्रेंड्स गांधीनगर के खिलाफ अफीफ ब्रदर्स मक्यार के किरदार निभाते हुए लगातार ये दूसरी डॉटेड डिलीवरी। पहली गेंद डॉटेड डिलीवरी बने, दूसरी गेंद पर एक सिंगल रन निकल गए, और तीसरे और चौथे गेंद भी डॉटेड डिलीवरी। जबरदस्त, वाकई जबरदस्त। ब्रदर्स मक्यार लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से तैयार, और इस बार भी डॉटेड डिलीवरी। इस मैदान में मंजेश्वर के इस पंचायत मिनी स्टेडियम पर जो गेंदबाज अपनी गेंदबाजी अच्छे दिखाए हैं वही हीरो बने हैं इस मैदान में, क्योंकि यह मैदान बल्लेबाजों की तरफ इशारा करते हैं। छोटी मैदान है, लंबी लंबी स्ट्रोक लगने की संभावना ज्यादा बनते हैं, तो ऐसे मैदानों पर जब कोई गेंदबाज अपनी गेंदबाजी दिखाकर बल्लेबाज को रोकते हैं तो निश्चित रूप से प्रशंसा भरी बातें उनकी तरफ निकल आते हैं। ये अवश्य बनते हैं उनकी तारीफ करना, क्योंकि इस मैदान में बल्लेबाजों को रोकना इतनी आसान बात बिल्कुल नहीं है। ओवर की समाप्ति, दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने 11 रन। केवल मात्र 2 रन खर्च किए हैं पिछले ओवर पर आफिफ ने, केवल 2 रन। ऐसे मैदानों पर, इतने बेहतरीन प्रतियोगिता पर केवल 2 रन के साथ अपनी गेंदबाजी को दिखाना, यह निश्चित रूप से अच्छे गेंदबाजों के लक्षण है दोस्त। अगर ब्रदर्स मक्यार अपने गेंदबाजी इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से इस मैच पर, इस प्रतियोगिता में आपके नाम बहुत ही ऊंचे हो जाएंगे। अंडरम वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप प्रस्तुत करते हैं इस प्रतियोगिता को, ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021। 5 साल बाद इस मैदान में, 5 साल बाद कर्नाटक के खिलाड़ियां यहां पर खेल रहे हैं अपनी टीम को लेकर। 5 साल पहले जनवरी के महीने पर फेमस मंजेश्वरा ने फ्लड लाइट के प्रतियोगिता बनाए थे इस मैदान में। तब के बाद किसी भी कर्नाटक की एक टीम यहां पर भाग नहीं लिए थे, तो आखिरकार व्हाट्सएप ग्रुप, अंडरम वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप आज वो मौका दिए हैं
कर्नाटक के खिलाड़ियों को दोबारा अपनी क्षमता को यहां पर खुलकर दिखाने के, अपने क्रिकेट की चातुर्यता को पूरे देश विदेशों पर दिखाने के मौका दिए हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप ने। हम धन्यवाद अर्पित करते हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप के सारे एडमिन को और सारे सदस्यों को, खास करते हुए वाईएफसी के हारिस और उसी तरह फिरोज मंजेश्वरा, जो इस प्रतियोगिता में हमारे साथ दो पिलर के तरह हमारे साथ खड़े हैं। उनके प्रोत्साहन को हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। हम आशा करते हैं कि आपके प्रोत्साहन, आपके प्यार इसी तरह बने रहे हमारे साथ। फिरोज मंजेश्वरा और हारिस वाईएफसी। अयाज गेंदबाजी पर दाहिने हाथ ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे अयाज, और इस बार सीधे पैरों पर टकराए गेंद। इस बार विकेट के पीछे दौड़ते हुए गेंद, जब तक कि विकेट के पीछे फील्डर उस गेंद को उठाकर वापस करे। लेग बाई के जरिए एक रन दौड़कर पूरा किए हैं मुस्तफा और फाइजन ने। रन संख्या अब तक तो केवल 13 बने हैं स्कोरबोर्ड पर। इस मैदान में मैं यंग फ्रेंड्स गांधीनगर के खिलाड़ियों को बता दूं कि इस मैदान में अगर आप शुरुआत की बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कम से कम 6 ओवर पर 40 से 45 रन बनाना अवश्य होगा आपको, क्योंकि ये चोटी मैदान है। किसी एक ओवर पर अगर बल्लेबाजी की रफ्तार देके विस्फोटक बल्लेबाजी आपको नजर आए तो उस मैच को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे आपको। तो इसलिए हर एक रन भी मायने रखेंगे आपको। उल्टे हाथ खेलने के प्रयास, मुस्तफा सीधे बल्ले से गेंद जब नहीं टकरा रहे थे तो ऐसे में यहां पर देखिए ये नजारा, यहां पर ये नजारा देखिए, ये नजारा यहां पर ब्रदर्स मक्यार। सिर्फ गेंदबाजी करने से मैच नहीं जीत सकते दोस्त, अच्छे फील्डिंग की जरूरत होते हैं। एक शॉट के इशारा अंपायर से इतने मुश्किल पर लिए हुए रन को भी नहीं बचा पाए यहां पर यंग फ्रेंड्स गांधीनगर। बहुत ही चालाकी से ये दूसरी रन चुराए थे, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये दूसरी रन बिल्कुल मान्यता नहीं रखेंगे, क्योंकि दोनों खिलाड़ियां अपनी पहली रन समाप्त नहीं कर चुके थे। तो ऐसे में एकमात्र रन प्राप्त होंगे आप। अयाज फिर तैयार वाइट एम राउंड से, और इस बार गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा पर खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के ऊपर ही वाले सिरा लगने के बाद गेंद सीधे शॉर्ट फाइंड लेग की दिशा में। यहां पर भी एक सिंगल रन प्राप्त होंगे। रन संख्या बने 16 रन 16। तीसरी ओवर के 3 गेंद अभी भी बाकी। फ्रेंड्स ब्रदर्स मक्यार बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत दिखाते हुए इस मैदान में, और इस बार ऊंचे खेलने की कोशिश फाइजन। बल्ले के सिरा लगने के इशारा अंपायर से, तो ऐसे में एक रन फाइजन की खाता पर जमावट होते ही रन बने 17 रन। ये 17 नंबर जो है क्रिकेट की भाषा पर 17 पे खतरा कहते हैं। और मैं हम मिसाल के रूप पर आपको बता दें कि आज सुबह एनएम मैंगलोर आतिफ को 17 नंबर के जर्सी दिए थे, याद कीजिएगा। तो वो 17 नंबर को लेकर कितने खतरा बने गोरी यंग बॉयज को। तो यहां पर खतरा बन रहे हैं ब्रदर्स मक्यार को। 17 पर खतरा बन के वाइड निकले, यहां पर 18 बने रन संख्या 18। मुस्तफा और फाइजन स्ट्राइक पर खड़े हैं। मुस्तफा बाएं हाथ के खिलाड़ी, और इस बार गेंद को रफ्तार से खेले, बुलेट की तरह निकले यहां पर गेंद। ऐसे लगा कि बल्ले से टकराकर गेंद नहीं निकले थे, बल्कि बंदूक से गोली निकले थे यहां से। बिल्कुल टाइमिंग नहीं मिले। हम इसलिए बार बार आपको कहते थे कि ये छोटी मैदान है, यहां पर अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। गेंद के साथ नजरें मिलाने की जरूरत है यहां पर, गेंदबाज हो या बल्लेबाज या क्षेत्रपालक। चौके के बाद एक सिंगल रन यहां पर, और इस सिंगल रन के साथ रन संख्या पहुंचे कुल मिलाकर 23 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर 23 फॉर नो लॉस, बिना विकेट को ये नाबाद होकर 23 रन बनाए हैं, 23 बनाए हैं। तो अभी भी 18 गेंद शेष बचे हैं। देखना है कि इन 18 गेंदों पर यंग फ्रेंड्स गांधीनगर और फ्रेंड्स मक्यार के बीच, ब्रदर्स मक्यार के बीच ये मैच कितने हद तक दर्शकों को मनोरंजन दे पाएंगे। आज बुधवार होने के बावजूद भी मंजेश्वर परिसर के क्रिकेट के प्रेमियां हजारों संख्या पर यहां पर जमावट हुए हैं मैदान से बाहर, और कई सारे दर्शक ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ केरला के ही प्रेमियां नहीं, बल्कि कर्नाटक में भी
कर्नाटक के ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट के प्रेमियां आज विदेश पर है दोस्त। सऊदी अरेबिया, दुबई, कतार, ओमान, कुवैत जैसे राष्ट्रों पर अपने काम के सिलसिले में दिन गुजार रहे हैं, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलते हैं वो यूट्यूब के जरिए यहां की अंडरआर्म क्रिकेट के स्वाद उठाते हैं। और मैदान पर देखिए ये स्टंप आउट, मुस्तफा अपनी पारी समाप्त करते हुए वापस जा रहे हैं टगआउट पर। बाएं हाथ के खिलाड़ी मुस्तफा शुरुआत के 3 ओवर पर 23 रन चुराए थे यंग फ्रेंड्स गांधीनगर के लिए। चौथे ओवर की शुरुआत होते ही मुस्तफा अपने इनिंग्स समाप्त करते हुए वापस जा रहे हैं टगआउट पर। तो अब देखना होगा कि कौन से खिलाड़ी मैदान पर आएंगे, क्या कदर दिखा पाएंगे अपने बल्लेबाजी के। यहां पर जो जीता वही सिकंदर। बल्लेबाजी पर अगर कोई बल्लेबाज चमकते हैं तो उनके नाम रोशन हो जाएंगे। अगर कोई गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के चालाकीपन के साथ यहां पर चमकते हैं तो निश्चित रूप से उनके नाम भी रोशन हो जाएंगे, क्योंकि आजकल तो ये टेक्निकल दुनिया है। पुराने दिनों पर अगर आप अपनी याददाश्त को 15 या 20 साल पीछे लेके जाते हैं तो उन दिनों में जितने भी खिलाड़ियों को आपने देखा होगा, कर्नाटक की टीम हो या केरला की टीम, उन दिनों पर जो खिलाड़ियां जिन जिन रूप से अपने प्रतिभा दिखाते थे, छक्के लगाते थे, गेंदबाजी पर विकेट चुराते थे, तो उन दिनों पर वीडियो के इंतजाम बिल्कुल नहीं थे, सामाजिक जालतान के उपयोग नहीं थे। इसी वजह से उन पुराने खिलाड़ियों के जो प्रदर्शन है वो आम आज नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है दोस्त, आज आपके हर एक गेंदबाजी, हर एक बल्लेबाजी, हर एक अच्छी फील्डिंग, इन सारे नज़ारे को देश विदेशों पर लोग देख रहे हैं। अगर आप अच्छे दिखाते हैं तो आपको अच्छे प्रशंसा मिलते हैं। यंग फ्रेंड्स गांधीनगर के बल्लेबाज थोड़ी सी जख्मी हुए लगते हैं। अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप के हमजा फर्स्ट एड को लेकर मैदान पर प्रवेश किए हैं। पानी की मांग वहां पर कर रहे हैं, संगठक उस पानी के इंतजाम करें। अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप प्रस्तुत करते हैं ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021। कर्नाटक के 8 टीम और केरला के 8 टीम यहां पर मुकाबला लेते हुए आप देखे हैं। पिछले दिन यानी कि मंगलवार के दिन केरला परिसर के 8 टीम एक जबरदस्त मुकाबला दिखाकर इस प्रतियोगिता में अपने प्रदर्शन शानदार दिखाए हैं और आखिरकार एन्नी पोसोटू फाइनल पर विराजमान होकर अपनी विपक्षीय टीम के तलाश पर हैं। आज शाम को आप देख सकते हैं ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 के फाइनल मैच। जीतने वाले को मिलेंगे 1 लाख रुपए के धनराशि के साथ चमकता हुआ ग्लैडिएटर चैंपियन ट्रॉफी, और रनर्स को मिलेंगे 50,000 रुपए के साथ रनर्स ग्लैडिएटर ट्रॉफी। और उसके साथों साथ कई सारे व्यक्तिगत पुरस्कार हैं, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, अच्छे बल्लेबाज, अच्छे गेंदबाज, अच्छे विकेट कीपर, अच्छे कैच, हैट्रिक सिक्सर, अच्छे फील्डर, हीरो ऑफ द टूर्नामेंट। बहुत ही सारे व्यक्तिगत रूप पर बहुत ही सारे पुरस्कार यहां पर संगठित किए हैं संगठकों ने। एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 300 से भी बढ़कर सदस्य खड़े हैं इस अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इस ग्रुप के जरिए एक ऐसी योजना बनाकर जहां पर अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास पर बिल्कुल कभी नहीं बने हो, कर्नाटक और केरला के 8 टीमों के बीच दोनों राज्यों के खिलाड़ियों के जो चरित्र है, उनके जो इतिहास है, उसे याद करते हुए उनकी क्षमता को दोबारा इस मैदान पर दिखाने की मौका दिए हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप ने ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 के नाम पर। और इस प्रतियोगिता के पीछे 2 फिल्डर के रूप पर खड़े हैं हारिस वाईएफसी कन्नौर। वाईएफसी कन्नौर के चेयरमैन हैं। सिर्फ और सिर्फ इस प्रतियोगिता के लिए 2 दिन पहले विदेश से यहां आकर, विदेश से स्वदेश आकर हमारे साथ जुड़ते हुए इस प्रतियोगिता को बेहतरीन प्रोत्साहन दिए हैं। उसी तरह फिरोज मंजेश्वरा और उसी तरह रकीब सऊदी अरेबिया और चिम्मी सऊदी अरेबिया आज विदेश पर रहते हुए भी इस मैच के कामयाबी के पीछे अपने समय गुजार रहे हैं, अपने प्रोत्साहन दे रहे हैं और संगठकों को यह विश्वास दे रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हमारी हाथ से जितने भी आप उम्मीद करेंगे
जिन जिन तरीके के प्रोत्साहन आप उम्मीद करेंगे, रकीब सऊदी और चम्मी सऊदी दोनों महारथियां हमारे साथ जुड़े हैं। हम धन्यवाद अर्पित करते हैं इन दोनों को, रकीब और चम्मी को। आपके प्रोत्साहन की वजह से हम इतने बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला कामयाबी की तरफ आगे लेके जा रहे हैं। आपकी प्रोत्साहन इस तरह हमारे साथ बने रहें। तो चौथे ओवर की तीसरी गेंद, और इस बार अच्छी गेंद, यॉर्कर डिलीवरी, पैर की जड़ों से गेंद को उठाकर एक सिंगल रन दौड़कर पूरा की है। छोटी सी मौका थे वहां पर, लेकिन उस मौके को सवाल करते हुए रन दौड़कर पूरा किए हैं यंग फ्रेंड्स। गांधीनगर इमरान नए खिलाड़ी, फाइजन इंजूर होकर वापस गए हैं, जख्मी होकर अनवर इंजूर होकर वापस गए हैं। फाइजन स्ट्राइक पर खड़े हैं और इस बार भी खेलने के प्रयास, बाहरी किनारा लगे, पॉपिंग क्रीज की जगह पर गेंद, यहां पर भी एक सिंगल रन प्राप्त होंगे। लेकिन यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि शुरुआत से लेकर अब तक ब्रदर्स मकियार अपनी फील्डिंग हो या अपनी गेंदबाजी अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। यहां पर एक दो छोटी छोटी सी गलतियां जरूर देखने को मिले हैं, जो एक मिसफील्ड के जरिए चौके छोड़े थे गांधीनगर के लिए। और इस बार अच्छी गेंद, यहां पर देखिए अफीफ शुरुआत की ओवर पर भी झटके दिए थे यहां पर यंग फ्रेंड्स गांधीनगर को, और इस ओवर पर भी इस लंबे शरीर के खिलाड़ी हर एक मैदान पर भी अपनी गेंदबाजी की कदर दिखाते हैं। काफी नाजुकी स्वभाव के आदमी है ये अफीफ। जिन टीमों में भी अपनी योगदान निभाते हैं अफीम, उन टीमों के सदस्यों के साथ मिलते हुए उनकी राय लेते हैं, उनकी विश्वास पर खड़े उतर पाते हैं। और यहां पर भी अफीफ अपनी गेंदबाजी पर ब्रदर्स मकियार के लिए एक अच्छी गेंदबाजी दिखाकर उनको ये विश्वास दे रहे हैं कि हम अपनी गेंदबाजी की जिम्मेदारी तो बाखूबी निभा पाएंगे, बाकी आप जाने। चौथे ओवर की आखिरी गेंद बाकी, 26 रन, 26 ऑन द स्कोरबोर्ड। ये 6 ओवर के मैच 36 गेंदों के मुकाबला होगा। तो ऐसे में अब बचे हुए 13 गेंदों पर अब देखना होगा यंग फ्रेंड्स गांधीनगर कितने रन चुरा पाते हैं। एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला केरला के परिसर पर, जिस तरह से अब्दुल रहमान जी ने बताए, तो नजदीकी परिसर पर और भी बहुत ही सारे प्रतियोगिता होने वाले हैं। और इस गेंद को फिर हवा में उड़ाया और इसी के साथ फैजन की पारी यहां पर समाप्त हो रहे हैं। ऊंचे खेलना चाहते थे अफीफ की गेंदबाजी पर, लेकिन अफीफ अपनी हर एक गेंद को काफी हिसाब के साथ दिखाते हैं, नपी तुली दिखाते हैं। तो ऐसे में इस विकेट की सफलता के साथ ओवर की समाप्ति, चौथे ओवर की समाप्ति के साथ रन बने हैं 26 रन, 26। तो अब 12 गेंद बचे हैं। तो हमारे साथ मलयालम की उस गंभीर शब्द के साथ अपने वीक्षक विवरण देने के लिए अब्दुल रहमान बेकूर जी खड़े हैं। दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं उस मलयालम की स्वाद उठाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि बाकी बचे 2 ओवर के जो वीक्षक विवरण है वो अब्दुल रहमान जी अपने उस मलयालम गंभीर आवाज के साथ दर्शकों को पेश करें। अगले मैच हो गए इस मैदान में, इस प्रतियोगिता के हाई वोल्टेज वाले मैच, अंडरम क्रिकेट के सबसे बेहतर 2 टीमों के बीच हो रहा है यहां पर लड़ाई। यंग फ्रेंड्स उर्वा के खिलाफ केएफसी कोडिकल, कट्टे फ्रेंड सर्कल कोडिकल और यंग फ्रेंड्स उर्वा के बीच होगा यहां पर अगला मैच। कहीं मत जाइएगा दोस्त, अगर कुछ काम पर आप अटके हुए हैं तो उस काम को अभी से अभी निभाइएगा, क्योंकि अगले मैच के बीच पर आपको समय नहीं मिलेंगे आपके उस काम को निभाने के। तो माइक्रोफोन को हम हस्तांतर कर रहे हैं अब्दुल रहमान जी के हाथ में। रहमान जी, जिस तरह से आप मैच देखे, पिछले मैच पर एनएम मैंगलोर की रनों की रफ्तार आपने देखे थे, 59 रन बनाकर 60 रन के लक्ष्य दिए थे। और यहां पर शुरुआत से ही अपनी गेंदबाजी पर 4 ओवर पर केवल 26 रन पर संभाले हैं ब्रदर्स मकियार यंग फ्रेंड्स गांधीनगर को। तो बचे हुए 2 ओवर अगर इस मैच को जीतने के विश्वास रखने हैं तो गांधीनगर को कितने रन बनाने होंगे इस मैदान की हैसियत को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमसे बेहतर आप जानते हैं इस मैदान के बारे में। कई सालों से इस मैदान पर चले हुए प्रतियोगिता पर आप अपनी आवाज दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि बचे हुए 2 ओवर पर कितने रन बनाने होंगे यंग फ्रेंड्स गांधीनगर को?
गांधीनगर। नवाज जी, 4 ओवर की समाप्ति पर अब सिर्फ 26 रन बने हुए हैं और इससे पहले मैच 2 मैच देख चुका हूं। कल के दिन में 7 मैच देख चुका हूं और फर्क मैंने 2 मैच, एक मैच के पहले आपके पास पूछे थे। कल के दिन में 4 छक्के लगाते थे, लेकिन इसमें 5 छक्के 6 छक्के लगाते थे, 4-7 चौके तक लगाते थे। मूसा पठान दुआधारी बल्लेबाजी किए थे, फिर भी 7 ओवर में 70-75 रन जाते थे। आज के दिन देखिए, जो एनएम मैंगलोर ने 59 रन बनाए, बड़े दुआधारी नहीं थे, जो गैप में चौके लगाते थे, डबल सिंगल टेक्निकल क्रिकेट खेलते थे। और आज के दिन में जो 4 ओवर में 26 रन बने हैं, अगर 50 के आसपास रन बनाते हैं तो एकदम संघर्ष भरी हुई जो स्थिति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मैच जारी है, 4 ओवर संपन्न हो चुके हैं और यंग फ्रेंड्स गांधीनगर जो बिल्कुल परितापी स्थिति कहना होगा। आने वाली 2 ओवर में 12 गेंदों में कम से कम जो 25 रन भी आ जाए तो बड़े मैच यहाँ पर खेल सकते हैं। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी कह नहीं सकते, छोटे से टारगेट में भी पकड़ सकते हैं। जो गेंदबाज एक से बढ़कर एक गेंदबाजी किया होता करते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़े क्रिकेट पेश कर सकते थे। अगली ओवर की पहली गेंद और बिल्कुल लॉलीपॉप उठाकर खेला है, लेकिन निर्भाग्यवशाल कैच नहीं हुए हैं, पतन हुए हैं, गेंद जमीन तब टकराए। बिल्कुल लॉलीपॉप थे, आइसक्रीम की तरह थे, गेंद कहीं भी मार सकते थे छक्के, लेकिन सीधे बल्ले के बीचों बीच नहीं आए। 2 रन जरूर मिले हैं, एक जीवनदान भी मिले हैं यहाँ पर, फील्डर से एक जीवनदान। इस 2 रन के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 28। अगर इस ओवर में 4-5 गेंदे बचे हैं, अगर ऐसे लॉलीपॉप गेंद आ जाए तो अगर बड़े ओवर मिल सकते हैं यहाँ पर। एक ओवर, बस एक ओवर दुनिया बदल सकते हैं जो छोटे क्रिकेट में। नवाज जी, अब पहली गेंद देख चुका हूं, दूसरी गेंद के इंतजार पर। अश्वाद गेंदबाज के रूप में बहुत बड़े मैच में युवा खिलाड़ी ने गेंदबाजी करते हैं 5-6 ओवर के रूप में। अगले गेंद ओवर विकेट, अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद विकेट कीपर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 1 रन तेजी के साथ, जी हाँ, बाई के इशारा किए हैं, जो बाई के मतलब है कि विकेट कीपर ने गलती की है। अब 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा भी किया और इस 1 रन के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 29 रन, 29 रन। बहुत बड़े मैच। और इस मैच के बाद दोस्तों, नवाज जी ने कहा कि अगर पानी पीना है और कहीं जाना है, कुछ काम करना है तो इस वक्त में कीजिए, क्योंकि अगली मैच बिल्कुल शॉक लगाने वाली मैच, यानी कि हाई वोल्टेज मैच, यंग फ्रेंड्स उर्वा केएफसी कोडिकल के बीच में धुआंधारी मैच होगा। अब अगली गेंद, अश्वत, ओहो, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। यहां पर अंपायर ने तीसरी अंपायर की मदद मांगा है, यहां पर स्क्वायर लेग अंपायर ने, मोहन अय्याड़ी ने। तीसरी अंपायर कहीं भी हो, मेरे ख्याल में जो लंच के लिए गए हैं, अगले मैच के लिए हस्ताक्षर के लिए आ जाइए। बड़े मैच की बड़े दोनों टीम यहां पर आ जाइए, केएफसी कोडिकल और यंग फ्रेंड्स उर्वा। और यहां पर तीसरी अंपायर ने कहा कि आउट, बाहर जाने के रास्ता बता दिया है। बैट्समैन सफवान आउट हुए। बड़े ऑप्सी आए हैं गेंदबाज। पहली लॉलीपॉप के बाद इन्होंने बहुत खूबसूरत गेंद फेंके। तीसरी गेंद, दूसरी गेंद में जरूर सिंगल थे बाई रूप में, तीसरी गेंद में जो स्टंप आउट के रूप में आउट होकर पवेलियन को पास लुटे। बहुत बड़े विकेट। यहां पर रन बनाना बिल्कुल जरूरत है, लेकिन रन नहीं बन पा रही है। गेंदबाज उतनी तेज है, उतनी टेक्निकल है, एक से बढ़कर एक। यहां पर खोटे में 2 और फेंका गए थे। हफीफ की गेंदबाजी देखा होगा नवाज जी ने, बहुत अच्छी तरह इनको पहचान किया है, जान पहचानी की है। मेरे ख्याल में हफीफ के जो शरीर के माफक कल के दिन गेंदबाजी किया गया था। बदेश होसंगाड़ी की शाफी होसंगाड़ी, जो देखिए दोस्तों,
अफीफ और शाफी को कंपेयर कीजिए, गेंदबाजी में बहुत बड़े गेंदबाजी किया गए थे, 4 विकेट 2 ओवर में 4 रन देकर बहुत बड़े गेंदबाजी किया गए थे उन्होंने कल के दिन। आज अफीफ ने बहुत बड़े मजेदारी गेंदबाजी किया गया। अस्वाद अगली गेंद, ओ बिल्कुल उछाल मिले थे इस गेंद में, रो मिले थे, यहां पर 1 रन के लिए दौड़ा जा रही है, मिस फील्डिंग, उसमें 1 रन आसानी के साथ, और इस 1 रन के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 30 ऑन द बोर्ड। बैट्समैन सफाफ है स्ट्राइक पर अस्वाद की अगले गेंद के सामने। उल्टा बल्ले में खेलना चाहते थे, ऑफसाइड में खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद गई 1 रन तेजी के साथ, और अंपायर की तरफ मुड़कर देखना होगा, बल्ले के अंतरों में किनारा लगे, और इसे बल्ले की किनारा लगने की वजह जो अफाफ की खाते पर जोड़ा जाएंगे इस रन, और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 31 रन, 31 रन। अब इस ओवर में 1 गेंद बचे हैं, आखिरी गेंद बचे हैं अस्वाद के। ओ बढ़िया गेंद, मिड विकेट पर खेले हैं, 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया, दूसरी रन के लिए दौड़ा जा रही है, और 2 रन भी बिल्कुल पूरा किए, बहुत खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, और इसे 2 रन बहुत बड़े महत्वपूर्ण रन दौड़कर पूरा किए, तो रन संख्या कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति पर 33 रन, यानी कि 33, लॉस ऑफ 4 विकेट, यानी कि 4 विकेट के नुकसान पर यहां पर 33 रन बनाए, यानी कि 30 गेंद में 33 रन बनाए। आने वाली 1 ओवर, डेथ ओवर बचे हैं, आखिरी ओवर बचे हैं, आखिरी ओवर में कितना रन बटोर सकते हैं। यहां पर जो बड़े संघर्ष स्थिति बनाने के लिए कम से कम अगर 15-17 रन आ जाए तो यहां पर बहुत बढ़िया मजबूत स्थिति बना सकते हैं। दोनों टीम एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों से भरी हुई टीम है, बहुत बड़े मैच आने वाले हैं। केएफसी कोडिकल यंग फ्रेंड्स उर्वा, यहां पर हस्ताक्षर जारी है, हस्ताक्षर की पुस्तक खुले रखे हैं। यहां पर 5 ओवर समाप्त होने पर रन संख्या कुल मिलाकर 33, यानी कि 33 रन। यंग फ्रेंड्स गांधीनगर ബ്രദേഴ്സ് മക്കിയാർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഇന്നത്തെ ദിനത്തിൽ 3ാമത്തെ മത്സരം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 3ാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗാന്ധിനഗർ 5 ഓവർ നേരിട്ടപ്പോൾ 33-4 വിക്കറ്റ്. 5 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 6ാമത്തെ ഓവറുമായി ബൗളർ ബാസിത്ത് കൊപ്പള എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും വേദിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബാസിത്ത് കൊപ്പള, നീതു അവസാന ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തുമായി വൈഡോടുകൂടിയാണ് തുടക്കം. വൈഡ് അതേപോലെ ബൈ 2 റൺസ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ 35 എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ 50 റൺസിനരികിൽ ഇവിടെ നേടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല മത്സരം തികച്ചും കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കും ഇരു ടീമുകൾക്കും. ഇവിടെ 6 പന്തുകൾ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നു. നിതു എറിയുന്ന തന്റെ ടീമിന്റെ ഇന്നിംഗ്സിലെ അവസാനത്തെ ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്ത് വീണ്ടും ആദ്യ പന്ത് എറിഞ്ഞത് വൈഡായിരുന്നു. വീണ്ടും ബാറ്റ്സ്മാൻ സഫാഫിന് നേരെ നിതു. ഓ മികച്ച പന്ത്, മികച്ച സ്വീപ്പ്. അഫീഫ് ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നു. തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ 1 റൺസ് മാത്രം 36 എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. 5 പന്തുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. സഫാഫിനെതിരെ ഓ മികച്ച പന്ത്, റോളിംഗ് ഡെലിവറി, മികച്ച പന്ത്. ലെഗ് സ്റ്റംപിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സ്റ്റംപ് ഔട്ടിനുള്ള ചെറിയ തോതിലുള്ള അപ്പീൽ നടത്തുകയാണ്, പക്ഷേ അമ്പയർ നിരസിക്കുന്നു. വീണ്ടും മറ്റൊരു പന്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് നീതു. 4 പന്തുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. സ്കോർ ബോർഡിൽ 36. മികച്ച ടൂർണമെന്റ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അണ്ടർആം വേൾഡ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച ചരിത്രത്താളുകളിൽ ഇടം പിടിച്ച കേരളയെയും കർണാടകയെയും ഒന്നിപ്പിച്ച് മത്സരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ടൂർണമെന്റ് അവസാന ദിനത്തിലേക്ക് അവിടെ
ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ വേഗം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക. ഈ ടൂർണമെന്റ് വീക്ഷിക്കുവാൻ അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഈ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി അണ്ടർആം വേൾഡ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത പന്തുമായി മികച്ച പന്ത് തന്നെയായിരുന്നു. ആദ്യം വൈഡിൽ കൂടി തുടങ്ങിയെങ്കിലും മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുമ്പോൾ ലെഗ് ബൈയിലൂടെയാണ് അവസാന പന്തിൽ റൺസ് നേടിയതെങ്കിൽ സ്കോർ വീണ്ടും ചലിക്കുകയാണ്. 37. ഇനി വെറും 3 പന്തുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുകയാണ്. 3 പന്തുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുകയാണ്. നീതു തന്റെ അടുത്ത പന്തുമായി അഫാഫ് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കവേ പരാജയപ്പെടുന്നു. മികച്ച ബോളിംഗ്, മികച്ച തിരിച്ചുവരവ്. ഡെത്ത് ഓവറിലെ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് നീതു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡോട്ട് ആൻഡ് ഡെലിവറി. റൺസ് വിട്ട് കൊടുക്കാത്ത പന്ത് കടന്നു പോയപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പന്തിന് വേണ്ടി നീതു. അഫാഫ് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കവേ വീണ്ടും പരാജയപ്പെടുന്നു. അമ്പയറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ലെഗ് ബൈ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ ലെഗ് ബൈയിലൂടെ റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ 38 നിൽക്കുകയാണ്. അവസാന ഒരു പന്ത് അവശേഷിക്കുന്നു. അവസാന പന്ത് ഇന്നിംഗ്സിലെ അടുത്ത മത്സരം ഇവിടെ സൈനപ്പ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലെഗ് സ്റ്റമ്പിന്റെ പുറത്തുപോയ പന്തിന് വൈഡാണെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ റൺഔട്ടിലൂടെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. വൈഡിന്റെ കമ്പടിയോടുകൂടി ബായുടെ കമ്പടിയോടുകൂടി 2 റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്കോർ വീണ്ടും ചലിച്ച് 40 നിൽക്കുകയാണ്. 40 ഓൺ ദ ബോർഡ്. 5ാമത്തെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ 444 ജേഴ്സി നമ്പർ 444. സ്ട്രൈക്കിലുള്ളത് പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ. അവസാന പന്ത് നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ്. ഈ ഓവറിലെ 2ാമത്തെ വൈഡാണ് നാം കണ്ടതെങ്കിൽ 40 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇനി അവസാന പന്തിൽ വലിയ ഒരു ഷോട്ടെങ്കിലും നേടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മികച്ച ഒരു സ്കോർ, മികച്ച ഒരു ടോട്ടൽ തന്നെ കാഴ്ചവെക്കാം എതിരാളികൾക്ക്. അടുത്ത പന്തുമായി നീതു. അവസാന ഓവർ മികച്ചതാക്കുമ്പോൾ മികച്ച പന്ത്. ഇവിടെ വീണ്ടും റൺഔട്ട്. അങ്ങനെ അവസാന പന്ത് റണ്ണില്ല പന്തായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ 40 മാത്രമാണ്. 41 വേണം ഇവിടെ വിജയിക്കുവാൻ ബ്രദേഴ്സ് മക്കിയാറിന്. മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനത്തിലൂടെ എതിരാളികളെ 40 റൺസിലാണ് ഒതുക്കിയതെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്ത ഇന്നിംഗ്സിൽ 41 റൺസ് നേടണം 36 പന്തിൽ നിന്ന്. അണ്ടർആം വേൾഡ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അഭിമാന പുരസ്കാരമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടി ഈ ടൂർണമെന്റ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി മംഗലാപുരത്തെ 88 മത്സരാർത്ഥികൾ, അതായത് 8 ടീമുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ 88 മത്സരാർത്ഥികൾ, അതായത് 8 ടീമുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ ടൂർണമെന്റ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അണ്ടർആം വേൾഡ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അഭിമാന പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ട്രോഫി 2ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 3ാമത്തെ മത്സരമാണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അടുത്ത മത്സരം ഈ നാടും നഗരവും ഗ്രാമാന്തരങ്ങളും കണ്ണും കാതും കൂർപ്പിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുന്ന അഭിമാന പോരാട്ടം. ഇതാ അടുത്ത മത്സരം യങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉരുവ അതേപോലെ KFC കോടിക്കൽ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് സമാപിക്കുമ്പോൾ 40 റൺസാണ് നേടിയത് യങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗാന്ധിനഗർ. ഇവിടെ ബ്രദേഴ്സ്
മക്കിയാറിന് നേടേണ്ടത് 41. ഏത് രീതിയിൽ നേടുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. ഈ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി ബെദ്ര മീഡിയയിൽ കൂടി ഈ ടൂർണമെന്റ് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വിദേശത്താവട്ടെ സ്വദേശത്താവട്ടെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വിദേശത്ത് ഈ ടൂർണമെന്റിനെ തന്നെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഓരോ പന്തുകളും വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിറോസ് മഞ്ചേശ്വരം, റക്കീബ് സൗദി അറേബ്യ, ഇർഷാദ്, മോനീസ്, ഹംസ, ഷെമ്മി സൗദി അറേബ്യ, കൗസർ, അക്സർ, ഇംതിയാസ്, അമാൻ അർമാൻസ് റഹ്മാനിയ, മുനീസ് മുന്നി, ഷെമ്മി ഒസങ്ങാടി, റിയാസ് കുഞ്ചത്തൂർ, ഏവർക്കും 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ കുഞ്ഞി ന്യൂ സ്റ്റാർ കുഞ്ചത്തൂർ, റഹീം ബാബ BSc ബേക്കൂർ, ഫയാസ് സ്കൈ ബ്ലൂ, ജാസി ഗുല്ലക് പസോഡ്, സജ്ജാദ്, ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ്, ഹെയർക്രാഫ്റ്റ്, അണ്ടർആം വേൾഡ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, ദിനേശ് ചക്രവർത്തി, ഏവർക്കും 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച, സാമ്പത്തികമായി, ശാരീരികമായി, മാനസികമായി ഈ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച, അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ടൂർണമെന്റ് ചരിത്രങ്ങൾക്ക് വഴിമാറുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ മത്സരം, 2ാം ദിവസത്തിലെ 2ാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് ആദ്യ പന്തെറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ബോളർ തയ്യാറാണ്. മുബീർ, ബാറ്റ്സ്മാൻ റഫീഖ്, സിയാബ് स्ट्राइकिലാണ്, रफीक नॉन स्ट्राइकिലാണ്. दोस्तों 41 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए. मुबीर गेंदबाज के रूप में तैयार हो चुके हैं. रोडन से पहली ओवर की पहली घंटी बज चुके हैं. पहली गेंद ओवर द विकेट, और इस गेंद को पहले ही तैयार थे इन्होंने जो स्वीप करने के लिए. जानता है कि आरंभिक बल्लेबाज दोनों जानता है कि ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य नहीं है, यहां पर सिर्फ 41 रन बनाना है. जो 36 गेंद भी है, 10 विकेट भी है, तो आसानी के साथ संरक्षात्मक के साथ खेल सकते हैं. 1-1 रन, 2-2 रन अगर चुरा ले जाएं तो यहां पर लक्ष्य तक आसानी के साथ पहुंच सकते हैं. अब पहली गेंद में 1 रन लेकर अपनी खाता खोल चुके हैं रफीक. अब रफीक स्ट्राइक पर है, सियाद ने अपने खाता खोल चुके हैं. अगली गेंद मुबीर ओवर द विकेट, दूर वाले छोर से यानी कि रोडन से गेंदबाजी के लिए तैयारी हो रही है. गेंदबाज उतनी देर क्यों लग रही है कि 41 रन के लक्ष्य हैं. एक एक गेंद भी महत्वपूर्ण है. यहां पर एक एक गेंद को भी सोचना होगा, लेकिन उतनी मत सोचिए, उतनी ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि और भी यहां पर बहुत मैच से खेलना है. आज शाम तक इस टूर्नामेंट को, इस प्रतियोगिता को समाप्त करना है. बहुत बड़े प्रतियोगिता है. आज के दिन 8 मैच.
204 गेंद सामना कर चुके हैं। पहली ओवर जारी है, 41 रन के लक्ष्य तक जो बल्ले घुमा रही है। उस बीच में एक विकेट भी यहां पर पतन हुए। एलबीडब्ल्यू के रूप में सियाद आउट होकर बॉलिंग को पास लौटने की वजह नए बल्लेबाज इरशाद जो जोड़ चुके हैं मैदान पर। अब मुबीर 5 विकेट लेकर ओवर द विकेट नंबर को क्रॉस करते हुए बहुत खूबसूरत शॉट हवा पर उठा कर खेला, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद के पीछे फील्ड जा रही है लेकिन अंपायर के इशारा चौका। पांचवी गेंद थी, उस पांचवी गेंद में चौका लगाना बिल्कुल जरूरत थी बल्लेबाज को, बिल्कुल खुले हुए मैदान थे जो पावर प्ले को पूरी तरह मदद लेते हुए इस चौके को लगाएं। इस चौके की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन। 41 इज द विकेट टारगेट, यानी कि 41 रन के लक्ष्य तक बल्ले घुमा रहे हैं। पहली ओवर में झटका जरूर लगाएं जो एलबीडब्ल्यू के रूप में सियाद को आउट किया गया थे, लेकिन दूसरे बल्लेबाज आए, नए बल्लेबाज आए, इन्होंने जो बड़े शॉट लगाकर अपनी जो दबाव को हटा दिया गया। बहुत बड़े शुरुआत और इस चौके की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन 5 गेंदें सामना कर चुके हैं। आखिरी गेंद अभी भी बचे हैं। दोस्तों जल्दी कीजिए क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास। अंपायर दोनों ध्यान देना चाहिए कि स्पीड अप कीजिए मैच को, क्योंकि 8 मैच आज के दिन में खेलना है। कल के दिन 7 मैच खेला गया थे केरला की पूल में, आज के दिन 1 मैच ज्यादा है क्योंकि ग्रैंड फिनाले भी बचे हैं आज के दिन। बहुत बड़े धूप के नीचे जो वो खेल रही है ये जानता है, लेकिन भी जो 2 दिन के शेड्यूल है इस टूर्नामेंट। अब अगले गेंद, ओ बढ़िया गेंद उल्टा बल्ले में खेला है, एक अंतेजी के साथ दौड़कर पूरा भी किए हैं। ओवर थ्रो के रूप में 1 रन के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन नए बल्लेबाज नौशाद ने मना किए और इस वजह से ओवर की समाप्ति। रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन पहली ओवर की समाप्ति पर, 41 रन के लक्ष्य और भी 32 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए जो बचे हुए हैं 30 गेंद में। 30 गेंद में 32 रन चाहिए। शुरुआत बहुत अच्छे की है। पावर प्ले 2 ओवर के पावर प्ले भी यहां पर मिलते हैं बल्लेबाजों के लिए। बहुत बढ़िया मैच। 30 गेंद में 32 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। अगली मैच यहां पर होगा जो सभी क्रिकेट प्रेमियों ने प्रतीक्षा रखते हुए मैच, उम्मीद के साथ जो इंतजार कर रहे हैं अगले मैच के लिए। दर्शक के 90% भी ये सोचता होगा कि जो खाना खाने के लिए जो उस मैच के बाद जाऊं, कई लोग खाना खाकर आकर बैठा हुआ होगा क्योंकि अगले मैच बहुत बड़े हैं। अगर यहां पर बेदरा मीडिया नहीं होता तो यहां पर इस मैदान पर दर्शक को खड़े होने के लिए जगह तक नहीं मिलते थे। उतनी बड़े प्रतियोगिता के दूसरे दिन है क्योंकि कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को जोड़े हुए 8 टीम यहां पर आज के दिन खेल रही है। आज के दिन के खेल के तीसरी मैच, यानी कि तीसरी मैच के दूसरी इनिंग जा रही है। अगली मैच के लिए टॉस के लिए तैयार हो जाइए। यंग फ्रेंड्स उर्वा केएफसी कोडिकल कैप्टन्स यहां पर टॉस के लिए आ जाइए। अब नए गेंदबाज तैयार हो चुके हैं। तस्लीम के आगमन हुए हैं दूर वाले चौसे रोडन से। पहली गेंद अवध विकेट। ओ हो बढ़िया गेंद यहां पर खेलने के प्रयास जरूर किए हैं लेकिन बल्ला और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं हुए। जो विकेट कीपर भी छोड़ दिया गया था उस गेंद को। अच्छी गेंद की शुरुआत, बहुत बड़े शुरुआत ही किया गया है। आज के शाम तक जो फाइनल मैच के बाद बहुत बड़े बड़े यहां पर ट्रॉफी देना है, बहुत बड़े बड़े तोहफा देना बाकी है। आप बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता के समाप्त आज के दिन 6 बजे होंगे। अगली गेंद, ओ बहुत बढ़िया गेंद थी, खेला जरूर गिली पर फील्डर थे, उन्होंने गेंद को उठाते वक्त तब तक 1 रन के लिए समय मिले और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर डबल अंक पर पहुंच चुके हैं, 10 रन। दूसरी ओर जा रही है। तस्लीम बहुत बड़े शुरुआत ही कर चुके हैं यहां पर। 2 गेंद में सिर्फ 1 रन कर चुकी है इन्होंने तस्लीम। अब आरंभिक बल्लेबाज रफीक के लिए गेंदबाजी करना चाहते हैं। तस्लीम के सामने पहली बार रफीक को मौका मिले।
और इस गेंद के इंतजार पर है रफीक। तस्लीम तीसरी गेंद ओवर द विकेट, दूर वाली चोट, यानी कि अंपायर को क्रॉस करने में 2-3 कदमों के सहारा लेते हैं इन्होंने। अब हो बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप पर तपा खाने के बाद विकेट कीपर ने इस गेंद को लपट लिए। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, 3 गेंद में सिर्फ 1 रन। बहुत अच्छी ऑफ स्विंग की इन्होंने, बहुत बढ़िया ऑफ स्विंग की। पहली ओवर में 9 रन थी। पावर प्ले जारी है, पावर प्ले में 3 गेंद में इसी मंजेश्वर पंचायत स्टेडियम के जैसे छोटे स्टेडियम में जो गेंदबाजों के लिए इतनी मदद मिलते हैं, तो उनको जितने भी तारीफ करो उतना कम होगा। ओ बढ़िया गेंद, उठाकर खेलना चाहते थे, बल्ले की बारी सा लगे, जो गली पर गेंद गए, तब तक 1 रन के लिए समय भी मिले हैं। रफी के खाते पर 1 रन संख्या कुल मिलाकर 11। अब नौशाद के अवसर है, नौशाद के लिए, इरशाद के लिए, क्षमा कीजिए, इरशाद के लिए अवसर मिले हैं। तस्लीम के सामने दूसरी बार उन्होंने सामना कर रहे हैं। तस्लीम 4 गेंदे फेंक चुके हैं, 2 रन कर चुके हैं। तस्लीम अगली बार दूर वाली चोट से लॉन्ग ऑन से अंपायर को क्रॉस करते हैं ओवर द विकेट। ओहो बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, उल्टा बल्ले में खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं हुए, विकेट कीपर भी छोड़ दिया गए थे। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की मजारा तस्लीम। 41 रन को लक्ष्य, 41 रन के लक्ष्य यहां पर, इस लक्ष्य तक बल्ले घुमा रही है, तो गेंदबाजों को उतनी बड़े मदद मिल रहे हैं, तो तारीफी की बात है। तस्लीम बहुत बढ़िया गेंदबाजी के मजारा करते हैं। 5 गेंद में सिर्फ 2 रन, बढ़िया गेंदबाजी की जा रही है। अगली गेंद तस्लीम, दूर वाली चोट से ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए तस्लीम टू इरशाद। ओ बढ़िया गेंद, मिड विकेट पर फील्डर है, खतरा हो सकते हैं, जी हां खतरा बन चुके हैं। रफीक आउट हुए, बहुत बड़े विकेट यहां पर, बहुत बड़े ओवर की समाप्ति, बहुत बड़े ओवर की समाप्ति। कप्तान आ जाइए, अगली मैच हाई वोल्टेज मैच की कप्तान, यानी कि यंग फ्रेंड शुरुआ कप्तान और केएफसी कोडिकल की कप्तान जो तीसरी अंपायर के साथ मिल जाइए, क्योंकि टॉस के लिए तैयार हैं, अंपायर तैयार हैं। यंग फ्रेंड शुरुआ कप्तान और इसी तरह केएफसी कोडिकल कप्तान तैयार हो जाइए टॉस के लिए। आप 2 ओवर संपन्न हो चुके हैं सतीश जी, 41 रन तक बल्ले घुमा रही हैं, तो तस्लीम यहां पर जादूगारी गेंदबाजी की है। अब देखा होगा, बहुत बड़े गेंदबाजी की है इन्होंने, बहुत खूबसूरत, जितने भी तारीफ करो उतना कम होगा। जो मंजेश्वर मिनी स्टेडियम, पंचायत मिनी स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए मक्का कहते हैं। बल्लेबाजों ने बहुत बड़े पसंद करते हैं इस मैदान को, क्योंकि छोटे से शॉट लगाओ लंबे चले जाते हैं, ऐसे मैदान है। इस मैदान में तस्लीम के जैसे गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल काम है। यहां पर आसानी के साथ इस काम को इन्होंने अपनी ओवर को बहुत बड़े अपनी भूमिका निभाई इन्होंने। कप्तान आ जाइए दोस्त, केएफसी कोडिकल इंफ्रेंस शुरुआ कप्तान। बहुत बड़े सीध फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग, 1 रन। दूसरी के लिए दौड़ा जा रही है, दूसरी के लिए दौड़ने में यहां पर अपील जारी है, लेकिन अंपायर, थर्ड अंपायर की मदद मांगा है हरीश पटेल की।
जितना बल्लेबाज आउट हो चुके हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर ने जो इशारा किए हैं कि इरशाद आउट होकर बॉलिंग को बाजा रही है। इरशाद आउट हुए हैं। अब तीसरी ओवर की शुरुआत अभी अभी हुए हैं, पहली गेंद में रन आउट हुए जो 41 रन के आसानी के लक्ष्य यहां पर। लेकिन क्रिकेट है यहां पर, कितने वाह भाई वाह, कितने अच्छे ओप्सी आए हैं तस्लीम के मदद से। यहां पर सतीश अजाए जो इस मैच के पूरी तरह आनंद उठाइए, क्योंकि बहुत बड़े संघर्ष भरी हुई स्थिति पर है। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर आ चुके हैं। स्वागत सतीश जी। Thank you very much, Abdul Rahman sir. I request two teams captain, please report here for the toss, right of our commentary box. ದಯಮಾಡಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ. So far it was outstanding bowling performance by the bowlers of Young Friends Gandhinagara. Our brothers Makyar are searching for the right track but still struggling there. 13 on the board for the loss of 1 wicket. 41 is the target, that's why they are a little bit defensive frame of mind. Not a big total to chase down, and Arif from the far end. Right arm over the wicket. Bowls the batsman. Now what a fantastic walk. Wicket keeper behind the stump, but I think the batsman's back leg still inside the crease, so that no question of stump out. Mohan Iyadi, just like in Kannada, Haddina Kannina Muddina, umpire Mohan Iyadi has got eagle eye, and you know exactly the back leg of the back foot of the batsman just inside the line, so no question of asking for third umpire, rightly so. 13 on the board for the loss of 1 wicket. All kind of battle we are expecting from these two teams, because both the teams desperately wanted to become to come to the next round of this prestigious cricket tournament. They knows that it is a Gladiator trophy which is organized by Underarm World WhatsApp group in this most beautiful venue, Mini Stadium Manjeshwar. This time is gone. That's what he wanted. That was a fantastic reply coming from the bowler. If Young Friends Gandhinagara wanted to back into this game, they need to pick the wickets in a frequent intervals. This has been outstanding delivery there from Arif. You're a little bit disappointed with the previous delivery that he didn't got a result in favor, but this time the idea is different from the bowler. He's bowled at a delivery which is a nip back into the batsman with a sharp and face which defeats the bat of the batsman Naushad, and cleaned him up, and he's back into pavilion. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಜ್ಮಲ್ ಅವರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ನಾಯಕ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. Arif is back into pavilion. A little bit correction. Naushad back into pavilion. The new batsman Ayaz, and one more very good all-rounder for the side. Wait to see how he'll go into survive his team. Right arm of the wicket balls. Ayaz, as usual, is a very busy customer. Very strong square of the wicket, behind the wicket. Just implementing the technique of getting the runs is so good. Almost closing the pace of the bat, and then swept that one quite nicely down to fine leg region for a easy single. He's off the mark with the single. Scoreboard moves on to 14 on the board here in over number 3 in progress. All kind of the game plan implemented by the captain of Young Friends Gandhinagar. They know exactly they're not depending a big total in this small cricket ground, and already they are sending a strong message here for the other teams that if he bowls well, if he fields well, you can depend a small total in this small cricket ground as well. A lovely shot right in the gap, a bit the infield, ball running down to the apex, cover boundary for 4 runs.
That was a little small mistake coming from that fielder at short mid off, not quite able to bend in a time. And that ball is went towards the deep extra cover boundary for 4 runs. He won the fielder from the deep long off to try his level best to cut it off. And that ball going to release the pressure from the batsman, that boundary. And scoreboard jumped into 18 on the board for the loss of 4 wickets. I requested Tanveer of Young Friends to please report here and comment box immediately. Young Friends ತಂಡದ ತನ್ವೀರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. That was outstanding cricketing stroke coming from the blade of Amir. You know exactly there is no protection in the deep extra cover. The fielder is there, of course, down at deep long off and deep cover. He's just sending that one right between that gap, but might be a little bit lazy fielding from that extra cover, and that's why that ball travels very quickly with the direction of the wind, and that will definitely going to be a release the pressure from the batsman because 41 is the target. This is the over number 3 in progress. Arif getting to bowling to Amir. Amir facing next delivery. Drives that one down the ground. Powerfully driven down to deep long on region. Protection there in the deep. 3 protection has been given in the onside region, so that very difficult to find the gap in the onside. So one more over completed. A little bit productive over here for brothers Makhiyar. Chasing 41 to win this match. The 19 on the board for the loss of 4 wicket. 19 for the loss of 4 wicket. Now I think just coming back to the equation. If we deduct 19 from the 41, another 22 more runs required for the victory, and deliveries remaining 18. And run rate required almost 7.33 runs per over. And particularly in this mini stadium, it's not that much of a toughest ask for the chasing team, but at the same time you cannot underestimate the bowling department of Young Friends Gandhinagar. If they bowls one good over, especially in this over, I think both the teams has got opportunity to bounce back. The batsman needed some sensible batting. At the same time, the bowling team needed some excellent 2 good overs, and that's why they asked their one of the trump card bowler Taslim in attack. Taslim is a kind of bowler who can be very handy in any situation. Just I want to see his bowling figure. The previous over, he bowled the second over of the power play, where he conceded just a couple of runs. That was outstanding bowling figure for any bowler. It's not an easy job, especially in this cricket ground, the batting paradise, where it was very difficult for the bowler to survive. In this condition, when bowling in the power play and conceded just a couple of runs, that means he's one of the best bowler. That's why the captain wanted him to bowl in that crucial over. Right above the wicket balls, beautifully bowled. Look at the wicket keeper behind the stump, how electrifying he is. He really won the heart of the cricket lovers because of that his quickness. Of course, in Underarm cricket we are having a lot of very good wicket keepers. As far as the wicket keeper is concerned, always the Mansoor of Young Friends coming in the top. But he won so many good wicket keepers in Underarm cricket. If you go back to the history of Underarm cricket, late in 90s, the Babbanna is one of the big name as far as the wicket keeper is concerned from Jugal Sports Club. And in my cricket career, I just wanted to see him in the top as far as the wicket keeping is concerned. That much electrifying is. And nowadays even the youngsters, even very electrifying. Just a blink of eyes is just completes the job. Even my team's partner Javed of Hanuman Cricketers, one of the best wicket keeper behind the stump. Taslim, right arm over the wicket balls. Beautifully bowled. That was almost batsman trying to reach the delivery. Got outside the line of outside edge of the bat, and got a single down to backward point region. With that single, scoreboard moves on to 20 on the board. 20 for the loss of 4 wicket. All what one we are watching here is that spectators gathering here with big number. The reason that the next match, high voltage match, KFC Kodikal takes on Young Friends Surva. That's why we can see the either side of this cricket ground, the jam-packed stadium out here. They know exactly they were going to witness one big battle
between KF Sigodical versus Young Pensur, one of the top performer of the South Canada district, will going to clash in the first round of this most prestigious Gladiator Trophy 2021. Ayaz just try to hit that one outside the line of off stamp, but this one is a Taslim. What a fantastic delivery that one. He's just using his mind, I will tell you. Taslim knows that Ayaz, who is standing well outside the crease, almost in the leg stamp, so he's just bowling outside the line of off stamp, little bit away, but well within the reach of the batsman. I think he's a little master. Ayaz couldn't manage to reach that delivery, but look at the wicketkeeper behind the stamp once again. Fantastic work, and there is no possibility of any run at all. Again, Taslim. Oh, ball is in the air, but it was fantastic catch. Look at the catch. My goodness. What a great catch taken there by Irfan there. Short coffee. Looks like he would manage to reach there. Then he was just diving to his front, but not even. He was hitting the ground very hard, his body, but still he not lost the grip over the ball. Even very difficult whenever you are diving to his front. All the chances that ball is slipping out of your hand. Bashir, the fieldsman there in the short extra cover. Really it was a well attempt, and spectacular catch has been taken. Will it go into be a turning point of this match? Why not? 1 or 2 wickets in a quick session. All the chances here for Young Friends Gandhinagar to back into this game. The Young Friends Surwa won the toss. The Young Friends Surwa captain Ajmal won the toss for the next match, and they decided to not yet decided as a Taslim. So far, what a fantastic over. Just a 20 on the board, 21 more runs required for the victory. The target is now looking a little bit tougher and stiffer. Oh, fantastic delivery. Look at the wicket keeper behind the stamp. Absolutely magnificent. Looks like he has got magnet in his hand. Very difficult to defeat this man behind the wicket. Naushad, the wicketkeeper behind the stamp with the jersey number 333. Taslim, final time in this over. Right above the wicket balls. Again, the possibility of run there, but not more than a single down to short fine leg. Rafiq, the fieldsman, one of the quick fielder in the side, moving towards his right. Fields the ball. One more over completed. Excellent over there from Taslim. What an outstanding bowling figure here for Taslim there. 21 runs, that means 20 required for 12 balls, and just look at his bowling figure. 2 overs, no maiden, conceded 4 runs, and he picked up, he didn't pick up a wicket, but I will tell you, this is a 1 wicket. 1 wicket he picked up, and that means it's outstanding bowling figure. 2 overs, 4 runs, and 1 wicket. In limited over matches, 6 overs format of the games, whenever the bowler conceding 4 runs in 2 overs, I think it's definitely going to be a match-winning performance bowling figure. Now 12 balls remaining and 20 runs required for the victory. The match looks to be very interesting. Will it go into be Young Friends? Will it go into be a Brothers Makyar? And now looks like we get to see the body language of the fielding side. They know exactly they got a strong comeback in this match. Now no way so losing the grip over this match, but as far as winning perspective of the batting side is concerned, the sensible batting required here onwards. The batsmen are in the middle, Bashir and Amir. Wait and see how well they manage to take their teams into victory. Appeal for leg before wicket, chance of runner there, and of course the batsmen are very quick between the wicket. Leg by call by umpire. Appeal for the leg before, denied by the umpire Ajit Padil, because ball is pitched outside the line of leg stump and no question of leg before wicket. With the addition of that single, scoreboard moves on to 22 now. 19 required for the victory. 11 balls remaining. What a great match we are having here.
I want to see the fielding set. Very interesting to see the fielding set here. I request, please don't waste the time. We are running out of time. 35 minutes, which is the time which is given to you to complete your 6 hours quota. Please don't waste the time. We have to play another 5 matches. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿ. So match is going to be very interesting here. The bowler Faizan bowling round the wicket. Bashir is the batsman. This time, hosting it over. This could be a maximum. Yes, it is. Under pressure situation. What a great shot it's going to be. The Bashir just releasing the pressure. Very young, talented cricketer. Just take an aerial route. Look at the strokes, how he well managed to deliver. Nothing wrong with the line. Ball is just came into the batsman all along the carpet. But it's almost what we are seeing, that the wrist work, the timing is perfection in the occasion. To get the distance right, he is choosing one of the longest part of the cricket ground, I will tell you, towards the widest long one. And even the valiant effort there from the fielder, Mujib, I think so, the tall fielder, but he is still finding himself to short here to save the 6 here. Because of that 6 runs are here now climbing up to 28. That means 13 more runs required for the victory. What a game of cricket we are having here. Again, definitely going down the leg stump. Again, batsman going for the big shot. Leg by call by umpire. One more addition to total. Straight away the bowler under pressure. One more addition to total. What a great shot that is going to be under pressure situation. 29 on the board. Another 12 more runs required for the victory. 9 balls remaining in the innings. Faizan is the bowler. And Amir is the batsman. Amir drives it on right in the gap, running hard. The fielder there in the wide is long on region. Before he going to cut it off, the batsman got ample time to complete a couple. They're coming for the third. In comes the throw, but they completed a 3. What outstanding running between the wicket here. All in sudden, the complexion of the match is really changed here. Particularly this over, after the stream bowled at a fantastic 2 overs. All in sudden we can see that when Faizan came into attack, the complexion of the match is completely changed. 32 on the board. That means 9 more runs required for the victory. And just the 8 deliveries remaining. The equation now suddenly favoring batting team. Brothers Makyar rightly back into this game. I think opportunity of run out in the non-strikers and appeal for a stump out, but I think the ball is not in the hands of wicket keeper during when he was uprooted and stump. Good decision coming from umpire Mohan Ayadi, but it's a very important dotted delivery, I will tell you. Very important dotted delivery. 32 on the board. Another 9 more runs required for the victory. 7 balls remaining. Outstanding cricket match is going on here. Of course, everybody came with a big number to watch match between KFC Kodikal versus Young Friends Surwa. But I think spectators, even the viewers, those who are watching this live telecast of Gladiator Trophy through YouTube by Bedra Media, they're also really enjoying this cricket. Lovely delivery, fantastic dot delivery. The Bashir in the occasion tried to hit the big shot, but that was a dot ball. Good comeback there by the bowler in the last 2 deliveries of that over. So last over remaining. Brothers Makyar required another 9 runs to win the match in the last 6 balls. Now I want to give a warm welcome to Mr. Mohammad Asif, one of my best friend, Mohammad Asif of Reliance Cricketers Jaipur. I would like to welcome him on behalf of organizers, on behalf of the cricket lovers. ದಯಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ.
ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂತರ 5 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. Of course, the match looks to be very interesting. 9 runs required from last over. 9 required for young friends. A little bit correction for brothers Makhiyar to win the match. There will be the festival of cricket tournament. Of course, everybody knows that young friends Irva. This time, lovely shot, beautifully driven right in the gap. But wait for the umpire signal. It was one bounce over the row for 4 runs. That boundary will takes brothers Makhiyar very close to the target. 36 on the board. That means another 5 runs required in remaining 5 deliveries. Naushad is been punished in the first delivery itself. Amir, the batsman, just released the pressure. Now 5 deliveries and 5 runs required for the victory. Again went for the expansive shot, but not quite able to time the batsman properly. Chance of run out there, but a wide throw coming from that fielder. Excellent running between the wicket. I think one of the features of this partnership between Amir and then Bashir, suddenly it's going to be a running between the wicket. Outstanding running between the wicket. They're really putting some pressure onto the outfield by running hard in the completing the first run very quickly. Then all in sudden that seeing that fielder under pressure, and they're grabbing the opportunity, converting single into 2. Lovely shot, square of the wicket towards a deep backward boundary for 4 runs. That's it. The match is finished in a style. Amir and Bashir completes the job here for young friends Makhiyar. One stage there looks like they're very hard to get that target of 41 to win the match. But once that Bashir hitting a one big 6 against the bowling of Faizan, that takes the match away from the opposition. That was definitely going to be a turning point of this match, and they deserve this victory. So well made 20 runs. I think Amir of brothers Makhiyar is deserve this man of the match award. I request Nazir Chirgoli, kindly request you to present this man of the match award for Amir's best innings. And now news here for the next match. KFC Kodikal versus Young Friends. After winning the toss, Young Friends they decided to field first. The high voltage match. What a great match, what a great finish for that match. But at last they are handling the pressure, and because of that is a fantastic innings coming from Amir and Bashir, and the match is just taken away from the opposition. Then they deserve this victory here. Now it's going to be a big match, high voltage match. Look at the atmosphere. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಜೀರ್ ಚಿರುಗೋಲಿ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಮೀರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಡಯಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಜೀರ್ ಚಿರುಗೋಲಿ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಮೀರ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. He just handled the pressure, standing tall, and delivers the runs what he wanted for his team, and he's deserved this.
So welcome back for the high voltage match here, and groundsman, please go there. The groundsman needed some help for umpires here for the pitch. Please ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನವಾಜ್ So welcome back, and Nawaz, just like what we are expecting and most awaiting matches of this tournament, the match between KFC Kodikal versus Young Friends. This is going to be a high voltage match, the match of the tournament, and after winning the toss, I think it's a very good toss to win by the captain of Young Friends, who has no hesitation at all. They elected to field first. No, exactly, they're playing with the small ground. I think it's a mini stadium. They know exactly if even that was better to ball pass rather than the bat pass. Maybe the game plan of Young Friends Ruwa is that they need to restrict KFC Kodikal less than 50. Then they got a potential in the batting department. What they got, they can on the match quite easily. And before this innings will go into comments, it's over to Star Nawaz in our national language, Hindi, and along with us, I think we are having our guest commentator, Mr. Malu from Bichu Boys, and suddenly he will going to entertain you in commentary box as well. And he is also the group member of this Underarm World WhatsApp, so that it was a very privilege and honor for us having him in commentary box. And welcome, sir, for this big tournament. And just 2 words about this cricket tournament. Thank you, Shashi sir. So good afternoon for all the Underarm lovers, spectators for this grand tournament, the Gladiator Trophy 2021, being presented by Underarm World WhatsApp group. So the high voltage match, the 4th match of the first round of Karnataka pool, the big match, the red hot match. Young Friends Urua facing KFC Kodikal. So Young Friends Urua winning the toss, electing to field first. So we thank Mr. Satish and Star Nawaz ji for your coming here and doing a great job. Yesterday I was not presented here, but I saw you were entertaining the crowds. You have been outstanding. So we have some great matches. So this is a big match. Zubair with the ball in his hand. Zubair has been a very experienced campaigner with the ball in his hand for Young Friends Ruwa. Right arm over the wicket to the batsman, and Tajuddin facing this time nicely played onto the covers, and just a chance of a run out there. Slight misfielding from Tanveer, and with that single the scorecard opens for Tajuddin as well as KFC Kodikal. So we have umpiring, they have been putting their mind and souls to this tournament, Harish Padil as well as Ajit Padil. And Zubair second time and it's over, right time over the wicket to Sakir. This time going for the big shot, and that should be a catch, and that is out. Shakir cannot believe that. He was looking for the big one because that was a wind favoring area, that was a short boundary, and Shakir is looking at his bat with the disappointment. Big loss for the team like KFC Kodikal. And Young Friends Ruwa, they will be celebrating this wicket because this is one of the most important wicket for the team like Young Friends Ruwa. To pick up a wicket off Shakir can put really pressure on the team like KFC Kodikal. And Nawaz ji, what's your जी बिल्कुल, आपने तो सही सवाल पूछने को जा रहे थे, लेकिन आपके सवाल से पहले ही मैं बता दूं आपको कि ये अंडरआर्म क्रिकेट के ऐसे मैच है दोस्त कि आप तक जितने निरीक्षा होंगे दर्शकों के, ये आप उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दोनों टीम इस सीजन में इस तरह से लड़ रहे हैं चीता और शेर की तरह, अपने हाथों से नाखून को एक दूसरे के चेहरे पर लगा रहे हैं। इस सीजन में एसएस ट्रॉफी पर हुए उस अपमान को
उर्वा के मैदान पर इस तरह से चुकाए थे KFC कोडिकल सेमीफाइनल मैच पर। तो यहां पर ये तीसरी मैच दोनों टीमों के लिए प्रतिष्ठित मैच बने हैं। देखना है कि यहां पर क्या कर पाते हैं। और गेंद को सीधे उठाए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, ये रहा शानदार छक्का, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। क्योंकि जितने दर्शक इस मैच को देख रहे हैं बेद्रा मीडिया के जरिए, वाकई वो इंतजार कर रहे थे इस तरह के प्रदर्शन के। वो इस मैच को मायूसी होने में बिल्कुल नहीं पसंद करते, आखिरी गेंद तक इस मैच को बरकरार रखते हुए देखना चाहते हैं दर्शक। शुरुआत में ही 2500 दर्शक ऑनलाइन पर खड़े हैं इस मैच को देखने के लिए। ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 अंडरम वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप प्रस्तुत करते हैं इस प्रतियोगिता को, और हम सैल्यूट करते हैं अंडरम वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप को, क्योंकि आपने दिखाया एक ऐसे प्लेटफॉर्म। और इस बार ऊंचे खेले हवाओं में गेंद, इस बार भी सीमा रेखा से बाहर छक्का। Yes, Nawaz ji, you have been truly said this is one of the big match, and look at that batting from Nizam, completely turning the table in this over. After the loss of that big wicket of Zakira, Nizam came to the strike, and without wasting the time, 1 and 2 sixes in this over, and that have been so Nizam. जी बिल्कुल, क्या दो शानदार छक्के लगाए यहां पर निजाम ने, और इस बार सीधे गिल्लियां उड़ाए विकेट के। पिछले 2 छक्के के बदले यहां पर ईंट के जवाब पत्थर से देते हुए निजाम अब निर्गमन ले रहे हैं मैदान से। वाकई जबरदस्त इफेक्ट। शुरुआत की गेंद पर रोबोटिक खिलाड़ी शाकिर के आउट होने के बाद जिस तरह से निरीक्षा पलटे थे यहां पर, तो वापस उस विश्वास को दुगने किए थे निजाम अपनी बल्लेबाजी में। इस मैदान की फायदा उठाते हुए मंजेश्वर परिसर के ये पंचायत के मिनी स्टेडियम पर इस मैदान की आकृति और वातावरण के अनुकूलता को अपनी बल्लेबाजी पर इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से उन्होंने 2 छक्के चुराए, निश्चित रूप से काबिले तारीफ। लेकिन अब तो निजाम के विकेट यहां पर गिर चुके हैं। 2 छक्के लगने के बाद रनों की संख्या बने हैं कुल मिलाकर 13 रन। शुरुआत की ओवर की आखिरी गेंद, जुबैर दाहिने हाथ ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। यंग फ्रेंड्स उर्वा और KFC कोडिकल के बीच ये मैच ऑफ द टूर्नामेंट, इस प्रतियोगिता के सबसे बेहतर मैच माने जाएंगे ये मैच, क्योंकि आप नहीं जानते इन दोनों टीमों के बीच क्या क्या लड़ाई चल रहे हैं मैदान में। हर छक्के को मिलेंगे 500 रुपए के इनाम नजीर चरगोली की तरफ से, क्रिकेट के एक प्रोत्साहक है और हमारे साथ इस प्रतियोगिता में जुड़ते हुए बड़ी से योगदान दे रहे हैं नजीर चरगोली। ऑलरेडी अब तक 2 छक्के निजाम के जो लगे हैं, उस 2 छक्के के लिए नजीर चरगोली 500 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए आपको दे चुके हैं। और इस बार लोअर फुल टच के ऊपर धीमे गति के साथ खुल कर दिए गेंद को, और ओवर की समाप्ति। शुरुआत की ओवर जुबैर की ओवर पर 13 रन चुराने के बाद ये 6 ओवर की मैच है। अब बचे हुए 5 ओवर पर देखना होगा कितने रन बना पाते हैं यहां पर KFC कोडिकल। अंडरम क्रिकेट के 2 महान दिग्गज, चैंपियनों के चैंपियन। अगर कुछ प्रतियोगिता में यंग फ्रेंड्स उर्वा चैंपियन बनते हैं, तो कुछ प्रतियोगिता में KFC कोडिकल अपने झंडे ले आते हैं अंडरम क्रिकेट पर। यहां पर क्या होगा? केरला और कर्नाटक के खिलाड़ियों के बीच चल रहा है इस प्रतियोगिता। आखिरकार किस मकाम पर दर्शकों को देखने को मिलेंगे? कुछ ही समय बाकी है दोस्त। कल के दिन यहां पर ऐसे जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिले। NE पोसोट फाइनल पर विराजमान होकर मैंगलोर परिसर के कर्नाटक के खिलाड़ियों के इंतजार कर रहे हैं सामने करने के लिए। कौन होगा वो फाइनलिस्ट? अब तो शुरुआत की मैच पर टीम एलिगेंट क्वार्टर फाइनल पर प्रवेश किए हैं, और उसी तरह दूसरी मैच पर गोरी यंग बॉयज को हराते हुए NM मैंगलोर क्वार्टर फाइनल पर प्रवेश किए हैं। तीसरी मैच पर ब्रदर्स मकियार यंग फ्रेंड्स गांधीनगरा को हराकर क्वार्टर फाइनल पर पहुंच चुके हैं। ये चौथे क्वार्टर फाइनलिस्ट कौन होगा इन दोनों टीमों में, ये अब देखने वाले हैं। शरण, और इस बार लक्ष्य से बाहर गेंद, और विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए। वाइड बॉल के इशारा अंपायर से 1+1 2 रन मिलेंगे यहां पर यंग फ्रेंड्स उर्वा। आप जानते हैं कि ये कितनी अहमियत वाली मैच है।
तो हर एक रन आपके कमजोरीपन से, आपकी गलती से निकलने वाले हर एक रन भी आपकी हार की वजह बन सकते हैं इस मैच में। शरण दाहिने हाथ ओवर द विकेट से तैयार, स्वीप कर दिए गेंद को और गेंद सीधे फील्डर के हाथ में। केवल मात्र एक रन मिलेंगे यहां पर। अजहर मल्लूर गेंद को उठाकर वापस कर दिए और इस सिंगल रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर 16 रन 16। केएफसी कोडिकल 6 ओवर के इस सवाल पर देखना होगा कि शुरुआत की बल्लेबाजी में कितने रन लक्ष्य के ऊपर दे पाएंगे यंग फेंसुरवा को। दोनों टीम बल्लेबाजों के बीच एक से बढ़कर एक खिलाड़ियां दोनों टीमों पर खड़े हैं। किसी भी खिलाड़ी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर मंजेश्वर परिसर के यहां के दर्शक आप नहीं जानते हैं इनके बारे में, तो हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं ये हर एक खिलाड़ी कोई विराट कोहली से कम नहीं है, कोई जूनियर पांड्या, कोई हार्दिक पांड्या से कम नहीं है, कोई रोहित शर्मा से कम नहीं है। और इस बीच गेंद को घुमाए सीधे सीमा रेखा की तरफ, गेंद शानदार चौका। चेतन अब तो चेतना बन रहे हैं केएफसी कोडिकल को। शुरुआत के विकेट रोबोटिक खिलाड़ी शाकिर के निर्गमन के बाद जो मायूसीपन देखने को मिल रहे थे, जो घबराहट नजर आ रहे थे केएफसी कोडिकल के बल्लेबाजी पर, क्योंकि वर्तमान क्रिकेट पर इस लॉकडाउन के हटने के बाद जितने भी क्रिकेट के प्रतियोगिता चले हैं, तो उन तमाम मैचों पर ज्यादा से ज्यादा योगदान शाकिर के देखने को मिले थे केएफसी कोडिकल को। ऐसे में बहुत ही भरोसा रखते थे शाकिर के ऊपर। तो उनके निर्गमन के बाद निजाम ने आकर 2 छक्के ऐसे जड़े जो पिछले दिन जोजो ने लगाए थे। पिछले दिन जोजो ने आखिरी वाली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे, उसी तरह यहां पर निजाम ऊंचे वाले 2 छक्के लगाकर केएफसी कोडिकल के विश्वास को मजबूत करते हुए निर्गमन लिए हैं। तो अब देखना होगा कि चेतन और ताजुद्दीन की जोड़ी यहां पर बचे हुए गेंदों पर क्या कर पाते हैं केएफसी के लिए। शरण और इस बार भी खेलने के प्रयास, बैट एंड पैड की नजारा यहां पर। बल्ले से गेंद टकराने के बाद चेतन के शू पर लगे थे गेंद, तो ऐसे में रन दौड़ने की कोई भी उम्मीद नहीं लगाए। ताजुद्दीन के लिए रन की मांग कर रहे थे चेतन, लेकिन ताजुद्दीन बिल्कुल मन नहीं लगा इस रन पर। हालांकि ऐसे प्रतियोगिता में रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं यहां पर ताजुद्दीन। और बार भी स्वीप करने के प्रयास, बाहरी किनारा लगे गेंद, एक रन तो आसानी से मिले और बेहतरीन बैकअप वहां पर जुबैर खड़े थे, गेंद को उठाकर वापस कर दिए विकेट कीपर के हाथ पर। और यहां पर एक सिंगल रन मिलते ही रन संख्या बने 22 रन 22 रन बने हैं दूसरी ओवर के आखिरी गेंद बाकी। 11 से भी बढ़कर रन धारन, मोर देन 11। यंग फेंसुरवा के खिलाफ लड़ रहे हैं केएफसी कोडिकल, कर्नाटक के अंडरम के 2 महान क्रिकेट की टीम, चैंपियनों के चैंपियन दोनों टीम। और इस बीच गेंद को फिर सीधे खेले लॉल ऑफ की दिशा में, और ये देखिए चतुराई, इसे कहते हैं चतुराई, मौके पे फायदा उठाना। छोटी सी मौका मिले थे और उस मौके की फायदा इस तरह से उठाए, गेंद फील्डर की हाथ से गेंदबाज की हाथ तक पहुंचने की जो समय है, जो अंतरा है, उसको अपने दिमाग पर चिपकाते हुए दौड़कर रन पूरा किए हैं यहां पर। 2 ओवर की समाप्ति, दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने 24 रन 24 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर। 12 के हिसाब से हर ओवर पर 12 रन के रन धारण यहां पर प्राप्त किए हैं यंग फेंसुरवा के खिलाफ केएफसी कोडिकल। 24 इज द टोटल। चेतन और ताजुद्दीन की जोड़ी अंडरम क्रिकेट देखे हुए महारथियों में माने जाते हैं ताजुद्दीन को, चेतन को। तो यहां पर इस केरला के मिट्टी पर अपने अंडरम क्रिकेट की क्षमता को किस तरह से पेश करेंगे ये दोनों टीमों के खिलाड़ियां, ये अब देखना बाकी। बेद्रा मीडिया के जरिए अब तक तो 3000 से भी बढ़कर व्यूवर्स ऑनलाइन पर इस मैच को देख रहे हैं। आप समझिए बुधवार होने के नाते भी आज अगर 3000 लोग ऑनलाइन पर इस मैच को देख रहे हैं, तो क्या कदर होगा इस मैच के, कितनी अहमियत होगा इस मैच के ऊपर। हम दोबारा धन्यवाद अर्पित करते हैं अंडरम वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप को, क्योंकि उन्होंने प्रायोजित किए हैं, प्रस्तुत किए हैं ये मैच को ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 के नाम पर। हारिस वाईएफसी कन्नूर, फिरोज मंजेश्वरा जैसे महारथियों के 2 पिल्लरों की सहायता से इस प्रतियोगिता को बनाए हैं। निश्चित रूप से हम दोबारा उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं, क्योंकि इतने शानदार मैच, इतने सुंदर सजावट के साथ
अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास पर पहली बार 2 राज्यों के खिलाड़ियों के सम्मेलन दिखाए हैं यहां पर अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप ने। आप इस तरह की कोशिश हर बार बनाते रहें। अश्विन राज और इस बार कवर्स की दिशा पर गेंद को खेले, दोनों फील्डरों के बीचों बीच गेंद सीधे सीमा रेखा टकरा चुके हैं। यहां पर 4 रन मिलेंगे ताजुद्दीन। मौके पे चौका यहां पर ताजुद्दीन के बल्ले से। ताजुद्दीन ये जानते हैं कि इसके बाद मौका बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये सुनहरा मौका है अपने आप को बेहतरीन दिखाने के। जितने भी अंडरआर्म क्रिकेट के चाहने वाले आज यूट्यूब पर मोबाइल के सामने हैं, वो तो जानते हैं ताजुद्दीन और चेतन की क्षमता क्या है। दूसरी तरफ यंग फ्रेंड सुरवा के भी 11 के 11 खिलाड़ियां चिता के बराबर है। और इस बार भी गेंद को ऑफ साइड की दिशा पर सुंदरता के साथ गेंद को खेले। पिछली गेंद पर चौके चुराने के बाद काफी अंदाज के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि विकेट को गिराना यहां पर बिल्कुल सहमत वाली बात नहीं होंगे केएफसी कोडिकल को। जिस तरह से आप रन धरान को अब तक बरकरार रखे हैं, अगर उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं आप, बेहतर होगा आपके लिए। और इस बीच उल्टे हाथ खेलने के प्रयास यहां पर, लेकिन गेंदबाजी पर तो अश्विन राज खड़े हैं। आप जानते हैं अश्विन राज को, ये जानिए मैं कहता हूं अश्विन राज के बारे में। अंडरआर्म क्रिकेट पर सबसे पहले कार पाने वाले गेंदबाज है अश्विन राज। उर्वा के मैदान पर नैनो कार पाए थे अश्विन राज ने। पैराडाइज के मैदान पर पीपीएल पर कमाल दिखाए थे। आखिरी ओवर पर 2 रन को रुकाए थे अश्विन राज। और दूसरे एक किस्सा भी बता दूं कि यही केएफसी के खिलाफ एसएस ट्रॉफी के सुपर ओवर पर 7 रन की जरूरत थे केएफसी कोडिकल को, तब अश्विन राज अपनी चालाकीपन दिखाए थे। आखिरी 2 गेंदों पर 2 रन को रोक दिए थे अश्विन राज उस मैदान में, एसएस ट्रॉफी में। तो यहां पर क्या होगा? क्या यंग फ्रेंड सुरवा के गेंदबाजों के साथों साथ बल्लेबाज अपनी क्षमता जिस तरह से ऊंचे दर्जा पर दर्शक देख रहे हैं, जितने आपको जाने हैं अब तक, क्या दोबारा आप साबित कर पाएंगे इस मैदान में? और दूसरी तरफ हम सोचे केएफसी कोडिकल के बारे में। इस सीजन में तो केएफसी कोडिकल हर बार भी ट्रॉफी के ऊपर नजर डालते हुए प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट बने हैं केएफसी कोडिकल। तो क्या होगा रिजल्ट यहां पे? और इस पेज गेंद को सीधे शॉर्ट फाइड लेग की दिशा में मोड़े, गेंद डीप फाइड लेग पास कर चुके हैं। बासित काफी लंबी दौड़ लगाई इस गेंद को रोकने की, लेकिन गेंद तो बिना रुके सीमा रेखा पार कर चुके हैं। यहां पर चौका। अब तो डोल के आवाज भी गुनगुनाने लगे मैदान में। यह है अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप प्रस्तुत किए हुए ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021। आप यकीन मानिए अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप के सामर्थ्य को। इस बार तो धूप पर, खड़ी धूप पर यह मैच देख रहे हैं। अगली बार होगा फ्लड लाइट की रोशनी के नीचे। यह विश्वास दे रहे हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप क्रिकेट के प्रेमियों को। हर बार एक नएपन के साथ अपनी पहचान दिखाते हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप। और यहां पर भी देखिए कितनी सुविधाओं के साथ ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 के नाम पर दर्शकों को ऐसे मनोरंजन दे रहे हैं, ऐसे मनोरंजन मानो कि इस खड़ी धूप में एक शरबत मिले हैं दर्शकों को। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 34 रन, 34। हर ओवर पर लगभग 11 से भी बढ़कर रन धारण अब तक बहुत ही सुंदर तरीके से स्कोरबोर्ड पर दिखा रहे हैं अपने साथी स्कोरर इरफान स्कोरर के ऊपर अपने साथ खड़े हैं। वीक्षक विवरण पर सतीश हनुमान और मालू मंजेश्वर और उसी तरह अब्दुल रहमान बाकुर भी थे हमारे साथ, जो मलयालम पर बहुत ही गंभीर शब्दों के साथ अपने वीक्षक विवरण दे रहे थे। महारथियों के रूप पर आप जिम्मेदारी निभाते हुए रेफरियों के आप देख सकते हैं हरीश पटेल, अजित पटेल और उसी तरह मोहन यैयारी। एक सिंगल रन यहां पर ताजुद्दीन के बल्ले से, और इस सिंगल रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 35 रन, 35। लगभग 6 ओवर की बल्लेबाजी के बाद अगर 50 से 55 रन यहां पर बनाते हैं केएफसी कोडिकल, तो निश्चित रूप से यह मैच आखिरी गेंद तक दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देंगे इस मैदान में। उल्टे हाथ खेलने की कोशिश चेतन, यहां पर सीधे निशाना की जरूरत थी। यहां पर विकेट कीपर भी गैदर नहीं कर पाए और ओवर थ्रो के जरिए और एक रन।
यंग फ्रेंड सुरवा के हाथों पर इस तरह की गलतियां काफी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आज कुछ कुछ कमजोरियां इस तरह से नजर आ रहे हैं कि एफसी के खिलाफ ये दर्शक बिल्कुल निरीक्षण नहीं करते हैं, क्योंकि यंग फ्रेंड सुरवा के गेंदबाजी हो, फील्डिंग की प्रदर्शन हो, बल्लेबाजी हो, ज्यादा से ज्यादा मैचों पर 100% मैदान पर देखने को मिलते हैं, किसी भी खिलाड़ी कमजोरीपन से नहीं। और इस बार उल्टे हाथ के साथ थर्ड मैन की दिशा में गेंद तो सीधे सीमा रेखा पार किए, ये इसे कहेंगे रोडक वाले चौका, चमनप्राश चौका। 41 बने रन संख्या, 41 इज द टोटल। चेतन और ताजुद्दीन शुरुआत के 2 विकेट गंवाने के बाद, शाकिर के निर्गमन के बाद 2 फटाके फोड़ते हुए तुरंत निकले थे निजाम, और उसके बाद जुड़े ये जोड़ी ताजुद्दीन और चेतन वाकई विश्वास दिला रहे हैं केएफसी को, जीत के विश्वास को मजबूत कर रहे हैं केएफसी को। और बार ऑफ साइड की दिशा में एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा पर गेंद को खेले, एक सिंगल रन प्राप्त होंगे, और इस सिंगल रन के साथ रन संख्या बने हैं 42 रन, 42। 6 ओवर की ये मैच, 36 गेंदों के मुकाबला होगा। आज के ये बी विभाग के पहली राउंड के ये आखिरी मैच है, इसके बाद होगा क्वार्टर फाइनल मैच। और इस बार भी गेंद को काफी सुंदरता से कवर्स की दिशा पर गेंद को खेले, यहां पर भी एक सिंगल रन मिलेंगे। ये अच्छी बात है जब बीच बीच पर चौके गिरने के बाद हर एक गेंद पर एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक बदलते रहना। जब आप बिंदी गेंद बनाते हैं, डॉटेड बनाते हैं, तब जाकर आपके रन धारण पर असर पड़ते हैं। अगर आप हर गेंद पर रन बनाते हैं तो आपके रन धारण, रन मशीन आगे बढ़ते ही रहेंगे, कोई दबाव नहीं होगा। अगर बीच पर विकेट भी गिर जाते हैं तो टीम की रन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 44 रन, 44। हर ओवर पर 11 रन के आधार पर रन बने हैं। मैच आप देख रहे हैं केएफसी कोडिकल के खिलाफ यंग फ्रेंड्स उर्वा, हाई वोल्टेज वाले मैच, हजारों दर्शकों के दिल के चाहत वाले मैच। देश विदेशों से जितने भी दर्शक इस मैच को देख रहे हैं, अलग अलग राष्ट्र में, सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो, ओमान, कतार, कुवैत जैसे राष्ट्र पर इस मैच को देख रहे हैं यूट्यूब के जरिए, बेद्रा मीडिया के जरिए। बहुत ही सुंदर सजावट के साथ यहां पर क्रिकेट श्रृंखला आयोजित किए हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप मंजेश्वरा ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021। 5 साल बाद कर्नाटक के खिलाड़ियां, ठीक 5 साल बाद केरला के इस मिट्टी की खुशबू ले रहे हैं और यहां के वातावरण के स्वाद ले रहे हैं और यहां के प्यार भरे दर्शकों के दर्शन ले रहे हैं कर्नाटक के खिलाड़ियां। 3800 दर्शक ऑनलाइन के जरिए बेद्रा मीडिया पर, और भी बढ़ जाएंगे, आप इंतजार कीजिएगा, क्योंकि सभी दर्शक जानते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। गेंदबाजी पर परिवर्तन, शरण 5वें ओवर को लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे शरण। देखना है कि बचे हुए 12 गेंद आप किस तरह से होंगे। चेतन स्ट्राइक पर कुछ नखरेपन दिखाते हुए, हालांकि ये बनते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर भी कुछ इस तरह की शैलियां देखने को मिलती है। फुटवर्क के इस्तेमाल, आगे निकले और उल्टे हाथ के साथ गेंद को सीधे कवर्स की दिशा पर खेलते हुए एक सिंगल रन बहुत ही विश्वास के साथ चुराया यहां पर ताजुद्दीन और चेतन। शुरुआत के 2 विकेट गिरने के बाद जिस तरह से रन बना रहे हैं, वाकई जितने भी दर्शक यंग फ्रेंड्स उर्वा को एक खड़क दिशा पर देख रहे थे, उनकी उस नजर को हल्के कर दिए हैं यहां पर केएफसी कोडिकल ने। शुरुआत की 4 ओवर पर हर ओवर पर 11 रन के रन धारण के साथ 44 बनाए हैं। और इस बार अच्छी गेंद, पैर की जड़ों पर गेंद, ताजुद्दीन की दोनों पैरों के बीचों बीच दिखाए थे इस गेंद को। ऐसे गेंद हमेशा बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। ये गेंदबाजों की चालाकीपन है कि कौन से बल्लेबाज को किस तरह से गेंदबाजी दिखाना चाहिए। चेतन अब स्ट्राइक पर, शरण 2 बार जमीन को टपकाने के बाद गेंद को उठाकर थोड़े से पीछे हटते हैं। इस बार भी गेंद सीधे पैर पर, और यहां पर भी अंपायर हरीश पटेल लेग बाय की इशारा दिखाए। अजित पटेल स्क्वायर लेग अंपायर के रूप पर आप देख सकते हैं। अनुभवी रेफरियां दक्षिण कन्नड़ जिला के ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों पर ऊंचे दर्जा के क्रिकेट की प्रतियोगिता में अपने योगदान देते हैं। और इस बार सीधे खेले, रोकने के प्रयास, और ये देखिए क्रिकेट के मैदान पर फुटबॉल के नजारा।
तेजी के साथ आए हुए गेंद को अपने पैरों के सहारे रोककर हाथों से गेंद लिए और सीधे जाकर स्टंप्स पर लगा दिए और यहां पर निर्गमन ले रहे हैं ताजुद्दीन। रन संख्या अब तक बने हुए कुल मिलाकर 47 रन, 47। पांचवीं ओवर की प्रगति, 2 गेंद इस ओवर के बाकी। शानदार बल्लेबाजी, निश्चित रूप से तालियों के साथ स्वागत करना चाहिए, क्योंकि 2 विकेट गिरने के बाद जिस तरह से अपनी टीम की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाए यहां पर ताजुद्दीन, जिस तरह के शब्द हम इनकी प्रशंसा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, आज तो बहुत ही खुशी के साथ हम कह सकते हैं कि उन शब्दों को डिजर्व करते हैं ताजुद्दीन। नौ गेंदों पर 10 रन बनाकर टगआउट पर अब बैठ चुके हैं ताजुद्दीन। तो ताजुद्दीन के निर्गमन के बाद नए खिलाड़ी केएफसी खोड़िकल के कप्तान, अंडरआर्म क्रिकेट के सुंदरी कहलाते हैं हकीम सूरिंजी। उल्टे हाथ के साथ फिर एक बार थर्ड मैन की दिशा पर अश्विन दौड़ते हुए बेहतरीन फील्डिंग के साथ वापस कर दिए, लेकिन थ्रो इस बार गलत नजर आए। ओवर थ्रो यहां पर, और ये देखिए नजारा यंग फ्रेंड्स उर्वा के, गेंद सीधे सीमारेखा की तरफ जा रहे हैं और यहां पर लिया है शायद, यहां पर तो शायद 4 रन दौड़कर पूरा किए हैं यहां पर केएफसी ने। क्या आप यकीन मान सकते हैं यंग फ्रेंड्स उर्वा के हाथ पर इस तरह की गलतियां, या इससे पहले कब देखे हैं आपने? अग्र क्रमांक की टीम कहलाते हैं, फील्डिंग पर तो चीता की तरह अपने आप को दिखाते हैं यंग फ्रेंड्स उर्वा के खिलाड़ियां, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि केरला परिसर के ये हवा यंग फ्रेंड्स उर्वा के शरीर पर नहीं लग रहे हैं। आज केएफसी कोडिकल इस वातावरण के साथों साथ यहां पर जमे हुए दर्शकों के प्यार, वाकई वो वापस कर रहे हैं अच्छे क्रिकेट के साथ। 5वीं ओवर की आखिरी गेंद, वाइट ओवर द विकेट, और इस बार मैं कहता हूं कि यहां पर गलत किए हैं, और ये देखिए और एक नजारा, सीधे विकेट पर लगे और चेतन अब वापस जाने होंगे टगआउट पर। रन आउट होकर निर्गमन ले रहे हैं चेतन। बेहतरीन पारी निभा पर अपने टीम को इस तरह से सहारा बने, निरीक्षा से बाहर, कप्तान के विश्वास पर ही नहीं बल्कि केएफसी खोड़िकल के पीछे खड़े रुके जितने भी महारथियां हैं, पवन हो, जमाल पुंचमे हो, उनके विश्वास पर खड़े उतर पाए हैं आज चेतन। निश्चित रूप से जबरदस्त एफर्ट। तो 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 52 रन, 52 after the completion of 5 over, 52 after the completion of 5 over। आखिरी 6 गेंद बाकी, आखिरी 6 गेंद बाकी। कितने बनेंगे यहां पर केएफसी कोडिकल के? क्या यंग फ्रेंड्स उर्वा शुरुआत की 5 ओवर पर महंगी साबित होने के बाद, हर ओवर पर 10.20 के रन धारण छोड़ने के बाद, क्या आखिरी ओवर पर वापस आती दिला पाएंगे? एक अच्छी गेंदबाजी के साथ डेथ ओवर को यहां पर बेहतरीन दिखा पाएंगे यंग फ्रेंड्स उर्वा? किसे उतारेंगे गेंदबाजी पर? किसे उतारेंगे गेंदबाजी यहां पर? अरशद को लाए हैं गेंदबाजी पर। वाकई ये सही निर्धार होगा यंग फ्रेंड्स उर्वा के कप्तान के, अजमल के ये सही निर्धार, क्योंकि ऐसे मौके में पिछली बार भी आखिरी वाली डेथ ओवर बाखूबी निभाए थे अरशद। एलआर पदों के उस आमलामगर ट्रॉफी पर, सौहार्दा ट्रॉफी पर भी, एसएस के प्रतियोगिता में भी अपनी गेंदबाजी आखिरी मौके पर बेहतरीन दिखाए थे अरशद। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए और इस मैदान की वातावरण को समझते हुए मैं कहूंगा कि यहां पर अजमल ने ये सही निर्धार लिए हैं आखिरी ओवर पर इरशाद को चुनते हुए। 52 रन बने हैं, 52 इज द टोटल, और इस मैदान में भले ही 6 ओवर पर 60 से भी बढ़कर रन बने, आप छोटी नजर से बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि ये मैदान कमाल करते हैं दोस्त। कभी कभी 30-35 रन भी कष्ट बनाते हैं और कभी कभी 60-70 भी आसान। और यहां पर दूसरे रन दौड़ने की कोशिश और हकीम सूरिंजे रन आउट। एक सिंगल रन जुड़ेंगे, दूसरी रन की कोशिश पर रन आउट होकर वापस आए यंग फ्रेंड्स उर्वा। आज तो थोड़े से चार्ज कम लग रहे हैं यंग फ्रेंड्स उर्वा के खिलाड़ियों के शरीर पर।
अब तो देखने वाली बात यह है कि बल्लेबाजी पर जिस तरह से हम केएफसी कोडिकल की देखे, क्या उसी तरह एंफेन सुरवा भी अपने बल्लेबाजी की जयकार यहां पर दिखाकर केएफसी की नैया को तोड़ने की कोशिश यहां पर करेंगे? यह तो सवाल होगा, क्योंकि 4000 दर्शक अब पहुंच चुके हैं ऑनलाइन पर। तो ये 4000 दर्शक भी जानते हैं एंफेन सुरवा की कैपेसिटी को, उनकी क्षमता को जानते हैं। इस तरह के कई मैचों में एंफेन सुरवा चिराग की तरह निकल आए हैं। जमजम नासिर, आइए स्टेज पर। इस प्रतियोगिता में स्वागत करते हैं संगठक आपको। आप हमारे साथ जुड़ते हुए कई बार प्रोत्साहन किए हैं और इस बार भी आप अपने हाथ मिलाए हैं इस प्रतियोगिता में। तहे दिल से स्वागत करते हैं संगठकों की तरफ से। आखिरी ओवर के 5 गेंद बाकी और इस बार ऑप्शन से बाहर गेंद। यहां पर तालमेल के कमी, रन दौड़ने की कोशिश, यहां पर वाइड बॉल की इशारा और तीसरी अंपायर की मदद ले रहे हैं इस रन आउट की अपील के लिए। वाइड बॉल के रन तो जुड़ी लेंगे यहां पर स्कोरबोर्ड पर। आखिरी मौके पर अरशद काफी कम बार ऐसे दिखाते हैं अपनी गेंदबाजी में वाइडों की दिखावा, लेकिन इस बार इस वाइड के बाद अगर ये रन आउट नहीं बनते हैं तो 2 रन जुड़ेंगे केएफसी कोडिकल की रन संख्या में। ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 अंडरम वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप मंजेश्वरा। आउट के करार अंपायर से। तीसरी अंपायर ने कहा कि जब गेंद बेल्स को गिरा रहे थे तो ऐसे मौके में बल्लेबाज के बल्ले बिल्कुल पहुंचे नहीं थे सिनान के। सिनान चैलेंज कृष्णापुरा के एक धमाकेदार खिलाड़ी, लेकिन यहां पर इस रनआउट के रूप पर अपने विकेट गंवाकर वापस जा रहे हैं। वाकई ये बहुत ही बड़ी प्लेटफॉर्म थे सिनान के लिए, वो अपने आप को दिखाने की प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे। तो केरला के इस परिसर में इतने तमाम दर्शकों के सामने ग्लैडिएटर ट्रॉफी पर जो खिलाड़ी यहां पर अच्छे दिखाते हैं, अपनी क्षमता को ऊंचे दर्जा पर दिखाते हैं, यकीन मानिए भविष्य बन जाएंगे आपको, क्योंकि ये प्रतियोगिता बना रहे हैं अंडरम वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप। और इस बीच गेंद को मोड़े, क्या शानदार स्ट्रोक यहां पर। 500 रुपए कमा चुके हैं आप। साजिद अंडरम क्रिकेट के मांत्रिक खिलाड़ी, किसी भी समय अपनी मांत्रिकता दिखा सकते हैं साजिद। ये देखिए शुरुआत किस तरह से दिखा रहे हैं केएफसी कोडिकल को। साजिद छा गए आप इस मैदान में। ये अगली गेंद हर्षद उल्टे हाथ के साथ, और ये देखिए साजिद की कमाल, ये इसे कहेंगे फ्लैट वाली छक्का। ऊंचाई देखिए इस छक्के की। 1000 रुपए कमा चुके हैं आप। नजीर चिरगोली आपकी इस पराक्रम को देख रहे हैं और देखते हुए बार बार आपके साथ कह रहे हैं कि और 500 जुड़ेंगे आपके खाता में। तो 1000 रुपए आप कमा चुके हैं और 1000 रुपए यहां पर निजाम कमा चुके हैं। नजीर चिरगोली प्रोत्साहन कर रहे हैं आपको धनराशि के साथ। क्या शानदार 2 छक्के लगाए आपने, एक तो स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर और एक दूसरी छक्का। वाकई हम दर्शकों से माफी चाहते हैं, यहां पर अगर टीवी स्क्रीन के इंतजाम होता तो बार बार उस छक्के के नजारे को आपके सामने हम दोहराते। इतने लो हाइट के साथ गेंद सीधे फ्लैटेडली जाकर लैंड हो चुके थे सीमा रेखे के बाहर। और इस बार यहां पर डॉटेड डिलीवरी और अपने विकेट को यहां पर कुर्बान किए हैं खिलाड़ी ने, क्योंकि वो जानते हैं कि आखिरी मौके पर अगर यहां पर साजिद को मौका मिले तो ये बेहतर होगा, क्योंकि उनकी बल्ले से 2 ऐसे मांत्रिक छक्के निकले हैं। हमने शुरुआत पर ही आपने कहा था कि वो मांत्रिक खिलाड़ी है, किस समय किस तरीके से रन चुराते हैं ये कोई नहीं जानता। अपनाने के बाद दिखाते हैं साजिद, और आज तो केएफसी के किरदार निभाते हुए कमाल कर दिए साजिद ने। और इस बार लॉलीपॉप लगे साजिद को।
गेम को देखते हुए अपने मन पर लाला जा रहे हैं, क्योंकि इतने खुले आ रहे थे गेम, गुड लेंथ के साथ धीमे गति से आ रहे थे, उस गेम की स्पीड को नहीं समझ पाए, ऊंचे खेलने की कोशिश पर रन आउट हो चुके। छठे ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं कुल मिलाकर 67, 67 रन, 68 इज द टारगेट। 68 रन की लक्ष्य दिए हैं यंग फ्रेंड्स उर्वा को केएफसी कोडिकल। लेकिन मैं दर्शकों से कह दूं, जितने दर्शक यहां पर बैठे हैं, आप यंग फ्रेंड्स उर्वा को नहीं जानते हैं। अगर आप इस 68 रन को यहां पर असंभव मानकर यहां से निकलना चाहते हैं तो रोक लीजिएगा अपने पैरों को, थोड़ी देर बैठ लीजिए, क्योंकि यंग फ्रेंड्स उर्वा ऐसे कई मैचों पर अपने बल्लेबाजी की रफ्तार दिखाकर, अपनी बल्लेबाजी पर विस्फोटक फटाके फोड़ते हुए इस तरह के मैचों को जीत चुके हैं। तो ऐसे में आपको आपकी समय को व्यर्थ नहीं होने देंगे यंग फ्रेंड्स उर्वा। तो इंतजार करेंगे अगले इनिंग्स के वीक्षक विवरण पर। हम बदलावन करते हैं। सतीश हनुमान वीक्षक विवरण पर तैयार खड़े हैं, जो आंग्ल भाषा के वीक्षक विवरणकार हैं। पिछले दिन से आप उनकी आवाज को सुन रहे हैं, जिस तरह से वो अपने आवाज के साथ खिलाड़ियों को एनकरेज करते हैं, जिस तरह से प्रेक्षकों को बैठे जगह पर बैठने के लिए मजबूर करते हैं अपनी आवाज से। और दोबारा आपको मौका मिले हैं सतीश जी के उस वीक्षक विवरण के साथ जुड़ने के। आइए सतीश जी, माइक हस्तांतर करने से पहले सतीश जी आपसे एक छोटी सी सवाल। अंडरआर्म क्रिकेट को आप लगभग पिछले 28 सालों से आप जानते हैं, लास्ट 28 इयर्स, बहुत ही करीबी से। ये दो टीमों के बारे में भी आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, केएफसी कोडिकल और यंग फ्रेंड्स उर्वा को। जिस तरह से पिछले 2-3 मैचों में इन दोनों टीम आपस में लड़े थे, जिस तरह के नजारे आपको देखने को मिले थे, दोनों टीम जीत के लिए जिस तरह से जी जान लगाते हैं, तो यहां पर केरला के इस मिट्टी पर, मंजेश्वर के इस पंचायत के मैदान में इतने बड़े जो लक्ष्य यहां पर दिए हैं 68 रन के, यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए आप क्या कहेंगे, किस तरह से होगा ये मैच? So thank you very much, Star Nawaz. The big question, and the question certainly is going to be very interesting as well, because just coming back to these two teams, especially I'm talking about this particular season. I think young friends Urva, they started very well. 2021, they won prestigious cricket tournament in all over South Kendra district. But even KFC Kodikal, they also started well. They are the two teams. They are in a hunt in the beginning of the season, and of course, NM Cricket Mangalore after they has got a slow start, then they started to come into the winning track. That's a different story. But these two teams, I think, is dominated too much in this season 2021. Just coming to the comparison between these two teams, I think both the teams has got a very good players in the side. Even KFC Kodikal, of course, after they got a good start in the season, but a little bit they lost the rhythm in the middle of that season. And still, in the last week, I think yesterday, they won the prestigious, they become the runners of Elegant Trophy 2021. That will give a lot of confidence for KFC Kodikal. That's the result here we are watching. After that, getting that much of confidence, look at their performance in this particular match. No, they knows that they play against one of the top team of the South Kendra district and Young Friends Urva. That's why they're putting their 100% in this game. And that was what we were watching the result here. The batsmen are really dominating with a fantastic piece of batting display there from Nizam. I think one of the surprise package after hitting 2 massive sixes, and then Akim, little bit Sajid in the end 2 sixes will going to be the one of the really a big blow. Definitely it is going to be a big blow here for Young Friends Urva. That 4-6 is definitely going to be the biggest drawbacks here for Young Friends Urva. And one more announcement, the encourage announcement here for KFC Kodikal. In first over, if Shakir will going to take any wicket, he will going to get 500 cash prize, which is donated by Nazir Chirgoli, and that was the encouragement prize. Even his journey started here for Young Friends Urva with the wide delivery. Shakir bowls the wide outside the line of off time, nothing much to do with the delivery. The batsman just shouldering his arm. And again, beautifully bowled there by Shakir, seeing that the batsman assured his intention to sweep the ball, so he's bowled a little bit outside the line of off time, and batsman completely beaten. Long way to go here for Young Friends Urva. Huge total to chase down.
Again, outside the run of off stamp, going to be one more dotted delivery. Each and every dotted delivery. Then problem continues here for young friends because they need to climb the mountain of France. The monumental what they're going to get if they wanted to win this match. Shakir bows this time, lovely shot. That's what all about Harshad for you. He is such a dangerous batsman for any opponent. The Ashad is the one who can change the complexion of the match. Look at that strokes coming from the blade of Ashad, almost dragging the ball from outside the run of off time and just using the condition of the cricket ground. What you were talking about, this part of cricket ground, a little bit shortest part, what he was aiming for towards the deep backward square leg and mid wicket, sailing it over out of the park. When Ashad is in the arc, the ball definitely will going to disappear out of the park. Shakir also try to repeat that one, but intelligent, absolutely clever. There from Shakir, just reducing the face, but line is pretty good. Try to drag the ball from outside the line of off stamp, but Ashad almost mistiming it. Lovely shot, one more in the flat version, but this time I think it's going to be a boundary because ball is hitting the wall, so that it's going to be a boundary. And just like Nawaz is mentioning about for the cricket lovers, please don't leave the ground because you are watching match between KFC Kodikkal versus Young Friends, and Young Friends is a team. They got a history of bouncing back at any bad situation. They can convert that bad situation into good situation because of their excellent batting department. Again, one more. That is what we are talking about. Young Friends all about. This is a kind of reply coming from the blade of Ashad. He is just taking the revenge. What is conceded the runs in the last over when it's Sajid hitting 2 sixes in the over of Ashad. Now Ashad just came into middle with the got a bat in his hand and is sending a strong message for the opposition that we are not giving up this match cheaply. What outstanding bat display, Malur. And 17 runs in the first over. I think one of the destructive batsmen in the underarm cricket world, Ashad, once again is showing his excellency. What a great cricketing stroke. 3 cricketing stroke coming from the blade of Ashad. Truly said Satish sir, because with a target like 68 on the board, Young Friends Urva, they don't have any options than attacking here, because they need to get around 30 runs in the power play overs so that they can put pressure on the bowling side, because chasing target like 68 around 11.2 per over, and one over if it's going to be tight, then it will be a very tough match for a team like Young Friends Urva. But the good thing is that when KFC Kodikkal was batting, they lost the 2 wickets in the first over. Compared to that, Young Friends Urva, after the completion of the first over, they're looking really good here, and Arshad is looking in a roll after the 2 dot balls with the 2 maximum and a boundary. That can put a big pressure on the team like KFC Kodikkal. But wait and see. Now I can say this is a Berkeley of underarm cricket. Such a great pace bowler, Chetan, after a great display of batting with the ball in his hand for the team like KFC Kodikkal. Absolutely, you're mentioning about the KFC Kodikkal. They lost 2 wickets for just 13 runs. And once again is the announcement continues here. For every wicket in this over, they will going to get 500 rupees, which is donated by Nazir Chirgoli. This time outside the line of off stamp, and Bashit in the delegation looking for the big shot, but didn't got that much of enough bat onto that outside edge of the bat, and batsman crossed over. Batsman crossed over in the sense Ashad back on strike. Pressure, and definitely going to be a little bit pressure now for the bowler, because Ashad, you're definitely going to enjoy this mini stadium here in Manjeshwar, because if he talks with the bat, then this stadium definitely going to be a scoring stadium here for the batsman like Ashad. I request NM Cricketers Mangalore players, please report here to sign the official chart as soon as possible. Please, Chetan. Round the wicket, balls, swept that one, but lack of placement, chance of run out in the non-strikers. All that we can see that the supporters of Young Friends, they got a heart in their mouth, because that ball went quickly to the short fine leg. One of the best fielder, Iqbal at short fine leg, quickly fields the ball, denying the single from these 2 batsmen. Very important dotted delivery there from Chetan.
He's bowling right arm. Round the wicket to Ashad. Ashad swept that one. Misfield. That will go into definitely going to be one more boundary here. Runs are coming like a fast flowing waters of the rivers in this most beautiful mini stadium here in Manjeshwar. Score jumped into 21. Target is 68. That means 47 more runs required for the victory. Job is not yet over. Job is not yet over. Having this man in the middle, I don't think the captain of KFC Corical will go into relax here. But a slight misfield there for Iqbal. That was shows the pressure. That was absolutely shows the immense pressure here for the fielding side as well. Chetan. Shasha looking for the expansive right. Didn't got enough pattern to that. But they kept it. Definitely they were going to get a single for that. With that single, scoreboard moves on to 22 on the board. 23 on the board without loss of any wicket. That was what the young friends were required. Really take the advantage of that fielding restriction in the power play. They need to get some big score in this power play. Already they on the first step of getting 17 runs in the first over, but they need to get more in the second over if they wanted to take this match away from the opposition. But KFC Corical needed one good over if they wanted to back in this game. Chetan. Item of the wicket balls. Down the leg stamp looking for the big swing of the match. Has a run out in the non-strikers. Little bit correction in the strikers end, but I think Ashad has made it. By call by umpire, all we can see that KFC Corical thought that he got the big fish in the net. But I don't think so. Even I think umpire don't think so. Arish Padil, he knows that the batsman Ashad, well, he made his home quite easily in the end. One more addition to total. Scoreboard moves on to 24. Asking run rate is 11.22 runs per over. But they going well over that asking run rate. 0.2k viewers enjoying this game of cricket. This is showing that popularity of Underarm cricket. That shows the popularity of these two teams, how many fans they got behind them. This is outstanding. This only because of Underarm World WhatsApp group. They really work hard to get this cricket tournament in this most beautiful cricket ground in the name of Gladiator Trophy 2021. Chetan from the far end. Tom down the wicket balls. This time, that was a huge and bigger than the previous two sixes. This is a monumental. Oh my goodness, can you believe this? Ashad is on fire. Score jumped into 30 on the board. Exactly 30 on the board. Now 38 required and 24 deliveries remaining. All in sudden that the equation looks to be not impossible for young friends Surwa. Surely Satish G, because the intention is clear from the side of young friends Surwa to attack, and attack is the best defense. And by seeing Arshad playing such a fantastic knock here, and this can now the captain of the Corical side will be thinking what to do, because Chetan, they are a very important bowler, the trump card of the team, and he is also being punished. So Arshad is not showing any mercy for the team like KFC Corical, because he knows that the target is a very huge one, and one tight overs can put the pressure on the batting side. So he is just attacking, and one more thing is that this ground is favoring Arshad because the short boundaries for the left-hand batsman, and he is using all the opportunities of this phase. And now Tajuddin with the ball miss. And Satish G, what can you predict in this match? I can see 60-40 now, because without losing any wicket from the front side, the team will be in a very good position in this moment. Exactly, why not? 60-40 might be the 60 in the sense you are talking about 60 for young friends Surwa, because the way that Ashad is batting, that was really a destructive batting. 27 runs he already scored, and he took only 10 deliveries for that, and you are witnessing 2 sixes, 3 massive sixes, and I think Ashad, if he goes on to bat another 2 overs, he can change the match complexion of the match directly into the favor of young friends Surwa. Wait and see. Tajuddin is brought into attack from the far end, and Bashit is the batsman, will go into face Tajuddin. Tajuddin, one of the tremendous all-rounder for the side of KFC Corical. Right arm over the wicket to Bashit. Bashit this time looking for the slog sweep shot. They're going for the run. Chance of a not. Trying for the try. Kick and is gone. Bashit is the batsman, is back into pavilion. Now it's the right time for the KFC Corical to tighten up the screws. Surely Satish sir, because they break the shackles now. This opening pair, even Basit was not contributing much with the bat, but when you lose a wicket, that can put some little bit of
pressure on the batting side, and they can break the shackles, and this is what KFC Kodikal did now, and they are tightening the screws. But the big man, I can feel like he's looking like a Chris Gale of international cricket. He's in the middle of the ground who can change the game. Yesterday we saw some of the batsmen, you see, like they can change the match even with a one man in their team. Like example, yesterday Chemmi played a brilliant knock of 45 runs. Chammu Arimala, he played against the team Kumbla. Today the man Arshad, who can change the match with only in his bat in his hand, and he scored 27 from 10 balls. That means with a strike rate of 270. So this match is really going to be very tight. I was thinking that this match can be going to the side of KFC Kodikal after the first innings, but nothing is impossible, and young friends Surua, they are not giving up, and they are in the hunt for this Gladiator Trophy 2021. Absolutely, nothing is impossible in cricket. That's true. And what we are watching here is the kind of reply coming from the batsmen of young Prince Surva. Looks like this match is definitely going to be anybody's game. So new batsman in is captain of the side. Ajmal is came into middle. Wait and see how Ajmal will going to contribute. Of course, being the captain of the side, lot of responsibility in his shoulder, and wait and see how well going to handle the pressure. But having Asha, this man just came once again back into strike now. Every time when he was back into strike, look at the crowd here. They know exactly they will going to get some entertainment from this man, Tazuddin. Offers from the far end, from the aircraft end, looking for some wicket, looking for some dotted deliveries. Bowling right arm, round the wicket to Ashad. Ashad this time looking for the big swing of the bat, but not quite able to meet the bat. Now that's what KFC Kodikal wanted in this situation. They need to beat the batsman, because Ashad, if every time he connecting the bat, I think he's got a maximum or a boundary. So that is very important here for the bowlers of KFC Kodikal. They need to bowl some dotted delivery, need to keep this man quiet. But so far Ashad is in a hunt. He is in a hunt. Facing next delivery. Oh, that was a little bit experiment. That was experiment too much. Therefore Sazuddin might be looking for some change of pace, and a slow delivery is trying for, but line is not good in the occasion. So that wide call by umpire. One more addition to total score. Mode moves on to 31 on the board. Tazuddin from the aircraft end, bowling, of course thinking about what kind of line to be good here for Ashad, but Ashad is thinking to dominate the bowler. This time domination continues here. It's going to be a boundary. One bounce over the roof. There was a deep fine leg boundary for 4 runs. This has been outstanding, and I will tell you, unbelievable reply coming from the bat of Ashad. Looks like it's a one-man show. What an audacious batting performance here from Ashad. Absolutely astonishing batting performance, just like what KFC Kodikal has did in their first innings. The similar kind of batting performance here coming from young friends. Just I want to see the total score. 35 is on the board. Now they're just 33 away from the victory. That means almost half of the job is completed. They have to get another half of the job. And look at that, the overs they faced, 2.3 deliveries. That means it's outstanding. Looks to be even the power play. I think that power play definitely not going to affect Asha there, but he will going to enjoy his batting. Surely Satish sir, because this is a batting paradise, the Panchat Mini Stadium, and the side from Mangalore teams, they will be really happy, because look at that shot. That's a maximum into the stands. One more from the hands of Arshad is on fire. He is blowing like a hot sun here in this Panchat Mini Stadium for young friends Surua. NM Cricketers Mangalore ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು NM Cricketers Mangalore ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನವರ ಸೈನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಿ ಮತ್ತು ನಾನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ NM Cricketers Mangalore ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So domination continues here. This is what Ashad is all about. After a long time I watching, because he was not having it at a good season here for young Silva. He just losing his places in a playing 11. But this time he is definitely this innings will going to cement the place in the playing 11 of young Silva. Tazuddin from the far end, little bit under pressure, bowling from the aircraft end, right arm round the wicket
Oh, and again, looks like once that was the sweet sound coming from the bat of Ashad. Looks like it's going to be one more big boundary, but protection there in the deep backward square like Iqbal, the fieldsman there in the deep backward square like fields the ball as scoreboard moves on to 42 on the board. That means they are just away for 26 runs required for the victory, and they got 19 balls to spare. Tazuddin. Now Captain Cool Ajmal facing his first delivery. Where is it the kind of strategy going to implement? This time down the leg stamp, but not enough, didn't got enough bat onto the little bit frustration for Ajmal there. That is a hittable delivery, but fortunately for the bowler, just a single to end the over. One more big over. Just coming back to that equation, I'm just watching the kind of over both the teams has got. In KFC Kodikal, when Zubair started his over, he conceded 13 runs and Sharan conceded 11 runs and Ashwin conceded 10 runs. That was out after completion of 3 overs. But look at here. Shakir bowled first over, 17 runs coming from that over. Chetan bowls next 13, then Tazuddin bowled next 13. That means young friends looks like they are in upper stage as for the equation between these two teams. Surely, Satish Ji, because when you compare the half of the innings, first half of the innings of the both teams, I can see young friends who are there very upfront in this match. And when you look at the history of this ground, we always say that here only one batsman can change the complete composition of the game. That's a big history of this ground. You don't need 4 or 5 batsmen to play a small innings. One big innings can make a big difference in this ground, and that's a favor of batsman here this time. And this has been a batting paradise from yesterday onwards. But still, I can say one tight over from Shakir, the most experienced campaigner, the best all-rounder of the team, and great bowler from the side of KFC Kodikal. Can he defend this time? And slightly played, and one more single being added. And Ajmal will be thinking that Harshad, you played a match, I'll be watching, I'll be just giving you strike because you are looking in a great touch and a great role. And almost 85% of the runs of young friends who have been scored by Harshad, and that's unbelievable batting performance. 37, and Chennai's highest score in this tournament of 45 or 44 runs is in danger this time slightly, and pressure on the bowler. Nothing is working in the mind of KFC Kodikal. Now the captain Akim, the 3D player, the wicket keeper, the bowler, the batsman, the captain of the side will be thinking what to do, how to stop him. And this time looking for the stump out, and that's gone. The big fish in the net, the great batsman, the man who changed the role of this match. And this is a turning point, a big turning point in this match, Satish Ji. Exactly. Meanwhile, I request the two teams captain, please report here for the toss. Captain of NM Cricketers Mangalore as well as captain of Elegant Cricketers. So I request the two teams captain, please report here for the toss. Captain of NM Cricketers Mangalore. And just like talking about this is going to be a turning point of this match, because the Ashad is looking pretty good in the middle, and I already mentioned the job is not yet out, but I think it just opened the gate. It just opened the gate here, because very difficult to open the gate in the sense is a 68 is definitely going to be under pressure situation. But toss is going on here. I request again captain of NM Mangalore, the umpires are waiting for you. Please don't waste the time. Surely Satish Ji, because Elegant Tanadanaika. Elegant. Satish Ji, because once a batsman is set and he's gone back to the pavilion, the new players now, Ajmal is have been played like 4 or 5 deliveries, and a new man is Azhar, because now they can be little feeling the pressure. Look at that delivery, and this is what I'm saying, breaking the shackles, getting a wicket, the important wicket of Arshad. And I think in this ground even around 25 runs in 3 overs can be defended. Look at that delivery, completely going for that shot and edge of the bat, carrying the ball, and one more single taken. Now Ajmal will be thinking we have to move on from here. Over is over. The great man is back to the pavilion, so we have to take the match forward from here on. And I can see a slight improvement from the side of KFC Kodikal, bringing back the match, and that's what all the spectators needed, because cricket is a match, and cricket is a match of unbelievable moments. So now Zakir with the ball in his hand, right arm over the wicket to the batsman. This time going for a sweep shot, and there's a chance of a catch here, and he's gone. Ajmal is back to the pavilion. 1 wicket gives you 2 wickets. That's what cricket is all about.
So Shakir getting 1,000 rupees from Nazir for getting 2 wickets in this over. So I think Nazir is having a great back balance that he is sponsoring all of his money to KFC Kodigal team. So this match is now balanced 50-50, completely 50-50, and now I can see little bit little bit of pressure on Young Friends Surwa team. Exactly, why not? It was going to be a little bit under pressure situation, even though there's 25 runs required from remaining 13 deliveries. And I think so. I think after losing Ashad, looks like look at the body language of KFC Kodigal. Now 5k viewers, that's going to be a record. That going to be a record here in this Bedra Media. The 5k viewers enjoying this contest between KFC Kodigal versus Young Friends Surwa. Now I think the matches looks to be very interesting. After losing Ajmal, after losing Ashad, now new batsman just coming into the middle. I think it's going to be a little bit dangerous. And more than anything else, I think just I'm observing the absence of Mansoor for Young Friends Surwa. It will definitely go into a big difference. Surely Satish ji, in this ground Mansoor was a trump card because he's attacking batsman. He's a batsman who can bring look at that delivery. 2 runs from 1 over, 2 wickets. Zakir on a roll here after conceding 17 in his first over. Look at that complete turnaround and a great spectator we have here. Asan Perla is watching this match. He's a great fan of Young Friends Surwa. He's left his seat and is watching this match. So what a over from the team KFC Kodigal. Zakir, fantastic bowling performance. I have to appreciate it. Exactly, that was a fantastic over. Now score is a 46 on the board. That means 22 required from last 2 overs, and the required run is 11 runs per over. And what a great over there from Shakir. Once again, he's justifying why he was a fantastic, one of the top all-rounder in the present cricket, because he fails to contribute from the bat. Now he knows that he need to contribute. Why he was in the team? That's why he just contributed from his bowling. Of course, he a little bit expensive in his first over, 17. And look at this mindset, the willpower. It's not an easy. Whenever he is punished badly by Ashad, it's very difficult to bounce back. But this man, Shakir, once again is showing his excellency that he is one of the top all-rounder. And he picked up 2 valuable wickets. The same batsman, I think Ashad is back into pavilion, and at the same time Ajmal is back into pavilion. Now, this equation is going to be very interesting. 22 required and 12 balls remaining, and very interesting to see that one new bowler has to be introduced, and Shahil is been introduced by the KFC Kodigal. This is going to be more interesting to see that how the new bowler will going to bowl, and wait and see how Azhar, one of the most destructive batsmen, especially in the middle order, and is a match finisher, and wait and see how he will going to contribute from his bat. What a match! Spectators are seeing here. Almost 5k views online on Bedra Media. So this time the ball up and looking for the big shot there, and a chance of a catch. Oh, complete! What a performance from the fielder from KFC Kodigal. That is I think Nizam from the KFC Kodigal side, saving that 2 important runs because every runs can be very important in the complexion of the game. And now the bowler is Sahil from the side of KFC Kodigal with the second time in his over with the ball in his hand. 20 from 11 balls. Anybody's match from here on. I can't predict this match completely because Azhar is such a destructive player. I have watched his plays. He's a very good player of reverse sweep. And look at that shot, nicely played again to the fielder Iqbal, this time collecting the ball. So this is a big match, and the new man Imran from the side of Young Friends Surwa, one of the best batsmen from the side, attacking player. So I can see the absence of Mansoor. Whenever Mansoor is in the field behind as a wicket keeper, I can see that the spirit of the game from the player like Mansoor, everyone just wake ups. That was the absence we saw in the Young Friends fielding side today. And completely beaten by the batsman again. White call, and 50 comes up for Young Friends Surwa. White +1, 2 runs in the form of extra. And Sahil, the bowler, you have to take the responsibility for the team like KFC Kodigal. Such a big match, such an important match, the biggest match of this Gladiator trophy being presented by Underarm World. Nicely played. That was a wide delivery, but again Azhar looking for the same reverse sweep and getting a single. Actually should have left that ball. So 1 white ball, 1 extra. Whenever batsman is going to play on extra ball, is losing 1 ball and a 1 run. Maybe next 1 more extra ball can produce a boundary.
So that's a big mistake from the batsman like Azhar. But still we have to wait and see. And Angfan Surua, they're playing it in a very cool manner, as if they need only 1 or 2 boundaries. 16 required from 9 balls. What a match! 16 from 9 balls. These 3 important ball of this match. Very important 3 balls of this match coming from the hands of Sahil now. 4th time is over. Right time out the wicket from the aircraft, and this time nicely played, completely beaten, and the wicketkeeper Hakim has been not up to the mark today. By runs, Harish Padil giving the signal from as a main umpire, doing a fantastic job, and Ajit Padil with the side umpire stance and completed dot ball, and Hakim had to cut that ball because now giving the strike has been rotated. Hazar back, and Sahil wait and see what's in his pocket for the next ball. Azhar, I'm sure that Azhar will be targeting that reverse sweep. This time again going for reverse sweep, nicely played, and look at that field placement on that deep fine leg, and the fielder just collecting the ball with that single. The scorecard has been moving up to. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದರೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್, ಪ್ಲೀಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. Spectators, please cooperate with us. That's a boundary line. It's a very important match, and it can create trouble for the fielders. Spectators. So 14 required from 7 balls. Here you go. Down the leg slam. Going to be wide. This is going to be a bonus. This is going to be a bonus here for young friends. Then suddenly they're going to grab this opportunity, because the scoreboard is moves on to 55. Means 13 required. 13 required from 7 balls. What a game of cricket we're having. What a fantastic game of cricket we're having. This is what we are talking about. Why the spectators, they came here with a big number. They know exactly they will go into witness a nail-biting finish, and this match is really progressing towards a very interesting finish here. From the far end, Sahil, oh, that was the maximum. That's what we're talking about. Here we go. Imran hitting the 6 and taking this team total into 61. Now just a 7 required from 6 balls. What a great hit coming from the final delivery of that over. Now I think the fans of England who are there on the field, the little bit I think the pin drop silent in this stadium. You can see it after that 6. They know exactly. Only we are hearing the sound of the band, but we can see that the pin drop silent out here. That shows the cricket lovers, the spectators really enjoying each and every moment of the match between these 2 big teams of the South Kendra district. Unbelievable batting, Shashi sir, because that was a mistake from the bowler Sahil, because when Azhar was batting, he was targeting the leg sticker, and he was quite successful even after giving that 2 extras also. But when Imran was there, he should have been very careful with that last ball of the over. Always the bowler should be careful of the last ball. Exactly. Whenever you look at that batting side, first over Zakir considered a 6 in the last ball. Second over Chetan considered a 6 in the last ball. Now again Sahil with that 6 also. The match has been turning into the hands of Angfran Surua. 75-25. The captain with the ball is, and Hakim has changed the match. Many matches. He is a match winner for the team like KFC Kodikal. Still I can say this is a defendable run. 7 runs can be defendable. It depends on the first 2 balls of this over. Wait and see. Now it was a viewers. The figures are going higher and higher. The temperature is going higher and higher. 5.5 viewers. They knows that now dealing with the final over, it's going to be very interesting now. 7 required from 6 ball. Down the leg stamp, Azhar looking for the flick of try to flick that on off his legs. First time I watching, he wanted to play in the straight bat because he knows that no need to panic at all. All the job is done by Imran in the final delivery of the previous over. Now 6 required from 5 balls. Hakim is one of the very intelligent player in the side of KFC Kodikal. Once again he need to justify himself why he is the captain of KFC Kodikal, because he need to restrict the batsman not to get that 6 runs in 5 balls. So down the leg stamp, pressure. Oh my goodness, is it necessary here? Is it necessary here? I think so. I don't think so. But Azhar desperately wanted to back on strike, but the man who hits one massive 6 would change the complexion of the match. Now is coming back to the pavilion because Azhar wanted a run. Imran is not interested, and now I think KFC might be a little bit thinking about if they are able to pick
take 1 or 2 wickets in a difference of 2 deliveries, then who knows, KFC Kodigal, they got opportunity to bounce back to this match. Yes, Satish ji, why not Akim on the fifth over? This is what I was thinking. Such a great all-rounder, such a great bowler. Why he had not bowled that fifth over for his team? Maybe if he would have conceded around like 8 or 9 runs, and he have kept something like 10 or 12 runs in the last over, maybe they could have. We can see some pressure on the batting side, but now that man Imran is back to the pavilion. Azhar, one of the most experienced player from the team, like Young Friends Rua. Akim, the captain, third time in his over. This is really loose bowling performance. Chance of run out. Tanvir is back, losing wickets but getting the runs in the form of extra. But I think Young Friends Rua don't need to be disappointed with these things, because they are getting the runs, they're losing the wickets, but it's fine for them. It's not a big deal. Absolutely, it is no matter they're losing wicket, because they're getting runs very cheaply without an effort from the bat. Hakim himself is just conceding some runs, and you're pointing out why is Hakim is not introduced himself for the fifth over, and certainly might be the under pressure situation. No one want to deal with that pressure, so that is straight away. But here I think Hakim not that much of pressure, I will tell you, because they knows that they're already out of this match, but they need to try their level best. They need to try their level best to bring back this match, because everybody knows that cricket is an unpredictable game. It was a funny game, and they need to take each and every advantages here, because the Young Friends they lost the wicket, and I think they need to bowl some 2 or 2 good deliveries. But here I think Young Friends they're in a driver's seat of winning this match, and just 4 runs required for the victory, and they got 5 deliveries to spare. First time the asking run is coming down 6 runs per over. This is really advantage. Hakim, right arm over the wicket. Fawaz played that one in the air, but quite safely down to deep backward point region. Of course, Fawaz implemented that reverse sweep quite dangerously, but anyhow, the single run here for Young Friends. Now 3 runs required, and they got 4 deliveries to spare for Young Friends to register the famous victory. Sensible, absolutely sensible. Azhar knows that there is no need to panic at all, and you know the responsibility in his shoulder after getting in such a good position, and not to lose that grip over this match. Now I think just 2 runs required and 3 deliveries remaining. Hakim just bringing his all fielders very close to the batsman so that he able to prevent the single from this batsman. This time top edge, it's also run out in that 2 cycles, and they missed the opportunity. Now scores are levelled. The scores are levelled. Young Friends they level the score. Now 1 run required for the victory, and they got 2 deliveries to spare. But I think here the losing and winning is a part of cricket. But I think this match definitely going to be the match of the tournament. And this is definitely going to match of tournament. They won the heart of cricket lovers. Eventually, cricket will going to win here between these 2 teams. Surely, Satish ji, this is a match of the tournament, no doubt in that. But Young Friends Rua, what a comeback! They believe in the process. And now 2 to go, 1 to get. And look at the field placement. I'm just remember of Australian team against the Indian team. This time nicely played. Young Friends Rua breaking the fort of KFC Kodigal again. So, what a match! What a match it has been. KFC Kodigal Young Friends Rua putting a target of 68 on the board. Batting masterclass from Harshad, taking the team to the winning position. Heartbreaks for KFC Kodigal. Heartbreaks for KFC Kodigal. They will be thinking what went wrong for them. I can say the turning point of this match is the first over from Zakir. It's a 17-run over from Zakir has changed this match completely into the hands of Young Friends Rua. And man who is responsible for the change is Ashab, who scored for 34 runs in a 15 deliveries, takes the match totally away from KFC Kodigal. That's why he deserves this man of the match award. Surely, Satish ji, you know what? You can see when he approached this match, Arshad, he was looking so cool that maybe in his mind it was like a target of 40 runs. He was so cool, calm, and crispy. So look at that batting masterclass. I think he have hit almost like 6 sixes, 4 sixes and 2 boundaries, and with an individual score of 34 of 15 balls.
ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ I request Nasir Zamzam to kindly present this man of the match award to the destructive Ashad of young friend Surwa. ಚೆಮ್ಮೀನು So for the Ashad young friend Surwa, of course, he was just sending the strong message here for the selector of young friend Surwa. He is the man who wanted to cement the place in young friend Surwa in the playing 11. What innings is played, absolutely entertainment, and played some enterprising cricketing stroke. And I request once again Arshad announced 1,000 rupees. Riyaz Kunjattur is announced 1,000 rupees for Arshad for his fantastic innings of 34 runs. And once again, congratulations Arshad for your wonderful innings. Arshad, don't go away. Another 1,000 rupees is there. Nazir Cherugoli once again announced one more 1,000 rupees. No, I think Arshad is in a hunt. Arshad is in a hunt. He will going to get another 1,000 rupees for his fantastic innings of 34 runs in 15 balls. David Zakir Nizam of KFC Kodikal, because they are also won the prize money for the every wickets. That is announced by Nazir Cherugoli. I request Shakir and Nazim, those who have picked up a wickets here, please come and collect your cash prize from Mr. Nazir Cherugoli. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೋಡ್ ನಡುವಲ್ಲಿ, KA70M1188, KA701188. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ನ ಮಾಲಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. KA70M1188 ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬಾಲ್. NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So it's over to Nawaz for the further explanation of the match in our national language, Hindi.
तो दोबारा स्वागत है सारे दर्शकों को ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 के मैच आप देख रहे हैं क्वार्टर फाइनल मैच। इस प्रतियोगिता के तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच एनएम जप्पू मैंगलोर के खिलाफ टीम एलिगेंट मैंगलोर। मैंगलोर परिसर के दो बलाढ्य टीम, एक तो चैंपियनों की चैंपियन एनएम जप्पू मैंगलोर, दूसरी तरफ है हर टीम को भी सवाल फेंकने वाले टीम एलिगेंट। और इस बार अच्छी गेंद यहां पर डॉटेड डिलीवरी, ऑप्शन से बाहर निकलने वाली गेंद को छेड़ने की प्रयास किए लेकिन खींचने पर मजबूर नहीं हो पाए। यहां पर बल्ले के नीचे से गेंद गुजरे सीधे विकेट कीपर के हाथ पर, कोई रन की मौका नहीं, लगातार दोनों गेंद डॉटेड डिलीवरी। और इस बार उल्टे हाथ खेले, यहां पर सीधे गेंद राशिद बाबा के हाथ पर, तौफीक की पारी समाप्त। यहां पर एनएम जप्पू मैंगलोर शुरुआत पर ही ऐसे एक चमकदार खिलाड़ी को खोए हैं जो इस सीजन के हर एक मैच पर भी छक्के के बिना वापस नहीं लौटे थे मैदान से। तौफीक की पारी यहां पर समाप्त हो रहे हैं 0 रन बनाकर। आसिफ की पारी यहां पर समाप्त हो रहे हैं। आसिफ अड्डूर जो एनएम मैंगलोर के शान कहलाते थे, वर्तमान क्रिकेट में तो उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए बड़ी संख्या के लोग मोबाइल के सामने मैदान पर देखने को तैयार होते थे, लेकिन यहां पर अपने विकेट गंवाते हुए 2 गेंद शुरुआत पर डॉटेड बनाने के बाद तीसरी गेंद पर अपने विकेट गंवाकर वापस जा रहे हैं। तो ऐसे में अब तक तो रनों की संख्या बिल्कुल नहीं खुले हैं एनएम मैंगलोर के खाता पर। यह 6 ओवर की मैच है और आज के पहला क्वार्टर फाइनल, कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता के तीसरी क्वार्टर फाइनल मैच। और इस बार लंबी स्ट्रोक, तौफीक एक सिंगल रन के साथ अपने स्ट्राइक बदले और एनएम मैंगलोर के खाता खोलने पर सफल बने। तो इस बार स्ट्राइक लेंगे आतिफ। पिछले मैच पर आपने देखे हैं इनकी रफ्तार, कई दिन बाद वापस एनएम मैंगलोर के साथ जुड़ते हुए उस 17 नंबर की जर्सी को अपने शरीर पर लगाकर विपक्षी खिलाड़ियों को अपने खतरे के बारे में चेतावनी दे रहे हैं आतिफ। और इस बार ऑप्शन की दिशा पर, मिड ऑफ की दिशा पर गेंद को रोके और यहां पर भी एक सिंगल रन होंगे और इस सिंगल रन के साथ रन संख्या बने 2 रन 5 गेंदों की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी पर आप देख सकते हैं सलमान को, टीम एलिगेंट के भरोसेमंद विश्वास पर गेंदबाज। शुरुआत देखिए कितने जबरदस्त दिखा रहे हैं अपनी गेंदबाजी पर सलमान, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। और ये देखिए तौफीक के रफ्तार, क्या जबरदस्त छक्का तौफीक जी। पिछली बार तो आपकी बल्ले से इस तरह के शॉट हमने उर्वाकी मैदान पर देखे थे केएफसी के खिलाफ। तौफीक की गेंदबाजी पर आपने ऊंचे ऊंचे छक्के लगाए थे और यहां पर शुरुआत की 3 गेंद डॉटेड बनने के बाद एनएम मैंगलोर के रन संख्या जिस तरह से खुलने लगे तो हम सोच रहे थे कि इस ओवर में तो इतने ऊंचे रन बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, लेकिन शुरुआत की ओवर के आखिरी गेंद पर छक्के चुराकर आपने विपक्षी टीम एलिगेंट को तो चेतावनी दी है। यहां पे 8 रन पहली ओवर की समाप्ति के बाद। 6 ओवर के निर्धारित मैच। आतिफ अब स्ट्राइक पर खड़े हैं। अंडरआर्म क्रिकेट पर बाइक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी थे। पैराडाइज के मैदान पर T4 स्ट्राइकर्स के किरदार निभाते हुए बाइक जीते थे आतिफ ने, और उसके बाद इन्फ्लुएंस उर्वा पर उनकी सेवा हम देख रहे थे। लेकिन आज ऐसे सुनहरे मौका पर, इतने प्रतिष्ठित ऐतिहासिक क्रिकेट श्रृंखला पर एनएम के जर्सी को अपने शरीर पर लगाकर उतरे हैं मैदान में। पहली मैच पर तो चमकता हुआ बल्लेबाजी दिखाकर मैन ऑफ द मैच पुरस्कार पाए थे आतिफ, और इस बार भी शुरुआत पर तो इसी तरह से बल्लेबाजी शुरुआत करते हैं, धीमे धीमे गति के साथ बल्लेबाजी शुरुआत करने के बाद विपक्षी गेंदबाजों को समझने लगते हैं आतिफ, और उसके बाद जब वो क्रीज पर टिक जाते हैं तो मैदान के कोने कोने पर गेंदों के दर्शन दिखाते हैं, अपनी बल्लेबाजी के कदर दिखाते हैं। श्रीकांत पिछले मैच के गेंदबाजी के हीरो, टीम एलिगेंट की जीत पर भूमिका निभाने वाले, बेहतरीन भूमिका निभाए थे। और ये स्लो ओवर डिलीवरी, ये चालाकीपन बारी पड़े यहां पर श्रीकांत को। तौफीक के लिए धीमी गति के साथ स्लो ओवर डिलीवरी दिखाना चाहते थे, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर रखी गेंद, और इस वजह से अंपायर ने कहा कि ये वाइड बॉल है। हरीश पटेल और मोहन यैयाडी इस मैच के ऑन फील्ड अंपायरों के रूप पर। श्रीकांत तैयार, और इस बार भी पंच करने के प्रयास,
फील्डर के हाथ पर गेंद, यहां पर एक सिंगल रन तो अवश्य बनेंगे और इस सिंगल रन के साथ रन संख्या बने 11 रन, 11 ऑन द स्कोरबोर्ड। देखना होगा कि पिछले मैच पर 67 रन बनाकर 68 रन के लक्ष्य दिए थे केएफसी कोडिकल। उस मैच में यंग फ्रेंड्स और हर्षद की उस लाजवाब फटाके वाले बल्लेबाजी और उसके बाद आखिरी मौके पर जब 7 गेंदों पर 13 रन की जरूरत है यंग फ्रेंड्स रुवा को, तो ऐसे में इमरान जूनियर केएफसी अपने बल्ले से एक ऐसे छक्के छुड़ाए मानो कि विपक्षी टीम के गले पर चाकू मारे थे वो छक्के ने। श्रीकांत अपने ओवर की चौथी गेंद और ये देखिए कितने रफ्तार वाले छक्का, यहां पर 4 रन मिलेंगे। यहां पर तौफीक क्या पावर लगा रहे हैं आप बल्लेबाजी में, आपकी शक्ति आपकी युक्ति दोनों नजर आ रहे हैं मैदान में। अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप की प्रस्तुति पर ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 अंडरआर्म के इतिहास पर पहली बार 2 राज्यों के खिलाड़ियों के सम्मिलन इस मैदान में। और इस बार सीधे गेंद फील्डर के हाथ में और इस बार खतरे पर गिरे आतिफ के विकेट। रिस्की रन चुराना चाहते थे लेकिन टीम एलिगेंट आज शुरुआत पर की मैच पर ही ये चेतावनी दिए थे कि हमें ऐसे मत देखिए क्योंकि हमारे पास भी मौके पे चौके लगाने की तरीका मालूम है। तो आज यहां पर हम टीम एलिगेंट को इतनी नाजुकी से बिल्कुल नहीं देख सकते। इस सीजन में तो टीम एलिगेंट बीसी रोड परिसर के कुछ ऐसे सितारों को अपनी टीम पर शामिल किए हैं, एक से बढ़कर एक बेहतरीन खिलाड़ियां खड़े हैं टीम एलिगेंट पर। एनएम जयपुर मैंगलोर भले ही कितने भी बलिष्ठ हो लेकिन टीम एलिगेंट के खिलाफ आप नजरअंदाज के साथ बिल्कुल नहीं रख सकते। यहां पर यह 6 ओवर की मैच है। इस मैदान के बारे में जानकारी रखना होगा आपको। पिछले मैच पर टीम एलिगेंट जिस तरह से अपनी गेंदबाजी दिखाए थे, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले मैच पर बल्लेबाजी से नहीं बल्कि गेंदबाजी की वजह से टीम एलिगेंट जीत हासिल किए थे। तो यहां पर भी वही अस्त्र आपके ऊपर, वही वेपन आपके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखना होगा कि इस अस्त्र को आप किस तरह से स्वीकार करेंगे और रन किस तरह से चुरा पाएंगे। यहां पर कभी कभी 6 ओवर पर 40 रन भी कष्ट बन जाते हैं इस मैदान में और कभी कभी 6 ओवर पर 70 रन भी आसान। दूसरी ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट से श्रीकांत फिर तैयार उस ओर से और इस बार छेड़ दिए गेंद को, लेकिन यहां पर फर्स्ट लीड की जगह पर राशिद बाबा खड़े थे। ओवर की समाप्ति, दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 16 रन, 16 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर। 8 रन के आधार पर रन धारण अब तक तो 2 ओवर पर 16 रन के मतलब 8 रन हर ओवर पर बनाए हैं। तो अभी बचे हुए 24 गेंदों पर देखना होगा एनएम जयपुर मैंगलोर कितने रन बना पाते हैं। इस सीजन में तो एक ऐसे शानदार वाली प्रदर्शन दिखाए हैं एनएम जयपुर मैंगलोर। सौहार्दा ट्रॉफी 2021 याद होगा आपको, डीएफसी देरलकट्टे के प्रस्तुति पर वो मैच खेले गए थे जो अंडरआर्म के इतिहास पर पहली बार सबसे ज्यादा प्रेक्षकों को पाने वाले प्रतियोगिता थे। वो ऑनलाइन के जरिए 12,000 दर्शक उस मैच को देखे थे और मैदान में तो आप अनुमान नहीं लगा सकते, आप अंदाज नहीं लगा सकते। अगर आपके पास समय है तो यूट्यूब पर सौहार्दा ट्रॉफी पर आप अपनी उंगली चिपका कर देखिए उस मैदान पर कितने दर्शक खड़े थे। तो उसके बाद ऑनलाइन व्यूइंग पर, ऑनलाइन व्यूवर्स पर दाखला बना रहे हैं और केरला परिसर पर सबसे पहली बार केरला के इतिहास पर एक क्रिकेट के मैच ऑनलाइन पर 5,000 से भी बढ़कर दर्शक इस मैच को देख रहे हैं और इसके श्रेय निकलते हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, इस ग्लैडिएटर ट्रॉफी के लिए। तो यहां पर देखना होगा कि कर्नाटक से लेकर यहां तक सफर बढ़ाकर मैंगलोर परिसर के ये महान खिलाड़ियां केरला के परिसर के क्रिकेट प्रेमियों को अपनी क्रिकेट के स्वाद किस तरह से दिखा पाएंगे, अपनी क्वालिटी किस तरह से पेश कर पाएंगे। अंडरआर्म क्रिकेट पर मैंगलोर के खिलाड़ियां जितने जानते हैं क्या कर सकते हैं, इस बात को किस तरह से वो पेश कर सकते हैं, यह सही प्लेटफॉर्म है दोस्त। यहां पर आपको मौका है केरला के परिसर के अभिमानियों के दिल जीतने के। निसार और इस बार गेंद को ऊंचे खेले तौफीक, काफी ऊंचाई के साथ गेंद, लेकिन
यहां पर तो निश्चित रूप से यहां पर बिल्कुल उम्मीद नहीं थे इस तरह। टीम एलिगेंट आप मौका दे रहे हैं तौफीक को। क्या आप नहीं जानते तौफीक की ताकत के बारे में? क्या आपको याद नहीं है उर्वा के वो मैदान पर तौफीक की गेंदबाजी पर केएफसी के खिलाफ तौफीक की रफ्तार? फाइनल मैच पर 64 रन के लक्ष्य को किस तरह से पूरा किए थे तौफीक। यहां पर आप जीवदान दे रहे हैं, मानो कि अपने तलवार दुश्मन के हाथ पर देकर खुद अपने गर्दन को कटवा रहे हैं। डॉटेड डिलीवरी, रन संख्या बने 18 रन, 18 ऑन द स्कोरबोर्ड। निसार टीम एलिगेंट के भरोसेमंद तेज गति के गेंदबाज, और इस बार लेग बिफोर के अपील, और इसी के साथ तौफीक की पारी समाप्त। अब तो यहां पर निसार शुरुआत की गेंद पर जो फील्डर की गलती से विकेट मिलने की जो संभावना को भूल चुके थे, मतलब वो मौका गवाए थे यहां पर निसार, लेकिन पीछा नहीं छोड़े निसार। उस गेंद के बाद लगातार तौफीक के विकेट के लिए निशाना बना रहे थे, और आखिरकार लगातार 2 गेंद बाद तौफीक को वापस भेजने पर सफल बने हैं यहां पर निसार। तो इस प्रकार तौफीक की पारी समाप्त होते ही रन संख्या बने हैं कुल मिलाकर 18 रन, 18 ऑन द स्कोरबोर्ड। ये तीसरी ओवर की प्रगति, 3 गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में। तौफीक के निर्गमन के बाद शमीर अब्बू के साथ जुड़ रहे हैं अंडरआर्म क्रिकेट के शान मान सम्मान कहलाने वाले बूम बूम सादिक। मैंगलोर परिसर से लेकर शुरुआत पर बी बॉयज के किरदार निभा रहे थे सादिक एनएम, और उसके बाद एनएम जैसे महारथियों के साथ मिलने के बाद एनएम के नाम भी ऊंचे दर्जा पर रोशन किए हैं सादिक ने। देश विदेशों पर इस एनएम के नाम को दिखाए हैं सादिक ने। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट T10 श्रृंखला में एबी डिविलियर्स और सोहेल तनवीर जैसे खिलाड़ियों के साथ अपने रूम शेयर किए थे। ये बहुत ही बड़प्पन है इनके। और ये देखिए यहां पर टीम एलिगेंट वापस भेज रहे हैं सादिक को। पहली मैच पर भी रन नहीं बना पाए थे सादिक, अपने उस बूम बूम प्रदर्शन यहां पर लगातार दोनों मैचों पर नहीं दिखा पाए हैं। इतने तमाम दर्शक जो इंतजार कर रहे थे बूम बूम सादिक की बल्लेबाजी देखने के लिए, लेकिन अब तो काफी निराशा होंगे उनके चेहरे पर। दूर गांव कर्नाटका से यहां तक सफर बढ़ाकर जो आपने लगातार 2 मैचों में जिस तरह से वैफल्यता दिखाए हैं, हम तो दावे के साथ कह सकते हैं कि निराशा काफी होंगे दर्शकों को। तो लगातार यहां पर विकेट। निसार टीम एलिगेंट के लिए चमक रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। आज तो ऐसे प्रदर्शन देखते हुए टीम एलिगेंट के मालक कादर शरीन, शकील, बहुत ही नाम से उनको जानते हैं, कभी कादर शरीन नाम से तो कभी शकील नाम से जानते हैं। वो तो आज बहुत ही खुश होंगे अपनी गेंदबाजी देखकर, अपनी टीम के इस गेंदबाज की गेंदबाजी को देखकर। नए खिलाड़ी अकरम, एनएम जयपुर मैंगलोर। अब लगातार 2 गेंदों पर विकेट गिरने के बाद यह हैट्रिक के मौका भी यहां पर, हैट्रिक के मौका यहां पर निसार को। एक खिलाड़ी हैट्रिक के हकदार बन चुके हैं यहां पर, अब ये दूसरे मौका मिल रहे हैं। केरला डिवीजन के मैच पर एक गेंदबाज की हाथ पर हैट्रिक विकेट यहां पर देखने को मिले थे, तो कर्नाटक की जो विभाग है आज के, किसी भी गेंदबाज नहीं बनाया हैट्रिक विकेट। और इस बार सुंदर शैली के साथ आप अकरम की पैरों की जो अंतरा देखिए, आप कितने लंबे लंबे कदम रखते हैं अकरम। सिर्फ 3 या 4 कदम पर अपनी नॉनस्ट्राइक पर पहुंच जाते हैं, इसी वजह से ही अंडरआर्म के चीता खिलाते हैं अकरम। और आपने देखा होगा एलिगेंट ट्रॉफी के फाइनल मैच केएफसी के खिलाफ अकरम की पराक्रम, जिस तरह से वो मैच फिनिशिंग जो प्रदर्शन दिखाए, तमाम अंडरआर्म के दर्शक जितने भी थे उस मैच को देखने वाले अपने मन में ताली बजा रहे थे अकरम के लिए। तो यहां पर देखना होगा कि एनएम जयपुर मैंगलोर के किरदार निभाते हुए इस मैदान में केरला के मिट्टी में क्या कर सकते हैं। और इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल के इशारा अंपायर से, अतिरिक्त खाता पर 1 रन। इस ओवर के ये पहली खराबी गेंद,
शुरुआत से लेकर अब तक अच्छे लाइन और लेंथ के साथ गुड लेंथ ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी गेंदबाजी में, खड़े रुके गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह से एलटी अरशद करते हैं, जिस तरह से गोरी यंग बॉयज के बाबू करते थे। निसार फिर एक बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट, और इस बार क्या शानदार गेंद यहां पर, निश्चित रूप से काबिल तारीफ। जब से निसार टीम एलिगेंट के साथ जुड़े हैं तो एक रौनक आए हैं टीम एलिगेंट के गेंदबाजी में, काफी विश्वास आए हैं। तो यहां पर भी 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 20 रन 20। अब 18 गेंद बाकी, 18 बॉल्स टू गो। तो बचे हुए इन 3 ओवर पर एनएम जप्पू मैंगलोर कितने बना पाते हैं, यह सवाल है, क्योंकि ये छोटे मैदान आप जानते हैं, पिछले मैचों को आपने देखे हैं, केवल 3 ओवर पर 20 रन बने हैं स्कोरबोर्ड में 20। ये इस मैदान में अब तक के बहुत ही कम रन कहलाएंगे, क्योंकि शुरुआत पर जितने भी मैच यहां पर देखे हैं हमने 23, 24, 25 इस तरह से रन बन रहे थे शुरुआत के 3 ओवर में, लेकिन यहां पर तो केवल 20 रन बने हैं एनएम जप्पू मैंगलोर के। तो ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि टीम एलिगेंट अपने गेंदबाजी को कितने सुधारे हैं, अपनी क्वालिटी को कितने इंप्रूव किए हैं गेंदबाजी में, वाकई जबरदस्त। बंटवाल, बीसी रोड, नंदावर परिसर के ये रतन जैसे खिलाड़ियां वाकई आज तो टीम एलिगेंट के किरदार निभाते हुए सितारे लग रहे हैं मैदान में, नीले और हरे रंग के जर्सी के साथ। राशिद बाबा विकेट के पीछे, पहली मैच पर तो विफल हुए, अब इंतजार जरूर है दर्शकों को राशिद बाबा की फटाकी देखने की। अकरम, अच्छी गेंद थे यहां पर, स्लो ओवर डिलीवरी, गेंद की गति को आखिरी मौके पर समझे अकरम, तो इस वजह से बल्ले को ज्यादा नहीं ऊंचे दिखा पाए, गेंद को वहीं पर रोके। शुरुआत की गेंद डॉटेड डिलीवरी, फराज टीम एलिगेंट के उदयोन्मुख खिलाड़ी, और इस बार शॉर्ट फाइंड लेके दिशा में गेंद सीधे निशाना बनाने की प्रयास बनाए, लेकिन यहां पर उस निशाना चूकते ही 1 रन प्राप्त हुए, और इस सिंगल रन के साथ रन संख्या बने हैं 21 रन 21। इस मैच के विजेता सीधे पहुंच जाएंगे सेमी पर, सेमीफाइनल पर पहुंच जाएंगे इस मैच के विजेता। यह क्वार्टर फाइनल मैच है, करो या मरो वाले मैच, डू बिफोर डाई वाली मैच। चौथे ओवर की तीसरी गेंद, शमीर अब्बू, यहां पर हर एक डॉटेड डिलीवरी भी मानो अपने शरीर को जख्म कर रहे हैं। यहां पे 3 गेंद डॉटेड बनाए हैं शमीर अब्बू ने, अब तक तो रन की संख्या खुले नहीं है शमीर अब्बू के खाता पर। 6 ओवर जैसे मैचों पर हर एक बिंदी गेंद भी काले काले डॉट बनते हैं, और इस बार सुंदर शैली के साथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में पुश कर दिए। 1 रन तो आसानी से मिले, जब तक रियाज कुछ अपने ही शैली पर गेंद को लौटाने के प्रयास करे। 2 रन के मौका मिले यहां पर एनएम जप्पू मैंगलोर को। शमीर अब्बू पहली रन बल्ले से निकालते हुए चौथे गेंद पर 2 रन बनाकर अपने खाता खोले हैं यहां पर शमीर अब्बू। धीरे धीरे से रन संख्या 23 पर पहुंचे 23। और इस बार ये लॉलीपॉप गेंद के फायदा ने उठा पाए शमीर अब्बू। वाकई शमीर जी, अगर आप सही तरीके से गेंद के साथ अपने नजरें मिलाया होता तो निश्चित रूप से 6 रन बनने से कोई नहीं रोक सकता था उस गेंद को। डॉटेड डिलीवरी यहां पर फराज, और इस बार भी कवर्स की दिशा पर छोटी सी मिसफील्ड, इम्तियाज नंदावरा, लेकिन रन बिल्कुल नहीं छोड़े यहां पर। डॉटेड डिलीवरी, फील्डिंग की नजारा, गेंदबाजी की प्रदर्शन हर दिशा में आज तो टीम एलिगेंट वाकई ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बनाकर दिखाएंगे आज। केवल 3 रन, केवल 3 रन के साथ अपनी ओवर को संभाले हैं फराज ने, उससे पहले निसार ने संभाले। 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 23 रन। 23 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। एनएम जप्पू मैंगलोर, अंडरआर्म क्रिकेट के दर्शक तो आपको महारथी के रूप पर देखते हैं, ऊंचे दर्जा के स्थान पर आपको देखते हैं क्रिकेट में, लेकिन यहां पर तो 4 ओवर पर केवल 23 रन बनने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि एनएम जप्पू मैंगलोर के बल्लेबाजी इस तरह से कमजोर क्यों हो सकते हैं। ऐसे कमजोरीपन बहुत ही कम देखे हैं दर्शकों ने, और यह वजह यह है कि आज टीम एलिगेंट अपनी गेंदबाजी को सुधारते हुए लाए हैं। हर एक गेंदबाज भी ये जानते हैं कि ये केरला की मिट्टी में अगर हम यहां पर अच्छे नहीं दिखे तो कभी अच्छे नहीं दिख पाएंगे।
ये सही मौका है अपने आप को खुलकर दिखाने के। अब तक तो आप कर्नाटक के मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन दिखा रहे थे, लेकिन अब केरला के मिट्टी पर आपको एक ऐसे सुनहरा मौका मिले हैं इस परिसर के हर एक अभिमानियों को आपकी कदर दिखाने की। और इस बार भी अच्छी गेंद यहां पर, क्या शानदार लाइन के साथ गेंदबाजी शुरुआत की है श्रीकांत। एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक बदले। टीम एलिगेंट के एक भरोसेमंद गेंदबाज है, विश्वास रखते हैं टीम के कप्तान रियाज, टीम के मालक कादर शरीन बहुत विश्वास रखते हैं श्रीकांत के ऊपर, और वाकई ही उनकी विश्वास पर खड़े उतर पाए हैं श्रीकांत अपनी गेंदबाजी में। और इस बार भी अच्छी गेंद, क्योंकि इस मैदान में एक एक रन की जो नजारे हैं वो गेंदबाजों की अच्छेपन को दिखाते हैं, क्योंकि यहां पर हर एक गेंदबाज की गेंदों पर चौके लगाना, छक्के लगाना पसंद करते हैं दर्शक, और यहां पर हर ओवर पर 10 रन के रनधारन बरकरार रखने की योजना बनाते हैं हर एक टीम। और इस बार भी डॉटेड डिलीवरी, क्या तारीफ करने होंगे श्रीकांत की गेंदबाजी को। हर एक गेंद पर एक एक नए तांत्रिकता, कभी ऑफ स्टंप के बाहर, कभी यॉर्कर डिलीवरी, कभी सीधे पैरों की दिशा में साफ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी श्रीकांत। दाहिने हाथों पर विकेट, ये अगली गेंद, और इस बार भी पंच करने के प्रयास, अकरम यहां पर विफल हो रहे हैं। लगातार डॉटेड डिलीवरी, कुल मिलाकर 11 गेंद डॉटेड बने हैं इस मैदान में, 11 गेंद डॉटेड बने हैं। क्या हो गया है आज अंडरआर्म मैंगलोर को। तो पिछली गेंद पर भी एक सिंगल रन, और इस बार एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, लेग बाय की इशारा अंपायर से। श्रीकांत क्या शानदार गेंदबाजी यहां पर निभा रहे हैं। दो ओवर के कोटा पर केवल 9 रन खर्च किए हैं श्रीकांत ने। 6 ओवर के ये मैच एनएम जप्पू जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ 2 ओवर पर केवल 9 रन खर्च करते हुए अपनी गेंदबाजी इस तरह से संभाले हैं। आज चमक गए श्रीकांत जी। केरला के इस परिसर पर आप दिखाए हुए ये पराक्रम कर्नाटक के लोग भी आज यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं बेद्रा मीडिया पर, तो वो जरूर आपके बारे में जान रहे होंगे, और अगली बार जब आप मैदान पर उतर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके अभिमानियों की संख्या भी बढ़ जाएंगे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने 27 रन, 27। क्या बेहतरीन गेंदबाजी दिखाए। आरंभिक गेंदबाजी के रूप पर सलमान अलियास चम्मू, केवाईसी काटीपल्ला के वो खिलाड़ी आज अपने सफर केरला तक बढ़ाकर टीम एलिगेंट के किरदार निभाते हुए चम्मू जिस तरह से गेंदबाजी निभाई, यहां पर शुरुआत की विश्वास उन्होंने दिए थे पहली ओवर पर ही। एनएम मैंगलोर के शुरुआत पर ही एनएम मैंगलोर के खिलाड़ी आसिफ अड्डूर को लगातार विफल करते हुए शुरुआत की सफलता उन्होंने दिलाए थे। और इस बीच गेंद को फिर ऑफ साइड की दिशा पर एक सिंगल रन यहां पर प्राप्त होंगे, और इस सिंगल रन के साथ रन संख्या बने 28 रन, 28। वाइट आर्म राउंड से मुस्तफा तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट से, और इस बार ऊंचे खेलने के प्रयास, यहां पर छोटी सी मिसफील्ड, गेंद सीधे सीमा रेखा पार कर चुके हैं। ये बोनस वाले चौका अकरम को मिल रहे हैं, ये नसीब के चौका। शुरुआत से लेकर अब तक हर दिशा में बेहतरीन दिखाते हुए टीम एलिगेंट एनएम के खिलाफ ऐसे मजबूत पकड़ पाए हैं, लेकिन आखिरी ओवर के दूसरी गेंद पर यहां पर 1 रन की जगह पर 4 रन मुफ्त में दे दिए हैं यहां पर टीम एलिगेंट। तो रन संख्या बने यहां पर 32 रन, 32 इज द टोटल। आखिरी ओवर की तीसरी गेंद, दाहिने हाथ राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार, मुस्तफा
स्ट्राइक पर खड़े हैं अकरम, लंबे शरीर के ये विस्फोटक खिलाड़ी, किसी भी मौके में निखर कर आ सकते हैं अकरम। और इस बार ऊंचे गेंद यहां पर, निश्चित रूप से बढ़िया गेंद, अंदाज नहीं लगा पाए अकरम इस गेंद के ऊपर, न इस गेंद की गति को समझ पाए, न इस गेंद की चतुराई को समझ पाए। गेंद तो सीधे विकेट कीपर के हाथ पर मिले, कोई कमजोरी नहीं थी गेंद पर। डॉटेड डिलीवरी, रन संख्या बने हैं 32 रन, 32। ये 6 ओवर के मैच है दोस्त, 36 गेंदों के मुकाबला। मुस्तफा विश्वास के साथ, टीम एलिगेंट के मालिक और कप्तान के विश्वास पर खड़े उतरते हुए अपनी गेंदबाजी दिखा रहे हैं मुस्तफा। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, बार बार जमीन को टपकाने के बाद गेंद को उठाकर ये गेंद, और इस बार आगे निकले लेकिन सही तरीके से बल्ले से नहीं जुड़ पाई गेंद। यहां पर भी एक सिंगल रन प्राप्त होंगे अकरम के लिए, और इस सिंगल रन के साथ रन संख्या पहुंचे 33 पर। 33, धीरे धीरे से रन संख्या 33 तक पहुंचे हैं, लेकिन आखिरी वाली चंद गेंदों पर ऊंचे शॉट की आवश्यकता है एनएम जप्पू मैंगलोर को, लंबे रन चुराने की आवश्यकता है। टीम एलिगेंट आज तो वाकई आप गेंदबाजी पर छा गए इस मैदान में, और इस बार गेंद को सीधे खेले लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन पर दौड़कर दूसरे रन भी यहां पर मिलेंगे, और इस दूसरे रन के साथ रन संख्या बने हैं 35 रन, 35। आखिरी गेंद बाकी, पहली इनिंग्स के आखिरी गेंद बाकी। हर एक गेंदबाज भी इतनी शानदार गेंदबाजी दिखाए हैं टीम एलिगेंट के। आरंभिक ओवर सलमान, चम्मू, श्रीकांत, निसार, फराज और ये मुस्तफा अब जो गेंदबाजी कर रहे हैं, सभी गेंदबाज अपनी गेंदबाजी इस तरह से दिखाए हैं कि जितने निरीक्षक उनकी गेंदबाजी पर कर रहे थे वाकई खड़े उतर पाए हैं दर्शकों के निरीक्षा पर। मुस्तफा इनिंग्स के आखिरी गेंद, और इस बार फ्लिक करने के प्रयास, इस बार भी डॉटेड डिलीवरी, इस बार भी डॉटेड डिलीवरी, और इसी के साथ इनिंग्स समाप्त। 35 रन पर अपनी इनिंग्स समाप्त कर रहे हैं एनएम जप्पू मैंगलोर। 35 इज द टोटल, 36 इज द टारगेट। 36 गेंदों पर 36 रन बनाने की मजबूरी यहां पर। अब तक तो आप देखे थे हाई वोल्टेज वाली मैचों में बड़े बड़े रनों की संख्या को, 6 ओवर पर 70, 68 जैसे रन आपने देखे थे, लेकिन यहां पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 6 ओवर पर 36 रन की जरूरत है, आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे, ये ऐसे गलतफहमी में मत जाइएगा, क्योंकि एनएम जप्पू मैंगलोर अगर भले ही यहां पर बल्लेबाजी पर विफल पाए हो, लेकिन उनके पास जितने अच्छे गेंदबाज हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं नाम लेकर आपको कहना चाहूंगा। यहां पर रियाज, शमीर अब्बू, आतिफ, रिलवान, मुजीब जैसे एक से बढ़कर एक चालाक गेंदबाज खड़े हैं। तो अब देखना है कि इस लो स्कोर वाली मैच पर किस तरह से फलितांश दिखा पाएंगे एनएम जप्पू मैंगलोर और टीम एलिगेंट। अंडरम वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप प्रस्तुत किए हुए इस प्रतियोगिता के नाम है ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021। वाईएफसी कन्नूर के चेयरमैन हारिस और उनके साथ जुड़ते हुए फिरोज मंजेश्वरा, जो इस प्रतियोगिता के 2 फिल्लर लग रहे हैं, इतने अच्छे, इतने बेहतरीन, 5000 से भी बढ़कर दर्शक को पाने वाले ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 अंडरम वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप के एक से बढ़कर एक बेहतरीन महारथियां। आज तो हमजा, इरशाद, कौसर, अस्कर, मुनीश, इम्तियाज जैसे महारथियों के योगदान के साथ जो पिछले कई दिनों से इस प्रतियोगिता बनाने के लिए योजना बना रहे थे, आज तो उनके चेहरे पर हम मुस्कुराहट देख रहे हैं, क्योंकि उनकी निरीक्षा से भी बढ़कर आपने प्यार दिए हैं, इस प्रतियोगिता को पसंद किए हैं दर्शकों ने। सिर्फ केरला ही नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक पर जहां जहां भी अंडरम क्रिकेट खेलते हैं वहां पर तो शाबाशगिरी मिले हैं। और
इस प्रतियोगिता को शुभकामनाएं देते हुए बहुत ही सारे महारथिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस प्रतियोगिता के बाद ऐतिहासिक क्रिकेट श्रृंखलाएं भी आप देख सकते हैं, जैसे कि 21 तारीख को यही एतवार को शुरुआत होगा अल अमीन ट्रॉफी 2021, जहां पर पैसों से नहीं गोल्ड कॉइन से, सोने के सिक्के के साथ सम्मानित किए जाएंगे जीतने वाले को। केवल 3000 ग्राउंड फीस के हिसाब से ले रहे हैं, कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। 21, 27 और 28 के मार्च अप्रैल के 3 और 4 तारीख को होने वाले उस ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट अल अमीन ट्रॉफी 2021 विजेता को, चैंपियन को मिलेंगे हर खिलाड़ी को 2-2 ग्राम सोने के सिक्के के हिसाब से 24 ग्राम सोने के सिक्के मिलेंगे, 24 ग्राम। और दूसरे स्थान पर रनर्स को मिलेंगे हर एक खिलाड़ी को 1-1 ग्राम के सिक्के के हिसाब से 12 ग्राम सोने के सिक्का अल अमीन ट्रॉफी पर। तो देखना ना भूलिएगा वो मैच। वीक्षक विवरण पर भी हम बदलावन करते हैं और उससे पहले राशिद बाबा क्रीज पर आए हैं। राशिद बाबा क्रीज पर आते ही रूफटेक इंडस्ट्रियल सर्विसेज के मालक नकीज, रूफटेक इंडस्ट्रियल सर्विसेज के मालक नकीज ये घोषणा दे रहे हैं राशिद बाबा को, हर एक सिक्सर के लिए राशिद बाबा को 1000 के इनाम मिलेंगे। रूफटेक इंडस्ट्रियल सर्विसेज अल जुबैल, इसके मालक नकीज CYC आपको ये ऑफर कर रहे हैं। राशिद बाबा के अभिमानी है, वो बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं राशिद बाबा के क्रिकेट को। तो हर छक्के के लिए 1000 रुपए के इनाम उन्होंने घोषित किए हैं। तो देखना होगा कि पहली मैच पर विफलता प्राप्त करने के बाद क्या राशिद बाबा इस मैच पर अपने उस धमाकेदार छक्के दिखा पाएंगे। माइक्रोफोन पर हम बदलावन करते हैं। अब्दुल रहमान बाकुर जी वीक्षक विवरण पर आ रहे हैं अपने अद्भुत शब्दों को लेकर। आइए अब्दुल रहमान जी। धन्यवाद नवाज जी। बिल्कुल छोटे से लक्ष्य तक जो बल्ले घुमाते हुए आरंभिक बल्लेबाज आए और पहली गेंद पर आउट होकर बॉलिंग को बजा रहे। अशरफ आउट होकर पवेलियन को बात जाते हुए दिख रही हैं। अब आए हैं रशीद बाबा। रशीद बाबा आए हैं, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। तब इनके लिए बड़े ऑफर भी आए। उन्होंने लगाते हुए एक छक्के के लिए 1000 रुपया इनाम दिया जाएंगे। रूफटेक नकीज दिया जाएंगे 1000 रुपया इनाम एक छक्के के लिए। अगर समझ लो 4 छक्के लगाए तो मैच भी जीत जाएंगे, 4000 रुपये भी कमा सकते हैं रशीद बाबा को। अब जुबैर पहली गेंद पर झटका लगा दिया गया है। अशरफ को अपार शून्य पर भेजा गया है। दोस्तों जल्दी जो मैदान के करीब से हट जाएं, जो ऑफसाइड में जो धीरे धीरे आते हुए जो दर्शक जल्द से जल्द मैदान से हट जाइए। आप जुबैर दूर वाले चौक यानी कि रोड एंड से गेंदबाजी की शुरुआत की है। पहली गेंद पर झटका लगा दिए। मुझे क्षमा कीजिए। और बहुत अच्छी गेंद स्विप किया गया है और अंपायर की इशारा आउट। जी हां, आउट होकर पवेलियन को वापस जाते हुए दिख रही है इमरान। इम्तियाज आउट हुए हैं। 2 गेंद में 2 विकेट। आखिरी मैच के हीरो अब 0 बनकर जा रही है। टीम एलिगेंट में गेंदबाजी में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। यहां पर हैट्रिक विकेट के किनारे पर है। अगर मुजीब हैट्रिक विकेट हासिल किया जाए तो 1000 रुपया जरूर मिलेंगे। मुस्तफा इनाम देने वाले व्यक्ति हैं मुस्तफा। हैट्रिक की मौका है मुजीब आजकल के कर्नाटक के
मशहूर गेंदबाजों से एक है, यानी कि सबसे बड़े गेंदबाजों से एक है मुजीब। इन्होंने अभी अभी जो छोटे से लक्ष्य तक बल्ले घुमाने के लिए आरंभिक बल्लेबाज आए हैं, आरंभिक बल्लेबाज को आउट किए 3 और आरंभिक बल्लेबाज दोनों को आउट किया गया है। अब मैदान पर है एक रशीद बाबा है, दूसरी नौशीर है। दूर वाली छो से मुजीब ओवर द विकेट। ओ बढ़िया गेंद, क्लिक किए गेंद को, रनों के लिए खतरा हो सकते थे लेकिन 1 रन मुश्किल से हासिल किया गया है। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पर सादिक निराश है क्योंकि अगर स्ट्राइक हैंड पर यहां पर थ्रो किया होता तो मौका थे आउट करने के लिए। इस बार जीत जा रही है सादिक के और फील्डरों के बीचों बीच में। अब रशीद बाबा स्ट्राइक पर आए हैं, इनको एक एक छक्के के लिए 1000 रुपए इनाम है, लेकिन रशीद बाबा ये सोचेंगे कि मैच विनिंग के लिए इन्होंने ज्यादा सोचेंगे, क्योंकि अगर बड़े बड़े शॉट की जरूरत भी नहीं है, आप पर 36 गेंद में बनाना है टारगेट, 36 रन। अब रशीद बाबा बड़े बड़े शॉट लगाना इनके आदत है, इनके शौक है। देखा जाएंगे एक सिक्सर के लिए इनको मिल जाएंगे 1000 रुपया। आप अगली गेंद मुजीब, चौथी बार। ओ बढ़िया शॉट, गेंद भी बहुत अच्छी थी, रनआउट के लिए खतरा थे, बाल बाल बच गए। और इस बार 1 रन के सहारे से रन संख्या कुल मिलाकर 2 रन। 4 गेंद फेंकने के बाद सिर्फ 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विकेटों की संख्या में बिल्कुल दबाव दिख रही है, रनों की रणनीति में उतनी दबाव नहीं दिख रही है, क्योंकि 36 रन के लक्ष्य है। अब 4 गेंद फेंकने के बाद 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर आरंभिक 2 बल्लेबाज भी 0 पर आउट होकर बल्लें को पास लौटे हैं। 36 रन के लक्ष्य यानी कि 35 रन बनाए। यहां पर जो पिछले इनिंग्स देखा होगा दोस्तों, जो एनएम के एक भी खिलाड़ी जो स्वीप शॉट के लिए कोशिश नहीं किए, सभी बल्लेबाजों ने ड्राइव करने के लिए कोशिश की है तो पराजित होते गए। तो 35 रन बनाए अंतिम ओवर में, एक बाउंड्री के सहारे के साथ जो 35 रन बनाए। बहुत अच्छी गेंदबाजी को आगे रखते हैं। डॉट बॉल और आखिरी गेंद अभी भी बचे हैं। मुजीब, ओ अच्छी गेंद, बिल्कुल इन सिंगर थे। अंतिम क्षण में इनके बल्ले के अंतरोनी किनारा लगे, तब फाइन लेग में गेंद चले गए। 1 रन, और इस 1 रन के सहारे के साथ पहली ओवर के संपन्न हो चुके हैं। वाह भाई वाह, क्या गेंदबाजी की आपने। 1 ओवर में सिर्फ 3 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट, सबसे ऊंचे विकेट कहना होगा, क्योंकि आरंभिक बल्लेबाज सबसे अच्छे बल्लेबाजों को हर टीम ने भेजते हैं। अब अच्छे बल्लेबाजों को इन्होंने आउट किया गया है, तब बहुत अच्छी शुरुआत भी दी है। अब 30 गेंद बचे हैं, 33 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। मैच में वापसी आने की कोशिश बिल्कुल मुजीब से किया है। पिछले मैच में जुबैर से शुरुआती किया गया है गेंदबाजी की, अब मुजीब ने शुरुआती की है। अब नए गेंदबाज हैं रियाज। अब रियाज आए हैं, अबू शमीर के छोटे भाई हैं। अब साउथ कनाडा की नौजवानों की मन के ट्रेंड जाना जाती है इनको गेंदबाजी में। ओहो बढ़िया गेंद, अपील जारी है। बहुत अच्छी गेंद, शुरुआत काफी अच्छी, तेज, और घुस गई थी गेंद बिल्कुल अंदर की तरफ। स्टंप आउट के लिए अपील किया भी गए थे सादिक ने। दिखने में बड़े शरीर के साथ खड़े हैं, जो विकेट कीपिंग है इतने चालाक हैं सादिक, जो बल्लेबाजी में जो सादिक ने मुस्कुरा रही है, क्योंकि जो बल्लेबाजी में पराजित हुए, बिल्कुल इनके बल्लेबाजी देखने के लिए दूर दूर इलाके से बहुत कुछ लोग आते हैं। आज जो बेद्रा मीडिया में लाइव है, इसलिए तो घर में बैठकर जो सादिक के बहुत बड़े फैंस है केरला में भी, जो इनके बल्लेबाजी में आनंद उठा रही है। अब अगली गेंद,
ओवर द विकेट अंपायर को क्लोज करते हुए तैयार है। उल्टा बल्ले में खेला गया, हवा में गेंद तय कुछ रन तक, गेंद तेज रफ्तार से दासी मारे के बाहर, चौका, बिल्कुल अवश्य समय पर बेहतरीन चौका लगाई है। अगली मैच के लिए तैयारी हो जाइए। साइन अप के लिए पुस्तक खुले रखे हैं। ब्रदर्स मकियार यंग फ्रेंड्स उर्वा के बीच में जो मैच होगा, दोनों टीम जो हस्ताक्षर के लिए आ जाइए। अब यन्नम के दूसरी ओवर जारी है। अब यन्नम खेलते हुए मुझे याद आए हैं, और वाइड का इशारा दिया है, याद आए हैं कि जो फिरोज मंजेश्वर अगर गांव में होते तो निश्चित रूप में जो यन्नम मैंगलोर में टीम में शामिल होते थे, जो गेंदबाजी भी करते थे, बल्लेबाजी भी करते थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। जो यन्नम इनके बहुत बड़े टीम है, बहुत खूबसूरत गेंद। एक समय में सोचा है कि जो 36 रन बिल्कुल छोटे से लक्ष्य है, लेकिन नैनम में कितने ताकत वाले जो गेंदबाज हैं, जो दर्शकों को समझा होगा, क्योंकि पहली ओवर मुजीब ने शुरुआती की है तो दूसरी ओवर उनसे भी तेज कट मिसाइल की तरह आ रही है, एक एक गेंद भी। अब अगली गेंद ओवर द विकेट, ओ हवा पर गेंद, आतिफ कोई गलती नहीं की है। इन्होंने पहले ही समझाता है कि जो हवा पर उड़ गई तो मेरे हाथ में आने वाले, इन्होंने 30 के अंदर से बाहर तक इन्होंने मार्च किए तो हाथ में अपनी झोली में डाल दिए। तीसरे विकेट के पतन देखिए दोस्तों, 36 के लक्ष्य, यहां पर तीसरे विकेट दूसरी ओवर में जो पतन हुए तो बहुत बढ़िया परिताप स्थिति कहना होगा। अभिलाष अनिकिया भी नए बल्लेबाज के रूप में मैदान के बीचों बीच में आ रही है। दक्षिण कर्नाटक की लिटिल मास्टर जाना जाती है इनको। अब लिटिल मास्टर और बड़े मास्टर दोनों मिलकर जो अपनी पारी को संभालना ही होगा, क्योंकि यन्नम के जैसे टीम को जो 35 रन पर लपेट लिए तो जवाबी बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट दूसरी ओवर के बीचों बीच में पतन हुए तो ये परेशानी की बात है। ये दोनों अच्छी साझेदारी बनाए, अपनी टीम के लिए जीत के मंजिल तक लेकर जाएं तो बहुत बड़े बन सकती है यहां पर दो बल्लेबाजों के बीचों बीच में। अब अगली गेंद रियाज ओवर द विकेट, ओ बढ़िया गेंद मिड विकेट पर खेला गया है, फील्डर उतनी तेज, हो अगर डायरेक्ट हिट होते तो यहां पर वापस जाने की मौका भी थे बल्लेबाज को। बहुत बड़े फील्डिंग थ्रो, 1 रन और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 9 ऑन द बोर्ड। बायां हाथ और दायां हाथ के बीचों बीच में इस साझेदारी को आगे बढ़ा रही है। लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर के बीच में जो पार्टनरशिप आगे बढ़ रही है। अब लेफ्ट हैंडर स्ट्राइक पर आए, लिटिल मास्टर आ गए तो इन्होंने जो गेंदबाजी की लाइन भी बदल दिए और ऑन द विकेट गेंदबाजी के लिए इन्होंने चाहते हैं। अब दूर वाली चौ से आखिरी गेंद बचे हैं रियाज के। जल्दी कीजिए दोस्तों, यन्नम की दोस्तों और एलिगेन की दोस्तों, जल्दी कीजिए क्योंकि बहुत मैच भी और भी खत्म करना है। अगर खत्म नहीं हुए तो अब कर्नाटक से कल के दिन भी आना पड़ेंगे। ओ बहुत अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो, ओह क्या क्रिकेट पेश किया जा रही है यन्नम और एलिगेन के बीच में। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन। चकाचक मैच, बिल्कुल संघर्ष भरी हुई मैच है, यानी कि रोमांचक स्थिति भरी हुई मैच है, क्योंकि 24 गेंद में 26 रन बनाना है। कोई छोटे मोटे टीम नहीं है, यन्नम और एलिगेन के बीच में इस लड़ाई जा रही है। सेमीफाइनल के रास्ता खुलने के लिए लड़ाई जा रही है और इन दोनों टीम
24 में 26। अभिलाष स्ट्राइक पर मौजूद हैं। रशीद बाबा अभी भी मौजूद है। रशीद बाबा को चाहने वाले बहुत लोग यहां पर बैठकर उनकी खेल देख रही हैं। बेदरा मीडिया में दुनिया की कोने कोने में बैठकर देख रही हैं, क्योंकि उतनी बड़े चाहने वाले इनको बहुत लोग हैं अंडरआर्म क्रिकेट में। कल के दिन में मेरे ख्याल में केरला टीम खेल रही थी, उस दिन सबसे ज्यादा चाहने वाले जो चम्मी को चाहने वाले थे, चम्मी वसंगाड़ी और चम्मू अरिमला, कल के दिन में एक ही टीम में शामिल हुए थे जो फाइनल पर प्रवेश भी किया गए थे। अगले मैच के लिए साइन अप के लिए आ जाइए। यंग फ्रेंड्स उर्वा ब्रदर्स मकियार साइन अप की पुस्तक खुले रखे हैं दोस्त, जल्दी जल्दी अपनी काम कीजिए। आतिफ आए हैं एनएम के लिए, आज ही आगमन हुए इन्होंने कुछ साल के बाद। बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी किए थे, इसी मैच में बल्लेबाजी में पराजित हुए थे। ओ बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन पर जगह बनाई एक रन तेजी के साथ। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन मना किए, रशीद बाबा से मना किए अभिलाष ने। अब आतिफ टू बाबा दोनों खतरनाक खिलाड़ी है, गेंदबाजी में खतरनाक है और बल्लेबाजी में खतरनाक है। दोनों खिलाड़ी आमने सामने खेल रही हैं। बड़े छक्के चौके की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाबा को ये छक्के चौके लगाना बहुत बड़े आदत है इनके, जो एनएम के इनिंग्स में जो साथी को ऐसे जान पहचान किए थे, क्योंकि उनको बड़े बड़े शॉट लगाने इनको जानते हैं, आदत भी वही है। इन्होंने 2 मैच में भी 0 पर गए थे। अब रशीद बाबा भी जो बड़े बड़े शॉट खेलने वाले खिलाड़ी, उनके लिए जो वाइडिश मिड विकेट, मिड लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी को खड़े किए, मिड विकेट में एक खिलाड़ी को खड़े किए, थर्ड मैन में एक खिलाड़ी है तिजारे के अंदर, फाइन लेग में तिजारे के अंदर, फाइन लेग शॉट, फाइन लेग और कवर क्षेत्र में। अगले मैच के लिए टॉस के लिए आ जाइए कप्तान। अगली गेंद आतिफ, ओ बिल्कुल लॉलीपॉप गेंद थे, लेकिन बल्ले के बीचों बीच में नहीं आए। कोशिश बढ़िया की इन्होंने, उछाल मिले थे इस गेंद में, उछाल बिल्कुल रूम मिले थे खेलने के लिए, लेकिन टाइमिंग उतनी परफेक्ट नहीं थी जो रशीद बाबा की। अगली गेंद आतिफ ओवर द विकेट, ओ अच्छी गेंद, बड़े शॉट के लिए उम्मीद किए, बल्ले के अंतरोनी किनारा लगकर कवर क्षेत्र पर गए, वहां पर फील्डर थे, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए। तब तक के 1 रन और इस 1 रन के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 12 ऑन द बोर्ड, यानी कि 12 रन। अब आतिफ अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रही हैं अभिलाष के लिए, और अभिलाष ने रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, 1 रन के लिए तेजी के साथ दौड़ रही है। बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत अच्छी थ्रो। तब तक 1 रन चुरा लिया गया था अभिलाष ने। 13 ऑन द बोर्ड, यानी कि 13 रन। अभी भी 23 रन रिक्वायर्ड, यानी कि 23 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। अब बिल्कुल 3 के अंतर है स्कोर और गेंद के बीच में। अब आतिफ अगली गेंद लेकर तैयार हैं रशीद बाबा के लिए, और हो अच्छी गेंद मिड विकेट पर खेला गया, एक तेजी के साथ उड़कर पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ा जा रही है। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अभिलाष को तारीफ ही करना होगा, उन्होंने स्टार्टिंग की है जो दौड़ने के लिए, दूसरे रन के लिए कॉल भी उन्होंने किए, और 2 रन के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 1 गेंद बचे हैं दोस्त। 15 ऑन द बोर्ड। यंग फ्रेंड्स कप्तान, ब्रदर्स कप्तान, टॉस के लिए आ जाइए, जल्द से जल्द आ जाइए दोस्तों। यंग फ्रेंड्स उर्वा അതേപോലെ തന്നെ ബ്രദേഴ്സ് മക്കിയാർ രണ്ട് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്മാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോസിംഗിന് വേണ്ടി അമ്പയറോടൊപ്പം ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. अगली दूर बारिशों से आतिफ तो बाबा, ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी शॉट, लॉन्ग ऑन पर खेला गया है, हल्के से मिसफील की पूरी फायदा उठा गया डबल, और इसी डबल की उम्मीद थे, इंतजार थे, इसी डबल के इंतजार थे।
और इस डबल के सहारे के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 17 यानी कि 17 रन। अब 19 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए बचे हुए 18 गेंदों में, और 18 गेंदों में 19 रन कैसे जो प्राप्त करेंगे और गेंदबाजी कैसे करेंगे, बल्लेबाजी कैसे करेंगे, क्षेत्र रक्षक कैसे करेंगे, इस टूर्नामेंट को कैसे दूसरी मैच तक आगे बढ़ाएंगे, अंकों की हाल सुनाने के लिए सतीश अंग्रेजी पर। ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, K19MG0687 K19MG0687 ಈ ಕಾರಿನ ಮಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಲಿತವಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಾರಿನ ಮಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So matches looks to be very interesting. 19 required from 3 overs, but by looking at this particular condition, looks like Team Elegant, they are almost in the driver's seat of winning this match, because in this particular ground, I don't think this is going to be a big ask, but everybody knows that cricket is unpredictable game. You cannot underestimate any small total in this cricket, and that's why so important here for Team Elegant to play sensibly. And as far as NM cricketers Mangalore to winning this match is concerned, they need to have some breakthrough. They need to have some kind of economical over if they wanted to back into this game. From the far end, Riaz, right arm around the wicket balls, sensible batting there from Abhilash. Abhilash, such a kind of batsman who can be very handy when the situation like this, when it was a rotation of strike is required for Team Elegant. He is the one who is a master class, and he can handle the pressure along with Rashid Baba. Rashid Baba today is playing a different innings, not just like he is throwing his bat for each and every ball. You know exactly the condition of this match, that is the rotation of strike is more important than hitting some big shot. Of course, by going for the big shot and losing wicket might be a little bit problem for Team Elegant. That's why he is just playing as for the condition required. Riaz from the far end, right above the wicket, looking for the expansive, again not quite able to time that one properly. Of course, I am not telling that Rashid Bab is not trying for the big shot, but every time he is trying for the big shot, but he didn't got that much of enough bat onto that. He's a little bit struggling, and just like what Abdul Rahman sir is mentioning about Rashid Baba, he's got the own fans behind him, because there's some spectators coming here to watch, coming here to watch the batting display of Rashid Baba. But Rashid Baba knows that the responsibility in his shoulder, so that he is just keeping himself very tidy and playing different innings for his team. Outside the line of half time, going to be a wide. This is a bonus run. This is the bonus run here for Team Elegant. Now looks like every ball Team Elegant required some runs. Each and every ball required 1 run. That means 6 runs per over required. The run scoreboard is moving to 20 on the board. That means another 16 runs required for the victory, and they got exactly 16 deliveries to spare. Lot of batting to coming up. Of course, Riaz, of course, played a very good innings in the previous match. Still yet to come to bat. That's why Team Elegant, they are in a driver's seat of winning this match. But I think Abhilash and Rashid Baba, this left-handed combination, certainly wanted to carry on the business here. Riaz, round the wicket balls. Again, sensible batting there from Abhilash. Once again, he need to bounce back. He need to come back his natural rhythm. Of course, not having that much of good season in this good season from his bat. But certainly, sometime it was a great saying in cricket that form is temporary, but class is always remaining forever. And he's a class batsman, no doubt at all. He can bounce back anytime. And this is the one tournament in this game, particularly Abhilash wanted to perform for his team. But Riaz, this time what Baba is talking about, and now he started to talk with the bat. Just like what talking about the Rashid Baba playing a different innings, different role he playing it today.
But what a great shot. That's where the wrist work comes into play. Powerfully driven from the wrist towards the deep wideish long on boundary for 4 runs. I request the captain of Brothers. I request Captain of Brothers, please report here for the toss ceremony. The captain of Young Friends waiting for you. This time looking for the off drive, but not quite able to time that one. But still they managed to get the single. With that single, scoreboard moves on to 26 on the board. And that means now looks like just 10 runs required for the victory here. Just 10 runs required for the victory. And they got 13 balls to spare. Looks like Team Elegant. What a fantastic performance. I think the bowlers did a job here for Team Elegant. This time Abhilash wanted to play his favorite square cut, but not quite able to hit the ball. And wicketkeeper behind the stump did the rest. And completion of over number 4, chasing 36 to win this match. Team Elegant are in a driver's seat of winning this match. They are 26 on the board. That means another 10 runs required for the victory in remaining 12 deliveries. A lot of discussion is going on here. NM Cricketers Mangalore, after defeated Gori Young Boys in their first round match. What a batting display. What a fantastic all-round performance from Atif. But in this match looks like the batting department is really lacking. Rashid Baba back on strike. He's got an announcement already from Roof Tech that every 6 what Rashid Baba will going to hit, he will going to get 1,000 rupees. But just missed that opportunity because that was landing just in front of boundary line, the previous stroke we are talking about. And now NM Cricketers have to do something special. If they wanted to win the match, they need to get some wicket, need to break partnership. That's why they brought their very experienced Tanvir into attack from aircraft hand. And wait and see how Tanvir will going to produce a breakthrough here. Short extra cover. There is a deep extra cover. There is a short third man. Short fine leg. Backward square leg. Lovely shot. Beautifully played there by Rashid Baba. And they're running hard. In comes the throw. Chance of run out. Is that the chance here? Rashid Baba already coming to the pavilion. But umpire Mohan Yadi just wanted to see the help from a third umpire. But look at Rashid Baba. He know exactly. He is short of his crease. But he need to wait for the umpire decision. The third umpire is been given. And wait and see will it going to be out or not. But by seeing the body language of Rashid Baba, looks like he knows that he is short of his crease. But work is going on here with the technicians of Bedra Media along with the umpire. It's out is the signal. So Baba is back on the pavilion. Baba is back into pavilion and played a very good responsible innings, I think. I will tell you. Today he's played a responsible innings. Not like he's throwing each and every ball for the big shot. But he knew exactly no need to panic at all. Then he played a very good innings and responsible for the good partnership along with Abhilash. And a new batsman in is Riaz walking towards the middle. 9 required. 11 balls remaining. NM Cricketers Mangalore got a settled batsman back into pavilion. This is the right time for NM Cricketers Mangalore to bowl some good deliveries, economical deliveries. So that once it was run rate required over 6 runs per hour, little bit under pressure for Elegant. But Riaz, who played a magnificent innings in the previous match, and now he just came into middle. 9 to get from 11. Deep backward square leg, 1 at short deep fine leg, 1 at deep wideish long on, short mid wicket, deep long off. Here is Tanvir. Bowls single-handed stroke. Went for the there was a chance of run out, but Sadiq is not interested. He is well out of the crease, and Riaz almost across the line of the delivery. Tried to swing that one, but missed it completely. Now, 2 good delivery there from Tanvir. He is the one who can produce a breakthrough. He is the one
got a lot of experience. The variation in his bowling is a different kind of bowler compared to the last four bowlers which are used by NM Cricketers Mangalore. It can give any kind of restriction here. Now Tanvir looks like he's just giving such advice. I warning to Abhilash, don't run before I deliver the ball. He can make that one Mankading out, but he's shown the sportsman spirit. That's giving one warning for Abhilash, don't leave your crease, and just he's going back to his bowling mark. Here is again Tanvir. Left hand bounce, drives that one all over the stroke. They went for the single chance of run out, and it's a direct. It's going to be a year for the third umpire. If it is a run out, I think NM Cricketers Mangalore certainly will going to enjoy that wicket, because that was a wicket of Riaz. Riaz looks like he's very confident, but NM Cricketers looks they are the confident. But these two confidence not enough. But here is a third umpire have to be a confident whether it was out or not out. Not out is the signal coming from umpire, third umpire. Ajit Padil here in duty as a third umpire. If it is a run out, I will tell you, then definitely little bit under pressure for Team Elegant. But Riaz just have made it. Just have made it before that direct hit coming from that short mid-wicket fielder. One more addition to total scoreboard moves on to 28 on the board. That means another 8 more runs required for the victory, and 9 deliveries remaining. The matches looks to be very interesting. NM Cricketers Mangalore takes his own more time here. They are setting the fields at each and every balls, but still they are not satisfied. Please cooperate with the umpires, because still they have to play another 3 matches. Your cooperation is much required for the organizers. Again, Tanvir so far so good in this over, as he is implementing each and every effort in this delivery. This time top edge, but safely landed. That was a safely landed, no one there in the square leg region. So Abhilash just survived. He picked up a single. The scoreboard moves on to 29 on the board. Abhilash, I think, is the one. He need to take the sheet ankle role. He need to play the sheet ankle role here for Team Elegant, being the experienced batsmen for Team Elegant along with the Riaz. This is one of the classical left and right combination. One of the best performer for Team Elegant. They need to complete the job, but here Tanvir have to do something special here. 7 required from 8 deliveries. Given is given. Now there is no excuse at all. Of course, Tanvir actually is given one warning before that he don't leave the stumps. Now it's a bunkering out is comes into play. Abhilash just leaving the crease before the bowler delivers the ball, and he makes that bunkering out. But disappointment here for Abhilash. This is the first time, I think, in this cricket tournament that kind of a dismissal, the bunkering out made by the bowlers. Might be the Abhilash really not learning from the previous warning. He knows that the bowler already given me a warning to not leave the crease, but this time he is just again continuing that mistake. But Tanvir, this time even umpire have to give this out as per the rules and regulation of the cricket is concerned. The new batsman in is Faraz. NM Cricketers Mangalore, they got a settled batsman back into pavilion. Riaz is on strike now. 7 to get from 8 balls. Match is going to be very interesting. Driven, a chance of God taken. Surfraz there at cover point region, and Riaz slashing that one outside the line of off stamp, and a quick reaction coming from Safwan there in the cover point region. Just got a hand onto that. In the second attempt, it takes a catch. The Riaz wicket is back into pavilion. Now 7 runs required from 7 balls.
This is what you calling it. This is what you are talking about the cricket. You cannot underestimate cricket. The cricket is game of uncertainty. The new batsman in is Mustaf is slowly walking towards the middle. Seven balls and 7 runs required. Mustafa is on strike. Tanvir. Balls. That was sensible batting. Absolutely sensible batting there for Mustafa. Just rotate the strike. But what outstanding over there from Tanvir. He's putting 100% in this over. Of course, he produced some breakthrough as well. Responsible for one getting out. And then 2 wickets in that over. And now it's a climax here in the last over. 6 balls remaining and 6 runs required for the victory. NM Cricketers Mangalore have to make it past because already they took a lot of time to complete their 6 overs. So now it's a time. Almost we are whinging towards 4 o'clock. So please make it past. I kind of request. So now last over. After long discussion, NM Cricketers Mangalore has just gave the balls to the hands of a very experienced campaigner Samir to bowl. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. Band wala, we needed loud sound from the band, encouragement, cheer up. So 6 balls and 6 runs required for the victory. Samir from the far end, right up over the wicket balls. Oh, dotted ball, the first one is a dotted ball. Now it's a 5 ball, 6 runs required for the victory. Samir, if you see the Samir here, he's got a lot of history to restricting the batsmen in the last over. He's got a history, he got a record of even defending 4 runs in the final overs in the Paradise Cricket Ground. And that's why he's a very dangerous man, because he's an experienced campaigner. He know exactly the kind of delivery need to bowl in this final over. Now 6 required. 5 deliveries remaining. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು ಅಲ್ಲಿ ದರೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ us. 6 required from 5 balls. Here is Samir from the aircraft hand, bowling to Mustafa. Drives not more than a single. They're running hard, looking for 2, but they're not going for that because Safwan is there in the mid-off region and collects the ball and returns that one into the hands of bowler. The one more single, that means 5 required, 4 deliveries remaining. This match looks to be very interesting. Match is running towards a nail-biting finish. Who will going to be the semi-finalist? Will it going to be a team elegant? Will it going to be NM Cricketers Mangalore? Those who are going to handle the pressure, they will going to be the semi-finalist. Here is Samir. Right arm over the wicket, balls appealed for leg before wicket. Umpire says that was outside the line of half time. The impact, of course, that outside the line of half time. That's why the leg bye is given. One more single is added to total. Scoreboard moves on to 32. 4 required. 3 balls remaining. What a match we are witnessing here. The one stage looks like Team Elegant will go into win the match quite easily.
but match is not yet over. One dotted ball required for NM cricketers, but sensible batting required for Team Elegant. All are under pressure. Here is Samir, right arm over the wicket balls. This time, all steady toward, toward the deep extra cover. Completed single, looking for two. They're running hard. White are coming from the field and they completed two. They're going for the third run as well. LNM cricketers of Mangalore just missed the opportunity. But Team Elegant grabbing the opportunity here. Now they're quickly realizing that just a single run required for the victory. The scores are two balls remaining and 1 runs required for the victory. The scores are leveled and looks like now NM Cricketers Mangalore, they only, if you bowl 2 good innings, they can tie the match. They can tie the match, and that's why we can see that we can see that the closing fielder, just like the fielding set of the test matches between England versus India in Ahmedabad, but here in is the mini stadium in Manjeshwar, what we can see that the fielding set, test fielding set here, because just a single run required from 2 balls. Samir from the far end. Balls down the leg stamp, going for the run, chance of run out, misses it. Elegant cricketers entering into the semi-final. NM Cricketers Mangalore out of this competition. James Management has a favorite of winning this match, but they have lost the match. The brothers Mukhya Kanada and thank you very much. Now the match between Young Friends Surwa versus Brothers Cricketers Makyar, the second quarter final, eligible correction, fourth quarter final of this cricket tournament and second quarter final of final day. Meanwhile, here is an announcement. There will be a lot of entertainment in the coming months. Of course, the festival of cricket. We are coming to the next match, last quarter final of this prestigious Gladiator Trophy 2021, wonderfully organized by Underarm World WhatsApp group. And here is announcement: young friends who are registered in association with the friends who are registered, they are organizing KPL Kudla Premier League Underarm Cricket Tournament in coming 6th April to 9th April at lots of Underarm Cricket Urva UCG Cricket Ground.
because they are celebrating their 25th year. Young friends who are, they are completing their 25th successful year, and in the memory of that they are organizing Kudla Premier League at UCG in coming 6th April to 9th April, and 3 days will be of under the floodlight, and interested team can enroll their name. The winners will going to get 1,11,111 cash, and second cash prize winners will going to get 55,555 along with the Kudla Premier League Trophy 2021. That was a festival of cricket coming soon in front of you. Meanwhile, here is the announcement for the man of the match. So here is the announcement of man of the match. Very difficult one because bowlers also contributed for Team Elegant, and but at last it was a one innings which is came from the bat of Rashid Baba, who scored 14 runs in 10 balls and played a different innings, and responsible for the victory of Team Elegant. So I request Rashid Baba to collect your man of the match from our chief guest Hassan Pirla. Our chief guest will going to present man of the match to Rashid Baba of Team Elegant for his cool and calm innings. He played different innings for his team and responsible for the victory. Thank you very much. And before the match will go into commence, I request at the same time, here is a one announcement here. The man of the match is presenting here Hassan Pirla, presenting that man of the match award to Mr. Rashid Baba of Team Elegant for his wonderful innings of 14 runs in 10 balls. Meanwhile, of course, the match between Young Friends Urva versus Brothers, and I request all the players, spectators, please clear the ground. Ali dayavitu adashtu bega horaga hoಗಬೇಕು ground ಇಂದ. So Imtiaz of Young Friends Urva is celebrating birthday today, so that on behalf of all cricket lovers and organizers, wishing him very happy birthday to Imtiaz of Young Friends Urva. It's over to Nawaz for the further explanation of match in our national language Hindi. Thank you. थैंक यू सतीश जी। अंडरम वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप प्रस्तुत किए हुए इस क्रिकेट श्रृंखला ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 अंडरम क्रिकेट के इतिहास पर पहली बार दो राज्यों के बीच, केरला और कर्नाटक के खिलाड़ियों के बीच एक ऐसे समागम, आपस पर दोनों राज्य अपने क्रिकेट के खुशबू को इस तरह से मिलाए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम संगठकों को धन्यवाद अर्पित करते हैं, ताकि आपकी वजह से ये दो राज्यों के अंडरम क्रिकेट के खेलने की महारतियां जो है ये आपस में मिले, एक दूसरे को जाने। यहां पर तो बल्लेबाजी पर खड़े हैं यंग फ्रेंड्स उर्वा, आरंभिक खिलाड़ी अरशद और बासित। अरशद, ये देखिए क्या शुरुआत यहां पर। पिछले मैच पर भी इसी तरह रफ्तार के साथ अपनी बल्लेबाजी शुरुआत किए थे। ऐसे छक्के जड़े शुरुआत पर शाकिर के ओवर पर उनकी हर एक गेंद पर छेड़छाड़ कर रहे थे। आज तो वाकई क्रिस गेल रख रहे हैं इस मैदान में। यंग फ्रेंड्स उर्वा के क्रिस गेल रख रहे हैं अरशद। पिछले मैच पर मैन ऑफ द मैच पुरस्कार इस तरह से आए, उनके कदमों पर आकर गिरे थे। और ये देखिए किस तरह की शुरुआत, यहां पर कितने रफ्तार हैं आज अरशद के बल्ले में।
और ये दूसरी बार भी हवा में गेंद, लंबी गेंद और पहुंच नहीं पाए गेंद तक। मौका मिले यहां पर अरशद को। बहुत ही विस्फोटक लग रहे हैं हर्षद अपने बल्लेबाजी में। शुरुआत से ही ऊंचे शॉट की उम्मीद के साथ बल्ला घुमा रहे हैं। हालांकि ये पावर प्ले है। तो शुरुआत की ओवर मुंडा के हाथ पर समाप्त होने के बाद दूसरी ओवर आफीफ। पहली ओवर तो शानदार दिखाए मुंडा ने और इस बार अच्छी स्ट्रोक, फील्डर के हाथ पर गेंद, केवल मात्र 1 रन प्राप्त होंगे। ब्रदर्स मकियार और यंग फ्रेंड्स उर्वा के बीच आप ये मैच देख रहे हैं। ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच है इस प्रतियोगिता के और यहां पर चुने जाएंगे इस प्रतियोगिता के आखिरी सेमीफाइनलिस्ट। टीम एलिगेंट सेमीफाइनल पर प्रवेश कर चुके हैं और दूसरी तरफ एनी पोसोट फाइनल पर विराजमान होकर केरला विभाग के टीम पर अपने सामने मिले हुए हर एक टीम को हार के स्वाद देते हुए फाइनल पर विराजमान हो चुके हैं एनी पोसोट। तो यहां पर तय हो जाएंगे आज कि वो दूसरे फाइनलिस्ट कौन बनेंगे। एक तरफ तो टीम एलिगेंट सेमीफाइनल पर एनएम जप्पू मैंगलोर को हराकर विराजमान है टीम एलिगेंट। तो आखिरी सेमीफाइनलिस्ट यहां पर पता चलेंगे कि इस मैच के विजेता कौन बन जाएंगे, ब्रदर्स मकियार या यंग फ्रेंड्स उर्वा। और बार अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, मौके पे चौका। लगातार कोशिश के बाद बासित यंग फ्रेंड्स उर्वा के ऐसे आरंभिक खिलाड़ी, इनके किरदार आप सिर्फ यंग फ्रेंड्स उर्वा में ही नहीं बल्कि कीर्ति उल्लाल बेल नाम आप सुने होंगे।
यूसीए के अंडर, उल्लाल क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर में जितने भी टीम आते हैं उनमें से बड़े दिग्गज कहलाते हैं कीर्ति उल्लाल बैल। उस कीर्ति उल्लाल बैल के कप्तान है ये बासित। सौहार्दा ट्रॉफी के फाइनलिस्ट, एलआर पदव के आमलमगरू फ्लडलाइट ट्रॉफी के फाइनलिस्ट बने थे फ्रेंड्स कीर्ति उल्लाल बैल। तो उस टीम के कप्तान होने के नाते इनकी क्षमता क्या होंगे आप अनुमान लगाइए। और यहां पर देखिए विकेट गंवाए लगातार कोशिश के बाद। शुरुआत पर काफी सारे डॉटेड गेंद दिखाए थे बासित, अपना खाता खोलने के लिए तरस रहे थे, लेकिन जब मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ चौके चुराकर अपने खाता खोले तो कहीं ना कहीं दर्शकों को लगा कि अब तो झूम उठेंगे बासित की बल्ले, लेकिन उसके तुरंत अगले गेंद पर ही गेंदबाज अफीफ पिछले चौके के प्रतिकार इस विकेट के साथ निकाले हैं, बासित को भेजे वापस थगआउट पर। तो बासित के निर्गमन के बाद नए खिलाड़ी जुड़ रहे हैं। अजमल, यंग फ्रेंड्स उर्वा के कप्तान, स्टाइलिश प्लेयर ऑफ अंडरम क्रिकेट। अंडरम क्रिकेट के अजरुद्दीन कहलाते हैं अजमल। जिस तरह से वो अपने बल्लेबाजी की शैली दिखाते हैं, जिस तरह से वो हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं, अजरुद्दीन के हाथ की शैली आप देखे होंगे, जिस तरह से वो अपने हाथों को घुमाते थे, पैर की जड़ों से जिस तरह से वो गेंद उठाते थे, उसी तरह की शैली अंडरम क्रिकेट पर दिखाए है अजमल ने। तो यहां पर ब्रदर्स मकियार के खिलाफ क्वार्टर फाइनल की ये मैच, शुरुआत के विकेट गिरने के बाद दूसरे विकेट की साझेदारी। और ये देखिए कितने शानदार गेंद, इतने लंबे शरीर के अफीफ के हाथों से है, आप देख रहे हैं जमीन से जुड़ते हुए गेंद। तो आप अनुमान लगाइए कि वो कितने झुकते हुए गेंदबाजी किए होंगे। ओवर की समाप्ति, दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 14 रन, 14 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर। पिछले मैच पर 68 रन के लक्ष्य को पूरे किए थे यंग फ्रेंड्स उर्वा केएफसी कोडिकल के खिलाफ। 67 रन बनाकर 68 रन के मौका मिले थे। तो शुरुआत से ही हर्षद अपनी बल्ले से इस तरह से छक्के चुराए, जिस तरह क्रिस गेल आईपीएल जैसे क्रिकेट श्रृंखला में छक्के चुराते थे, विपक्षीय गेंदबाज की नींद उड़ाते थे, उसी तरह पिछले मैच पर केएफसी कोडिकल के गेंदबाजों के खिलाफ अरशद अपनी रफ्तार दिखाकर जीत को काफी नजदीक लाकर खड़े किए थे। लेकिन आखिरी मौके पर, यह हम बिल्कुल नहीं बोल सकते, आखिरी मौके पर जब 7 गेंदों पर 13 रन की जरूरत है यंग फ्रेंड्स उर्वा को, ऐसे मौके में इमरान जूनियर, केएफसी कृष्णापुरा के इमरान जूनियर लगाए हुए वो जो छक्का, निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत छक्के लगे थे यंग फ्रेंड्स उर्वा को, और आखिरकार उस मैच को जीतते हुए यहां पर क्वार्टर फाइनल के सामने कर रहे हैं ब्रदर्स मकियार के खिलाफ। ब्रदर्स मकियार चुने गिने महारतियां, सभी के सभी छुपा रुस्तम है ब्रदर्स मकियार में। आप बाहर से इनको देख के बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते कि ये कितने क्रिकेट जानते हैं, ये करके दिखाते हैं ब्रदर्स मकियार। और ये अच्छी गेंद, इस बार तो इरशाद जी बार बार मौका नहीं देंगे आपको। मुन्ना जिस तरह से पहली ओवर के आखिरी 3 गेंद बासित को जिस तरह से खड़े रुके विफल किए थे, और यहां पर देखिए हर्षद को यहां पर चौंका रहे हैं। और इस बार भी गेंद को खेले बाहरी किनारा लगते हुए गेंद फाइन लेग की दिशा में दौड़ते हुए फील्डर गेंद के पास आने से पहले एक सिंगल रन के साथ अपनी स्ट्राइक बदले अरशद। अजमल और अरशद की जोड़ी, यंग फ्रेंड्स उर्वा नीले टोपी के साथ हर्षद चमकते हुए और लाल टोपी के साथ अपने इस खतराई को, अपने अंदर छुपे क्षमता को विपक्षीय खिलाड़ियों को लाल रंग के साथ चेतावनी दे रहे हैं अजमल। गोरी यंग बॉयज शुरुआत की मैच पर ही हार मान चुके थे, और उसके बाद टीम एलिगन के खिलाफ एचएफसी हरेकला हारे थे पहली मैच पर। और इस पेज गेंद को सीधे स्क्वायर लेग की दिशा पर मोड़े, और ये देखिए गलत हिसाब, फील्डर तो तुरंत दौड़ सिग्नल देते हैं अजमल। जब भी अपनी टीम सेमीफाइनल जैसे मैच खेलते हैं तो ऐसे समय पर इनके दिमाग दुगने अलर्ट होते हैं,
हर एक बात पर, सर से लेकर पांव तक हर जगह पर अलर्ट रहते हैं एंगफेन सुरवा। जिस तरह से आप पिछले देखे होंगे, पिछले मैच पर 68 रन को पूरे किए थे एंगफेन सुरवा। और ये देखिए सुंदर स्ट्रोक कवर्स की दिशा में, ये अजमल की स्पेशल, शानदार शानदार चौका। उस जगह को तुरंत आजमा लेते हैं अजमल। मुन्ना पिछले दोनों गेंदों पर चौके से पिटे हैं मुन्ना यहां पे। वाइट ओवर द विकेट से ये अगली गेंद, और ये देखिए अजहरुद्दीन स्टाइल, ये देखिए अजहरुद्दीन स्टाइल। इसलिए हम अंडरम के अजहरुद्दीन बुलाते हैं अजमल को। जितनी शैली, उनकी कॉन्फिडेंस, उनकी विश्वास, जिस तरह से वो गेंद को निभाने की शैली है, ये वाकई काबिल तारीफ। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद बाकी, रन संख्या बने हैं 25 रन 25। मुन्ना अपने ओवर की आखिरी गेंद को लेकर फिर तैयार, और ये देखिए स्वीप वाला नजारा। इससे पहले आप कवर्स की दिशा में देखें, उसके बाद मिड विकेट क्षेत्र पर देखें, और ये रहा स्क्वायर लेग की दिशा में। मैदान की हर कोने पर अपनी बल्लेबाजी दिखाते हैं अजमल जैसे खिलाड़ियां। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 26 रन 26 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। 18 गेंदों के जो बल्लेबाजी अब तक निभाए हैं एंगफेन सुरवा, अब 18 गेंद बाकी। तो ब्रदर्स मक्यार शुरुआत के 3 ओवर पर 26 रन देने के बाद क्या बाकी बचे 3 ओवर पर नफीतुली गेंदबाजी के साथ थोड़ी सी दबाव यहां पर क्रिएट कर सकते हैं एंगफेन सुरवा के ऊपर, क्योंकि ये पार्टनरशिप जो है हर्षद और अजमल के बीच चल रहा है, ये पार्टनरशिप जब तक इस साझेदारी को नहीं तोड़ते ब्रदर्स मक्यार, तब तक आपके लिए ये खतरा होगा, क्योंकि ये रन मशीन है क्रीज पर। तो वीक्षक विवरण पर भी हम बुलाते हैं सतीश हनुमान को, जो आंग्ल भाषा पर आप तक इस मैच के हर एक कदर के खुलासा अपनी आवाज में दिखाते हैं। ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 इतिहास निर्मित मैच, 2 राज्यों के बीच एक ये श्रृंखला चल रहे हैं। सतीश जी, आप कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर, जिस तरह से 2 केरला और कर्नाटक की खिलाड़ियां आपस पर मिलते हुए, दोनों खिलाड़ियों की क्रिकेट खेलने के तरीका और रन बनाने की तरीका ये हम देखे हैं, यहाँ पे बदलावन तो यहाँ पर जरूर है, क्या कहते हैं आप? Thank you very much, Nawaz. I think one word. These organizers, they build a bridge between South Kendra district and Kasaragod district. The bridge for both the players, talent players, to come and perform in the state. And I think the World of WhatsApp group, they are fantastic work, because of the opportunity for the spectators out here to watch some good players in this Manjeshwar cricket ground. And wonderful hard work. And once again, I would like to give thanks on behalf of all cricket lovers for that Underarm World WhatsApp group for providing this such a fantastic opportunity for all the talents belongs to South Kendra district as well as from Kasaragod district. Meanwhile, 2 very good deliveries which is bowled by bowler Ayaz. Ayaz is one of the master class, of course, a little master for the side of Makyar. But he's got a talent. He's got a talent not only from his bowling, but he's a very good batsman as well. And defeating the bat of Ajmal, it's not an easy, I will tell you. Just like Nawaz is explaining, the batting of Ajmal is Azharuddin of Underarm cricket, no doubt at all. Because ranges of strokes, what he was implementing, it was outstanding. This time again a chance there. It looks like it was going to be a cotton ball, but that was a 3 dotted deliveries. Ayaz, I think, is now able to put some break on the strokes of Ajmal. Ajmal little bit uncomfortable against the bowling of Ayaz. Ayaz testing the temperament of the batsman Ajmal. 4th time in this hour, this time far outside the run of off stamp, going to be a wide. This is little bit opportunity for Ajmal to gather the confidence which is lost in the 3 deliveries. This is the first extra which is bowled by
Makiar. This shows that discipline in the bowling. This time again helicopter shot comes into play, but not quite able to get the timing in that helicopter shot. They picked up a single. The first run dance I think is conceded Ayaz in that 4 deliveries. Of course one extra, and altogether I think Ayaz so far he bowled a very tidy line and length. Now I think it's going to be very interesting how Arshad will going to take Ayaz. And at the same time, I want to see the fielding set here for Arshad. One at deep fine leg, one at deep backward square leg, one at deep mid wicket. There is no deep long on mid inside the string. That was a mid on, but we can see that long up it will almost in the straight version. There is a deep extra cover, and Ayaz from the aircraft end bowling right arm round the wicket to Arshad. Arshad this time straight to the super deep fine leg. This is what I mentioned. This is what I mentioned. The fielding set I want to see. For this man, I think the captain really did a good job by keeping one fielder down at deep fine leg. Looks like quite deliberately Ayaz bowled that line so that inviting the batsman to go for the big shot, and he pays the penalty for that. Big pitch in the net. The big fish in the net here for brothers. Because that I will tell you that the fielding set really working out, and bowling as for your fielding set is so important in the occasion. Almost Arshad dragging the ball from outside the line, little bit outside the line of half time, right from the middle of the bat, but the fielder there in a deep fine leg making no mistake at all, not even 1 inch as he moved. Ball is straight away coming to his hand with the speed, and the danger man Arshad departs. Replacing danger man, another danger man comes into play. That was none other than Azhar. What a great over there from the young man Ayaz. Outstanding over, just 2 runs coming from that over, and 2 runs in the sense one is a wide and one from the bat. Altogether it's an outstanding and fantastic bowling display there from Ayaz. And brothers Makiar, now they are really dreaming about why not we are giving some big upset of this tournament. The young friend Surwa, who really played a magnificent game of cricket against KFC Kodikal to deserve the place in the quarter final. But you cannot underestimate any team, especially in this format of the game, especially in this particular cricket ground, the mini stadium of Panjeshwara. You have watched so many upset in this cricket tournament, especially the NM cricketers Mangalore, after defeating Gori Young Boys. Looks like they are the favourite of winning the match against Team Elegant. But look at the Team Elegant, how well they managed to defeat the NM cricketers Mangalore. That's why it's so important here for the young friends who cannot underestimate any team. And I think brothers Makiar, just like Nawaz is mentioning about, they got a lot of experience playing in this cricket ground. They know exactly each and every aspect of this cricket ground, so that they're going to be very dangerous. And from the far end, aircraft end, right arm over the wicket. This time ball is in the air, but out of the reach of the fielder. But fielder is not quick in that occasion. I don't know why that fielder at the mid wicket is not trying for the catch, because ball is in the air for a while. Giving life to batsmen like Ajmal, you need to pay the penalty for that. Afif is the bowler in the mid wicket. Afif is the fielder in the mid wicket. He's a tall man, but for tall fielder it's very easy to reach the ball, but this time he is not really having that much of good run to take the catch. Ball him, clean him up, bells are off. Azhar is gone. Azhar is gone, and celebration is on of brothers Makiar. They will definitely going to enjoy in the each and every wickets of young friend Surwa. The hero of the previous match, of course, is contributed from the bat. Azhar in the previous match is back into pavilion. (29) for the loss of 3 wickets. Outstanding comeback here from brothers Makiar. I think Ayaz is a man who really responsible for that position what brothers Makiar is enjoying here. And after that, getting that inspiration from Ayaz, this man Ashwad,
straight away. He's also bowling a very good line and length. And what a big wicket here for Aswad there. The wicket of Azhar is back into pavilion. The new batsman just coming into the middle, Imran. Imran is the batsman, one who really changed the complexion of the match in the previous match against KFC Kodikal. Hits 6 in the final delivery of the 5th over, and that makes so easy for young Pensurwa to climb that mountain of runs. Ashwat bows. This time, what we're talking about, the 6 is changed the complexion of the match. Here once again, Imran sending a strong message with this bat. That is a dangerous man. Nothing wrong with the line of the delivery, but Imran so good in it, that slog sweep shot. He's a master of playing that slog sweep shot, and right from the middle of the bat, instrumental sound coming from the bat of the batsman. The moment that ball left the bat off is one more. It's a one more there from Imran. He's just enjoying his batting here in this Gladiator Trophy 2021. Back to back 2 sixes. What could be a certain good position hold by brothers Makia just had lost the grip over this match. The runs have started to flow from the bat of Imran. He's on hat-trick, I think so, in the form of sixes. Appeal for leg before wicket, but definitely going that ball pitched outside the line of off stump. In fact, off the line is outside the line of off stump, so that leg by call by umpire, and with that single, scoreboard moves on to 42 on the board. 42 for the loss of 3 wickets are back into pavilion. 2 good shot, I think, coming from the blade of Imran. All that we can see that young friends are in such a good position. Again, Ajmal swept that one. They're running hard, looking for the second. Look at Ajmal there. Chance of run out there. I think it was too smart. This is too smart what Ajmal wanted to get a couple of runs when the ball is in the hands of the fielder. He is running hard but not quick enough to complete that couple. Is back into pavilion with a good throw coming from that fine leg fielder. The captain is walking towards the pavilion. So Azhar is back into pavilion after playing a captain's knock, I will tell you. He played 2 delightful cricketing strokes, one towards the deep mid wicket with the wrist work, and one is towards the deep extra cover. That was one of the most beautiful strokes of the day number 2 of this cricket tournament. Is back into pavilion. The new batsman in is Arshad LT. One more very good striker of the ball. And wait and see how well these 2 batsmen, Imran, the both are belongs to Chokabe to Krishnapura area, and Imran and of course Arshad. The wait and see how these 2 batsmen will going to contribute here in the remaining last 6 deliveries of their innings. Bowler Neetu is the bowler. Scoreboard is 43. Here is again right arm over the wicket balls. Nothing much to do with the delivery. So Imran knows that it is a wide outside the line of off stump. He's not really trying for any strokes there. And one more addition to total scoreboard moves on to 44 on the board. Brothers Makia, they got some good talented players, especially the wicketkeeper behind the stump, Ishad. Usually represent NM cricketers Mangalore. They got some good players in the side, so get even 50, less than 15. I don't think it's going to be quite enough here for young friends to depend. Scoreboard moves on to 45. Last 5 deliveries remaining in the innings. Ashad LT is back on strike. Nitin is in attack. Right arm over the wicket across the line of the delivery, swinging his bat. Ayaz, oh, misfield! Absolutely sloppy fielding out there by Ayaz. What could be a certain single because of the fielder just removes his eyes on the ball. Little bit urgency shown. Pays the penalty for that. 3 valuable runs here for young fencer. One score jumped into 49. The bands are on here. The electrifying atmosphere, the festival atmosphere in this most beautiful mini stadium here in Manjeshwar. Lovely delivery, but wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. By in the sense it was a mistake of wicketkeeper behind the stump
One more addition to total. 50 comes up here for young friends Surwa. They got 50 in exactly 5.3 deliveries. Now 3 deliveries remaining in the innings, and Imran, what innings is playing is a small cameo in the previous match. Now also is playing a small cameo of playing just 3 deliveries. Already is completed 13 runs. Far outside, none of half time, defeats the wicket keeper. Misfield by the third man fielder. They're gunning hard, coming back for the second. What a throw that one there from a shot. Back and throw, and they're going for the third umpire, squalor umpire. Ajit wanted to get some help from the third umpire here, and I think it's Arish Padil here to just see will it going to be out or not out. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಕ್ಷಾ ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. KL14Q9843. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. KL14Q9843. Not out is a signal coming from umpire, and the batsman completed a couple of runs. Scoreboard moves on to 53 on the board, and the last 2 deliveries remaining in their innings. 3 deliveries remaining, little correction. The wide delivery, previous one. So that scoreboard now 53 on the board. Good score on the board for young friends Surwa. The previous match KFC Kodikal scored a 67 runs and set a target of 68 to win the match for young friends Surwa. They chased down successfully. 53 already on the board. This time one more. Looks like taken. A little bit fine, I will tell you, as Imran trying for the shot. But it was a little bit of squall, I will tell you. It was a deep backward squall. I think it's going to be a maximum, but it was a little bit longest part of the ground that he was looking for. And the fielder then, the deep fine leg region, takes the catch, and a wonderful innings comes in. And he played a magnificent innings. Once again, when the time for the acceleration for the run rate for young Prince Surwa, he delivers. So man in form, Imran, comes to the pavilion, but he did his job. He completes his job with the 13 valuable runs in just 5 deliveries. So new batsman in is Fawaz. He is in non-strikers and strikes are rotated. Mohan Iyadi, Ajit Padil having a conversation. Maybe don't know for what the conversation is for. Maybe the batsman whether it crossed or not. No, that was maybe the discussion here, but I think now everything is fine. Arshad LT will going to take the strike. 2 deliveries remaining. This time Arshad is enough action. Just hoisted it over. Justice hoisted it over towards a deep backward squall leg for the huge 6 coming from the blade of Arshad LT. 1 ball remaining in this over. The score jumped into 59. Just 1 shot of 60. 59 is the score. Last delivery remaining. Nitin has been punished. Nitin has been punished with a boundary and 6. 1 more expensive over, which is bowled by brothers Makiar. Again swinging his bat towards the deep fine leg region. They're running hard. They're coming back for the second, but they're going against that one, rightly so. Good throw coming from the deep. That's it. 60. Exactly the score of young friends. They scored 60 runs at the rate of exactly 10 runs per over. And they set a target of 61 to win the match here for brothers Makiar. And wait and see how brothers Makiar will going to get this 61 against the fantastic bowling department of young friends Surwa. Nothing is impossible in this cricket, I will tell you, especially in this cricket ground. And wait and see how well brothers Makiar will going to win this match. And before the innings of the Makiar will going to come and sudden change in the commentary box as well. And it's over to Star Nawaz for the further explanation of the match in our national language in the what an outstanding cricket tournament
What a hard work done by the Underarm World WhatsApp group in the name of Gladiator Trophy. Can you believe this? Just having the friends in mobiles through WhatsApp, they get together and they're just wanted to complete their dream. The dream what they wanted to complete is to complete this Gladiator Trophy 2021 successfully. And Nawaz looks like they won their first step. The Underarm World WhatsApp group. It's not so easy. And only through WhatsApp group they're making this dream comes true by organizing this Gladiator Trophy 2021. And not only they're organizing this Gladiator Trophy in this cricket ground, but they're giving an opportunity for the players. That is a perfect platform for all the talents of South Kent district to come and perform here, and giving opportunity here for the spectators to watch some good players from South Kent districts, some good teams from Kerala state as well. And altogether this tournament, I will tell you, it's going to be one of the memorable and historical cricket tournament here in this mini stadium Manjeshwar. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುವಂತಹ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಂಘಟಕರು ಅದನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 2 ರಾಜ್ಯಗಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಾಗಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2021 ಇದರ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾದಂತಹ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಸಡಗರದ ಸದ್ದಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಘಟಕರು, ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಂಘಟಕರಾದಂತಹ ಇರ್ಷಾದ್, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಅಸ್ಕರ್, ಕೌಸರ್, ಹಮ್ಜಾ, ಮುನೀಶ್ ಇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ YFC, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿರೋಜ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ದಯವಿಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ. ಅತಿರಥಿ ಮಹಾರಥಿಗಳು ಆ ಮುರುಗುವಂತಹ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುವಂತಹ ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2021 ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಯಾನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕುಂದತ್ತೂರ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಇರ್ಷಾದ್ ಕುಂದತ್ತೂರ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ಇರ್ಷಾದ್ ಕುಂದತ್ತೂರ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ, ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಂಘಟಕರಾದಂತಹ ಹಮ್ಜಾ, ಕೌಸರ್, ಅಸ್ಕರ್, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಇರ್ಷಾದ್, ಮುನೀಶ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಾರಿಸ್ YFC, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿರೋಜ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ तो शुरुआत की बल्लेबाजी पर यंग फ्रेंड सुरवा 60 रन बनाकर 61 रन के लक्ष्य यहां पर दिए हैं. 61 इज द टारगेट. ब्रदर्स मक्यार अपनी आरंभिक खिलाड़ियों को मैदान पर उतरे हैं. इरशाद और शियाब. शुरुआत की गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से शरण तैयार.
और शुरुआत के गेंद पर ही उल्टे हाथ के साथ रन चुराना चाहते थे, लेकिन पहली गेंद शरण के पिच के साथ जुटते हुए गेंदबाजी दिखाए ब्रदर्स मक्यार, भरोसेमंद आरंभिक खिलाड़ियां ब्रदर्स मक्यार के हर्षद और सियाब शरण। और इस बार भी अच्छी थी गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर से गेंद को खींचना चाहते थे, लेकिन बल्ले के नीचे से गेंद गुजरते हुए विकेट कीपर के हाथ पर 61 रन के लक्ष्य है। यहां पर तो नाजुकी नजर से हम बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि पिछले मैच पर यंग फ्रेंड्स उर्वा ने 68 रन को बनाए थे 6 ओवर में। तो ऐसे में यहां पर अगर ब्रदर्स मक्यार के किसी एक खिलाड़ी की बल्ले से अगर ऊंचे 2-3 शॉट निकल आए तो ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं कह सकते। हर ओवर पर 10 रन बनाना इस मैदान के लिए तो बड़ी बात नहीं है। ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಲ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನೋಡಿ, ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗಬಾರದು। ತಾವು ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಲ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಿಂತು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನೋಡಿ। ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿ। तीन गेंदों पर बने एक सिंगल रन। शरण यंग फ्रेंड्स के मालक तिलक के फेवरेट खिलाड़ियों में है शरण, हमेशा भरोसा रखते हैं शरण के प्रदर्शन पर, उनकी गेंदबाजी पर काफी विश्वास रखते हैं तिलक। तो आज यहां पर देखना होगा कि कितने हद तक अपने विश्वास को बचा पाएंगे शरण। और इस बार लेग बिफोर के जोरदार अपील, विकेट के पीछे अश्विन राज। यंग फ्रेंड्स सुरवा के ऐसे एक बिल्ली जो कड़वा बिल्ली कहा तो भी गलत नहीं होंगे, गेंदबाजी इस तरह से करते हैं कि देखने वाले चौंक जाते हैं। अश्विन राज की गेंदबाजी और हमारे प्रतियोगिता में हमारे साथ जुड़ रहे हैं समझ कुंजतूर। समझ जी, तहे दिल से स्वागत है आपको। आप आकर इस श्रृंखला के रौनक बढ़ाए और हमारे साथ आपके प्रोत्साहन हम बिल्कुल नहीं भूल पाए हैं। समझ जी, हम दोबारा आपको स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता में। पहली ओवर की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल ऑफ फर्स्ट ओवर, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। 2-3 बार जमीन को टपकाने के बाद गेंद को उठाकर राइट आर्म ओवर से ये गेंद, और इस बार गेंद को सीधे कवर्स की दिशा में शानदार तरीके से निभाया और आखिरी मौके पर सीमा रेखा के करीबों करीब ईशाम उस गेंद को सीमा रेखा के अंदर दबो दिए। तो ऐसे में 2 रन की यहां पर बचावट यंग फ्रेंड्स सुरवा को। ओवर की समाप्ति, शुरुआत की ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 4 रन। 4 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। 61 रन के लक्ष्य है, 61 इज द टारगेट। तो अब 5 ओवर पर 57 रन। ब्रदर्स मक्यार, यहां पर तो आपको थोड़े से विस्फोटक मनोभाव अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि यंग फ्रेंड्स सुरवा जैसे ही ओवरों की संख्या बढ़ते चले जाते हैं उनकी गेंदबाजों की तीक्ष्णता भी मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसे में आप जितने शुरुआत पर रन चुराने के प्रयास करेंगे उतने ही बेहतर होगा। आखिरी मौके पर गेंद से ज्यादा रन पाना यंग फ्रेंड्स सुरवा जैसे गेंदबाजों के खिलाफ बहुत ही मुश्किल बन जाते हैं दोस्त। तो शुरुआत की ओवर पर केवल मात्र 4 रन। इरशाद और शिहाब की जोड़ी गेंदबाजी पर परिवर्तन, ईशाम को लाए हैं गेंदबाजी पर। KFC एक्सप्रेस कृष्णापुर परिसर के ये खिलाड़ी, और इस बार उल्टे हाथ खेलने की कोशिश, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर थे गेंद। वाइड बॉल की इशारा। 1+1, 2 रन मिलेंगे रन संख्या पर, और इस 2 रन के साथ रन संख्या बने 6 रन। 6 ऑन द स्कोरबोर्ड। विकेट कीपर के रूप पर आप फवाज को देख सकते हैं, जो अंडरआर्म क्रिकेट पर ऐसे धमाल मचाए थे, और उसके साथों साथ टेनिस बॉल के क्रिकेट पर भी, सीजन बॉल पर भी फवाज जैसे खिलाड़ियां अपने नाम काफी ऊंचे किए हैं। UPL उड़पी प्रीमियर लीग पर ईस्टर्न ब्लूज के किरदार निभाते हुए कार जीते थे प्लेयर ऑफ द सीरीज के रूप पर फवाज। तो पिछले गेंद वाइड होने के बाद ये डॉटेड डिलीवरी के साथ वापस आए ईशाम। दाहिने हाथ ओवर द विकेट से ईशाम तैयार, और इस बार भी ऑफ स्टंप से बाहर।
इस बार भी ऑप्शन से बाहर, दोनों वाइडों पर 1+1 निकले हैं ईशाम की गेंदबाजी में। कम देखने को मिलते हैं ईशाम की गेंदबाजी में इस तरह की कमजोरी पर, लेकिन अगर इस कमजोरी दिखाने लगे तो इनको रोकना भी मुश्किल हो जाते हैं। कई बार ऐसे भी घटना हमने देखे हैं मैदान में। कुछ गेंदबाज ऐसे निकलते हैं, एक अच्छे गेंदबाज होने के बावजूद भी लगातार 4, 5, 6 वाइडों के साथ अपनी गेंदबाजी बहुत ही खराब हिसाब से दिखाते हैं और देखने वाले दर्शक भी निराशा प्रकट करते हैं उनकी गेंदबाजी में, क्योंकि जितने निरीक्षण उनके गेंदबाजी पर करते हैं, जिस क्वालिटी को उम्मीद करते हैं दर्शक, जब वो जुड़ नहीं पाते तब तो दर्शकों के रिजल्ट पर आप सर झुकाने होंगे दोस्त। और इस बार गेंद को उल्टे हाथ खेले, अजमल गेंद के नीचे है और इस बार इस उल्टे हाथ सफल नहीं बने ब्रदर्स मक्यार के खिलाड़ी। शियाब आउट होकर वापस जा रहे हैं। पहली विकेट ब्रदर्स मक्यार के। आरंभिक पावर प्ले पर अपने गेंदबाजी पर दबाव रहे हैं यहां पर ब्रदर्स मक्यार को इंग सुरवा। पिछले मैच पर तो ऐसे रन यहां पर बरसाए, शुरुआत पर 67 रन बनने के बाद ज्यादा से ज्यादा 80% दर्शकों के दिलो दिमाग पर केएफसी उस मैच को जीत जाएंगे ऐसे लग रहा था, लेकिन एंग सुरवा अरशद की बल्ले से निकली हुई वो फटाका वाली बल्लेबाजी केएफसी कोडिकल की गेंदबाजों के खिलाफ वाकई जबरदस्त जीत हासिल किए हैं एंग सुरवा पिछले मैच पर। तो यहां पर देखना है कि क्या सेमीफाइनल के टिकट पा पाएंगे यहां पर एंग सुरवा। एसएस ट्रॉफी के फाइनलिस्ट बने हैं एंग सुरवा। अंडरआर्म क्रिकेट पर अग्र क्रमांक पर विराजमान होकर हमेशा अपने विपक्षी टीम पर सवाल फेंकते हैं ताकि आप हमारे खिलाफ जीत कर दिखाइए। और इस बार एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा पर ऊंचे खेले, यहां पर तो 2 रन अवश्य मिलेंगे यहां पर खिलाड़ी को। ब्रदर्स मक्यार धीरे धीरे से रन संख्या आगे बढ़ते हुए डबल फिगर 10 पर पहुंचे हैं। दूसरे ओवर के 2 गेंद अभी भी बाकी, 3 गेंद अभी भी बाकी। स्ट्राइक पर खड़े हैं इरशाद, नॉन स्ट्राइक पर मसूद। और इस बार अच्छी गेंद यहां पर ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे बल्लेबाज को, और अंपायर की तरफ वाइड के लिए अपील भी कर रहे थे, लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंद क्रीज को पार करने के बाद अपनी बाहरीपन दिखाए थे, तो ऐसे में ये अच्छी गेंद बनेंगे। और इस बार भी एक क्रॉस निभाने की कोशिश यहां पर, आउटर एज, एक सिंगल रन यहां पर प्राप्त होंगे, लेकिन एक सिंगल रनों के साथ जीत तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे ब्रदर्स मक्यार को, क्योंकि हर ओवर के बाद, हमने इससे पहले भी कहा कि हर ओवर के बाद एंग सुरवा एक से बढ़कर एक गेंदबाजों को इस्तेमाल करते हैं। अगर यहां पर एक चालाक निकले तो दूसरे चतुर निकलेंगे, तीसरे तो टेक्निकल निकलेंगे। लेग कटर, ऑफ स्पिन, तेज गति, डबल स्पिन, इन तमाम गेंदबाजों के इस्तेमाल एंग सुरवा पर हमने देखे हैं। और ये देखिए क्या शानदार गेंद, आखिरी गेंद। ओवर की समाप्ति, दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 11 रन, 11 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर। अब 4 ओवर बाकी, रनों की संख्या बने हैं अब 11 रन। अब 50 रन पीछे खड़े हैं 4 ओवर पर। हर ओवर पर 12.50 के रन धारण प्राप्त करने होंगे, लेकिन यह नामुमकिन बिल्कुल नहीं कहते हम। ये होनी है, अनहोनी नहीं है। इस मैदान में तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, सवाल के रूप पर ही होगा आखिरी मौके तक। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब देखना है कि बची हुए 24 गेंदों पर कितने रन बना पाएंगे यहां पर ब्रदर्स मक्यार। 50 रन की जरूरत है, जीतने के लिए तो 50 बनाने ही होंगे। हार की अंतरा कम करने के लिए अगर कम स्कोर बनाए तो यहां पर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये लीग तरीके के मैच तो है ही नहीं, ये तो करो या मरो वाले नॉकआउट वाले मैच है। हार जाते हैं तो निर्गमन लेने होंगे इस प्रतियोगिता से।
और इस बार डॉटेड डिलीवरी। इरशाद आरंभिक खिलाड़ी बनकर आए थे, ज्यादा से ज्यादा डॉटेड डिलीवरी नजर आ रहे हैं इरशाद की बल्लेबाजी में। यहां पर तो ब्रदर्स मक्यार हर ओवर पर अच्छे खासे रन की जरूरत सामने कर रहे हैं, तो ऐसे में डॉटेड डिलीवरी बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे ब्रदर्स मक्यार को। और इस बार भी ऑप्शन की दिशा पर गेंद। शरण अपनी स्पेल के दूसरी ओवर दिखा रहे हैं। पहली ओवर की सफलता के बाद काफी विश्वास के साथ दूसरी ओवर सौंपे हैं शरण के हाथ पर। और ऐसे क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जैसे मैचों पर तो शरण हमेशा अपनी गेंदबाजी काफी अच्छे निभाते हैं ओवर द विकेट से। और इस बार ये देखिए थोड़ी सी बदलावन अपनी बल्लेबाजी की शैली में। दाएं हाथ के खिलाड़ी गेंदबाजी से पहले उल्टे खड़े रुके थे बाएं हाथ की शैली पर, लेकिन खेले दाहिने हाथ की शैली पर। शरण अपने ओवर की चौथे गेंद। और इस बार गेंद को फिर उछाल के खेले, लेकिन वहां पर अरशद। आज तो अरशद के सर पर वो नीले रंग के टोपी चमक रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहली मैच पर 37 रन चुराए थे KFC कोडिकल के गेंदबाजों से, ऐसे छक्के जड़े जो देखने वाले आंखें तो बहुत ही नमकीन बने थे, बहुत ही खुश बने थे। और इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में इशाम दौड़ते हुए गेंद के पास आया और आखिरी मौके पर जमीन से छोटी सी अंतरा पर उस गेंद को उठाकर कैच के रूप दे दिए। और इसी के साथ ये दूसरे विकेट इरशाद के रो पर आउट होकर वापस आ रहे हैं। लंबी रन बनाने के बाद काफी विश्वास के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं एंकरेज सुरवा। यहां पर तो एक ऐतिहासिक प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021। और इसके बाद कृष्णापुर के पैराडाइज मैदान पर मार्च के 21, 27, 28 अप्रैल के 3 और 4 तारीख को एक धमाकेदार क्रिकेट श्रृंखला होगा। अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास पर पहली बार विजेता को सोने के सिक्के के साथ नहलाए जाएंगे। अल अमीन स्पोर्ट्स क्लब रजिस्टर्ड कृष्णापुर आयोजित कर रहे हैं उस अल अमीन ट्रॉफी को। 5 दिनों के क्रिकेट के वो त्योहार परिसर के 30 और मैंगलोर के एरिया पर 12 टीमों के शामिलाती आप देख सकते हैं उस प्रतियोगिता में। विजेता को 24 ग्राम गोल्ड के सिक्के, हर खिलाड़ी को 2-2 ग्राम गोल्ड कॉइन देकर पुरस्कृत किए जाएंगे और रनर्स के हर एक खिलाड़ी को 1-1 ग्राम सोने के सिक्का। तो देखना ना भूलिएगा मार्च 21, 27 और 28 अप्रैल के 3 और 4 तारीख पर। और उसी तरह एसएस ट्रॉफी के फाइनल दिन 21 तारीख के दिन होने वाले हैं। एंगफिन सुरवा वहां पर फाइनलिस्ट बने हैं। सेमीफाइनल पर रिलायंस का टिप्पला को हराकर एंगफिन सुरवा फाइनल पर विराजमान हुए हैं। तो बाकी बचे मैच होगा एतवार के दिन 21 तारीख को एसएस ट्रॉफी 2021 के नाम पे। तो अंपायरों से हम गुजारिश करते हैं कि जितने भी जल्दी हो सके मैच को आगे बढ़ाया जाए। काफी वक्त निकलते हुए नजर आ रहे हैं संगठकों को, क्योंकि इस मैच के बाद एक सेमीफाइनल और एक फाइनल मैच, 2 मैच खेलने वाले हैं इस मैदान में। तो सूरज डूबने से पहले इस प्रतियोगिता को एक सुंदर शानदार अंत के साथ देखना चाहते हैं दर्शक। यहां पर तो हर एक रन भी बारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रदर्स मक्यार 3.1 ओवर के बाद वीक्षक विवरण पर भी हम बदलाव करते हैं। सतीश जी, थोड़ी सी मायूसीपन दिख रहे हैं इस मैच में, क्योंकि 60 रन बनाकर 61 रन बनाने के बाद ब्रदर्स मक्यार पर जिस तरह की निरीक्षा हम कर रहे थे, आरंभिक अगर पावर प्ले पर लगभग 15 से 20 रन आते तो निश्चित रूप से उम्मीद वहां पर जिंदा रह जाते थे, ताजा हो जाते थे उस उम्मीद। लेकिन यहां पर तो 3 ओवर पर रन संख्या काफी कम लग रहे हैं। तो आप किस तरह से अनुमान लगाते हैं इस मैच में? So thank you, Star Nawaz. Exactly you were mentioning about might be where they are lacking in the batting performance, especially in the first 2 overs. They need to take the advantage of getting some good score around 20 to 25. That was really lacking in this match, and that's why they are really struggling in the middle. But match is not completely out of their hands. Maybe it was a little bit difficult one, but sometimes we feel all doors are closed in our life, but all the doors may not be locked. They may be waiting for your knock,
and knock in the sense they need to hit some big shots, then only they can bounce back this match. Here is a warm welcome for our chief guest. The dignitary is out here, Mr. Hamid of Good Luck Posot, and Ismail of Good Luck Posot. And on behalf of Underarm World WhatsApp group, I proudly inviting the two dignitaries into stage. Please come and take your seats, sir. Hamid, good luck, and Ismail, good luck. So warm welcome for one of the best supporter for this cricket tournament as well. So on behalf of all cricket lovers, we would like to give a warm welcome for both Hamid and Ismail. Good luck. Meanwhile, what a wonderful performance there from Ashwin. He is a master, the first maiden of this cricket tournament. The big handy of a magician of Underarm cricket. Why he was called as a number one bowler in present Underarm cricket? Because of the reason in front of you. Yes, Satish ji, you are right. This is why he is called number one bowler in the Underarm cricket world. Because last time when Bichu Premier League was there, Ashwin was injured. So he was an icon for the Royals Mangalore team, and he ended up becoming the highest wicket taker in the tournament. That's what this bowler has done. And whenever we see this year for young Fransurua, he has been the trump card. Even in Chokabetu, defending 7 runs in that super over against KFC Kodikalla. So he's been the trump card for the team for these years. Nicely played this time from Zubair's ball, and that's gone, and a good save from the fielder on the deep. Imran is the man who has done the trick with the bat now with the fielding effort, and young fans who are really looking different from the last match. They have been a little bit sloppy in the match against KFC Kodikalla, but this time they have been executing their plans into the proportion. Absolutely, and again this time full toss delivery, batsman hoisting it over, but didn't got that much of distance he was looking for, but they're running hard, coming back for the second, and they made it quite easily in the end. And you were right mentioning about Malu, that he was the one. I think Ashwin is, especially in this season, whatever the result for young Fransurua, he is the one who is responsible for the victory for young Fransurua. Every time they become the champion, I think there is a contribution of Ashwin, because bowling department I am talking about, young Fransurua, they are not a little bit lacking, but this man Ashwin, every time when young Fransurua required some wickets, whenever the young Fransurua required some economical over, he is the one who leading from the front, is performed, and that's why he is one of the key player for young Fransurua. Surely Satish ji, because short boundaries in the ground like Panchat Mini Stadium here, if he is keeping a maiden over, that's unbelievable. No doubt in that. Absolutely, because no one is introduced the cutter yet in this great ground. I will tell you, because this is not an easy. It was just like a gamble. If you put any cutter bowler in this cricket ground, they need to be a little bit careful. That's why no one captain is taking that much of risk bringing that cutter bowler. But here, look at Ashwin, how confident he's been, and just he once again justifying why he was the number one bowler in the present cricket. That's why young friends they gave the 2 overs for Sharan. This time Zubair, this time going for the reverse sweep, nicely played, and Ashwin is the man with the on the fielding side, and Fawaz not collecting the ball, but no danger for the fielding side, and the match is slightly and moreover 90% going into the hands of young friends who are here in this quarterfinals, the second quarterfinals on the Pool B of Karnataka pool for the great Gladiator Trophy 2021. First time ever in the history of Underarm cricket a tournament like this has happened. For me, if I believe, it's been 6 or 7 years that Karnataka team, like top 8 teams of Karnataka, entered into Kerala. After that, I don't think so this much of team have gathered for a tournament. Exactly, that's why I told that they build a bridge. They build a bridge between the teams of South Kerala districts and for Kerala, and that's why it is so important to see that Gladiators Trophy, one of the best tournament ever played in this cricket ground. Now umpire, broken bat. The bat are broken here, and just coming back to this cricket tournament, Malur, that is Underarm World WhatsApp group. This is the one group. Just time got information that this team, the Gladiators Underarm World WhatsApp group, they has got a good team as well. They got good players as well. And in the recent 2 years, in
difference between 2 years, they won 5 prestigious tournaments. Out of that, 4 winners and 1 runners up. And out of that 5, 1 tournament they won in the format of Underarm cricket. That was a season ball cricket. Yes. That means it's outstanding, isn't it? They are not only they are organizing this wonderful cricket tournament, but they got some talented players in this group as well. Surely talented player, being it is led by one of the wonderful cricketer from the side of Kerala, Mr. Feroz Manjeshwara. So of course he has been brilliant. He was a brilliant cricketer. Actually, he is retired from all form of cricket, and it's a disappointment for the cricket lovers. Again, Arshad with the ball, nicely balled. That's a great comeback by Arshad, giving that variation of his length and line with the ball. And the young friend Surua, and this match is not that easy match for a team like Makiar, and slightly disappointing match, and not a big fight given by the team like Makiar. So the next match, the semi-finals of Pool B, Team Elegant is waiting ready for their opposition. Almost the match is in the hands of young friend Surua, 99.99%. Harshad with the ball in his hand. Again, what a day it has been for Harshad. He has been fantastic today. I can say he is the hero of the day till now. Exactly, he is the hero of the day, the man with the golden arm. As whenever he's coming to bat, he's produced this fantastic batting display as well. Whenever they asked about some good overs, he's leading from the front, and definitely this today is day is belong to Ashad. Again, a nice looking drive there from the left hand batsman towards a deep wide-ish long on region for a easy single, and with that single, I think maybe that singles will not going to help Makiar to win this match, but just looks like as a formalities left in this game. Improvisation, but too much across the line of delivery. Pays the penalty for that. One more wicket is back into pavilion. That's it. The comprehensive victory for the young friends who defeated that their opponent Brothers Makiar. The margin of exactly 40 runs, and that was a huge victory here for the young friends who they came into this tournament as one of the favorite, and down there once again they're justifying why they are the favorite in this tournament. But I think the climax definitely will going to be very interesting, because in the semi-final, the Team Elegant after defeating NM Cricketers Mangalore, I think the level of confidence is going to be very high of Team Elegant, and that's why the semi-final will going to be a very interesting. It's going to be a high voltage match. Surely, Satish, because when compared with a team like Yanam who defeated Gori in the first round, so Elegant is a very good team, but when you compare them with Yanam, with the current form of NM Mangalore team, Elegant, no one would have imagined that Elegant is going to win that match, but fantastic display of bowling performance from the team Elegant, and they won the match against NM, and now they will be facing young friends Urua in the semi-finals for the Gladiator trophy in the Pool B. And I really need to thank Bedra Media, Irfan and the group, because when we used to play Underarm cricket before 10 years, we used to think that how we will be able to see matches like international matches in TVs or in mobiles. We didn't have any form of technology those days, and Bedra Media with this concept, they have made it possible for every Underarm lovers to watch live players, and it has been a fantastic decision from Bedra Media to put this concept. The team captains of Young Friends Urua and Team Elegant, so please come to for the tossing ceremony for the semi-finals. And for the last match, the man of the match will be going to be Imran from the side of Young Friends Urua for his fantastic mark of 13 runs of 5 balls. And for every man of the match of this tournament is being sponsored by For this match, the man of the match is sponsored by Kerala Chilangoda Club, and the man of the match of this last match, the quarterfinals of Brothers Makiar and Young Friends Urua, is none other than Imran of Young Friends Urua. Brilliant innings, including 2 maximums,
And for giving this award, I call upon Mr. Harris YFC Kannur to give away this award. The man of the match of the second quarter-finals, Imran from the side of Young Friends Rua. Give a big hand. All the spectators, I welcome again for a fantastic last 2 hours of this tournament, the finals and the semi-finals. So every spectator is gathered here. They will be very eager to watch the winners, the runners, the last semi-finalist, the big match to come, red hot match. Young Friends Rua facing Team Elegant. So Underarm World WhatsApp group proudly presenting the Gladiator Trophy, the 11th Underarm Cricket Tournament. It has been the first time in the history of cricket in Kerala side we have done this, and this has been a planning from many people's brains. Actually many people were planning, they were just planning, and the Gladiator Trophy being presented by Underarm WhatsApp group, they really planned it before 1 week, only within a time of 1 week, with the efforts of Mr. Firoz, Mr. Aharis, and here Irshad, Kausar, Hamza, Chammu, Chemmi. I cannot thank every people. Even Inti today has been active. Everyone from every team from the side of Kerala, they are gathered here. It's like a team gathering here. So it has been a proud moment for all the cricket lovers in Kerala. So with the first cash of 100,000 rupees with the Gladiator Trophy, and second cash of 50,000 with the Gladiator Trophy for the team captains of Young Friends Rua and Team Elegant. Please report for the tossing ceremony for the semi-finals, the second semi-finals of this tournament. Please the captains, because we have to finish 2 matches today, so I request the captains, you have to cooperate with us. We can't waste our time. The captain of semi-final ആരൊക്കെല്ലാം ഒക്കോ അഞ്ചോറാവല്ലേ Young Friends captain, please report for the tossing ceremony. Ajmal, the captain of Young Friends Rua and captain of Team Elegant, Rihaz, please be ready for the tossing ceremony. So let's enter into the semi-finals, the second semi-finals of the Gladiator Trophy 2021. The big match, the red hot match of this tournament. So our fantastic trophy for this tournament has been displayed. So all the spectators so Young Friends who are winning the toss in the big semi-finals, and they have elected to field first. So decision coming from the captain of the side. They have chased 68 against KFC Kodikalla. That was a fantastic match. Their first round, the last match of the first round, the fourth match of the day, started with a big match like KFC Kodikal facing Young Friends Rua face to face. It has been like, I remember it's like India-Pakistan matches of 1990s. One India win, second Pakistan win, the same way. And everyone is watching the live
and again I thank Bedra Media for this concept. They have been brilliant over all these years, and the quality of video they provide, the quality of camera they uses for this such a grand tournaments, which all in Kerala and Karnataka they are traveling. Their team is doing a fantastic job. So for the efforts of the efforts of this committee, I really thank all the members of Underarm Cricket World and Underarm WhatsApp group for contesting a tournament like this. So the both camps will be now planning for the big match. Team Elegant have to bat first. They will have a certain targeting their mind. The team captain Mr. Riaz will be such an experienced campaigner of Underarm cricket. He have led Gori Young Boys before. Now he is leading Team Elegant, and he will be thinking in his mind what to do, how much target they need to put against a team like Young Friends Urva. And now this is evening time, and we have seen a very big scores today. But the match between Yennam and Team Elegant, we saw the low scoring match, and it was a very fighting match and tough match. So defendable target can be below 30 also. We can't predict the match here in this ground. Anything can be possible here. So Young Friends Urva with a win in the quarterfinals, entering into the semi-finals, and again choosing to field first. So Ajmal the captain. So umpires, this match we have to keep a certain time because we have a finals left in this day. We can't keep it for another day. We have to finish this tournament today itself. The big team Young Friends who are entering to the ground to field. The captain Ajmal leading from the front with Ashwin, with Zubair, with Imran, Arshad, Azhar, Tanveer, Fawaz. What a team it has been. So umpires, please note down, it's a request from the committee that we are not saying we have to fast the match. We are saying that we need to get a calculation the time. Even in international matches there is something called slow over rate. The same way we have to do some rules in Underarm cricket also, so that we can get a certain time limit for each matches. So the big openers from the side of Team Elegant, Rashid Baba as well as Ashraf. Rashid Baba is such a big hitter of the ball, is such a dangerous batsman, and this type of ground is suit for a batsman like Rashid Baba because he's a great pinch hitter of the ball. He can change the complexion of game in just 1 or 2 overs. Yesterday we saw Chemi from Enni Posot, Chammu from Enni Posot, Musa from Team Kumbla. Today again we saw Akif in the first match for Ennam. Again we saw the batsman Arshad from the side of Young Friends Urva. Again the last match we saw Imran. So what a tournament it has been. It has been a fantastic first day and second day. So this is a final day, final 2 more hours to decide the winners and runners of this tournament, who will be the champion. Now the big 2 teams facing, Ashraf taking the strike for Team Elegant with the bowler Mr. Sharan. He has been introduced to the bowling attack, taking the responsibility for the team in the power plays. He has been fantastic in the last match against Brothers Makiara. First time in his over from the aircraft, and the bowler is none other than Sharan with the ball in his hand. Right arm over the wicket to Ashraf. This time Ashraf going for the big shot, nicely played on to the mid-on, and just a single taken with that scorecard opens. So that is a good touch of bat from the batsman Mr. Ashraf, just going to attack the bowler. Sometime there is a saying said that attack is the best defense, because when you attack the bowler's confidence loses, and there is a more opportunity to score runs. So now this is a big man in the strikers, and he is the man who can really give some good scores in the power plays for the team like Elegant. Is none other than Rashid Baba. Sharan to Rashid. So I'm going for the big shot, nicely played, and on to the mid-on again. One more single taken. So good start for both teams when it's compared, because Team Elegant
They are not taking it as a light thing. This is the big semi-finals of this Gladiator trophy, and they are facing a team like Young Friends Urva, who are in a great form in this season. And now the ball again, Sharan, third time is over, and this time Ashraf will be going for a nice shot, and this time return same to the bowlers, and a very good comeback by the bowler. Tight line, tight length, not giving any room for the batsman to go for the drives. That is what a bowler has to think. He shouldn't be giving any room for the batsman. If he is good at reverse sweeps, the batsman will be targeting the leg stick. And this time the bowler nicely bowled the third ball. Fourth time the bowler Sharan again. This time going for the big shot again. The bat is cut. This is a season of last match also we saw the quality of bat has been poor and break into two. So with that dot ball scorecard is just 2 on the board. In spite of saying the quality of a bat is bad, I think quality of a pitch is so good. Shashiji, you are very, very true. The quality of pitch is absolutely everyone in this tournament has been talking about the quality of the pitch. The pitch has been splendid and it has been very, very helpful for the bowlers. There is no mistake. Sometimes, when such tournament happens, people talk about the pitches. The pitches is not right. You are not able to bowl properly. But everyone was saying that it's so good pitch that it has been a very good favor for the bowler. Actually, in this type of grounds, there should be such type of pitch which favors the bowler because it's a batting paradise. Absolutely. I'm watching this. The 2 matches to continue almost 7 matches today, and this is once again the 7th match. Altogether 13 to 14 matches to be matches played in this particular cricket ground. But look at the pitch, remains the same. That was, I think, it's a hard work done by, I think, Harish is the one name who is responsible for this pitch, and I would like to give a special thanks to Harish for making this wonderful pitch for this prestigious cricket tournament, Gladiator Trophy 2021. So far behind the off stick, and that's the first extra for the team Elegant. So Shashi sir, what's your predictability of this match? What do you think about this big semi-finals? I think it's very difficult to predict over this, especially in this cricket ground, because no one is favorite. Only those who handle the pressure, they will going to definitely going to be the favorite of winning this match. This time chance of run out if it's a direct hit. I think definitely the chance here for young friends to dismiss Ashraf, and I think Ashraf there in the short mid wicket, one of the sharp shooter in this fielding department, but he just missed the stumps and Ashraf just survived from that run out. Coming to this match, of course, young friends is going to be a little bit favorite as far as this performance in this season is concerned, but you cannot say anything because history is history, but here they need to perform. They wanted to win this match. Surely Rashid Baba with the bat in his hand, it's shining like a sword, or you can call it talwar. See, he's such a danger man, he's such a dangerous batsman. He can really make a huge difference in the completion of the game. And after the first over, it was a very quiet over. 4 on the board, 3 dot balls, 1 extra. What a fantastic over it has been from Sharan. And I can see a great comeback by the bowler Sharan after that first match. Last match he bowled 2 overs. It has been fabulous and a tight over, giving away 4 runs with such a great players from the Elegant team. And it has been unbelievable bowling performance from a team like Young Friends Urva. That makes them difference from other teams. That makes them really a great team. Exactly, it's so important whenever the bowlers bowling in the power play overs. I think it's not much of easy, because the option for the bowler to keep only 2 fields outside the circle, especially in this small cricket ground. I think 4 runs in the first over. I think it's an outstanding performance there by Sharan, just handling the pressure against the 2 fantastic striker of the ball. I think Ashraf and Rashid Baba, keeping them quiet. I think this man Sharan did a great job to concede just 4 runs in that over. And especially when I watched all these matches of this tournament, I have noticed one thing in the power play overs. Players go for sweep shots and really favors the sweep shot, because in this ground sweep shot is really favorable for the batsman. Straight bat shots again to the bowlers, and this has been the mistake from the batsman from the team Elegant in the first over also. They didn't go for any sweep shots. There were so much of gaps. Once the ball is passed for the power play circle, it will be a boundary. This time nicely bowled again. What a over it has been from Hashim. And it has been fantastic bowling performance from Young Friends Urva. I think the team Elegant, they have to think a little bit the batsman of the side. They have to get the score sticking on. They have to get at least a score like 50 on the board, so that they can put the pressure on the team like Young Friends Urva, because Team Elegant has been fantastic with the ball against Yanam. So their bowling side is
so strong, so they need something like 50 on the board. This time again Jatabar carrying, and he's gone back to the pavilion. He was really not looking good in the start of the innings itself, so he was struggling and at last he perished. Exactly, it was a struggle against his comes to an end of Ashraf there. But one thing I really not impressed with these two opening batsmen, that every time they're looking for the big shot, but not really looking for the rotation of strike. When you fail to hit the big shot, you need to quickly realize that you cannot underestimate even singles as well. That's why I'm always comparing singles into raindrops. Even it was a very small in a size and shape, but the continuous falls of raindrops makes the river overflow, and that's what's really lacking in this opening batsman, that every time they're looking for the big shot, they're just neglecting the singles and rotation of strikes. Surely Shashiji, because always singles creates big scores. Whenever the batsman is rotating the strikes, that put the pressure on the bowler. When the pressure is on the bowler, it's an opportunity for boundaries for the batsman. So the new batsman is Shakir from the side of Team Elegant. Still the captain is not entering the ground. Riaz is waiting. This time going for the cross shot, completely beaten. Now this has been a fantastic start from the team Young Friends Rua. Just 4 on the board. Just 4 on the board. This is a second over of the team Elegant. They're looking for a start here. This time again going for the big shot, and it's gone. Second wicket lost for Team Elegant, and it has been very poor display of batting. Now I think now the captain of the side has to enter into the ground. Mr. Riaz, he is the man who can make a big difference in this match. Such a big experienced player, a player who can rotate the strikes, a player who can get huge maximums. He's a big hitter of the ball. Even you see at his physique, you can see that he's a strong man. He has known for pinch hitting. He has known for reverse sweeps. He has known for all. He has all shots in his pocket. So Riaz is the man now. 4 more overs left with 1 ball in this over also. So 25 deliveries left in this innings. Still the scorecard is only 4 on the board. So I think Elegant has to move on from here. They can't stop this match. They have to get something on the board so that they can put a fighting total against a team like Young Friends Rua. They're looking in a great form. They had a very good first match. They chased the target. Now they are against Elegant. This time nicely played. Look at that shot from the batsman Riaz getting the strike, and I think he'll be looking for the second run. Slight misfielding, and Rashid Baba has been kicked there, and 2 runs, and Riaz looking in a good touch here, flicking the ball. Well, it was 2 overs completed, and score is just a 6 on the board. Run rate is not that much of healthy here. Just a 3 runs per over run rate progressing here for Team Elegant. And you are rightly said that the appearance of Riaz maybe will going to be the little bit electrifying atmosphere here, because he is the one who can change the complexion of the match, being the very experienced campaigner for the side, because he's a man in form as well, and after a long time I'm watching, he's in a good rhythm. In the first match also he's contributed from the bat, and 1 slog sweep, one of his favorite shot, he hit that down to deep backward square leg for the maximum, and that kind of batting is really required in the situation, because the temperament, the quality of batsman is tested in the time, not in the time of comfortable position, but when the time of difficult position, when batsmen perform, he's definitely going to be a quality batsman. Yes, Shashiji. Even talking about Rashid Baba also, is a very good hitter of the ball. I have seen him hitting 4 sixes against Samir Abu of Enam. So I have seen his batting display, and he's a great hitter of the ball. Sharon this time looking for the big shot, nicely played on the straight driver, and this time not able to get that connection properly to the bat. Now Riaz is the man. He is the man Team Elegant will be looking for. And I always seen this man. He always plays in the pressure moments against good teams. I've seen in many tournaments, Riaz is a very good performer against very big teams. Exactly, wait and see how well he performs now against Young Friends. So far Saran looking in such a fantastic rhythm, where he was really creating the problem of a lovely shot. That was a slog sweep we are talking about. When he was in a good rhythm, he was usually regularly playing that such kind of slog sweep shot. So many times, if you see his batting in the previous last 3-4 years, if you look at the wagon wheels of this man Riaz, he got a lot of runs in such a kind of cricketing stroke. The slog sweeper towards a mid wicket and fine leg and square leg, one of his favorite area, and I think looks like Riaz is going to play a big innings today for Team Elegant. Surely Sashiji, if I remember, in these 2 teams there are only, and that's a nice shot, and he's gone. He is gone. Rashid Baba is back to the pavilion, and that's a big wicket for Young Friends Rua. When I see in the
in these two teams, if I see Riaz and Zubair from Young Friends Surua are the two players who have played more matches in this tournament, in this ground. If you look at the past 10 years, they have been visiting this ground. They know everything about this ground. So Riaz is the man now, has to hold on the innings till the end. You have to be there in the strikers and or non-strikers are in the ground for the team like Team Elegant to take their position to a little bit a good position in this match. Exactly. Now the new batsman just walking towards the middle is Abhilash, one more master class left-hand batsman. Seems to be a little master, but he's got all the ranges of strokes. I will tell you, one of the best technical sound player for the side of Team Elegant, and scoreboard is just 8 on the board, and they lost 3 wickets back into pavilion. Needed some partnership. Without partnership, I think it's very difficult for Team Elegant to get some big score. That's why it's so important. These two experienced batsmen, Riaz and Abhilash, and I think they got a potential. They got that much of the courage, because in the previous they got experience of taking the team out of the trouble so many times, and this is one more time is asking them to play some good innings for Team Elegant, and wait to see how well these two batsmen will going to take this team into the good total against Young Friends Surua. So far, I think Young Friends Surua really winning this 2.3 overs belongs to Young Friends Surua. Surely, this 3 overs, 2.3 overs belongs to Young Friends Surua. But now this they need Team Elegant need a very good partnership from here on. Abhilash is a very good player. He can rotate strikes. Riaz is able to create some big shots. So we have to see the fighting spirit of Team Elegant against Young Friends Surua. They are not ready to give up. Now Abhilash replacing Rashid Bawa, looking for the big shot, and that was slightly the largest portion of this ground, and is not able to connect it properly, and getting a catch on the deep mid-on. And now the bowler Sharanya has been absolutely fantastic in this match. First over conceding just 4 runs. Now this over he just conceded 2 runs, picked the big wicket of Rashid Bawa. This time Abhilash going for the big shot again. Back to the bowler, chance of run out here. This time a slight slip. It just slipped in the pitch. The bowler again, consistent line and length, creates a great bowler. Not giving any room for the batsman to rotate the strikes. That can put pressure on the batsman, because if he's not able to get the singles, he'll be trying to go for the big shots. That's normal from the batsman's thinking. And this time nicely played. Just a pinch hitting, a chance of run out here. Zubair is quick and direct hit, and umpire is called for the third umpire. What a fielding performance from Zubair. He has been quick to the direct throw was needed there, and he provided one. I think he's in trouble. Looks like, if that's looking the body language of Abhilash, looks like he's in trouble now, but we have to wait for the umpire's signal, third umpire. But here is a signal coming from umpire. He's safe. He just made it, and I think that was what they need to learn from some youngster, how do you run. He's just dragging the bat. Just looking at the replay, you see that batsman is dragging the bat when the throw is coming from the fielder. If he tried to put the ball into the crease, definitely he will go into a short of crease. He's dragging the ball, dragging the bat, and he's just survived from that run out. Whether any form of cricket, when a runner is running, you have to drag the bat. That's how. If he is not able to drag the bat, you have to dive. So that time he saved that run out because of his presence of mind. Abhilash getting that single, and Riaz is on the strike now. Last time the ball, one boundary if in this over he is going to get, that can put some good score. Nicely played. This time going for appeal, and that was luck stick, and umpire Adish Padil doing a fantastic decision, and luck by. With that single, the scorecard has moved up 10 on the board after the completion of 3 overs. Fantastic bowling performance from Young Friends Surua. 3 more overs left. Riaz is looking in a little bit good rhythm. He has to stay till the end of this innings for the team, taking the responsibility on his both shoulders. It's heavy. You have to take it because it's a semi-final, and it's a big semi-final against a big team who are looking in a fantastic form in this season. So he is facing a team like Young Friends Surua. It's not an easy team. It's not a team you can be careless, that you can just give up. So you have to get some good totals on the board, because you can't predict the match here in this Panchayat Mini Stadium. I have seen many matches in this tournament. Evening time, if you get a score something like 40 on the board on 5 overs, really it can be trouble for the batting side.
Exactly, but now I want to see that was a great battle between one good bowler and one good batsman. Ashwin is brought into attack, and now Riaz is on strike. It's going to be a good contest between bat and ball. Right above the wicket, a lovely delivery. Look at that one, Ashwin having a big smile in his face. Even Riaz also good smile in his face. You know exactly he's facing one of the magician, and even Riaz never underestimate this man. Riaz, he can deliver a big shot. He can deliver some good innings because the fans of Riaz wanted to see one good innings against young friend Surva. Wait and see can able to produce one good innings, but Ashwin is the master. By you know the kind of batsman he is having in front. You know the strong and weak point of Riaz, and is just bowling as for the strong and weak point of the batsman. Wait and see. Ashwin from the far end, right above the wicket balls. This time lost it over, high up in there. Looks like the fielder is underneath. It takes a catch. Now bowler winning against the batsman. I think that was a false shot from Riaz. He shouldn't have been attacking Ashwin on that region because the wind is not favoring the batsman too in this time, in evening time, and I think he was looking for the cross shot in the first ball. It was slog sweep. He was not able to connect. The pressure was building. Riaz has to get a boundary in this over. He went for the big one and the edge of the bat carrying the ball on the deep mid off, and that's a big loss, and the big fish is in the net for the team like Young Friends Urua. So Team Elegant captain is failing in this big semi-finals, and I think the match is proportion for me. I predict this match as 80-20. Exactly, and just coming back to the dismissal of Riaz, I think is not really close to the turn of the delivery. Is not close to the pitch of the delivery. Against the turn of the delivery, Ashwin's delivery, and looking for across the line of delivery, you need to pay the penalty. And that's what's really happening in this dismissal of Riaz, is just to try to play across the line of delivery against the turn of delivery, and that ball is just moving from the good land spot. And everybody knows that Ashwin is a master of leg cutter. Against his turning delivery, if you're not close to the pitch of the delivery, then you need to pay the penalty for that. That's what's really happened in the previous dismissal as Ashwin bowling to Abhilash. Abhilash this time off the toes. He tried to turn that one in the onside region. Ashwin tried to make the run out in his follow through, but he missed the ball completely. Leg by call by umpire. One more addition to total. Team Elegant still struggling in the middle in the form of run net, in the form of wicket fall as well. They're really struggling in the middle. 11 for the loss of 4 wicket, and only the miracle batting that can lift them from the out of the trouble. But this man, Imtiaz, I think, who played a magnificent innings in the first match and who was judged as a man of the match, once again Imtiaz has to show his talent, being the one of the experienced campaigner for the side of Team Elegant. Ashwin from the far end, right arm over the wicket, again lovely delivery. Look at that one, the line and length, so impressive. This is not so easy, I will tell you. The consistency, line and length, I think only the master class bowler can do that. This is an outstanding bowling performance there from Ashwin. Again, that 4 quality deliveries, and he considered only a single run. That was in the form of leg by, and that was what the quality of bowling is all about. Ashwin from the far end, aircraft and again across the line, Imtiaz swinging his bat. This time he's got a contact with the bat, but not enough. Not enough so that he able to get the single down to deep mid wicket region. With that single, scoreboard moves on to 12 on the board. The runs are coming in the form of just the singles. There is no big innings, there is no boundaries. The sixes all are dried up because of young friend Surwa, their disciplined bowling performance. Ashwin from the far end, this time hoisted it over right in the gap, just breaking the shackle. Abhilash is showing his class. That was the importance of this man Abhilash. He can really raise the scoring rate, and with that 4, that boundary, the scorecard moved up to 16 on the board. So Ashwin was not even expecting that boundary from Abhilash. So last ball of the over, getting that boundary. It was a fantastic over till then. So 6 runs still coming from that over, and getting the big wicket of Riaz. So still Elegant looking little bit down in this innings. 16 after the completion of 4 overs. 2 more overs left. So Imtiaz and Abhilash, I think if a small partnership, little 2 or 3 boundaries from here on can take that scorecard around, at least around like 35 on the board. Still we can
we can see this match is going to which side. Exactly, just coming back to this match, 16 in 4 overs bat means they are going exactly 4 runs per over. Now 12 balls remaining. Out of that 12 balls, I think at least 24 runs, the double they wanted to get so that they can reach 35 to 40 runs. It's going to be a little bit comfortable dependent total against young friends Surwa. Now Zubair is in action. Zubair, of course, if you're coming back to Zubair, especially particular in this season, in the few tournament he is punished, but in few tournament he is able to turn the match around as well. So he's got a mixed result in this season. He got a wicket as well, but of course he's been punished as well. And wait and see what Zubair will going to do here. Is that ball is going to be a chance here? Ball is in the air, extra cover fielder making no mistake at all. Just like I mentioned about the Zubairi, one of the wicket-taking bowler in this season for young friends Surwa. Again he's sending Imtiaz, the experienced batsman, back into pavilion, and Team Elegant all short of trouble now. The 5 wickets back into pavilion for just 16 runs. It's like a batting collapse for the team like Team Elegant. They've lost all their batsmen, specialist players. Abhilash fighting at one end, but the scorecard is just 16 on the board. Just 16 on the board. They are not able to get a good start in the power play overs. Riaz came, he was looking in good touch, going to attack Ashwin. He got that edge of the bat, and now Imtiaz too is gone, and that can really put pressure on the batting side. They have to move on. 11 more deliveries left. Abhilash got a boundary in the last ball of the last over, so Abhilash will be looking for some sort of move on from here on, because this match is already young friends Surwa tightening the screws completely against a team like Team Elegant, and it has been a collapse of cards for Team Elegant. Zubair, third time and is over to Abhilash, going for the big shot. Nicely played, variation, and is given up, and the man Abhilash too is gone. So it's like scratching on the wounds for the team like Team Elegant. Abhilash too gone, and the last of wicket number 6. So young friends Surwa will be really happy that they are completely shattered a team like a Team Elegant in the semi-finals. So for this tournament, I really thank the effort of Arafat New Boys. He has been so active for this tournament. His support was splendid. Arafat from New Boys, I really thank you for your efforts and kindness and support for this Gladiator Trophy 2021. So every spectators, they are leaning on the ground. Some are on the chairs, some are sitting on the walls, and they are waiting for the big finals. Yenni Posot waiting for the winners of this match. Zubair again going for a big shot again, not able to connect the ball. What a fantastic bowling performance from young friends Surwa. They are not giving any room for the batsman. Variation, they are playing with cricketing minds. They are using their brains. As I was explaining, break bowlers has no life in this ground. Still Ashwin Taman is getting madden over. What's the possibility there? I have known about Shane Warne of Australia. Why he is a great bowler? Why he is known for the best bowler? Not because of his wickets, because of his cricketing brains. Variations, using the brains for length, lines. Against Riaz, he knows that he is a very good slog sweeper of the ball. Still, he got the wicket of Riaz. That's what how smart he is. Nicely played this time onto the mid off, and Isham is the man and looking for the second run chance of run out here. That's appeal, and a very good running between the wickets from the both batsmen. They have to get some doubles and singles and looking, and the umpire has given for the third umpire for that run out. The batsman was really quick. It was good running between the wickets, and this time umpire has given for the third umpire. So every spectators are gathered here watching the semi-finals, waiting for the finals, and that's not out given by third umpire. So end of the over number 5, the scorecard has moved up 19 on the board. So just 3 runs in this over from Zubair. A dot ball, a wicket, one more dot ball, a single and a double. Fantastic over from the bowler. So last 1 more overs left.
So I request the umpires for just make if possible for getting this match done before 6 o'clock. As soon as possible, we have a big final left to come. Yenni Posot entering in the into the finals of this tournament in the first day, Pool A from Kerala side, and they will be waiting for their opponents. Young Friends Rua. What a day it has been for them, beating KFC Kodikal in the first round, the big match. They had to win that, and they won the match quite comprehensively with a masterclass batting of Arshad. Now with the ball in his hand, the man with the golden arms, this time nicely played, and look at the stop from the fielder. Mr. Ashwin is a fantastic fielder, and with that single in the form of bye, the scorecard has moved up slowly to 20 on the board. So this is a 6-over match, and till now 20 on the board. Team Elegant never went away in this innings. This time again a nice line and length. Umpires, very good call from the umpire. It has been Ajit Padil and Harish Padil. They have been putting their mind and souls into this tournament with their decision makings. Quite impressive and fantastic. This time nicely ball. Look at that slow delivery, variation, not giving a batsman to think what is going to ball. That's how a bowler is created. Fantastic bowling performance. He has been fabulous with the ball, and he has been a hero of the day for me. Nicely bowled, and this time straight into the fielders, and Isham is getting there and looking for the second run, and that is a quite fumble from the fielder, and letting the batsman to get 2 runs. So Satish ji, when I look at this match, I can see there is no much fighting spirit from a team like Team Elegant in the big semi-finals as we expected. What do you think about this match? All about handling the pressure of playing the big semi-final. The mindset is so important because playing in the, even I think a little bit surprised because I thought that they got a positive frame of mind after defeating NM Cricketers Mangalore. They will come with a different frame of mind. They will definitely going to give some kind of big battle against Young Friends. But seeing that the batting display of Team Elegant, I am really I am not impressed with the batting display from Team Elegant. That's only because of Young Friends. They are all the professionals, and they know exactly how to handle the pressure in the big semi-final. Because they are played a lot of semi-finals, so many big matches, so that the mindset of Young Friends was too good compared to Team Elegant. Diamond Ali ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೆಗಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ಲೀಸ್. Yeah, Satish ji, you are really right, because defeating a team like Mangalore and entering into the semi-finals, we were expecting a great spirit from the team like Team Elegant, but they had a batting collapse in this match against Young Friends Urua in the semi-finals, because most of the spectators and most of the players, they were expecting a team like Mangalore to win the day, because Mangalore with the current form and in such a ground with such attacking players in their team, such a great batsman, many people were predicting Mangalore to come into the finals of the day, and many were predicting KFC Kodikal somewhere with Young Friends Urua. But unexpectedly Team Elegant went into the semi-finals defeating NM, and there's not a great batting performance from the team. 23 runs and 24 from 6 overs. At the rate of 4 runs per over they need to win this match. Young Friends Urua will be really quite happy camp. Yenni Posot will be waiting for their opponents in the finals, led by Chemi, the great team from yesterday. They have been fantastic with the bat and ball. So now this is a semi-final. Second innings will be going on here. Young Friends Urua camp will be really relaxed. They have such a great batting line. They have such a good form players coming in the form of openers Basit and Harshad. Harshad is already in a great mood today, and I think
the finals will be really, really fantastic. What do you think, Satish ji? How will be the finals? Any Posot, and if Young Front Surua comes, or even Elegant comes, I think if Young Front Surua comes, then it will be a fantastic match here to watch in the finals. Exactly that what we are hoping for. But match is not yet over. This is the semi-final because cricket is a game of glorious uncertainty. We have got a lot of records and history. Even 25, 20, less than 26 has been defended very well by bowling some miracle bowling. I will tell you the required for Team Elegant if they wanted to win the match. Before that, I would like to come to the names of a sponsor who really contributed hardly for the success of this cricket tournament. Fayaz Sky Blue, Rahim Baba, Sajjad, Anif Kuni New Star, Mr. Chandru KFC Kumbla, Rakib Saudi, Chemi Saudi, Dinesh Chakravarti, Aircraft Saloon and Hideout Beach Cafe, Champion Sports Shop, Rashid Red Club, Ayan Sofa Kunjatoro, Marzouk MCC, Harris YFC, Firoz Manjeshwara, Underarm World WhatsApp Group members, Arafat New Boys and Ball Boys, Yashir and Niyaz. And special thanks to the Bedra Media who really done all hard work to get a very quality coverage of this cricket tournament, and special thanks on behalf of organizers. Coming to the more names after this innings of Young Friends Surva, because they need to get a moderate total of 24 to win the match, and looks like just 4 runs per over is the required run rate for Young Friends Surva to grab the place in the big final of this most prestigious Gladiator Trophy 2021. So from the far end, the first ball itself, I think Asha, just like Malur is telling about, he is the man, definitely is unstoppable today. The today definitely belongs to this man. No one can stop him. And what a great shot to get that first delivery into the out of the park for the maximum. Lovely slog sweep coming from mighty striker of the ball, Arshad. Satish sir, whatever he touched today turns into gold. Everything he touched today turns into gold. Whatever he does, everything favors him. That's what said, fortune favors the braves, and that's what today happened. He has been calm, cool against the team like KFC Kodikala, and now looking for the big shot again, appealing for that LBW. So what a start it was, what a shot it was. For me, this was the shot of this tournament. From the ball from the wide offside, and he just completely swept it to that fine leg region. Exactly, his killing instinct is always dangerous because he every time want to kill the ball. Whatever the ball is, bowls by. Oh, lovely. That was a good. That was I want to see the comeback from the bowlers. That was a change of pace. You need to every time depend upon their pace. Sometime reducing the pace is definitely going to give some kind of result here, especially the batsmen like Ashad in front of you. That was a very good change of pace there from the young man Salman. Right arm around the wicket, bowls to Ashad again, looking for the safe shot. Wicket keeper behind the thumb, missed the ball. They're going for the run very quickly. By call by umpire, the mistake coming from wicketkeeper behind the stump. There is no excuse at all because you're not defending a huge total. You're only defending a 24 to win the match to a team like Young Friends Surva. You need to be very careful. You need to have some kind of a good fielding department. You need to have some good line and length if you want to win the match. And I think that 7 runs in 3-4 balls looks like Young Friends Surva. They are cruising towards the victory. And wait and see. From the far end, Salman from the aircraft fan bowls. The batsman drives on the right in the gap. Just beat the infield. Will go in chance here for the fielder. No, it doesn't. Ball winning the race against the bowler. Boundary comes up. And the scoreboard of Young Friends Surva is moves on to 11 on the board without loss of any wicket. You have to, Satish sir, if you have to defend something like 24, in the first over you need to get at least 2 wickets and give away some 3 or 4 runs. Otherwise you can't defend a target like 24 in this sort of ground. Exactly. And Salman again bowls and the batsman again dragging the ball from outside the run of off time. Maybe Bashit looking for some slog sweep shot, but Salman in the occasion, even though he bowled a dot ball in the last ball, but he's given a very expensive over. They has produced a very expensive over. 11 runs coming from that over. That means another 13 more runs required for the victory in remaining 5 overs. Just coming back to this cricket tournament, Underarm World WhatsApp Group. What a fantastic organizing here by by this organization, the Gladiator Trophy 2021 in this Panchayat Mini Stadium, Manjeshwar. That was outstanding. Just like
our co-commentators mentioning about after a long time they got opportunity of the teams from South Kerala district to come here in just crossing this state, and they are making this atmosphere as electrifying. Satish ji, look at the ground. The crowds are filled. The gates are closed. Still, you see all the crowds watching this match, the semi-finals. But it has not been a great fighting match here. But Arshad here again, the ball this time looking for a big shot. That's the biggest of the day. That's the biggest of the day. At least 80 meters. What a shot it was from Arshad. He was always looking for that area, square leg, and this time with a maximum, the scorecard moves up. Absolutely, it was 17. outstanding. It's outstanding batting display. I will tell you, the bold and brave. He is very bold and brave. Astonishing batting display. I will tell you, this is an outstanding. Just like whatever he touches, it becomes a gold. Just like you mentioned. And again, the scoreboard is moves on to 17 on the board. This time Nasir bowls appeal for the leg before wicket. Might be the ball is going down the leg stump. The umpire says, umpire Ajit Padil as well as it adds score like Arish Padil. And just coming back to the umpires, I think umpires are those one who are responsible for this success of this cricket tournament, because all the 2 days we were watching the quality of umpiring, because Arish Padil, Ajit Padil and Mohan Yayade, and even first time in the history Roland Pinto sir came into this ground, and once again that was a really good to see the Roland Pinto sir in his cricket career. He made an umpire in this state as well, Kerala state as well. Yeah, I've heard a lot about Roland Pinto sir, and this is the first time he came yesterday for this Kerala side, and this time again far behind the leg side, and that's like just giving away runs for the young friends team. So no need to even bat. That was a very big extra given. White plus 4 run. Almost the score has been now moving up 22 on the board. Just 2 more runs to get. This is the second over of the semi-final. And can you believe it, Young from Sarua is doing it very easily. This time nicely played, and that's far behind the luck stick, and umpire called it by. So the match has been now tied. So 1 more runs to win for Young from Sarua to go into the finals. So for this tournament, I really thank the efforts of Mr. Firoz Manjeshwara. He has been the pillar of this tournament for his planning committee, for his decision making. Firoz is not here, he is abroad, he is in Dubai, but he will be watching this match. He will be proudly saying that it has been a fantastic tournament. Firoz, such a great cricketer, played for Kerala. In Karnataka team also he played for Mangalore, he played for Young Friends Urva. Such a big shot it was. Now from the batsman Basit with that a huge one. Young Friends Urva entering into the finals of Gladiator Trophy 2021. Fantastic display of bowling. It was a very easy target for them. 24 overs, 24 runs from 36 balls. Just in 1.4 overs they just finished it. Yenni Posot, team captain Mr. Chennai, please get ready for the finals of this tournament. One from the Kerala side, one from the Karnataka side. From the Karnataka side, Young Friends Urva defeating KFC Kodikala. After defeating KFC Kodikala, they defeated the friends brothers Makiar, and entering to the quarterfinals. In the quarterfinals to the semi-finals. From the semi-finals, now Team Elegant has been eliminated so cheaply by the team Young Friends Urva. Just 24 runs. Now it's time to announce the man of the match. I think there's a man who responsible for the downfall of Team Elegant, because he is the one who started by picked up wickets. I think he picked up 2 valuable wickets by conceding just 4 runs, and he is judged as a man of the match. Isam of Young Friends Urva, who is judged as a man of the match for his wonderful bowling figure of 1 overs, 4 runs and 2 wickets. He is the one who started the downfall for Team Elegant. In the beginning he picked up wickets, and I request Isam to collect your man of the match for your wonderful performance. So Satish ji, the big finals coming. Yenni Posot as well as Young Friends Urva. I don't say that. So Riaz Kunjatura has given a cash award of 500 rupees for Harshada of Young Friends Urva. What a day it has been for that batsman. He has been splendid today. He has been fantastic.
The way he came to bat to chase against KFC Kodikal, I was noticing this batsman, he was very cool, he was very calm, relaxed, chasing a big target of 68 runs of 6 overs. From that moment on till now in the semi-finals, the way he batted, it has been fabulous for young friend Surwa. With absence of Mansoor, still they are getting into the finals is great and great performance from them. So the finals, so man of the match, Mr. Ishan is waiting. കൊടുക്കറ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2021 ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮದ್ರ ಅವರು. ಇಶಾಮ್ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಇದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದು ತನ್ನ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದಂತಹ ಇಶಾಮ್ ರವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹರ್ಷದ್ ರವರ ಆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮನಸೋತು 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಜ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಸಮದ್ರ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ಇ ಪೊಸೋಟ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಆ ಬಿ ಫೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಣಿಸಿ ಅರ್ಹವಾಗಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆ ಇದಾಗಲೇ ನಡೆದಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ಇ ಪೊಸೋಟ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನ ಆ ಮಹಾರಥಿಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. YFC ಕಣ್ಣೂರ್ ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತಹ ಹಾರಿಸ್ ರವರು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಿಂತಹ ಹಾರಿಸ್ YFC ಕಣ್ಣೂರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಷಾದ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್, ಕೌಸರ್, ಜಸಿ ಗುಡ್ಲಕ್, ಹಮ್ಜಾ ಪಂಜಾ, ಮುನೀಶ್, ಅಸ್ಕರ್ ಫೇಮಸ್, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಎನ್ಇ, ಚೆಮ್ಮಿ ಎನ್ಇ, ಅಮನ್ ಅರ್ಮಾನ್ಸ್, ಮಾಲು ಬಿಚ್ಚು, ರಿಫಾಯ್, ಇರ್ಫಾನ್, ಬಾಸಿತ್ ಕೊಪ್ಪಳ, ಸಲೀಂ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್, ಅಪ್ಪಿ ಸ್ಯಾಮ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್, ಅಯ್ಯೂಬ್ YFC, ಮೊಯ್ದು, ಫಯಾಜ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್, ರಿಯಾಜ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್, ನೌಸದ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್, ಚಮ್ಮು ಅರಿಮಲ್, ಸಮೀರ್ YFC, अदरांचा BSC के फाइनलिस्ट के दर्शन इस तरह से दिखा रहे थे कि छक्के तो मामूली से मिल जाएंगे उनके बल्ले को, लेकिन यहां पर मौका है इस फाइनल मैच पर। केरला और कर्नाटक के बीच चलने वाले ये धमाकेदार फाइनल मैच ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021। इतिहास रचा रहे हैं ग्लैडिएटर, इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे ये प्रतियोगिता। आपने दोपहर पर देखे 5000 से भी बढ़कर दर्शक ऑनलाइन व्यू पर, और इस बीच एक सिंगल रन कार्तिक
शुरुआत के विकेट चम्मी के रूप पर गिरने के बाद अब तो जिम्मेदारी कार्तिक और चम्मू के कंधों पर गिरे हैं, क्योंकि ये फाइनल मैच है। यहां पर कोई कमजोरीपन, कोई माफी वाली बात बिल्कुल नहीं बनेंगे। जितने दर्शक, आप एक बार मैदान की चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, जगह भी, कहां भी जगह मिलते हैं उस जगह को आक्रमण करते हुए बैठे हैं। और चम्मू अब ऊंचे खेले, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। कैच आउट के रूप पर चम्मू भी वापस आ रहे हैं टगों पर। 3000 दर्शक इस फाइनल मैच को, बेद्रा मीडिया के जरिए 3000 लोग ऑनलाइन पर इस मैच को देख रहे हैं। एनी पोसोट और यंग फ्रेंड्स के बीच चल रहा है यह फाइनल मैच। एनी पोसोट खिलकर दिखाना होगा अपनी बल्लेबाजी। यंग फ्रेंड्स बलाढ्य मानते हैं हम कि यंग फ्रेंड्स एकदम जबरदस्त टीम है, लेकिन आप भी किसी से कम नहीं है दोस्त। केरला विभाग के फाइनलिस्ट बने हैं आप, तो ऐसे में आपकी बल्ले से थोड़ी आवाज तो निकलना ये अवश्य बनते हैं इस मैदान में। यंग फ्रेंड्स जैसे टीमों को टक्कर देने के लिए जितने रनों की जरूरत है लक्ष्य के ऊपर, वहां तक तो पहुंचने की कोशिश करना होगा, क्योंकि इतने हजारों दर्शक मैदान से बाहर आपके मैच को देख रहे हैं। और इस बार उल्टे हाथ खेलते हुए गेंद सीधे फील्डर के हाथ पर। तनवीर के हाथ पर गेंद। यंग फ्रेंड्स के भरोसेमंद खिलाड़ी अश्विन राज, और इस गेंद को फिर विकेट के पीछे खेले शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। अश्विन राज एक ऐसे गेंदबाज जिनके बारे में तो हम कई बार अपने माइक्रोफोन पर, अपने वीक्षक विवरण पर उनके तरफदारी की है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने अब 12 रन, 12 ऑन द स्कोर बोर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। ये फाइनल मैच, रहमान जी, अब्दुल रहमान बेकूर हमारे साथ खड़े हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आज सुबह से कर्नाटक के दिग्गजों के मैच आपने देखे, बल्लेबाजी की तरीका देखे, गेंदबाजी की तरीका आपने देखे, फील्डिंग के नजारे देखे। तो इस फाइनल मैच को देखते हुए यन्नी पोसोट को काफी करीब से आप जानते हैं, हर खिलाड़ी को आप जानते हैं। तो ऐसे में यंग फ्रेंड्स के उस कदर को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि यहां पर कितने रन बनाना मजबूरी होगा यन्नी पोसोट के? धन्यवाद नवाज जी। और ये कह रहा था कि जो दोनों टीम के बीचों बीच में इस मैच हो रही है, कर्नाटक की जो टेक्निकल क्रिकेट आज के दिन में जो हर टीम के ऊपर देख चुका हूं, और कल के दिन में जो फाइनल पर प्रवेश किया हुआ टीम, जो पावर क्रिकेट जो पेश किया गए थे आज फाइनल मैच में, अगर यंग फ्रेंड्स उड़वा के सामने अगर 6 ओवर में कम से कम अगर 65 रन अगर आ जाए तो यहां पर एक संघर्ष डाल सकते हैं। पहले 2-3 मैच देखा होगा जो आसानी के साथ रन को पीछा कर रही है, जो बल्लेबाज जो एकमात्र खिलाड़ी को कहो तो अरशाद लाजवाब फॉर्म पर खेलते हुए यहां पर जो आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किए हैं। ये फाइनल मैच ग्लैडिएटर ट्रॉफी फाइनल मैच के बीच में केरला और कर्नाटक के बीच में जो टक्कर ले रही है। अगली गेंद अब विकेट, बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद हवा पर, कार्तिक की इनिंग्स समाप्त। तीसरे विकेट कार्तिक आउट होने पर यहां पर हकीम आए हैं। ग्लैडिएटर ट्रॉफी जो अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप से आए हुए इस प्रतियोगिता आज समाप्त होंगे, लेकिन क्रिकेट समाप्त नहीं होंगे। कल के दिन ऑक्शन जो सिलेक्टेड मन्नंगू जी ने पेश किया हुआ क्रिकेट प्रतियोगिता के ऑक्शन कल 14 टीम के बीच में होगा। अंडरआर्म വേൾഡ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അഭിമാന പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരം ഇവിടെ പകുതിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് അവസാനിക്കുന്നില്ല, ഈ ടൂർണമെന്റ് മാത്രം അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് മണ്ണകുഴി സ്റ്റേഡിയമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് 27 മുതൽ 1-ാം തീയതി വരെ നടക്കുന്നു. ഇതേ മാസം 27-ാം തീയതി തുടങ്ങുന്ന ആ ടൂർണമെന്റിലേക്കുള്ള മത്സരാർത്ഥികൾക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ നടക്കുകയാണ്. അതായത് ഓപ്ഷൻ ലേലം നാളെ നടക്കുകയാണ്.
വ്യാപാരി ഭവൻ ഉപ്പളയിൽ വെച്ച് നാളെ കൃത്യം 3 മണിക്ക് തന്നെ ലേലം ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെയും ഞങ്ങൾ പ്രസ്തുത ടൂർണമെന്റിലേക്കും നാളത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സ്കോർ 15 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर 4 ओवर की समाप्ति पर 15 रन यहां पर जोड़ चुके हैं. 4 ओवर അവസാനിക്കുമ്പോൾ 15 റൺസ് 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇവിടെ എന്നിപ്പോസോട്ട് തികച്ചും പരിതാപകരമായ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് എന്നിപ്പോസോട്ട് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഉറുവ യങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉറുവയുടെ ബാറ്റിംഗ് പ്രദർശനമാവട്ടെ ബോളിംഗ് പ്രദർശനമാവട്ടെ നാം ഏവരും കണ്ടതുമാണ്, ലോകം മുഴുവനും കണ്ടതുമാണ്. എന്നിപ്പോസോട്ടിന് നല്ലൊരു മത്സരം കാഴ്ചവെക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 65 റൺസെങ്കിലും നേടിയേ പറ്റൂ. ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രൗണ്ടുകളിലൊന്നാണ് മഞ്ചേശ്വരം മിനി സ്റ്റേഡിയം. അടുത്ത ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തുമായി ബോളർ തയ്യാറാണ്. മികച്ച പന്ത്, ലെഗ് സ്റ്റംപിൽ പിച്ച് ചെയ്ത പന്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കൈകളിൽ എത്തുമ്പോൾ റൺ എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഗിരി കുമ്പളക്ക്. നോ സ്ട്രൈക്കിൽ ഹക്കീം മിയാപ്പദോ, സ്ട്രൈക്കിൽ ഗിരി കുമ്പള. അടുത്ത പന്തുമായി ഓവർ ദ വിക്കറ്റ്. മികച്ച പന്ത് മിഡ് വിക്കറ്റിലൂടെ കളിക്കുന്നു ഫീൽഡർ. വൈഡിഷ് മിഡ് വിക്കറ്റിലൂടെയാണ് പന്ത് കടന്നത് എന്നെങ്കിൽ 1 റൺസ് മാത്രം തന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡ് വീണ്ടും ചലിക്കപ്പെടുകയാണ്. 16 എത്തി നിൽക്കുന്നു. 2 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അഞ്ചാമത്തെ ഓവറിന്റെ 3-ാമത്തെ പന്തുമായി റിവേഴ്സ് ഷോട്ട് നടത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചത് ഓഫ് സൈഡിലേക്കാണ്. റിവേഴ്സ് ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ചത്, പന്ത് ചെന്നത് ഓൺ സൈഡിലാണ്. 1 റൺസ് ഹക്കീമിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ 17 നിൽക്കുന്നു സ്കോർ ബോർഡ്. 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. നഷ്ടപ്പെട്ട ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ചെമ്മി ഉസങ്കടി, ചെമ്മു അരിമല, അതേപോലെ കാർത്തിക് കുമ്പള. ഇവിടെ റൺഔട്ടിനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കൈകളിൽ പന്ത് ഒതുങ്ങിയില്ല. അങ്ങനെ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നു ബാറ്റ്സ്മാൻ. 18 നിൽക്കുന്നു. 4 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. 5-ാമത്തെ ഓവറാണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അണ്ടർആം വേൾഡ് വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ. ഉയർത്തിയടിക്കുന്നത് ഗിരിയുടെ ഹക്കീമിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന മനോഹരമായ ഷോട്ട്. അവശ്യഘട്ടം തന്നെയായിരുന്നു, സിക്സർ നേടേണ്ട സമയം തന്നെയായിരുന്നു. എന്നിപ്പോസോട്ട് ഒരു സിക്സറിന് ബൗണ്ടറിക്ക് വേണ്ടി ദാഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവിടെ മതിലിൽ ഇരുന്നവർ തികച്ചും മത്സരം ആസ്വദിക്കുക, പക്ഷേ ബൗണ്ടറി ലൈനകത്ത് നിന്ന് പന്തുകൾ പിടിക്കരുത്, പുറത്തു പോകുന്ന പന്തുകൾ കൈകളിൽ പിടിക്കരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ആ കമ്പൗണ്ടിൽ തട്ടിയാൽ ബൗണ്ടറിയാണ്, അതിന് മുകളിൽ പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സിക്സർ നൽകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പിടിക്കുമ്പോൾ, പന്ത് കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അമ്പയർമാർക്ക് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാഗ്രതയായിരിക്കണമെന്ന് കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹക്കീം ഔട്ടായി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ മനോജ് സ്കോർ ബോർഡിൽ 24 ഓൺ ദ ബോർഡ്. हकीम आउट होकर पवेलियन को पास लौट चुके हैं. आखिरी ओवर के रूप में अरशाद आज के दिन के हीरो ऐसे ही कहना होगा इनको. बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में बहुत खूबसूरत गेंदबाजी किए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, स्फोटक बल्लेबाजी की इन्होंने. अब आखिरी ओवर के रूप में जो गेंदबाजी के लिए तैयारी हो रही है अरशाद टुगिरी कुंबला. अच्छी गेंद उठा करके ला है, हवा पर है गेंद, बहुत बढ़िया शॉट, सीमा रेखा के बाहर. इनिंग्स के दूसरी चक्का, पहली चक्का हकीम या पदाव ने लगाई थी और इस बार गिरी कुंबला के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत खूबसूरत छक्के लगाए. रन संख्या बढ़ते हुए 30 ऑन द बोर्ड. 30 रन पर 4 വിക്കറ്റ്. ഇവിടെ നസീർ ഓഫർ ചെയ്ത 500 രൂപ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഹക്കീമും സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഗിരിയും സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റൺസിന് ഇവിടെ ഓടുകയാണ്. മികച്ച വിക്കറ്റിനിടയിലൂടെയുള്ള ഓട്ടം. അങ്ങനെ 2 റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ 32.
ദിനേശും 500 രൂപ ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു. ദിനേശ് ചക്രവർത്തി ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗം കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹവും ഇതിന്റെ 500 സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. മികച്ച പന്ത് തിരിച്ചടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടോ എന്നറിയില്ല. പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ബാറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ചെയ്ത്. ഇവിടെ റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 33-4 അർഷാദ് ഇന്നിംഗ്സിന്റെ അവസാന ഓവറിലെ 4ാമത്തെ പന്തുമായി. മനോജ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആദ്യ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഔട്ട് ആയി തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. മനോജ് 0-ന് പുറത്ത്. दोस्तों, अंडरआर्म वेल्ड व्हाट्सएप ग्रुप के क्रिकेट प्रतियोगिता की आखिरी मैच यानी कि फाइनल मैच इन्हीं एपिसोड केरला की ओर से, कर्नाटक की ओर से यंग फ्रेंड्स उर्वा. अब इन दोनों के बीच में पहली इनिंग्स के आखिरी गेंद उठा करके लाया है. हवा पर गेंद है. फील्डर मौजूद है. एक टप्पे के बाद फील्डर के पास पहुंचे. तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से अपनी खाता खोल चुके हैं विजय माडा. विजय माडा ने अपनी खाता खोलने पर स्ट्राइक पर आ चुके हैं. आखिरी गेंद बचे हैं. आखिरी गेंद बची है अरशाद के गिरी के लिए. और गिरी ने बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेला गया. फील्डर मौजूद है. 1 रन तेजी के साथ दूसरी के लिए यहां पर मौका नहीं थी और आउट हुए. और इसी के साथ इनिंग समाप्त हुई. रन संख्या कुल मिलाकर 36 इज द विक्ट्री टारगेट. यानी कि 36 बॉल में 36 रन बनाना है. और सेमीफाइनल से बेहतर है स्कोर. यानी कि सेमीफाइनल में 24 रन बनाए थे, 23 रन बनाए थे. 24 रन के लक्ष्य थे. यहां पर 36 रन के लक्ष्य, यानी कि 35 रन बनाए. 36 रन के लक्ष्य है. 200 इस केरला और कर्नाटक के बीच में इस लड़ाई में. और इस ग्लैडिएटर ट्रॉफी केरला में जाएंगे ना टोल बूथ पास होकर कर्नाटक जाएंगे, ये देखना बाकी है. और नवाज जी, इस प्रतियोगिता केरला और कर्नाटक के बीच में, और इस ट्रॉफी को लेकर जाने के लिए टोल बूथ पास करना ही होगा. जीत है कि केरला की, क्योंकि छोड़ने वाला नहीं है. 36 रन की लक्ष्य है. यहां पर 2-3 मैच से देख चुका हूं कितने बढ़िया फॉर्म पर है जो यंग फ्रेंड्स हुआ के बल्लेबाजों ने. और एक और भी बात है कि इस प्रतियोगिता पेश किया गया था अंडरआर्म व्हाट्सएप ग्रुप, अंडरआर्म वेल्ड व्हाट्सएप ग्रुप. अंडरआर्म वेल्ड व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए थे 2016 नवंबर 23 में. और आने वाली प्रतियोगिता, दूसरी प्रतियोगिता सीजन 2 यहां पर कोश किए हैं. यानी कि कल के दिन में बोले हैं कि जो फ्लड लाइट में खेला जाएंगे, उसी दिन में जो 26 नवंबर में यहां पर टूर्नामेंट के लिए तैयारी पर है अंडरआर्म वेल्ड व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन पैनल. जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप जिस तरह से यहाँ पर इस क्रिकेट श्रृंखला को सजाया है, हम तारीफ करना होगा उनको, क्योंकि काफी छोटे समय पर इतनी बड़ी योजना बनाकर 2 राज्यों के इतने खिलाड़ियों को इकट्ठा करना, आपस पर दोनों को मिलाकर इस सौहार्दता को आपस पर 2 राज्यों के बीच, वाकई खूबसूरत. शब्द कम पड़ रहे हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप के तरफदारी के लिए. यहाँ पर क्राउड की संख्या देख सकते हैं आप. इस क्राउड की संख्या देखिए, दर्शकों की संख्या देखिए आप. जहां पर भी जगह मिले उस जगह को आक्रमण करते हुए बिना जगह छोड़े मैदान पर दर्शक फैल चुके हैं. और उसी तरह ऑनलाइन के जरिए, बेद्रा मीडिया के जरिए केरला के इतिहास पर पहली बार 5000 से भी बढ़कर दर्शक ऑनलाइन पर इस मैच को देखे हैं, इस प्रतियोगिता को देखे हैं. हम निश्चित रूप से बार बार बधाई देते हैं अंडरआर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप को, ताकि आपकी प्रस्तुति पर होने वाले इस ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 इतिहास पर सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे, कोई शक नहीं होगा इस बात पे. तो सतीश जी, अब होगी आपकी आवाज इस मैच के लिए. 36 गेंदों पर 36 रन के सवाल यहां पर दिए हैं एनी पोसोट. यंग फ्रेंड्स के काबिल आपको जानते हैं, वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, खास करते हुए अरशद
आज तो अरशद की बल्ले में इतना पावर, इतनी शक्ति नजर आ रहे हैं, इतने जितने भी दर्शक इस मैदान से बाहर खड़े हैं आज तो आकर्षित हुए होंगे अरशद की बल्लेबाजी देखते हुए। तो इस 36 रन बनाने की जो योजना है, आप क्या कहेंगे यंग फ्रेंड्स के बारे में? Exactly, that what we're talking about. This is definitely belongs to Arshad, and look at that one. Very second ball itself, his intention is very clear that he will going to enjoy his batting, and certainly you're right. Was that he's really played some entertainment innings. He really played some enterprising cricketing stroke, and he's really entertained the crowd here in this Manjeshwara mini stadium. What outstanding display. और एक बात है सतीश जी कि ये यंग फ्रेंड्स हुआ अब मंजेश्वर पुलिस थाना के एसआई राघवन सर यहां पर पधार रहे हैं। हम तहे दिल से स्वागत करते हैं राघवन जी आपको कि आप इस परिसर की सुरक्षा ही नहीं बल्कि इस क्रिकेट को जिस तरह से आप प्रोत्साहन करते हैं, इतने बड़े इतनी सौहार्दता की इस प्रतियोगिता को जिस तरह से आपने सपोर्ट किए हैं, जिस तरह से आप प्रोत्साहन किए हैं, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अंडरअर्म वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ से आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता में। और उनके साथ मसूद और नवीन मोंटेरो उनके साथ जुड़ते हुए इस प्रतियोगिता में स्टेज पर आ रहे हैं। तो तमाम दर्शकों की तरफ से हम आपको स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता में ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 पर। राघवन सर, आपकी क्षमता इस परिसर देखे हैं, जिस तरह से आप उस सुरक्षा सेवा कर रहे हैं पुलिस की डिपार्टमेंट पर, सभी यहाँ के इस परिसर के सभी लोग आपको इतने पसंद करते हैं, इतने इज्जत करते हैं, क्योंकि आपकी क्षमता, आपकी सेवा देने की तरीका देखते हुए यहाँ इस परिसर के सभी लोग आप पर सैल्यूट करते हैं। हम तो आज बहुत ही खुश हुए आपकी इस आगमन को लेकर। हम तहे दिल से दोबारा आपको शुक्रिया अदा करते हैं ताकि आप अपनी कीमती वक्त निकालकर इस प्रतियोगिता में हमारे साथ जुड़े। ടൂർണമെന്റിലേക്ക് നമ്മുടെ സമാപന ചടങ്ങിലേക്ക് വിശിഷ്ട അതിഥിയായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മഞ്ചേശ്വരം സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാഘവൻ സാർ. അദ്ദേഹത്തെ അണ്ടർആം വേൾഡ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി, അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിന് വേണ്ടി, അണ്ടർആമിന് വേണ്ടി സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മഷൂദ് അതേപോലെ നമ്മോടൊപ്പം ഈ സമാപന ചടങ്ങിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നവീൻ മെന്തേറോ അദ്ദേഹവും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. So thank you very much. Welcome for this match as well. Again, the dotted delivery. The first over completed after the completion of first over. Umpire, it's five deliveries yet. One ball remaining in this over. Previous over. First ball dotted, second ball 4, and the third ball is dotted. Fourth ball is wide, and fifth ball is dotted. Okay, 7 runs in the first over, so 36 is the target, and another 29 more runs required for the victory in the remaining 30 deliveries. The matches looks to be very interesting because under this condition,
and the bowlers if bowls a very good line and length, it's going to be a little bit handy. If any pursuit wanted to win this match, the bowlers have to do something special here, because young friends were almost dominating throughout the tournament with the bat, and I think any pursuit, if they want to win the match, they need to bowl some excellent overs, right arm over the wicket balls. This kind of mistakes, I think, definitely takes a match away from any pursuit. They need to be very strict with the line and length. Each and every extras they will going to concede becomes so easy for young friends to win the match. Scoreboard 8 on the board. From the far end, right above the wicket balls, lovely delivery, wicketkeeper behind the stump, face to collect the ball. Imtiaz, of course, little bit extra bounce, that's why he couldn't manage to handle with the bounce, but batsman not interested for any run at all. Bowler Shafi is a tall man, bowling right arm around the wicket. Pass umpire Harish Padil, lovely delivery. That's what we're talking about. The kind of delivery, the kind of line and length needed to ball. That was outstanding line and length. And again, the batsman completely beaten in the relegation. Tanvir, little bit changes in the opening pair. Tanvir just came in to open the innings along with Ashad. And here is the next one. Right arm over the wicket, looking for the big shot. Ball is in there. Chance of run out there. But I think no one there to collect the throw, because India's wicketkeeper well fent off stumps. So batsman bowler had to need to hit the stumps if they wanted to pick the wickets. But that ball, I think the batsman just survived from that run out. One more run added to total. Scoreboard moves on to 9 on the board. 9 without loss of any wicket. Little bit dark here. I think Sunny is almost completed his job from east to west, but still I think a little bit light condition are still there here to complete that 5 overs. So I request the fielding team to make it past. Again dotted delivery. One more dotted delivery here. Look at that crowd. Look at that crowd. They knows that they are going to support their home team. Any pursuit, they got a lot of the fans, lot of supporters here for this match. ग्लैडिएटर ट्रॉफी 2021 तमाम दर्शक यहाँ पर खड़े हैं നിറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകരാണ് ഈ മൈതാനത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ടൂർണമെന്റ് എങ്ങനെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ അണ്ടറം വേൾഡ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിനെ ഇവിടെ ചെയ്തത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടൂർണമെന്റ് അടിപൊളിയാണ് കർണാടക കേരള ഈ രണ്ട് പ്ലെയറിനെ ഒന്നിച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു മത്സരം എങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നവാസ് ഭായ് അടിപൊളി after break in the break you can do this जी बिल्कुल ओवर के बाद फिर दोबारा आएंगे ऐसे कुछ बात के साथ so 13 on the board lovely shot there from Ashad he is on fire right above the wicket lovely slow delivery in the negation that was what the bowler wanted to do in this completion of over number 2 then chasing 36 to win this match there 13 on the board without loss of any wicket over to Nawaz ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂಡರಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ವಿಭಾಗದ ತಂಡಗಳನ್ನ ಒಳಪಡಿಸಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗದ ಆಟಗಾರನ ಸಮ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಈ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2021 ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ದೂರದ ಊರು ಸೂರತ್ಕಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಿಂದ ಪರಿಸರದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದಿಕ್ರವರು KKR ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸಿದ್ದಿಕ್ರವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಕೇರಳ ಪರಿಸರದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ರವರೇ? ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾಚಿಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಜನಸ್ತೋಮ ಕೇರಳದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ 5,000 ಜನರನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2021. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಅಮಿತ್ ಹೊಸಂಗಡಿಯವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ and we are having a lot of dignitaries out here in the stage and it was definitely electrifying atmosphere out here in this most beautiful mini stadium here in Manjeshwar. Wait and see who will going to be the champion of this Gladiators Trophy 2021. Meanwhile look like the young friends who are they definitely wanted to become the champion, and for that they need to wait for some runs here because they got only 14 runs on the board. That means 22 more runs required for the victory outside the run of off-time. That's what they need to be very strict. I've already mentioned each and every extra runs they will going to concede. The match definitely going to away from the fielding side, and
That was a big difference actually between the team of Kerala and the team of South Kerala district, because all we can see that there is discipline in the bowling performance in the young friends. And a lovely shot, that one, look at that one, absolutely, that ball went like a tracer bullet. The movement that was left to the back of Arshad went like a tracer bullet. Thank you, batsman. Once it looks like the fielder going to take the catch, but no time to react that, because that ball, in a fraction of a second, that ball went towards a deep backward square leg boundary of 4 runs. Now it's a time for the third umpire to decide whether it was out or not out, because square leg umpire Arish wanted to get some help from third umpire for that stump out appeal coming from wicketkeeper behind the stump. Looks like Ashar is walking towards the pavilion and no, exactly, that was what a sportsman spirit was talking about. Ashad knows that he is out of the crease, so I think there's no need for help of third umpire. Even himself he is running towards a pavilion. That was a sportsman we want to see. The cricket is all about the gentleman game, and again is a wonderful innings comes in end of Ashad, and before he's back into pavilion, I think he's all did the damages here. 19 on the board. The target 36 to win this match. That means there another 17 more runs required for the victory. This is over number 3 in progress. 6 overs match. That means another 22 more deliveries remaining. 23 more deliveries remaining. 21 deliveries remaining, and they have to get another 17 runs to win this match. Any Posot, after sending danger man back into pavilion, will it going to be a chance here for any Posot to bounce back here? The new batsman just coming into the middle is captain of the side, Ajmal. Right arm round the wicket, slower one, change of pace, lovely face of bowling there from the bowler, because he knows that this is a good delivery, we need to beat the batsman's bat. Yes, Satish ji, the score around 40 to 45 runs would have been really difficult for the team like Young Friends Surua. Look at the crowd enjoying the finals. One team from Kerala, Yenni Posot, and one team from Karnataka, the Young Friends Surua team. The finals of this match, it has been a fantastic contest here. Ashwit with the ball in his hand, lot of variation. And again nicely played by Tanveer onto the mid-off, and with that single the scorecard has a move up to 21 on the board. 15 more runs to get from remaining 20 balls. So now the batsman Ajmal is facing Ashwita. They have scored the ball-to-ball run in this first innings. This time nicely played and a chip down and a completely dot baller. So the captain of the team, Chennai, will be thinking, I should have gone for at least 45 runs on the board. That could have been really a fighting, very big fighting total here for Yenni Posota, because they didn't start the inning so well. They just scored 10 in the power play, and after that they were not going. They lost their both openers. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದಂತಹ ಎನ್ನಿ ಪೊಸೋಟ್ ಇದರ ಚೆಮ್ಮು, ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಇಶಾಮ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕೆಎ ಅಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಜಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಿಜಾಮಾ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇರಳದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಮವನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಆಫರ್ ಅನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಮ್ಶಾದ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ. Analyzing this match, Satish ji, what's your prediction from here on? The big finals, Yenni Posot versus Young Friends Surua. 15 to get from 18 balls. Still, with a target like 36, it has been not so easy for Young Friends Surua.
Exactly, under this condition, especially under this light condition, I think always is so important for any person. Need to ball wicket to wicket, and line and length so important here. Because one or two dotted deliveries, certainly young friends who have started to feel the pressure. And but here is a chance of run out. That's what we are talking about. The opportunity is not really coming to away regularly. Whenever the opportunity is coming into your way, you need to grab the opportunity. This is the only opportunity I am talking about. The run out chance missed out by Chami on his follow through. If it is a direct hit, I think it's going to be a little bit turning point of this match. The wicket of Tanvir always going to be a big one. Surely still they need 5 per over. Still they are struggling. Young from Surwa, they are not able to get that easy runs. Edge of the bat with the leg buys, with the wicket keeper missing and giving that extra runs. Still the match is very tight. Chemi with the ball list and the captain of the side, such an experienced campaigner, one of the best cricketers ever produced in Kerala, with the ball list and this time going for the big shot. Look at that bowling delivery. Fantastic bowling from Chemi. With a score like 35 and 36 to defend against a team like Young Friends Rua, Yenni Posot is really showing a fighting spirit here in the finals. They are not giving away any chance for such a team like Young Friends Rua in this Panchat Mini Stadium because they also want to be the champions of this tournament. Exactly, now 16 to get from 14 balls needed such kind of dotted deliveries regularly here for any person. If he wanted to win the match, the time again drives that one, not quite intended. Of course, he wanted to drive towards the extra cover region, but well went towards the deep mid wicket region. That shows how difficult it's going to be batting in this condition. If the bowlers bowl a good line and even technically very sound player, Ajmal little bit started to feel the pressure. And look at the crowd. Here is a jam-packed stadium, and more than that, I think the 4K viewers watching this live telecast through Bedra Media in YouTube, I think it's outstanding. It's definitely going to be one of the historical cricket tournament in this Manjeshwar cricket ground. No doubt in that, Satish ji. This is a historical tournament. Fantastic display of cricket happening in this ground. This time going for the big shot. This is what Chemi is experienced. Look at that experience of Chemi. He knows how to bowl to a batsman like Tanvir, not giving any room and creating the pressure for the opposition. We were talking about 50 runs, 60 runs in the first innings, just a score like 35 runs, and in front Surua little bit feeling the pressure now against a team like Yenni Posot here. Exactly, now 13 runs required from 14 balls. Chemi right arm over the wicket to Tanvir again a little bit of trouble, but in that occasion they completed a single. But leg by call by umpire. Outstanding performance here for any person. They knows that they're depending a small total, but really they're depending very well with the tidy line and then. Just you're talking about that the run, of course maybe there was a 5 to 6 runs short, but I think more than that any person they bowled some extras, the extra deliveries, they bowled extra wides as well. That might be a little bit a big factor in this match. Because if you are defending a target like 35 with 6 overs, you cannot produce any extras here, and everyone was predicting this will be a one-handed match, one-sided match, but look at this match. This match finals is real final here. Gladiator trophy. When we talk about Gladiator, they are fighters who go to the field to fight against each other, and these are real gladiators here in the finals. Young from Surua Gladiators and Yenni Posot Gladiators, 11 to get from 2 overs. 11 to get from 12 balls. The match is evenly poised. If you think it will go to be Young Friends who will going to win the match easily, but in this condition I will tell you, this over definitely going to be a decider over for both the teams. If any person wanted to bounce back this match, particularly in this over, they have to restrict the batsmen of Young Friends who are less than 3 runs per hour. Then it's going to be a very interesting, it's going to be a final over. And if Young Friends who wanted to win this match, I think just a sensible batting required. No need to panic at all. Just rotation of strike is very enough for them to win the match, because 12 balls remaining, they have to get 11 to win the match. That's why it is so important over for both the teams. With experience of Young Friends Rua, they have faced such situation many times in their career, and they know how to face such situations. The pressure now is on both sides, I can say, with the bowler as well as the batsman. Vijay with the ballness and is an experienced campaigner, being the member of Yenni Posot. You have to do something very special here. You have to produce a magical spell. You have to produce a great bowling performance. At least 3 or 4 runs in this over, and keeping 7 runs in the last over will be a big final. And this time going for the appeal. And when they are appealing, the fielders have to quickly get the ball so that they can save that single. Always when I see in this ground, in this tournament, I have seen when they go for appeal, fielders are just
they just appeal. That's it. They are not going to gather the ball and they give away the single run. Exactly. Umpires know what the job we will going to do, but their job is to field the ball and make the run out. And that's what's really lacking. You're 100% right. And one more addition to total. And again, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲತೀಫ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Down the next time, this is what we are talking about. Highly indisciplined, just like what we are talking about this match. Handling the pressure, I think so important, and this time I think bowler started to feel the pressure, and because of that there is under pressure he bowled that wide delivery. Not only the ball the wide delivery, but extra 2 runs is conceded, and because of that 2 runs, young friends looks like they are complete control over this match, unless any miracle bowling coming from the hands of this man, the bowler Vijay. And all we can see that now all closing fielder know exactly any pursuit. Now they have to save the singles rather than the big shot. Why pressure here? I am asking why pressure here? Because they have to defend ball to ball run, and if the batsman is going to get the boundary, that's a different thing. But giving away extra runs, extra 2 runs, that's not sensible cricket from any pursuit bowler. Now why exactly, and talking about why they are feeling the pressure, because they are playing against 10 friends. That's mind game, I will tell you. When you think that you are playing against friends, then appeal for cotton ball, but umpire Mohan Ayade wanted to see that whether it was the fair catch or not, it was one bounce or not. That's what umpire I have to say, because very difficult for the umpire to sight in this condition. Run out, little correction, sorry. There was appealing for the run out. What athletic work, I will tell you that, Vijay. Absolutely gymnastic work, isn't it? I thought the bowler is appealing for the caught, but I think after he's kept the ball, he just released the ball in one action and the removes the bails and is asking for the run out. But umpire Mohan Ayade want to see whether it was out or not out. And here is our third umpire, Ajit Padil, just examining whether it was out or not, along with the technician of Bedra Media. They want to see everybody on their feet. Will it going to be out or not? A not out signal coming from umpire, third umpire. So that means Tanvir is a little correction. Azhar is safe and no damage done. Right arm from the wicket. Bounce to Tanvir. Tanvir tries that one. Good. Oh, lovely stop. Look at that. Was a really 100% anticipation there from Chami. The footwork comes into play. Satish sir, I am thinking about that extra run. The 2 runs from Vijay's ball. Look at the difference it has made this to this match. 36 to defend. Young friends Urua, such a big team, such big cricketing brain, such big talents. Still they are feeling the pressure. At that time, the 2 extra runs, I think Chemi will be thinking about that. But it has been a great fielding performance. It has been a fighting spirit. And it has been a fantastic match in the final. Yenni Posot, they are not giving any inch for young friends Urua. 29 is a score. That means 7 runs required for the victory, and deliveries remaining 8 ball and 7 runs required for the victory. It's definitely going to be very interesting. 1 or 2 dot ball will change the complexion of this match, and Vijay is trying his level best to ball that dotted delivery, but Ajmal, the captain of the side, such a fantastic player who can handle the pressure. Again, appeal going on, but I don't think so. Leg by call by umpire. 1 more addition to total. Now the deliveries remaining 7, runs required 6. What a game of cricket you are having. That's what the spectator wanted to see in this big final. They need to see the nail-biting finish in this big finale of this most prestigious Gladiator Trophy 2021. But I think game is not yet over. Game is not yet over, and that's why the crowds are so interested to see that. Of course, even Yenni Posot has got a plenty of fans. They are backing up because they wanted to see Yenni Posot to become the champion. But for that, they need to bowl very well. They need to field very well. Oh my goodness, that ball, the full toss delivery, and oh, good work. Look at the work there from the fielder. Absolutely fantastic. A wicket keeper behind the stump. Imtiaz is electrifying. Satish ji, what I am seeing here, this is a fantastic comeback from the team Yenni Posot. I was already saying
balls, now 6 runs required for the victory. What a turnaround is for this match. Looks like now just a formalities are left in this game, and spectators slowly leaving the ground here, saying that that boundary coming from the blade of Ajmal, chance of run out, and they missed it. That's it. Young friend Surwa is becoming the champions of a Gladiator Trophy 2021. Wonderfully organized by Underarm World WhatsApp group in this most beautiful venue of Panchayat Mini Stadium, and deserve this place as a champion. The way they performed in this tournament, throughout the tournament, and once again they're justifying themselves. Why are the one of the top team in the South Kendra district, and they're winning once again the Gladiators Trophy 2021. Congratulations for the winners, and even the congratulations for the runners up as well. Nothing to lose the heart, because winning and losing is a part of cricket, but at last eventually cricket will going to win the heart of all cricket lovers here in this mini stadium. Thank you very much. That's it for the today in this cricket tournament. Once again I would like to thank all the president and members of Underarm World WhatsApp group for providing the opportunity, being the part of this wonderful cricket tournament. As a commentator, myself Satish Salyan from Mangalore, and Nawaz, Star Nawaz in Hindi, and at the same time our co-commentator Abdul Rahman, giving all thanks to the organizer for this wonderful opportunity. We are coming to the presentation, post-presentation ceremony. We will have a lot of dignitaries. I think it's going to be a Star Nawaz will going to be the MC for this presentation ceremony. And that's it in commentary box. Thank you very much.